कर तू रहा बन जा फिजा देख तेरी यादों में दम घुटे थे यहाँ तू थी दवा अब है सजा देख लंबी रातों से मैंने कली रजा तेरे बिना मैं जीऊं बेमिसाल गायक ने गीत बदलता है बुरा हाल बिगड़े नवाब चुटता है कारोबार आज भी ये दिल तेरे लिए माने दाने हार कतू रहा बन जा फिजा देख तेरी यादों में दम घुटे थे यहाँ तू थी दवा अब है सजा देख लंबी रातों से मैंने कली रजा तेरे जाल में आज किए मैंने कितने कमाल वे यहाँ जीते हम बढ़कर थोड़े से मर कर लिखी जिंदगानी एक साल में आज चल मेरे मन में और मन जब मुसाफिर तुझे हार के मुझे जीत हुई हासिल खुशी मेरे मन में और दिल भी है काबिल दितानी में फक और वो कहते हैं शातिर यहाँ लोग पीठ पीछे करे वार ये ले तानी लोर जो साथ परिवार है आज तेनू वे के हो गए 2 साल ये वेखदा में तस्वीर और जुल्फ कमाल के कहते हैं जैसे करनी वैसे ही भरनी चाहिए सब मुझे काल में होती है सबरनी कर तू रहा बन जा फिजा देख तेरी यादों में दम घुटे थे यहाँ तू थी दवा अब है सजा देख लंबी रातों से मैंने कली रजा तेरे बिना मैं जीऊं बेमिसाल गायक ने गीत बदल रहा है बुरा हाल बिगड़े नवाब चिट्टा है कारोबार आज भी ये दिल तेरे लिए माने दाने हार भाई आज पूरा फक हो गया भाई पूरा भाई मतलब इतना नसीब कैसे खराब हो सकता है भाई वीक 2 का आज VCT पैसिफिक का स्टार्टिंग है और मैं जैसे स्ट्रीम पे बैठने को जा रहा हूं मैं अपना वो स्ट्रीम स्टार्ट लाइव करूंगा और भाई मेरा पावर कट हुआ क्या बताओ भाई ऊपर से अभी देखो साला OBS आधे में मेरे को मेरा स्क्रीन चेंज करा दिया भाई वो टाइमर खत्म होने के बाद अगर कोई लोग नोटिस किया होगा तो एक क्लिप आता है छोटा सा 5-10 सेकंड का क्लिप आता है वो क्लिप को स्किप करा दिया भाई OBS मतलब एकदम लाइफ में चलो चलो कोई बात नहीं कैसे हेलो 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 वेलकम वेलकम कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड भाइयों के बहनों हम वापस से आ चुके हैं अपना वही पसंदीदा गेम वैलोरेंट की वॉच पार्टी VCT पैसिफिक की वॉच पार्टी के साथ और आज हम प्रोफेशनल गेम प्लेस देख के मजे लेंगे ठीक है गाइस फुल बकचोदी करेंगे वॉच पार्टी के साथ साथ आप लोग कैसे हो यार जैसे ही हम वॉच पार्टी की और वॉच पार्टी स्टार्ट हो चुका है अभी मैच स्टार्ट हो चुका है बट मैच से जाने से पहले आप लोग ये बताओ कैसे हो आप सब कैसे गया आप सभी का दिन अगर अच्छा नहीं गया तो ये रंगीन रुक आ चुका है आप सभी का शाम और रात दोनों रंगीन बनाने वेलकम ईच एंड एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम एंड अ ब्रांड न्यू वॉच पार्टी लाइव स्ट्रीम चलो चलो फटाक से भाई मैं कहाँ है ये कहाँ है लेट्स गो एक सेकेंड हाँ ZETA the other day, so I think there's a lot of room for them to learn from that. And I think, you know, if we're talking about them being at the bottom of the table, that just means there's so much room above that they can grab. How much room, right? Oh, like I think it would go outside the screen, way outside सही है frame. Oh my goodness. करण मेहरा जी आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है मेरे भाई चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ओ अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है लेट्स गो मेरे को लगा स्टार्ट हो गया 1:30 को स्टार्ट होता है 6 मिनट लेट है उनका ही पावर कट हुआ होगा मेरे को लग रहा है उनका भी पावर कट हुआ होगा भाई मैप पिक क्या क्या है लोटस ZETA लिया है आइसबॉक्स टीम सीक्रेट लिया है और हेवन है डिसाइडर लोटस आइसबॉक्स हेवन ओके चलो गाइस लेट्स गो ZETA अटैकिंग
gonna have to get out of that one straight away. Good patience from ZETA so far. No lurks this time around. I'd be interested to see how quickly 2GE and Jesse Vash are going to push through the mound. अबे 2G 2G एक और का नाम भी है पता है आप लोगों को आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो So a bit of noise and the smokes have already been deployed. A bit of a flash as well for added cover, but a great well-timed fault line as well from Envy. Nonetheless, it doesn't quite deter ZETA. They continue to push forward. A couple of trades, and now Envy trying to work around the edges of the smoke. Ooh, almost spotting out showed up, but instead gets spotted out by Depp. Now all that's left for Team Secret, just the two players, 2GE and Jesse Vash. And what are you gonna Jesse be able to do Vash. here as well, if you are splitting positions? Not too much. Bit of a jump peak, but it still is a lot of information for ZETA. Also spotted him out, so the only one left, 2G, unfortunately goes down up by the waysides of stairs. ZETA picks up the pistol. Yeah, I was looking at the flank that was potentially going to be coming on to 2GE as well. वेले लिया है बे इनका जेरेमी तो It was just a little bit too सही late है for भाई Team ये भी Secret to really get a wrap back in towards ये the भी A सही side है there as well. So, करण मेहरा जी आप हो चैट में ZETA division already getting some sharp shots, getting some good reads on where the position Hello, Karan Mehra ji. for the retakes. So coming in towards this secondary round as well, right? And already an adjustment for Team Secret to get this rubble control. You know, one of the things about Lotus is just how much utility that you can pepper on down to be able to challenge on that defensive side. Very Oh, much oh, so. oh, oh, So oh, still oh, keeping some of oh. that pressure alive closer to rubble, but also been तो भाई लकी बज गया भाई जैसी also kind of starting to poke around the C side, Komodo. Yeah, but this is just the pop ready for Team ZETA on the other side right now. A little bit of silence, but I do like the counterplay from Team Secret. They're waiting for any noise as well. The 4-stack? अपने इंस्टा पे शेयर कर देता हूँ that we are live. Is gonna get all the information and just immediately the util's out back. Immediate flood, but XDL able to land the two shots. Step as well with the outlaw, and a bit of an elevated angle from Wild Oreo, but unfortunately to no avail. The only one left, Jesse Vash. XDL took a bit of a hit, but nonetheless not too bad for ZETA. Well navigated, really. Just everybody, sharp shots where you require it. Clues, depth, yeah, down to low HP, but you're against the eco, right? You're against the stack. You see all that utility come your way, and you weather through it. Now, for Jesse Vash, well, Cypher territory over at the C site in another postcode when all of that damage was being delivered over at A Rubble, and now essentially you're just trying to see if you can find anything. The low-membered HP players are not really going to give you a challenge here. Yeah, look at how neatly they're tucked away. It's just Shota who does have the full HP on the other hand, so Jesse Vash gonna have to carefully, cautiously creep his way forward. डेप जो लो था वही मारा And they get to sustain all those weapons मैं around पहले the इंस्टाग्राम पे डाल दूं भाई story. As well, we're getting closer to the showstopper, right? When you're two away from it, you can definitely push towards an orb in this new round, and then you're one away. Specifically, when this outlaw will be retained in towards this next round as well, you're gonna have to be cautious on the side of Team Secret with your shield buying and you know, rifles. If you want to get the vandals, you're lacking some utility elsewhere. So it'll be good to see what the turnout for this next round is going to be from Team Secret. If they have any sort of tendencies already that they want to get a little bit more challenging over at Rubble. Very much so. I mean, you would have to say a lot of the early round games start around this spot, and Team Secret are trying to adjust around that, having two more players closer to A-Link right now. And Jeremy's already popped Refract, so he's ready for a duel to be able to spot something and get out of dodge. Nothing spotted for now, though, especially with the smoke being propped up. ZETA, on the other hand, having some adjustments of their own as well. Yeah, I like this. They can use it as a little bit of a bait to keep Envy entertained over at the B site, making him a little bit head on a swivel to see if he needs to assist with any utility over towards Rubble, or if he really needs to stay focused with Wild Oreo to the front of B. Team Secret definitely getting an inkling of this as well, so keeping their positions a little bit fluid, kind of holding the angles off to the other way side, but ZETA once again kind of taking their time with things. Yeah, nobody really giving an opportunity for Depp to be able to find something, but first casualty, Sugar Zero down. Yeah, Team Secret will be the proactive ones this time, creeping forward, taking down Sugar Zero, Clues down to 1 HP, and that forces XDL's hand. He pushes up and gets taken out by Jeremy. Now the only ones left up by Pillar, and it's a simple flick from Wild Oreo, a double kill to pick the round. चलेगा बोनस राउंड था it's okay it's totally fine. So that's just some really sinister shots to come out from Team Secret. You do like to see that, and you know, humble ZETA just a little bit, making sure that they're not able to get away with anything too sneaky.
Yeah, definitely something for ZETA to think about. They often get into these positions where they have some space, they can launch a possible execute, but without much चलो स्टोरी भी डल गया गाइस इंस्टाग्राम पे Team Secret takes advantage of that तो every day of the अभी week. हम So देख next सकते हैं round coming up now, adjustments on their way. Yeah, already just seeing the sort of standard. Challenge Ooh. Jeremy. Yeah, he doesn't want to stay and fight in that one. So bit of a reset back on towards the rounds again. जेरेमी का चेहरा ऐसा क्यों था क्या हाल जेरेमी भाई क्या सीन चलो वाइस का इन्फो मिल गया You're expecting a little bit of a lurk from that position at this point in time, right? So for Team Secret, this is what they have to do. अलाउड देख रहे हो बे वहाँ पे सी पे देखो Resting and not जैसे ही इन्फो मिला वैसे ही सी पुश That's something to worry about as well. Maybe 2G can kind of step TP वाइस over. वाइस टाइमिंग बे But here we go. The launch, it's starting to head over from A link, and Team Secret continues to hold from the upper side, trying ओ टाइमिंग हो गया mark these angles down. Couple of shots already. भाई ये लोग पिस जाएंगे बे ये लोग पिस जाएंगे And Team Secret were already setting up for a bit of a retake in this round, whether it be A or B, and it's going to be the latter at the moment. Yeah, and at the same time though, बट दिक्कत ये है ना retake 2GE has snuck over, but he is getting smoked off as well. उधर मार दे जैसी वाश through the sheer wall. He takes Shota down. Oh! Player down as well, and that could be where the dominoes continue to fall. Bit of a shot from Envy, and all of a sudden, all that चारों तीनों तरफ से आया ना सैंडविच बोलते भी the defuse heads over onto Team Secret's way. Good flash from Envy at that last one that you do see, but really well coordinated retake to come through from Team Secret as well. Not biting off more that they can chew in the earlier stages of the round as well. You know, 2GE, he's already showcasing from our little armchair position that he's happy enough to just TP past these shield walls to try and get some quick flanks activated. And I'm looking at Shota, I'm thinking, yeah, he's kind of looking for it at the moment, but the fact that there's then the further flank to come through from Jesse Vash as well, and Clues is losing his life, like, Team Secret are coming up with some pretty good ideas in the early game right now that this is the sort of time for ZETA that you need to really start to get a grasp on things. When you're looking to get towards ultimates on the board, you need to have a discussion, and I'm actually really glad that there's a timeout early on here for just that. Could that be the saving grace for ZETA? Whoa, wait, hold up. Unless it's the bad timeout, Quack. It should be the right one, but seeing the team logos, okay, all right, there it is. So yeah, maybe a bit of a saving grace for ZETA. Hopefully, something to bring them back. इतना जल्दी टाइम आउट ले लिया भाई So far, so good. They did start off pretty well, but the macro game. कुछ एक कम लग रहा है ना लाइट Exactly like you mentioned, Komodo, and at the same time, you really have to wonder where are some of these players. You know, Shota has been, you know. Deployed in to kind of almost fill Laz's shoes as the Sentinel somewhat, but he's been kind of not quite on the ball. And that's what I feel. I think for me, there's a bit of an experiment here to have XDL back on towards the ISO as well, right? Because in history, we've only seen him play it once. It was on Haven, from what I was able to scrub up. And on the back of that, you know, you're running a Cypher and a Yoru, where for right now, you're seeing, you know, Death on Raze, and you're seeing the Vice be picked up. So there's stylistic differences and, of course, map differences and how you want to do that. And so far, we're really only seeing, you know, the contingency go forward at the very start of the round. And it's not really what's going to happen in a round such as this, when you've got a little haphazard buy. You do have kill contract though, so maybe with this Vandal he'll be able to open up this C site, which actually is secret. Like, they've changed up their approach too. They're more stacking with all these ults. Yeah, a bit of a possible read, and here comes in with it the Armageddon, fired back as well. And here comes a bit of a showstopper, but unfortunately it doesn't quite connect. Envy now trying to hold off on the other side. The entire choke UC हो गया in smokes. ZETA looking for a way out. And that's the reset. That's what you want if you are Team Secret as well. Yes, you use the Armageddon to kind of keep them at bay, but you get an opener onto XDL, which means that was the Vandal down, now recovered. And what do? If you are ZETA as well? You've gone into this round with not too much sniffing utility. You can't really gain forward possession of any side of the map without sacrificing bodies here. Yeah, I do wonder what that timeout was about. Possibly something for the future rounds, or just to keep in mind how Team Secret might continue to push out, especially around Rubble or Mount. Something that ZETA has to watch out for, especially given their composition. But right now, it's just about getting into sight. They're setting up with this fault line as well. They are expecting this hit to be. Yeah, Team
Secret watching, keeping their eye on it, but here comes Clues, an instant opener against शॉट बे, ये लकी था, लेकिन पहला वाला अच्छा हमारा. trying to launch a counter assault right back, but also aided by Jesse Vash. A little bit of an attempt, but unfortunately shut down. अभी भी 2v2 है, 1v1. Hot and ready, he's out for the one-on-one. Envy goes for the swing. Clue strikes him down. 4K निकाल दिया. Round number 5. That's gorgeous shots to come through from Clues. Honestly, the fact that you're looking at the beginning of that round and you think that Team Secret, by the weaponry, by the ults, by the opening kill, it's going to go their way. But no, he's just really individually dug deep. I mean, he's in the pit of the B side, right? He's down at the bottom of the barrel, and he's just grown up tall. 4 kills to come on the back of that one. Love to see it. Yeah, I gotta love the strength and the resilience that they are showing. It's a round where they came in a bit of a 4-on-5, but through these little micro plays, playing around the angles and everything, they managed to. अच्छा खेला CLG. The fact that it was a contact play as well from them is really nice because it plays with your fault line timing that didn't work out for Team Secret. So I want to see in this new round if Team Secret are going to be able to capitalize with that utility as well and be a little bit more coordinated. They do gain some rubble control. They see that nothing is there. Generally, at this point in time, you see ZETA come out towards the A side of things if they were going there. And the fact that you're not hearing all this utility at the C site, your camera's spotting things out, it's going to look like another retake round to come through for Team Secret. Yeah, very much so. So maybe a couple of trips possibly to aid Jesse Vash. He is nearby. But otherwise, just for ZETA to get the spike down, paint shells into waterfall as well. Depp getting a little bit curious. Got to start to do something if you are Team Secret. Well, at least अरे भाई ये मिस होता ना. from the flash. They do take one down, but that is when Team Secret begins to push as well, coming up from halls and all that stuff. It's just Depp. All of a sudden, in the blink of an eye, Envy takes down so many alongside his teammates, and Team Secret will be able to claw their way back. Yeah, no real opportunities in that round for XDL or Clues to throw out their ultimates as well. Might have to see that in a scaling approach in towards one of the sites. So when you're actually in there, we're going to have to look at how they are going to contain the site itself and not really expecting Team Secret to be there as quick. Some great shots to come out from Jeremy. भाई ये जेरेमी क्या बे? The salvos as well. He's actually डैमेज खाते-खाते मार रहा है. round as well. So we'll potentially even see that for a stronger looking retake come the next round. I know, and that seems to be the trend for Team Secret, Komodo. Yeah. It's not just the convergent paths, it's the rolling thunder as well. ZETA has to watch out for so many of these potential plays. I mean, how do you work against a retake comp? Well, you got to try and pick them up early on, so they're missing a couple of these components, I reckon, right now. And so far, Team Secret, I mean, it's another situation where they're not immediately there for the battle, but all this empty territory, ZETA are already kind of figuring out that nothing's home over at the A site. They should be expecting a bit of another retake scenario here. You know Team Secret are going to be aware of what utility and... और ये टाइमिंग हो गया रे 2G के साथ. 2G, that smokes down. Yeah, good little starter, and also for them to get into deeper enemy lines. XDL continuing with his onslaught, a second kill through, but what is this? A Cello taking out 2! All that's left now, it's a bit of a 2-on-2 as well, until Envy takes a shot out from भाई stairs. ये कैसे हुआ? Lost around भाई 3v5. Jesse Team Vash Secret this. 2v1 आ गया. Beginning to move to market, and there's a lot of work for Depp to do. Getting out from stairs, looking to clear, but as he swings the tight corner, Envy will be able to snipe him down with a headshot. That's Team Secret moving forward again. Yeah, a bit of a crossfire at the end there is always... थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया है ना. The thing is, for me, Jeremy throwing in the ultimate and then comboing that with the salvos is how you get 2 quick kills off the back. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है. You know, little things XGL को XGL भी वहाँ पे अच्छा ही किया. अभी 2 पिक निकाला और कितना ही मारता वो. new mechanics to come on through that the Waylay is providing. वहाँ पे और एक अल्ट पे उठा सकता था, लेकिन पता नहीं. They're going to have to try and adjust with. Yeah, it's really tough for them, especially with Team Secret's retakes. You know, we didn't really see like many efforts for them to really kind of bait some of these out, but that was a bit of an eco round for them though, so not the biggest loss. We shall see how it works out in this round as they pop the kill contract, taking that 2G away. Oh. Able to strike him down, and the rest of the team now. अरे डेब भाई क्या सीन? The trade's beginning to trickle through, and Clues will be able to find a bit of a double. That leaves Jeremy and Jesse Vash alone. थोड़ा सा हमारे जैसा गेम प्ले हो जा रही है गाइस ये तो. इनोवेशन इग्नाइट जी, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है मेरे भाई. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. क्या हाल है भाई, कैसे हो?
कर ले तू भी वॉच पार्टी हैं मतलब वॉच पार्टी कर रहा हूँ क्यों क्या सीन वॉच पार्टी पसंद नहीं आपको Given the fact that Shota is one away from the ultimate 2, if they need to use this to try and equalize on the 4 वॉच पार्टी पसंद नहीं आपको it's not a bad idea to pop it. ओ ओ ओ At least it's the info. थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया So it does give them a bit of help. But surely, with time passed by, Team Secret. भाई मेरे को एक बात बताओ ये जो कॉन्फिडेंटली सिटी अल्ट किया अगर वाटरफॉल सिटी अल्ट बोल रहा सिटी ड्रोन किया अगर वाटरफॉल से कोई कर आ जाता तो वो प्लांट कर रहा है उसका दूसरा टीममेट तो लक पे खेला ना फिर तो ओ वेले का पोजीशन देखो Spots the barrel and instantly flicks forward. Now on भाई towards कैसे waterfall, and take Jesse Vash down. A successful round for Zeta. Yeah, cheeky off angle to come out from Clues at the end of that one as well, and another 4K to come out for him as well. So definitely seeing some. भाई दो CLZ दो 4K में राउंड निकाला बे देखो बे वो कुछ भी करके देखो ये देखो अबे मेरे को ये समझाओ साइफर जब वहां से आ रहा है वाटरफॉल से जेरेमी उधर क्यों देख रहा है साइफर तो वाटरफॉल से आ ही रहा है I do have to imagine that does give them a boost of confidence for the upcoming rounds as well. Especially for them to come away with a successful attacking side. That's something that they've struggled with before, which is the defense, where they're a little bit lacking. रबल कंट्रोल तो लिए Zeta, presence over. 3 लोग लगे रबल Wild Oreo getting that A orb as well will pick up the Armageddon. So very, very big valuable ult, whether you want to go for retake or stay. नहीं वो लोग यही जाएगा देखो They're not quite set on where they want to end things at the moment. If they go back towards some rubble re-clear, they're going to have to contend with 2GE, who can stall a little bit with Paranoia, with Smokes as well. This is where I do want to see more depth from Zeta, right? You've been struggling with the retake so far with Team Secret's mid-range double init composition. How much of a fake can Clues sell over here at the moment on this C site to provide the team a bit of extra ease in towards this A site? I don't think it's much, because look at Wild Oreo. He is coming towards this A site with 2GE. It does allow for Shota to kind of sneak in, though, and he is marking the B site now. Oh, early Armageddon being popped by Wild Oreo is instantly sent over onto the A site. A bit of an assumption for Team Secret, and Dep is the one towards the A site now. So even though Dep does go down, Razor Bites and Arcros is being set up, but Shota falls. Clues has to move forward. Clues needs to find more for the team. पोजी तो पता चल गया है And alongside Sugar Zero and XDL, they're trying to mark it down. Nice one, Envy. Microflakes for days, and all that's left is just XDL. XDL. He's got the elevation working against him. Team Secret. डेप का अल्ट आ रहा है स्यूटा का अल्ट है भाई वो अल्ट मार सकता था वो अपना सेटअप करने से पहले अल्ट मार देता तो ये मरने के बाद अल्ट आया मैंने देखा नहीं वो भाई ये तो अनलकी हो गया बे डेप के साथ कितना मस्त निकिन किया था वो I mean, I know we've had a really big map of Lotus before, right? It's 22 to 20. Hey. It's too early. It's too early to say anything on it. It definitely is a little bit early. But still, I mean, if we're following with that trend, I mean, this is surely where Zeta possibly finds a way to strike back on their eco. I think that's where Team Secret sometimes gets a little bit too comfortable. But that said, who knows how it feels on the server right now. At least for Team Secret, starting to adjust around this. They're playing a lot safer. Well, you are against the bit of an eco from Zeta too, so you don't want to play the close quarters action if they're already getting in towards this C site, which actually गन मिल जाएगा मेरे को लग रहा है Looking to swarm him down, but unfortunately the utility whiffs right by and Envy is अरे भाई ये यहाँ पे Envy मर गया था ना तो हो जाता सीन हो जाता चलो ये तो राउंड सिक्योर है trying to stay alive, but he's getting Valorant in mate. Yeah, the new mechanic, the Hinder coming on through, you know, doing the time warp in that one. You're not going to be able to dance around anywhere, unfortunately. Hey, Team Secret, they will find 6, so at least equalizing at the half, getting in towards another gun round for Zeta. And yeah, I kind of want to see what difference they've been able to figure out so far, right? When they're going for this rubble control, they're seeing a couple of these comboed utilities with the salvos, with the smokes, maybe even a later paranoia to come in on through. But if they're waiting out this utility, they're still taking it very pacey.
right? I want to try and see if they've figured out anything to really catch Team Secret off guard. Yeah, that feels as though that's what ZETA needs right now, especially to throw off some of these retakes. You gotta love the precise gunplay though, Komodo. Yeah, absolutely. Okay, Zotac keeping people interested at least at the front of the B site, and it's feeling a little bit too hot at the moment. Still does have the Steel Garden available too, with Depp on a showstopper. These could be some ults that are going to be good to find some space in towards the A site, get your entry in. Wow. Just noting as well, XDL one away from the kill contract. Yeah, really, really close to it. Definitely kind of needs it, especially since we're कोई है ही नहीं near साइड the पे. first half. But once again, we are in a situation where Team Secret's उनको पता था ये अल्ट मारेगा. It'll be perfect timing. Shota needs to time it right though. पिस जाएगा. Alongside his teammate, and there's the opening shot. Rolling Thunder. फिर भी मार दिया. Trade. Shota still holding on to the Steel Garden. Maybe the best time to pop it right now. And there it goes. But the Parador gets sent through as well. Jesse Vash starting to take more space up around drop, especially. But there it is. Primary jammed up. He is buying a bit of time, and that allows for ZETA to tick the clock away. But at the same time, with utilities being sent down, more positions get smoked off. Shota has to hold. He does a good job of finding first one. The Hunter Spear gets popped, but is it enough to hold it through? 2GE sticking the defuse, and Team Secret find the lead in this first half. Yeah, a little bit of ill positioning from Shota at the end there as well. Couldn't quite see if the spike was L positioning बोला क्या वो? As Fury does come out, and at that point in time, I mean, for Clues, you're a bit too far away from it. You're not going to be able to find that one. Ill positioning. I'm not going to lie, right? मैं L positioning सुना बे. Getting a little bit of scarcity in towards. यहाँ पे मारना था ज़ीरो को. A bit of respect, but I feel like from what we've seen so far, you're forcing Team Secret to play to their comfort, which is these retakes. You need to be finding them early on. We need early opening advantages from ZETA, and they've not given themselves enough rope at the moment. It's the last round in the half. Exactly. Oh, last round of the first half. This is where it really starts to feel like a struggle, especially on ZETA's map pick. Envy, by the way, though, 13 kills and 12 assists. Those are insane numbers. Yeah. Moving forward now, and look at him. He's setting up for more utility into the कैमरा टूटा नहीं लेकिन अभी तक नहीं टूटा. Baited into the site once again. Yeah, it might be another 5 versus 5 retake. Boy. Okay, at least Shota's trying to poke around B site. Oh, they don't want to stay around C, however. Leave XDL to play to his own devices. I like this. Go for a late flank. Technically even kill contract if you wanted to, but at that point in time, you'll just get trounced upon. So really it is going to come down to, do we decide to go A with our numbers and let him really lurk later, or do we want to try and draw some Team Secret members away from the C site, yeah, towards A, and then go back? I mean, 40 seconds to go. You do have a from the shadows if you want to quickly get back over. Oh wow, that is kind of. भाई इनका रोटेशन देखो. C से A गए, A से फिर B आए. To go, you finally let XDL sniff around the whole site. But still, it's नहीं. kind of gets the position away. They're trying to get ahead of the retakes, and so far so good. Couple of trades out, especially with XDL holding the opposite. वो डेप जब मरा ना मेरे को लग गया था कि हो गया GG. Confirmed that no one's on the other side, but now getting a little bit antsy, pushing out forward. XDL gets a kill. Sugar Zero as well. Down to just Jeremy, who able to get a bit more space, and there it is. Convergent path sent forward. Doesn't quite connect though. उसको पता नहीं है. अरे. Bit of a jump peek, and he does go for the slight utility. Jeremy trying to get tricky with it. He's trying to stick it halfway as well, but the Spectre will find its taps. ZETA closes the first half with 5-7. That's not bad, honestly. You got to give props towards ZETA, really playing with the time in that one. Something quite different as well, right? Leaving XDL to kind of cook around the C site, really wait and play the time for it before they go in for the plant. I'm seeing the combination of utility come through from Team Secret as well, and I think that's one of the biggest takeaways that I'll take from the first half here, Quack, is Team Secret are looking very coordinated on that defensive side in how they want to methodically play with their utility as well as balance their own gunplay. So I'll be kind of keen to see what that looks like a bit differently on their attacking side, and conversely for teams for ZETA, are they going to be scared to take any of the same sort of space that Team Secret were using that utility for? Because these comps actually do play a bit differently, right? Yeah, very much so. A slight, double duelist, the whole shebang. But that's the main story. It's just, how does ZETA now look on their defensive side? They have been a little bit hesitant before,
but they do kind of need to work alongside, you know, how their composition is structured and how they do need to possibly push out and take more space, especially against Team Secret, who is playing very, very util heavy. Yeah, I mean, like, for ZETA against T1, right, you've got that open book where T1 are kind of using all the same comps that they were at Masters. There's a lot of tape and research that you can do, but now you're going up against Team Secret, who have had a lot more time to prep. They've been relaxed going into this series, as well. bringing out new things especially. So you do have to have a lot of mid-game and then mid-round adjustments. I do admire how ZETA finally kind of cracked the code towards the end of that first half. It was a little bit late, but still a 5 पिस्टल राउंड विन bad. It is टीम salvageable. सीक्रेट का They managed to figure out 57% how है to play against that kind of स्टेज 1 retake में style, so maybe that's going to help them और इनका with those 42.9 plans that Team Secret might have, but also curious to see how Jeremy pilots this waylay. Yeah, for sure. And to throw it on back as well, the first pistol round did go the way of ZETA. Opening frag goes the way of Jesse Vash. उनका सेंटिनल डाउन Bit of a drone, stealth drone towards the B side as well, just to open the door and to rendezvous everyone. भाई नहीं फंस जाएगा भाई हाँ Alongside some flashes from Envy, trying to keep ZETA at bay. All the while, Jesse Vash. दिक्कत ये है कि ये ZETA का मैप पिक है. The Team Secret faithfuls are still getting a couple of true shots in against Waterfall. Yeah, it is technically a 2 versus 2 on the C site, so that as much time as the team can buy will really help Jesse Vash here. Yeah, trying to keep themselves away. Sugarzeer and Depp should be aware as well. They haven't spotted the Cypher out just yet. So surely steadfast moving forward, but unfortunately a well-placed shot from Envy will pretty much diminish their chances of taking the round. A little shot from Sugarzeer, but still no hero found. Jeremy will be able to pick up that pistol for Team Secret. Yeah, leading quite nicely for Team Secret on this attacking side so far. I mean, like, you got a couple of these just different angels that are really being taken around the map, right? The fact that it is a player like a Sentinel on a Vice that is taken down first, right? You don't really need to then second guess yourselves if you're going together as a unit. You've got no Sentinel utility that you need to contend with. So I kind of want to see a little bit more adjustments come through from ZETA if they want to play a little bit more bunkered in towards these sites later on. Yeah, later on being the key phrase. Right now it's just the double sheriffs. Not quite much on the util front as well. So ZETA just trying to push forward and trying to find what they can, but they're being smoked off as well. And it is Jesse Vash with a lone ghost trying to hold up on the eco for the team. And that baits ZETA into pushing forward. A bit of a blender as 2GE bursts them down. Jeremy off the other angle with the outlaw as well. Clues and XDL, you know, maybe they get a clue on where the site hit's gonna go, but will they be able to find frags? That is the question. Lightspeed over, and unfortunately no shots found, and they try to take a bit more space, but Clues looking to tap forward and be able to spray him full of holes. क्या scene? I mean, 2 players surviving at the end of the day. There's some good damage delivered by ZETA that'll make this bonus round look a little bit more potential. You know, probable for them, rather, I guess, right now. You know, you still, again, have to be considerate of this outlaw that you did get seen in towards that previous round. But all in all, you know, a couple of scrappy duels looking to come through from Team Secret. Some adjustments to be made. And I'm more wondering right now for Team Secret, we've seen, you know, some good timing on the utility, some good timing from Envy on these fault lines as well. Yeah. I'm thinking that this setup is a bit of a quicker one for some rumble control. Oh, very much so. Oh, okay, a bit of an exchange on the position. But trade. Wow, Depp. Yeah, the trade does favor ZETA for now at least, as Depp continues to tap his way through. Good shot through, and that's going to be Clues holding it on the B side as well. I mean, no clear routes for Team Secret in this round. Whoa, 2GE, wait, what? The flash! But Clues still manages to find the shot. Paranoia. Expiry, bit unfortunate there. Again, this is Gun भी मिल गया. bonus rounds here, Quack. So the 2 surviving soldiers from the last round. Well, see if they can do anything here. As I say that, Wild Oreo, hold on. It's still a 2 versus 3, but a couple more shots like that. Okay. No way. Okay. Well, now he's online for भाई the ace, but low HP. We'll see what he can do. Tries to भाई कैसे निकाला बे 3 पिक भी कैसे निकाला bro? But still, unfortunately, taken down close range. It makes you question it a little bit, doesn't it? Makes your heart thump. Oh, just a bit. What if the clutch would come through?
Some good shots to come out from ZETA. I think that's important for them on this defensive side as well, because a couple of jewels around the map, right? You really have to be just considerate of your comms as well. You need to make sure that no one's finding some bad rotations around the map. You need to make sure that, especially on the bonus round, you're keeping things relatively honest for yourselves as well. Like a light shield that comes invested in towards this new round as well. Now we're going to get some pressure on towards Shota yet again for the beginning stages. Yeah. The lone soldier on the C site currently. He does have the shear wall in place, but we all know what waylays can do. Yeah, I think more importantly, if you're not baiting out the shear wall and you want to just go, are you going to get in front of it? Because right now, there's a couple of kills. Ure mara. In front of it, Jesse Vash gets in front of Rubble as well. A good shot against Sugar Zero. That's the smoke's gone. So defense is a little bit weakened for ZETA. Is Envy expecting this? He is! Wow! That's great to come out from him there. Just absolutely read like a book. खेल रही Timing as well आज from तो the खेल push-up रही है round. भाई This is all the information now that you need as Team Secret to scale back up towards this A site. To अरे see another body shooting at you. That's precisely what they're trying to do. For 2GE now to hold down to A-Link as well. अरे ये तो थोड़ा दिक्कत हो गया 3v3 हो गया That one, unfortunately, because now you're going for the plant. It's technically a little bit down on the HP for Jeremy. You do have a Rolling Thunder though for Envy. Okay, he did have the refract propped up, but unfortunately it does expire. So maybe it comes down to Envy and his Rolling Thunder timing. Does send it after a couple of seconds away from the door, and then the double peek out from Team Secret. They take down Clues. All that's left now, just the players coming up from tree. Envy has the utility. खेल दिया Dodges the arc rows as well. Now Shota tries to sneak forward, but Envy strikes him down right and true. खेल दिया बे खेल दिया फ्लैश डॉज किया कोई इन्फो नहीं मिला तो उस तरफ देखा ही नहीं वो लोग So far for him. I mean, 20 kills. You've got Wild Oreo who's on 18 as well. But I think more importantly for me, Quack, it's the third number that you see present for his name line, right? 17 assists on the breach at the moment. How much setup has he done for his team to make things look not just like scraping by? Smooth is the big thing for them right now. Envy is just feeling so comfortable on this breach in this map. You gotta love how it looks. I mean, so much more comfortable. Not just on the map, maybe with mid-round calls with their new structure as well for Team Secret. Yeah, potentially. Right now, okay, it's just going to be slight anti-eco against ZETA. They do have a Hero Vandal on the ISO. Yeah, it's just one of these ecos to come through from ZETA. You don't have the likes of a Hunter's Fury that you can get a little trap play happening over at Mound like we saw previously. And XDL too. Well noted that he's already taken down a 50 HP, one away from the killed contract. Well, you'd be saying a different story if you got the opening frag and you have that available a little bit later on. Some rotations for ZETA towards this C site at the moment, but you pick up an all point for Wild Oreo. You've got an Armageddon online, and you're recognizing for Team Secret. Well, मेरे को लग रहा है ये लोग A पे अल्ट मारेगा C घुसेगा नहीं वैसा करेगा नहीं वैसा setup for example or any forward positions. You're seeing nothing. कर भी सकता है ओमेन कल्ट है क्या नहीं ओमेन कल्ट तो अल्ट नहीं है The C side as well, so the onus really is on Team Secret at the moment to figure out. अच्छा वो जेसी वैश के लिए आया था बस इन्फो निकालने के लिए Around the map, they have so many options. I mean, it was the drone to buy a little bit of presence towards the A site. Now they're just once again regrouping and consolidating onto a single site. That's going to be B. XDL unfortunately will fall despite picking up the kill contract. I thought maybe if he had that ult, that could have been a bit of a chance for ZETA, but still, yes. Time dwindling, but not too much of a worry for Team Secret. They will be able to get the spike down. Now just to mark the end of these positions. Jesse Vash once again on a bit of a lurk. And there Wild Oreo buys more time away and does confirm the positioning from ZETA. So now they know, they hear the footsteps coming out from Link, and they will be able to hold these angles down there with a spray. Oh, spray transfer देखे तुम लोग? Clues off to the Sheriff. Stinger out of ammo. Swaps up to another weapon, but also out of ammo, and he starts to feel frantic, rushes over onto the spike. Jesse Vash showing up all of a sudden. It's Team Secret up to 11-6, Komodo.
Yeah, good time to be bought from the Armageddon, don't get me wrong, but the fact that they do have to rip that one out because they're not ready for their own little post-planting positions at the end of that one, it speaks credit to ZETA's prowess and scarcity, even with their having lower weapons, right? You note that Det was lurking over towards the A side as well, but you're not quite sure what type of buy-up there is. I was thinking to myself as well for XCL, well, if he actually got a kill and got out, he could have pulled them off the spike plant. But हाँ भाई RyuK अर्नब भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या हाल है अर्नब भाई, कैसे हैं? such as this, you want to keep Team Secret off 12? You probably क्या हाल है अर्नब भाई? That's what it is. If you're gonna mount the comeback, it's all Whoa! round 18. Okay, Odin's flashes and also the refract from Jeremy, a kill that he's walking away with. Sugar Zero though, kind of snuck off to the wayside, able to walk away with one kill. Waldor goes ahead, and XDL comes in with a kill contract, exchanges for both teams. Oh, but it's not done. भाई जैसी वाश क्या मार रहा है, 2v2 हो गया. In front, and it's not going to happen. Now convergent pass out for Jeremy, and he's going to zoom in towards the site. But hello, Sunshine. अरे भाई क्या है, ये लोग इग्नोर क्यों कर दिए ट्री वालों को? Picks up the spike. Where's he gonna go? Thinks about going up the rope, but knows that XDL could still be around upper. Oh boy. There's a lot of time for Jeremy to play with, however, though it's all his individual shots. No utility to help him out. All right. Well, if he does get one kill, he might be able to pick up the dash, but still, I mean... Dash नहीं, refract. Yeah, and the thing for me right now as well is you do have the showstopper if you do just want to invest it to try and 100% the remainder of this round. I mean, you never really know, right? You don't want to see Team Secret get onto map point. What if Jeremy does get a kill, brings it into 1v1? So that's a slight conundrum for ZETA at the very least, but still, if they are confident, they could just waltz in together as a duo. Well, he's going to hear the footsteps as well. Do they expect him to be repositioned over towards the whole side of things instead of mound where he planted for? Well, ZETA will look forward to it, but oh, that's going to be Death snuck away. Lifts from Jeremy as he tries to drag his mouse over his target. XDL, thankfully, will save वेले, yes वेले. ZETA alive. जेरेमी खेल रहा है आज, वेले खेल रहा है जेरेमी. When you're in a clutch position, you एक just सेकंड can't रुको. quite navigate it on through. And that's what I mean, like, you got to consider, do you use the showstopper in that sort of environment? Because, well, Jeremy got the first kill. If he wasn't really awkward in that spray, the round could have gone to Team Secret. But you're holding on as ZETA. I don't mind that. भाई यहाँ पे बढ़िया पिक निकाला बे. 1 सेकंड का 0.5 सेकंड्स का बस डिफरेंस था उसके फ्लैश और वो किल का. So not too bad, and the role swap definitely kind of working out for ZETA right now. Yeah, but are you able to double down? Because that's really been something that we've not seen for ZETA just yet, right? Consecutive rounds in a row. Definitely needing to pick those up. At least this round, it should work out for them. Jeremy tries to throw their crosshairs off, and it does work out. Wild Oreo double showstopper, and it doesn't connect as well. They're trying to go with mid भाई आज डेब बाई का एक भी अल्ट नहीं लगा है. डेब बाई का लक नहीं है आज. Do you have to call this? Do you just have to consider a save right now for ZETA? You don't really have the credits. You've gone in with a stinger on depth, with a showstopper missing. You have just been absolutely blindsided by Team Secret, who go quickly into this B site, but they are hanging around the site. Yeah, it looks like they're going to try and go for it a little. All right, a little at least, but still the trade's coming forward. Sugar Zero trying to go as a Sugar. वो ZETA निकाल दिया. Really managed to bring himself to life. Depp out from the sides as well. Keeps ZETA in the game once more. And Depp with 30 HP as well, alive at the end of that one. But you're exactly right, Sugar Zero getting the job done where required. I do like the calling from Team Secret in that round to quicken things up towards the B side, to get an early plan as well. Specifically when you're on these lower buyer weapons, you're using Jeremy as a bit of a distractor as well for your quote, second entry in the form of Wild Oreo, to just go in with the stinger, right? Be the distractor to get you on in. But at the end of that one, yeah, a good retake to come through from ZETA to again hold on. We hadn't seen consecutive rounds from them since the first pistol and second round of the whole map. Yeah, that's what it is so far for ZETA, but that's great. You know, they are always surely, but maybe slightly slowly adapting, right? Reading that it was that distracting play, so Sugar लेज अकेले अकेले. micromanage his अब साथ में कोई है नहीं तो अकेले ही खाना पड़ेगा. Next round though, now they're gonna have to work against the full force from Team Secret, and it's the high-low setup. Sugar Zero able to walk with one, and
and then Shrouded steps into safety. Yeah, gotta recognize that he's a little bit vulnerable at the moment by himself. See what time he can बोल रहा हूँ ना आज डेब बाई का दिन नहीं for है. any assistance, or if he can just figure out with all of his years of experience that, yeah, the hit's not coming. They're resetting. आए. Still having to keep himself invested though, especially the smoke expiring away. So this is when then ZETA starts to get a read that they do have to get more information. The duo of XDL as well as Shota slowly pushing up. They do see the trip. The drone didn't see Jesse Vash though. Safeguard at least by this sheer wall, but clues. Alrighty, the kill there. ये निकालना था बे. Keeping ZETA's chances up in this current round. Sugar Zero also noting the footsteps outside of Mound. Now puts the smoke up for his team. If that Odin gets here, you could just let it rip. But at the same time, it's just going to be the Hunter Sphere forward now to keep themselves very much so in the round. 2G forced to TP upward. And with that little bit of a tell, it might be some information for ZETA to look and snipe him down with a bit of a hunt from Shota. ZETA still very much in the game. Yeah. Will this be the comeback that the Japanese fans have been looking for? That's good patience, and so far it's working a treat for ZETA as well, right? Some early shenanigans afoot, some early challenges, the high-low setup working well, bit of a reset as well. That kill actually coming through is quite pivotal too, because if that goes Jesse Vash's way, he can call an audible for some rotations. You're incentivized as ZETA to try and cut them off in the middle of the map as well, but you already, kind of have that idea as Team Secret that that's going to be a potential. So really well done for ZETA to be able to pull through with that round, and now Team Secret are going to come through with a timeout because they're feeling a little bit of pressure, right? Things aren't really rolling their way at the moment. You can come out with one cheeky idea here to get to map point. That's going to be worth its weight in gold. Very much, especially on ZETA's map pick. But at the same time, that round just fills me with so much hope for ZETA, Komodo. I mean, last week, playing against T1, they did pull off a huge comeback on Split. Will they be able to do it again? I mean, this is all about this current matchup, right? Projected rankings, they're both at the bottom, and ZETA needs that confidence to move forward in Stage 1. Yeah, I mean, one of the biggest flaws for ZETA was that when they're playing their sort of... भाई ब्लू लेस का फ्लेवर जब से चेंज हुआ है तब से खाने में मजा नहीं आ रहा. बात तो सही है. गलत तो बोल नहीं रहे हो. बाय द वे ये अर्नब भाई आपने लाइक नहीं किया है, थोड़ा लाइक कर दें आप. Recognizing their own weakness, one of their big standouts, and adjusting that coming in towards this series. You gotta love the adjustments. You can see a glimpse of clues smiling as well in that timeout. So hopefully, surely keeping ZETA in the game. But whoa, Team Secret's got explosive plans of their own as well. Jeremy already taking one down. Good reveal as well. You got to get out of this one, unfortunately. Rotating door on close, still going for the challenges. Yeah, trying to keep themselves stacked up. उनका इको है फिर भी देखो बे कितना फाइट ले रहे हो. Whether or not that's actually going to help them is a whole other thing. Yeah, 2GE wants to potentially get out of here, which is why ZETA are hanging around, right? They're feeling like they have a potential free kill. Now the wall has been tripped. You got no big information at the moment for ZETA as well. If they've actually had anyone go directly on through, this is going to be quite Jesse Vash क्या? Jesse Vash. How many players does he actually see here if he keeps going forward? That would be huge information for Team Secret. It would even out the odds a little bit. रीड देखो. Has to stay alive as well. And here comes that mid-round call. There it is, Jesse Vash down. 4-on-4. Mind blowing read. Sugar Zero trying to stay alive. Will be able to mark the angle down against Jeremy, the star duelist of the Team Secret team. And there are more trades coming out. The spike being downed. Envy alongside 2GE with just the pistols. पहले लाइक मैं ही करके गया था भाड़ू. अच्छा अर्नब भाई सॉरी माफ करें. Will just kind of sack his life a little bit. And Envy looks to find a clutch, but even with the Rolling Thunder, Depp will be able to sneak away. Yeah, फिर से LTUC हो गया. Just by the corner of that one there as well, so he was able to just be, allocated on the भाई angle for the duel. Nicely done. इतने बड़े चाहिए. Now for ZETA, but that one does feel a little bit hot under the collar. Not gonna lie, a crunch potential to come through from ZETA too. For Sugar Zero finding that kill quite large, and I mean, Quack, I'm looking at the scoreline right now, and it's one round difference. ZETA, they're certainly dividing rightly around ZETA comeback कर ली बे. forces to find a lot of these advantages. 6-11 से 10-11.
think that's one of the biggest things at the moment. Zeta are finding these positions of power, and they're holding it strong. Yeah, you gotta love this 1-2-2 setup. It allows them to pivot back and forth across the sites, but now Team Secret's starting to read that C is a little bit weaker than the other side, so going in for the full frontal approach into this one position. However, Clues has arrived. Shota has come alive. So a couple of shots now, shutting down Team Secret in their steps. Shota for a second kill. And that's just Envy and Jesse Vash on the other side of Mount, biding their time. Aftershock away, and a couple more sprays, but Shota continuing to slay them down. ये कैसा मारा बे? Unfortunate, not gonna lie. Zeta though, really good stronghold around this. चलो 11-11 हो गया. The quick endeavors of Team Secret. I mean, I get the idea. Japanese fan तो खुश हो गए होंगे पूरा. Trying to 6-11 से 11-11. Unexpecting, clues to get him there, and then he'll advise TP from 2GE as well, right? This things kind of falling down like dominoes for Team Secret in that round, and it was Zeta that's just pushing them on down, and they're happy to get the bird's eye view. So this is going to be one of those situations for Jesse Vash where you're just going to disconnect yourself, go for the save. You've got some time to have a bit of a discussion in Team Secret's camp right now on really what is this next round, and potentially even the round after going to look like. There's a couple timeouts still to play for us, sure, but this is going to be an equal scoreline now, 11 apiece after such a. भाई DFM का बड़ी लगाया है बे इसमें तो. 5 rounds in a row for Zeta, where I was saying before we hadn't seen anything consecutive since the beginning of the map. Yeah, 5 rounds is a lot. 30 Comeback seconds got real. Quite a bit of time for Team Secret to cook something up though, so I will not count them out just yet. Certainly, possibly a bit of an approach to break Zeta's 1-2-2 setup. I mean, so far that's been the slight problem, is the fact that you've got players like XDL playing around, Baby Door A-Link, which allows him to play between both B and the A site. Also a bit of rebel control as well, so Team Secret hasn't quite been able to crack that open just yet. Maybe a bit of a multi-layered approach where they're able to draw someone out from the B site. There it is, timeout. Yeah, more discussions to be had for Team Secret. I mean, you've got these timeouts. If it's getting to the wire, definitely dive in towards them. There's 5 rounds in a row that they can kind of use as a recipe to figure out where these weaknesses were, right? You've also got to consider that in the previous installment against RRQ, right, there's differences in terms of the agents, sure, but there's going to be some similar tells and some similar strategies that are going to come out that Zeta can get a bit of a feeling on what this one looks like and how they know how to counter it. कोच को जर्सी नहीं दिए क्या? Past experiences will help them right now, but you gotta imagine also calling a timeout at this juncture might help Zeta as well. It's got to be a bit of a momentum stall, right? If you're thinking as Team Secret, you want to stop a little bit of the momentum from Zeta as well. I mean, the timeout's going to be a boon to just have your own discussions, because I see the way that these rounds were working, right? Defuse after defuse after defuse. But currently, at least, I mean, reading the round from before, when Team Secret had the slight eco, they were rushing down the B site. So a triple stack from Zeta right now in towards B main. Yeah, it's going to be the half buyout to back up Jesse Vash's Vandal carried over. Lots of stingers. देखो XGL DFM का लगाया. Such as this, you want to be a bit explosive, spot out some utility with that drone, go in with Convergent Pass, with Armageddon, layer a couple of these ultimates together to get the space. But the problematic thing for Team Secret then, how do they contend with a retake? Yeah, and this is what it is. Even with the timeout, you're not entirely sure how Zeta might be playing in this current round, and Zeta have come away with their own adjustments. A lot of control around B main, and that allows them to maybe play around the door. They still haven't popped the shear yet, though. This is the problem. That's going to buy quite the amount of time at the 50-second mark as well. Okay. So just trying to trip some out, maybe bait out some utility before consolidating towards the A site. It's a similar strategy to what they've played before, though. Yeah, and already you're getting some movement from Zeta, too. Thinking that it's going to come over towards this A side. It is the right idea to position somebody like Depp over there early with the showstopper available. Very much so, and Zeta has the read. Still, though, Team Secret trying to play ahead of pace. अरे! Bit of a blunder! It blows in his face! मैं बोल रहा हूँ ना. मैं बोल रहा हूँ आज डेप भाई का एकदम नहीं है, दिन नहीं है भाई. चौथा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड है भाई.
sets it up and deploys it. It forces ZETA out of position, but with the weaponry, Clues and Dep will still be able to gun down their opponents. Just Jeremy left. Has to go for the swing, and there are too many targets, too many bullets flying down his path. तो So throw it's कर still दिया. going to be ZETA picking up the round. The first team to reach map point. Yeah, it feels like Team Secret got a little bit confused at the end of that one, because as soon as the conversion pass comes out, you've got some of their players looking for a challenge over towards drop, over towards heaven, but then you got someone trying to disconnect. 3v5 कैसे हो गया? As well. It feels a little bit awkward for Team Secret there. When you consider that the Armageddon got the only 2 kills in the round. देखो ना 2 किल निकला बे यहाँ पे आर्मागेडन का. Over eager, you're thinking? I don't know, just a little bit of a problem for Team Secret. I think they just didn't realize that ZETA were going to be ready for that retake so quick. Gotta imagine the confidence from the win streak is definitely helping them out so much as well, even with the slight momentum pause. I want to highlight, by the way, Envy and Wild Oreo are having a cracker of a map with 25 kills apiece, and they might drop this one in regulation. That is definitely going to hurt quite a bit. But still, you know what? The entire series isn't over just yet. Yeah. So Team Secret looking to push this to overtime. And again, you're looking at the C site kind of being bunkered down at the moment. A bit more assistance from Clues now here, meeting with Shota. You're looking to try and bait out again this Vice wall, the sheer wall, not able to do so. And if they do, well, you got more stopping power in the fact of your Steel Garden. That's so far off. So Jeremy not quite being able to find it. The whole team trying to, once again, break their way forward. Maybe it's another one of these strats where they leave Jesse Vash on the long lurk. Yeah. They are going to try and get in towards this seaside at the moment. See if Jeremy can spot any bodies, get a kill before refracting out. But now he's going to be in towards the site, and they all are. So setting up for a plant. You would really just expect Steel Garden to go in here in a bit of a retake from ZETA. So let's see. Forces Team Secret's hands. Oh, but they push straight into Shota's crosshair. Triple हो गया भाई. round. 3 headshots. And all the hats gone off of Team Secret's head. Just हो गया. Envy out from out. Jesse Vash trying to pull out the biggest flank of his life. Envy able to deal with the front though, but here comes the half stick. Clues has gotten it halfway, and Jesse Vash continues to peek. Oh, the smoke in his way. Sugar Zero! He picks up the round. A Red Bull clutch through a defuse of all things. Final score 13-11. 7 rounds in a row to get ZETA Division their own map pick as a victory here. And what a mountain that they have climbed as well. On the defensive side with the double duelist, no less. Generally, so far this tourney we've seen ऐसा भी नहीं है कि ये हाफ टीम सीक्रेट को राउंड्स ही नहीं मिले. मतलब 5-7 के बाद उनको 1 राउंड मिला और टीम सीक्रेट को 4 राउंड मिले थे. 6-11 किए थे वो. 5-7 के बाद 6-11 हुआ था. तो उनको सब सही चल रहा था. अचानक क्या हुआ बे? इतना राउंड कंफर्टेबल हो गए क्या थोड़ा सा? Yeah, I mean, I still want to give some really good credits over towards Team Secret as well. I think the first half that they did quite phenomenal, right? Yes. The way that they're positioning and trading each other with all of that utility, it was looking gorgeous for them. I know I highlighted the Envy's assists, right? It kind of does feel like it fell off a little bit towards the second half, but we got more coming through from Wild Oreo, so I think that quite offset it nicely. But yeah, I mean, the big elephant in the room is literally going to be these post plants that were faltering by Team Secret. A lot of the time, ZETA got in quick and they just weren't prepared. It was really, really tough. I mean, GG's हो गया भाई. Even with the coach's intervention towards the end of the map. But that's it. Yeah, we definitely cannot. मैं आया तभी 6-11 थे. जैसे मैं आया फुल कमबैक हो गया. वही ना पनौती. I mean अर्नब भाई सही बोले आप. They did so well in the first half, but ZETA, I mean, wow, what a comeback. The adjustments through and through. They played the macro game well. And you've got to love how they are looking today. Will this be even better in the second map? You know, we'll toss this all मैं हाथ धोकर आता हूँ, रुको. as they set us up for what could be more action coming through. ये फेक के और हाथ धोकर We आता had a lot of action on the first map there. I thought we were going to have a Team Secret map 1 win again, this time on ZETA's map pick. But then ZETA started to come back. And there was a moment where there was a Tejo ult, and we're like, oh, okay, Team Secret's got this. But then no,
ZETA keep their stride, keep it steady, and push back against ZETA's comp. Yeah, I mean, I felt like Team Secret had a good approach and a good game plan. Particularly their defense had a lot of depth to it, and it was very difficult for ZETA to work out. But at the end of the day, I think Secret, that is just a failure to close the game on the attacking side. You're up 11-6. The coach has a timeout to get some input. You've been shuffling around the IGL roles and a couple of different people that can have some input, and they still couldn't find a way to break the defensive side of a team that's playing a double duelist comp that doesn't have a terrible lot of util on the comp. Like the Raze offers a lot of util initially, but you know, you've just got the Vice wall over there. You know, I don't find ZETA's comp to be super complex to attack into, and they couldn't find an answer for it. No, a lot of nerves when it comes to closing out the game. Like, I think in theory, everybody understands how you should do it, right? You want to stack up those ultimates, you want to create rounds where it's impossible to lose, essentially, but all it takes is that little bit of nerves to creep in, and you start to think other things, or what's really common is someone tries to be the hero. Somebody tries to go, I'm going to win this game, I'm going to step up, and instead you end भाई ये गर्मी के मौसम में This was Team Secret's game through. पूरा पानी गर्म आ रहा है. Felt like it just went away for them towards the end. 7 rounds in a row for ZETA to clinch this game, and I mean, this shouldn't be happening for Team Secret. You got some big individual performances as well. Oh, for sure. In fact, we were talking about you're admiring Secret's comp change here and how they are shifting things and how ZETA couldn't quite respond to it on the get-go. Yeah, for sure. I mean, they mixed up into the Waylay. Both teams changing comps going into this game of Lotus. So Team Secret, I think, you know, ZETA, anything that they would have prepped going into this, their map pick is going to be pretty irrelevant. And the way that Secret played that defense in particular, a lot of change-ups of setups. I like the way they used the Waylay, and I think we have some replays around it as well to be able to get that rubble control, as well as some of the retake setups that we wanted to highlight as well. I think that their comp had a lot of depth on the defense, and it looked very convincing on the defense, but that attack side, like I said, was just not quite there, unfortunately. Yeah, honestly, in my mind, they should have got more. On that defender side, it was very, very good. We do have some replays that we can go into, I think, and we'll break this down a little bit more. But I really liked what they were doing from the start. I mean, this Waylay idea is lovely, right? You can get on top of rubble, take that first peek, and if you need to get away, you can get away for free. It's very little committed to it, right? You dash up on top of rubble, you've got the refract activated. If the other team does commit utility to be able to push you off the angle, you just refract and you get out of jail free, so to speak, and then you're able to adjust the rotations accordingly. Clues had a phenomenal game, though, it's worth mentioning, but some of these retake setups that Team Secret had were interesting as well. Yeah, I spoke in the pregame about how hard it would be for Jesse Vash to hold these sites, and I think he understood that as well, so he was playing a lot further back. We saw the retakes come in with this Breach Teo style, and it suited them so well. Yeah, for sure. I mean, Clues on the Sova, though, he was phenomenal to watch. He had a lot of impactful rounds, particularly on attack. I felt like he won ZETA most of their attacking side rounds, really, and I think in comparison to his performance in kickoff on this map on a different role, he has been a revelation, really. Looked well in control in terms of how he wanted to play a lot of these rounds. That clutch in particular was phenomenal. Yeah, they won 3 rounds outside of the pistol in the conversion. 2 of those were Clues 4Ks, and the last one was that Clues clutch there, you know. I think he kept them in this game, absolutely. He made that second half comeback possible, otherwise it should have been a 10-2 half. That game could have been incredibly fast. Clues stepped up when it really mattered, and he delivered an MVP performance there for me. Do you think that was the missing piece from ZETA? We were looking at Clues' stats, and like you guys mentioned, he wasn't performing great in kickoff. Even the last match, not so much, and we really, like you said, saw him completely step up here on Lotus. Is this going to be enough for ZETA to... वो बोला ना भाई, वो जो I'm hoping so. 2 राउंड निकाला ना 4K का, 2 राउंड में जो 8 किल किए उसने, वो राउंड इम्पोर्टेंट थे भाई. दोनों क्षेत्र डिफेंस में निकाला, मतलब अपने अटैक पे और टीम सीक्रेट के डिफेंस पे. Probably should have lost this game, and they were trailing a lot of this game. Great resilience to be able to come back, particularly on that defensive side, particularly when some of the rounds got chaotic, like Depp bloody shot himself with a rocket and they still completed the retake. So भाई डेप भाई का तो कुछ अलग ही भाई आज सीन. उनका तो अल्ट चल ही नहीं रहा, एक बंदे को भी नहीं लगा, डैमेज तक नहीं दे रहा, उल्टा खुद को दे दिया लास्ट वाला अल्ट उनको डैमेज. Given that he only played 4 maps, so that's not a lot of a chance to give a showing of yourself to being the MVP here on Lotus and fragging as the IGL. That's already promising, so let's see if he can keep that up.
Oh, for sure. And we are going to be going into Icebox as our second map. I think this would be a very interesting matchup. I'm not entirely surprised that Secret has ended up opting for Icebox. Are you? No, I mean, I don't think so. I think they're one of those teams that, at the end of the day, they've been together for quite a while. They played through the majority of the map pool. In fact, they may have even been active as a team back when Icebox was in the pool. So how annoying is it going to be for them to adapt to that map versus other teams who maybe, as a core, have not played the map together before? I also like the idea that you can surprise. You can surprise your opponents with Icebox. It's week 2. They've not shown their Icebox yet, so if you feel good on it, being able to pick these newer maps that are coming into the pool is very impactful because your opponent can't have anything prepared for you. I do think that kind of worked well for them on map 1. I like the idea of the comp change. It was just getting it over the line that was the problem. So they really have to mentally reset now because that's a kind of tough thing to come back from when you just lost a game that you really should have won. For sure. Well, they definitely have saved at least one map win for... It's got to be this one, or else that's it, Secret. It's going to be a 2-0. But to that point, I'm sure they've obviously prepared something. And like you said, there's nothing in recent memory for ZETA to work off of. So now the question is, how adaptable is ZETA going to be? Because this is something they've struggled with in the past. They had some really good protocol when things are repaired, but then adjusting on the fly. We were talking about this in the green room. Can ZETA do that? I would say the same about Secret as well, where it's like when they show a good level of preparation, either their initial map pick that we've talked about and we talked about in the pre-show, as well as their defense, when they're able to play a comp that the other team hasn't seen and they show a lot of their prep, they look comfortable what they're doing, they look confident in what they're doing. They are a very formidable team, and we just saw that in the last map. It's when they need to be adaptable that things are difficult for them. So I think, again, similar to that Lotus game, because both teams went into that and changed their comp, Icebox is going to be a complete unknown factor for both of these teams just because it's come back into the pool and we haven't seen a recent game on Icebox from either one of these cores, so they're both going to have to adapt to some extent. Yeah, I could definitely see a Waylay coming through again for Team Secret. You know, if they're willing to play it in Lotus, I don't see why they would be so opposed to playing it. आरसीबी जीत गई कल, सीएसके हार गई. आरसीबी with it there. I think आरसीबी ना. I think we're still yet to see it fully fleshed out. Arnav We bhai? spoke about it a little bit in the pre-show, but I like that Secret are attempting it. So I think picking Icebox, it would make sense for them to go with something a little bit more offbeat here. Go with the Waylay. Go with something that's going to catch out ZETA. Steal your map back and reset yourselves mentally. Do you think Jesse Bash is going to stay on a Sentinel then, or is this going to be another triple initiator kind of map? Like everyone gets to be a Jesse today. Triple initiator from Paper X was something, you know, just bombard everything with utility and then you don't have to worry about so many angles. I mean, yeah, I'm not sure. I don't think so. I think you'll probably see him on an init for sure, but especially because it's more of a KJ map when you go into Senti. Although Chamber has seen a fair bit of play lately, to be fair. I think Waylay is like, it makes sense to me on this map because I feel like you don't need, I mean, you've been talking about it a lot, the safety of the jet dash where you can dash into your own cloud burst. I feel like Waylay, there's a lot of double dashes you can do on attack, for example, where you do actually have some ability to be able to get into the site and you don't have to worry about hard committing as much. Well, we are about to find out what they're pulling out for this map of Icebox. ZETA has already won one end. Ooh, Arena. Arena is back. क्या? ZETA, I mean, they're committing to that double duelist. रेना आ गया वापस. Lotus, they are going to have depth and First time in VCT Pacific 2025 Stage 1. on Icebox, but we'll see if they can back themselves well enough. Over on Team First Secret, time. they are sticking with that Waylay on Jeremy. That makes a lot of sense for them, and they're leaning back towards the more meta. Reina, baby! Is a very strong meta. Icebox पे Reina. Against that Reina, if you can get rid of that dismiss and she's in a deep angle, she is in trouble. There isn't a lot of easy escape there. I'm interested to see. अभी देखूंगा मैं Reina कैसे खेला जाता है well. इसमें. I have not seen that much Vice on Icebox, so we'll see how that gets utilized. Oh yeah, I'm very curious to see how ZETA is going to be playing this out. We're going to send this back to our casters to take map 2 away. It's Komodo and Quack. Yeah, thank you very much, Victorian Big Ski. Yes, Depp is our best boy also, but at the same time, I am very curious about this Reina. Yeah, I mean, Reina's always a fun one, the old ranked agent. But look, if anyone can pull it off, we know a couple of the players within Pacific that are the Sharpies, right? That are the ones that we tend to see. I've always been a bit of a fan of Depp, you know, when it comes towards... Make some noise for the Desi boys. 1, 2, 3, 4. अच्छा 5. Ults in the last map. All right, we'll forget them. 50-50 है ZETA का भाई. 5 pistols बताओ. He just has to shoot. Yeah.
No chance that you miss pressing the button that lets you go to Empress. But still, yeah, the Wailing definitely still, you know, a bit of a hot topic as we have Jeremy in a position to refrag. Oh yeah, it does expire, but he's still able to turn around 180. Oh, a second one as well before he finally falls to Sugar Zero. That is a bit of damage and a bit of information for Team Secret. Yeah, 3 versus 3 on the reset at the moment too. भाई XDL को देखो बे पूरा स्क्रीन मॉनिटर के अंदर घुस गया है भाई. But you know, really it'll come down to just the decision making at the moment for ZETA. They can wait for this recon bolt to come back online. Okay. वो खा body लगा. Take a peep. Yeah, just use that as information at the moment as well. 0 point goes on in, finds nobody. So that is going to be some timing for ZETA to actually get in towards the site at the moment. A couple seconds and Clues will have that recon back online. So just waiting for that key piece of utility. Oh, threading the needle, Envy, you sneaky boy. And that's going to be now ZETA continuing to try to creep forward, but once again, क्या angles निकाल रहा है bro. Will deny them safe entry. Sugar Zero though, still moving forward, but unfortunately surrounded by his opponents. 2G will take him down. Team Secret with the pistol. There's some good trades at the end and at the beginning as well. Team Secret, Envy, off to the races yet again. You know, I really think he had a stellar map in the previous one. Just भाई यहाँ पे जेरेमी ने लेकिन खेल दिया अबे. जो दूसरा किल निकला ना वहीं पे. Little off elevated angles for him in this pistol round is good. Now I'm having a look at it and I'm seeing, you know, this agent composition that Team Secret are coming back towards. Yeah, it used to be an old bit of meta. You would substitute the Waylay in for the Jet. I do know that Tyloo are running this exact comp at the moment and they've had some good results on it in its small sample size over in the CN region. League, which is running at a similar time, but also a couple of spams out from Envy, and he is able to walk away with. कैसे मार रहा है? To continue holding out from Kitchen. A headless ZETA now currently walking and running around amok on the B side until Waldor puts down Clues. Yeah, just get that round over and done with pretty much just against the little eco to come there from ZETA, and this is where we're going to start to see what their attacking side is going to be. Yeah, that's gonna be. कैसा मार रहा है भाई? I have yet to find an answer to. एक सेकंड guys, एक छोटा सा काम है वो कर लेता हूँ. Duelist XDL has been providing quite a bit of value from before. I mean, when I think of Icebox and I think of some great changes towards what you're able to do on this map as well, I think elevation, right? Getting players on top of yellow if you're going towards B and you're trying to entry, even getting them on top of green. You can't do that with this composition for ZETA Division, so they're going to be quite flat on the ground. And I wonder how much of a deficit that's actually going to provide. Well, maybe that's where they're going to be expecting Jeremy up on top of these elevated positions instead. But still, yeah, it's definitely going to work against them quite a bit. So, drone out, just a scout. Oh, I've just noticed that the shear wall is going to be popped over at the B side as well. So that's some information for ZETA that they do have to be careful of a flank a little bit later on. But they are into this A site at the moment, seeing no resistance from Team Secret. Oh, well, resistance in the form of utility, Komodo, so yeah, it works. It does buy a bit more time for the rotations to get in. And Team Secret have maintained most of their weapons from the previous round. Okay, but a slight whip on the Dizzy now. Waldario will still be able to regain his aim, and that's going to be Envy to strike back. Depp, however, 4 HP bro. एक 4 HP एक 10 HP. They're low though. Look at them. इनका जेरेमी का देखो. Even Clues, right? They're all tagged up at the moment, and that's what can be a little bit of a problem. Sub 30 seconds to go, and you're contending against some weapons. You know, there are still weapons that Team Secret have to play with here. Don't forget, right? An outlaw from 2GE can just finish you off. Even Jeremy, 2 HP. At least, well, taking the pace a little bit slower than Team Secret expects. That allows for Depp to regain some of his health. A second one in, and that's even more. 10 seconds and the spike. Oh, almost goes down. Okay, Sugar Zero has to quickly pick that back up. Envy still continuing to be a thorn in ZETA's sides. 0 point away, and he confirms that no one's up around yellow. So that is further information. But Depp still on a tear, and that's a quad right now. Online for the ace, but surely you play the safer game. There's a reposition from Envy. Depp is looking at the correct angle here. Envy, your barrel's pretty long. He does sidestep it, but no, that's Depp.
He's sharp as ever, and he's back online in map number 2. 4 HP था वो, 4 HP. 3, 4, Def. He was 4 fucking HP. 4, 1, 2, 3, 4. 4 HP था वो, गिन के 4 HP. Showstoppers, well, those go into walls. Those don't work out. You got an Empress here. Yeah, you need to click some heads. And what has he done? Well, there's 5 kills to come on through. Oh, you gotta love it when Depp is playing this well again. Got to be confident. Absolutely have to be confident. If you're going in for Arena in a composition that's a double duelist comp and it's going to be, you know, quite flat-footed, you have to make sure that your utility and coordination is going to be quite pivotal, right? You need to make sure that you're letting Sugar Zero know when you need walls, when you need assistance. Or even just to go up for these duels. I mean, deep position found, and that's 2GE gone. Jeremy, though, trying to go away with a bit of a stun, but into an open position. It's Clues and the rest of Zeta surrounding the site. Waldor and Envy, though, trying to launch the retake, but unfortunately taken down by further members of Zeta Division. Envy, no joy found as he tries to make a play out from Snow. So it's going to be Zeta moving forward with the lead right now. Yeah, just a quick barrage of duels over at the B site there. Kind of a little bit too quick and unaccounted for, right? Team Secret, 2 members just caught unawares real early in towards the round, and with Zeta finding those kills, you know, they just start to whittle you down little by little. They don't even need to focus on getting a plant in that situation because they're peeking together in numbers, spotting out where Team Secret are coming from by this extra utility that is being thrown their way. So quick change of pace will equalize us up and push Team Secret onto a bit more of an eco for this new round. Again, they want to go for a little bit of this early B control. We've seen the sheer wall be prominent time and time again. But if they do, you know, peek out behind that, well, you actually have a change up this time in Shota just looking at it. Yeah, I've also just noticed it's also the toxic screen from Sugar Zero that does keep some of these Team Secret players invested closer to B. Meanwhile, for this current round, especially with the successes from before, a sure-footed Zeta alongside XDL and Dep puts themselves up closer to 410. Gotta be careful with this Killjoy utility at the moment, though, from Jesse Vash. If you are destroying it, well, job's kind of done at the moment on this little eco buy that comes through for Team Secret. Oh, well, Team Secret trying to get ahead of the spike plant, but it's not going to happen just yet. It's Depp who's gotten 2 big kills, dismisses away, and now a slightly weaker equipped Team Secret trying to retake, but also for Shota on a bit of a lurk. Spots out the first. Jeremy अच्छा मार रहा है. Could be a weapon. Potentially. I mean, do you want to just go at it? You will if you are Team Secret, right? This is just your eco round. Now you've got a Bucky and a Vandal. There is a Sheriff for Convergent 2G2. paths? Yeah, I mean, you could use it if you want to, but still 3 members for Zeta at the end of the day. Yeah, not entirely sure where they could be, so 2G to move forward. And he does spot out at least one. The one that you gotta watch out for, though, really is Depp up by pipes, and he does find 2GE. Takes the rope away, and that's gonna be Sugar Zero finding Jeremy at the end as the spike gets stuck. So a bit more for Zeta as they move. चलेगा, अच्छा ट्राई था, अच्छा ट्राई. जेरेमी ने I will say for Team Secret, लाया था भाई 3v3 में फिर 2v3 भी. These ultimates quack, you know, these are such impactful. देखो वहाँ पे XGL को मारा 1 टैप, फिर ये बैकस्टेप वाले को भी 1 टैप. A lot of them online, so when you're looking in towards your next rifle rounds, they can be quite impactful. And I'm thinking at the moment as well for Zeta, you've been playing with your walls over at B, you've been going in through A, you've had some good mid lurks as well. You gotta tick in all the boxes on how to keep your opponents guessing on a map like Icebox. Everything. And I gotta imagine that's why it calls for Jeremy to once again push up to Nest. That's where he first found his successful round. But nothing found, even with a 0 point from Envy. So yeah, Team Secret immediately back to B. And look how much of a rotation that sends them for. Hey, the turret in mid's not spotting anything at the moment either, so as far as Sugar Zero is concerned, position unchecked. Could cause more mayhem if he takes away that drone or keeps himself hidden. Team Secret trying to dispel the fog of war, but it's heavily working against them right now. Oh, this is cheeky too. Depp with the Leer out, baiting the turret. He's baiting the turret so Sugar Zero can push up the tube. It's so cool. But is it going to even do anything for this round? Because they're losing all their lives. A hinder on towards Clues. They know Sugar Zero as well. 2GE is aware. Nice try, says Team Secret. So alone and cold, Clues alongside Shota, trying to scavenge this round. Salvage this round, I should say. But Team Secret are pretty much stacked up, all close and together. Jeremy
will be able to take away Shota's life, and it's just Clues trying to mark further positions down, maybe work up to a little bit more in terms of economy, but still, that's going to be a quick round for Team Secret, 3-3. Yeah, nearly flawless as well if it wasn't for that last pesky kill to come on through. Better from Team Secret, I will admit, right? This is why I'm thinking, like, you're droning up towards A in the beginning, you're starting to path a little bit forward. I think there was a little bit too much reliance on trying to get Sugar Zero up the tube as well, because you can see that 2G is looking after that. That's why I highlight the idea as well, right? You're leering on out. इसका मुंह ऐसा क्यों है भाई? क्या हो गया है भाई? टट्टी आई है क्या जेरेमी भाई आपको? Doesn't work out. So a new round. जेरेमी भाई का चेहरा ऐसा क्यों कर रहा है जेरेमी भाई? लगता है बहुत जल्दी मैप खत्म करके जाना है जेरेमी भाई, वो टट्टी आई है. That's why you've got the pit really early popped towards the main. A lot of it. Still though, XDL is really close to his kill contract. If he does pick up an outdoor or, you know, a kill somewhere else, might be able to sneak 2G away from his little hidey hole. We have noted Jeremy pushing A quite often as well, right? So you could even use it over there. Early Hunter's Fury, however, at the moment from Clues, it's not getting anybody on the bolts. Maybe a little bit more coverage for the rest of his teammates to make their way up tube at least then. The drone is in another position, but still, look at Wild Oreo. Yeah, but everyone's a bit disconnected at the moment from ZETA as well, right? You're really playing on the fact that someone's going to find an open kill. That's a gun barrel spotted. So Team Secret, an idea that Kitchen might be the play, but again, an adjustment in their turret as well. Huge reads coming out from Team Secret right now, but they have to work against the ISO, and that affords ZETA a bit of a trade. Clues then finds one more coming out from mid, and all that's left for Team Secret to work off of is just 2GE. Maybe a hidden position. Is he able to collect? Finds the first. Oh, but not quite the second. A refract from Jeremy as well, and that pulls even further away. So 1-on-3, Jeremy has to nail more targets if he is to keep his team in this round. The spike goes down for ZETA. Yeah, this is going to be a little bit too difficult for him, a bit far-fetched. So you just got to call it as it is, save the Vandal in towards the next round, and have another crack at it. I mean, the economy is going to permit another buy for Team Secret, so you're not going to be too unhappy about that. You know, at least we're seeing some good contests from Team Secret, right? It's not like it's going to be a 4-0, a 4-1, or 6-0 or anything like that, right? It's a bit backwards and forwards in how the rounds are playing out. It is nice, but, you know, calling back to what the desk was saying, Komodo, I mean, on Team Secret's more prepared maps, on their map picks, they tend to walk away with, you know, the 13-5s, 13-6s. You gotta this remember is not though, that. I'll play devil's advocate here. That's only when they get the first map of the whole series as well. Fair right? enough. It's not if it's the second map in its entirety. A bit of that mental game working against them from the heartbreaking loss in the first one. When you consider how close it was for them to be able to get the win as well, right? Ending over 13-11. Still though, I am thoroughly impressed by ZETA, as are the Japanese fans. Oh, look at that. A lot of passion. Yeah. Because they're working alongside, you know, we mentioned they were a little bit disconnected at the start, but they managed to bring everything back together, especially with the composition. And XDL on the shields. Like, yeah, I mean, look. He tanked the shot. He's tanking shots. He's not doing the shots at the moment. I see that. क्या लग रहा है? Still on a 0. But, hey, look, it's growing pains, right? It's learning. We're not seeing too much ISO come out from him at the moment. We do have, you know, one of the best ISOs that you can learn with, or learn from rather, in the world, in our region. See him a bit later on. Yeah, later on. Still though, at least for now, ZETA working alongside what has worked before. A bit of an early B presence. And then the duo of Clues and XDL to if he goes find their way back into A. The kill contract here, the drone's going to have to spot somebody first, otherwise you're sending into mid, and you're pulling in Jeremy. Oh, that's incredible. Here we go. 1-on-1. He's on the board. XDL cracks the egg and finds his first kill in round number 8. And look how much that's drawn towards this A site. This is a perfect example of a bait play in towards the A site, and you draw out the fish ult. Oh my god, ladies and gents, this is how you sell a fake kill contract and a drone. That's all you need. And with that, Depp into a deep lurk as well, spots out the barrel and tries to play hooky along with a tight angle, gets the kill and dismisses away. Oh, almost just in time, but Indy will be able to strike him in the back. So a 3-on-4 now, if Team Secret can move even further up, trying to make use of the position up on B upper, but still the steel guarded, quickly invested by Shota, keeps Team Secret once again at bay. Although the position was noted by 2GE, XDL with a better gun will be able to strike.
The next one comes up, and it's Envy to find a bit of an exchange, but there it is. It has to be a save, Komodo. Yeah, the Steel Garden caught 2 of them there, so right timing to come out from Shota actually, and that's kind of just the nail in the coffin for the round. 2GE, he falls because he doesn't have the right gun equipped for that duel at the moment, so really, highlight of the round has to be how good of a fake that they have just solved with kind of 2 players, right? You've got the drone going in with your wall at the B side to obfuscate all positions over there as well, for your team to creep up while you're selling this fake over at A. But the fact that you've got an owl drone and a kill contract drawing out the Thrash, I mean, I understand it, right? You want to stop a stampede from coming in towards the site, but you have to immediately just disconnect from that A side to start your attempt at a retake over at B, leaving that powerful ult that can sniff out positions, that can detain your opponents. Really, really well played out from ZETA in that round, and you can tell now that Team Secret need this time to talk about things. Yeah, the desk, you know, all of us, we were honestly quite wondering, right? This Icebox pick, a map that hasn't been played in the longest time ever, could this be, you know, a bit of a pocket pick for Team Secret? Turns out ZETA's got some preparations of their own. I mean, I'm gonna be the guy with devil horns on my head for this one, right? What did we see? And I know it's a different team. Like, I'll put that in there. What did we see last time for Icebox from ZETA? Oh, that's a really long time ago. It is a really long time ago. That's for a reason, Quack. Please give me the answer. Number 1, the map had disappeared for quite a while, right? It was out of the pool. But yeah, it was something like a 13-0. So surely, you know, trying to work on their weaknesses. They have cooked something up, and we were wondering about how this Reyna would look. Yeah, I mean, you can see how so far so good. Yes. I mean, it is bits of layers in that, but it's also how he's kind of lurking in these deep positions where, you know, Team Secret are just not expecting him. Still, though, round after the timeout. Jeremy has really showcased that he loves to use these refracts early in the round, and now he doesn't have a get out of jail free card. Well, still trying to spray away though. He will toss that saturate to keep them at bay, but they continue to. कैसे मार दे रहे ये भाई? It is a rifle round to come through from Team Secret, but with no retract strategy to come through from Jeremy, while Oreo missing the shots as well. I mean, this is going to be pretty difficult for Team Secret. Though, I will admit, there's 2 players quite low on ZETA. True. But unless you're able to find a single kill, the retake is still just not quite happening. And as Envy goes for the wide swing off of Rafters, yeah, this round is as good as gone. Yeah. Bit of save sim for Team Secret, and on the back of a timeout as well, not being able to convert the very next round. That's definitely going to hurt, right? Because generally you would think that on the back of a timeout, right, you've got an idea of what you need to be doing, where your opponent's weaknesses are, where your strengths are. You generally would see like a counter strat be picked, or a really strong play. It felt a little bit haphazard, right? There was so much reliance at the beginning of this round on Jeremy getting a kill and getting out. When the refract expires, he's stuck. He's not getting any assistance from Wild Oreo. This hunt that's on at the end, there's a trade, so there's only 1 gun surviving. Which would severely impact their chances of walking away with a lead in this first half. 6-3 right now is the score. Team Secret are starting out on the defense though, so I can see why the Waylay isn't that effective for them right now. But you surely got to think, like, how can you adjust around this? The early light speeds into A nest just isn't quite working out anymore. I mean, I would even say, right, the double duelist for ZETA, their defense would look a little bit poorer than their attack on Lotus, for example, right? We didn't see that. They had a pretty strong defense, right? Those retakes were looking pretty good. You just theorize it that they're attacking the site instead of trying to defuse, right? They're, quote, planning, so it works. So I don't see a reason why the same mentality here wouldn't apply. I can admire that right now. Round number 10, Jeremy has not quite used the refract or the light speed yet, but it's also a round where they're on quite a bit of a half buy. Jesse Vash, 2G on the rifles. Doing their best to hold out around the B site right now, which is where ZETA has placed down this toxic screen again. But here comes XDL trying to team Jesse Vash away. Jesse Vash will strike back with a Guardian. ZETA, though, still has Death alive and online, and he walks up front, takes away Jesse Vash alongside that kill contract. So back to it. It's ZETA with an advantage in terms of the odds. One day we might get this pit from Sugar Zero. We need it. Maybe one day. And here it is. We've got it. Doesn't give him the spike plant, though. Envy just spams away, takes CLZ away.
3-on-3. And even with that, Team Secret on the slightly weaker weaponry will be able भाई ये एनवी to केओ sort of खेल take रहा है them ना away, केओ but तो still, spike planted, बोलते हैं कि bit बहुत invested. खराब विन रेट Zeta रेशियो continue होता है to hold these positions. Snake bite down, and it allows for Depp to try to sneak through. He doesn't quite get the information that he's looking for. And that's where Team Secret will double up. Envy, alongside Jeremy, will be able to find the kills needed to bring Team Secret to a round back in the game. Well, that's a strong one when you need अच्छा it. That's retake not था even बे on a proper gun round, isn't it? So really well placed out from Team Secret where you need that one. अच्छा It's retake got to था give you enough confidence to try and get back in towards this one. I mean, it really does start off with Jesse Vash, doesn't it? Yeah, he gets that first kill and traded on out, but that's a little bit of a propellant for the rest of the team. Time to be bought, to get in towards this one. And you also got to kind of wonder as well for Zeta, right? Playing a bit more outside of the pit, is that too ill-advised? Not too much. You know, you did have 3 players online, but still, that's just Team Secret. Not fully respecting the utility, but next round coming up. And that's Team Secret once again with Jeremy playing it safe. Holds it the high-low. ओए Swing! Instantly, Wild Oreo decimated. And now Shota comes in to refill Depp's position. They continue to hold these spots, and in with the tags, Clues will fire away with the Hunter's Fury just to allow his teammates safe passage into the site. Yeah, player advantage for Zeta, an open site ready for the planting as well and to set up how they do want it. So it's going to really come down on Team Secret. How does this retake work as well? Are they going to be careful for Sugar Zero on the lurk? Though before the plant even goes down, you're going to relinquish territory of this site and you're going to adjust things. Now this is where Sugar Zero on the lurk can come out pretty clutch. What a mid-round call. The timing of the peaks, though, has to be pristine. चलो वो He तो goes बता for a दिया little bit of it. Does spot out Envy. The shots being traded back, though. Oh, and Depp's दो got his निकाल teammates दिया back. A second kill in the round for Zeta. And once again, it's Team Secret down in the dumps. Sugar Zero's position not quite detected, and as the right time ticks on the clock, Sugar Zero will find the 2 headshots needed to bring Zeta to 7. Yeah, that lurk to come out from him there was pretty damn good, I will say. But more importantly, I think I'm looking ये वाला तो भाई पता नहीं if you do stay towards the safe side. डेप भाई का रेस में नहीं चल रहा था लेकिन रेना में तो कुछ क्या ही चल रहा है भाई Good calling to come out from Zeta, and that's exactly what they do, right? It's just some good mid-round decisioning to reposition. हैवी गेम प्ले हो गई है डेप भाई He's not getting too hungry to overcommit to a fight when not needed. And that's the best thing. Just the way that he sidestepped, got the information that he needed. Still, though, right now at least, Team Secret, last chance in the first half to try to turn things around. And this time you're going to have Jeremy playing on the long line over at this B site. Again, we've not really seen any opportunities for Team Secret to play the distance game with any sort of operator as well, right, for this squad. So they are just having to do it with these rifles. And for Jeremy, at least this time he's not popped his refract too early, but he kind of is a little bit stuck. Yeah, you might consider using the light speed for either some hijinks or just to get away. But if you do get away, then that's more space for Zeta, and that's what he's more concerned about right now. Zeta has been very slippery with how they're approaching these rounds. Good for drone. Nothing quite spotted. Team Secret are looking to peek out. A bit of a flash allows for the mid-peek, and they don't spot anything out. So Zeta could only be either on the A side or B. But there is a bit of a fake onto the A side as well. And that's Jeremy finding 2 kills outside of Garage. Pops the convergent path, but then XDL gets ahead. How are you going to activate clues here? If you're rotating the spike towards the A side, I mean, there are so many different aspects of this round that could just throw भाई ये things कैसे away. मिस किया And there it is! pretty Spike down. That's messy. the round, that's the half. You're not getting this one back. Yep. Spike down. Unless Clues can find all 3 kills in a matter of 10 seconds, which is highly unlikely. It's going to be Team Secret turning this to a 5 and 7. Clues, though, certainly will try not going down without a fight. They gave him a challenge. I mean, Team Secret are not protecting KD here. They want to close that one up. Switching sides. So still, I mean, Zeta maybe starting to overcook a little bit on some of these approaches, but still,
it doesn't look too bad in this first half overall. You know, they found a lot of successful rounds. Team Secret are the ones, you know, trying to punch back against them. Spike down, attacker spawn. Well, 7-5 at the half, so I mean, for Zeta Division, right, you definitely want to see how far forward they could get on their attacking side when you consider that they are on that double duelist, you know, meta, if you want to call it meta. They're 7-5 half. stretch of the meta at the moment, but is it really enough when I consider, again, what we saw over on Lotus, right, with their defensive side still looking pretty prominent, even on the double duelist? I think it's pretty. It's alright. It's mid-round. It's midway. It's not comfortable. It's not bad. I think I'm more a little bit worried about Team Secret, right? Yes. How are they going to look to close out rounds now? How are their post plans going to look when they're trying to protect this spike? Oh my. Was that like a Naruto reference? Well, whatever it is, it's certainly something that Team Secret needs. You know, you voiced your concerns for them, and I have to agree. Because if this second half doesn't go their way, they're looking at continuing forward with their loss streak. Well, Something yeah, that I mean, no team wants to experience. No, and I mean, this is one of those series for both of these teams where, yeah, it's week 2, but with the way that these groups are, right, top 4 get through in towards playoffs for the chance to get to Masters Toronto. You don't want to be in the bottom 2. Yeah. Well, neither team will get relegated. So, I mean, that's the one thing that I can kind of come up with right now. They are at the bottom. So, on their map pick, does Team Secret have an answer? Especially on the attack, you have to imagine they have something, anything. Wait. Shota stuck underneath. He does get a frag, and then for Sugar Zero to trade. That's Wild Oreo gone. Jeremy not quite finding anything either. Spikes on the ground, Komodo. Yeah, Sugar Zero, proficient with the pistols, looking for another, but that doesn't work out. So a 2 versus 4 turn 2 versus 3. There is an opportunity here for Team Secret to get the plant. You got a Nano Swarm for Jesse Vash, which he can either use when he's waltzing around. He could even come back and use it on the spike, but I don't think that's going to be possible for him because he's going to be playing for a little bit of time at the moment, hearing the information to commune over towards 2GE, and they're not looking at him whatsoever, Jesse Vash. Yeah, I like this. He spots 2 of them out to a pop, and he's on for the triple. Nano Swarm just to pop away at XDL's shield, and he's forced to hunt him down, but Jesse Vash already क्या has खेला भाई 2v4 निकाल दिया. Big to come out from him, a 4K. I mean, we've seen a couple of big fragging moments in this series already today, namely, you know, from the likes of Clues, for example, but over on Team Secret's side, you know, 25 plus kills for 2 of their members on the previous map. Those are some of the highlights, but where was Jesse Vash, right? What was he really trying to find when he's playing on towards that Cypher on Lotus? Well, he's getting shut down a lot, right? He's being forced into those retakes. Here, you got to take the onus into your own hands. You got to do something, and for some repositions, for some good shots to come out from him as well. And it's that, you know, even on the Sentinel role, it's something that he is, you know, not a stranger to. Yeah. That said, now with the guns, Team Secret eagerly looking for their next round up. Zeta, however, will put up the green curtain. And one of the differences as well when we're going to see the Killjoy versus the Vices is how you're containing flanks at the moment too, right? What garage control you're looking for at the moment. That's where Depp is pushing towards. And in a round with the pistols back like this, it shouldn't matter too much at the moment. But it certainly could alert you to what could be happening on the next. But right now, at least, a bit more information out from Wild Oreo. We'll be able to spray down at his next opponent. Oh, what is this? Envy! Unfortunate. Does get domed by Sugar Zero. Jesse Vash here to bail out the team. Uncle Jesse continuing to hold the back line. Screens, but with multiple targets, he does get a little bit overwhelmed. 2GE now the only one left. With the Outlaw as well, has to reload. That gives XDL a bit more timing to push up. Goes for the ropes, and 2G has no idea! ZETA turns things around in round number 14. You know, Paper Thin said it best. Sometimes we have the power. It's not going to do too much, we say. These pistol rounds to come through from Zeta, we say. And the shots are being collected whilst भाई यहाँ पे तो Sugar Zero का कैसे लग गया पता नहीं. You say, and you cursed him into the ground on that one. I mean, at the end of the day, you've got to hit your shots. That's what Valorant can sometimes come down to when you omit the abilities, right? And Zeta Division in that round, they hit their shots. It is what it is.
What it is, though, is not. I'm not going to listen to Paper Thin because he's always rooting for the Japanese teams. I kid. But that said, yes, Zeta's definitely looking a lot better right now. And with the confidence found, they're going to move up front. And that's where XDL does get taken out, unfortunately. But CLZ has his team. And that's going to be 2 outlaw shots being fired off. Death, though, caught alone up on 410. Unfortunately, getting taken down. Wild Aura still able to fire some shots back. However, that is just one Vandal being picked up. Yeah, you count a little bit of that utility at the end there as well, so you know that Wild Oreo was still on the site, but by the rotations and where Zeta was looking, they're not sure if 2G was going for any lurks at the moment. So playing to the numbers at the moment are Zeta. You can go for a retake if you want. You know that there was weapons that were able to be picked up. So it is good to see you just falling back onto, you know, what should be in Valorant, one of the big strengths. It is playing to the numbers. Sugar Zero watches the smoke, finds both of them. So yeah, a bit of a good recovery to come through for Zeta. Very much so. Wasn't expecting that peek out from Team Secret, but Sugar Zero quick on the flicks. And yes, why not, right? Work with a safe bet. You have those numbers after all. Yeah. Great shots from Clues, I will say. Very quick with that Outlaw. Definitely a powerful weapon as well when it does come in towards a, well, what should have been a bonus round, but no, you know, one of those good rounds for Zeta to get on the board. Now we finally have our first gun round, and Sugar Zero on the defensive side is one away from the Viper's Pit. If he's able to find that one, that could be a good stalling tactic, or great in a retake if Zeta want to switch over to that. If they have it, especially in some of the upcoming rounds. But this is where I really want to see a lot more coming out from young Jeremy. He is on the waylay. This is the gun round. This is where Team Secret needs to put their foot in the ground. Absolutely. Okay. Get across towards yellow as well. Good flash drive to permit a bit of entry, but how far forward does he want to go? Just a quick spot, an exchange of a single bullet each, refract out of there. And I'm actually also seeing no forward positions from Jesse Vash by himself at the moment because it's only him towards this A site. But likewise, right? He's not seeing anything too far forward from Zeta. It is Zeta to reclaim that space, especially up around even green right now, though. And that's a lot of information. Yeah, 100%. All the information that Zeta do want to get back over towards this A site where they still do have both their Thorns available. They've also got the Arcros. Well, yeah, that's a lot for Zeta. 2GE, though. Okay. Will be alerted because of the drone and his teammate falling right now. So a bit of an exchange, but still the main force is needing to take the site. And that's where Zeta, with the read, with the information, has already filled and flooded everything down in full. Shota, the double kill. Envy stuck and trapped behind this little corner. Oh, the shock darts are coming through, but he hunkers down. A little kill, and that's going to put 2GE in a 1-on-2. Numbers. Spike retrieved. Numbers again. Yeah, it's still going to be a little bit tough, though. He has to stick the plant without the time. And that's going to be now a bit more opportunity for Zeta to sneak and sneak around him. Look at this! Oh my god, 2GE! He just can't find a safe haven at all. He's just playing with his food. That is very rude to come through from Clues at the end there. But no, I got to give props towards Zeta. The way that they reposition towards B main, get the idea that it's going back over towards A. They can start to play with a little bit of the time as well in the scrappy duels that are around the A site. A great timing on the Arcros from Shota here. He gets a double kill on the back of it. Yes, it's a bit of an overheat and loses his life towards Envy, but he's got his teammates that he can rely upon to do some gnarly damage there as well. So that there being the quote-unquote later bonus round because of the flip after the pistol as well is weathered and won by Zeta. And Team Secret, I mean, they're going in for a bit more of a force than you may like in this sort of scenario, but they know the math. Yeah. You know, it is somewhat mid to late, Komodo, but I am starting to get very, very concerned for Team Secret as Jeremy falls right now. 2GE, though, holding the back line, will be able to fire back and punch against XDL. Unfortunately, however, Wingman will not be able to get the spike down. भाई मेरे को लग रहा है GG है Team Secret का. Sneak back into the site, similar to what they've done just previously. Sugar Zero from screens, more players from rafters now. They have everything swarmed, and Jesse Vash, with just a stinger, tries to find a little bit more. He spotted both. Yeah, a little bit of information, but does he have the shots? Zeta is able to play ring around the rosy with this. They're looking for that little tap from Uncle Jesse. 40 seconds to go. Okay. I think it would be so risky if he even contemplated using the lockdown at the moment. He really needs to just play with the time himself and think, where do they reposition? You've cleared the whole site, but they've gone out. The lockdown would force them to rush against him. Exactly.
So he's really clearing everything out. The spike hasn't quite yet been picked up, and ZETA are just still waiting ever so patiently. Swaps for the weapon. He's thinking that they might have rotated, The thing but is, you really got to play your hand here. with a retake as well, it's a dart in. Oh, there's the dart, and instantly he knows where they are coming from. Has to watch for Raptors as well. And further ring around the Rosies. ZETA works together as a duo. A bit of a high-low with the crouch as well. Jesse goes for the huge loop around them, but Clues is already marking the back! And that's ZETA upwards and forwards with double digits. Yeah, a little bit too difficult at the end there. Had it been a 1 versus 1, you know, of course those scenarios we'll never know. Maybe you would be more incentivized to actually drop the lockdown in that sort of scenario. I think 100% Jesse Vash would have done that, but a 1 versus 2, yeah, just a little bit too difficult for him in the back of that one. And remember, that was, you know, the bit more of the half-bar to come on through. Oh, man. So it's not the worst things. You've got some damage on towards ZETA, but I gotta say, right, I look at this scoreboard and I have a flashback to an hour or so ago, right? When we had such a stretch in front from Team Secret. When they hit 11, right? We saw 7 rounds in a row for ZETA to close out the map, 13-11. Where are we, Quack? क्या लग रहा है? It's the scoreline. 11-6. Comeback आएगा? Looking for that from Team Secret. I don't know if it's there. Surely the timeout invested, but well, that क्या लग रहा है कि टाइम आउट आएगा? bear them in. टाइम आउट बोल रहा हूँ. Comeback आएगा? We have a lot of online alts online right now. Yes. A lot of them. Yeah, we could definitely just have one of those big old Valorant rounds come forward as well right now. But yeah, I think my questions at the moment that I had for the beginning of this map have sort of started to be answered on how Depth was going to look on towards the Reyna, on how XDL is going to continue on towards this ISO as well, what strengths we're going to see there. And conversely as well, for Team Secret, you know, Jeremy on the Waylay, right? With this coming on back, how is Team Secret going to look? Because when you have a Jet in the mix substituted for the Waylay, right, you're trying to still, you know, create space for your team, get set up by the flash drives. It's the same sort of principles that they are doing at the moment, but we're not really seeing ZETA Division give any jewels at the moment over towards Jeremy to be able to capitalize in getting a kill, getting out. The positions that they've been playing so far have been quite defensive, and now ZETA पे 4 अल्ट है बे. 5 पे भी 1 चाहिए और अब. Push out a garage. It's gonna be, you know, dark days for Team Secret ahead of him, unless 2GE is able to snuff something out. And at the same time, for Jeremy, once again, you know, I am reminded of what Big Time has been talking about, the need to support the Waylay right here. But, okay, a little bit of information, but unfortunately, it's just a one-on-one trade. Yeah, but look at the wrap potential to come through from ZETA at the moment. It's got to have to be go time for Team Secret. They recognize that they have to hold W. Does Jesse have anything, though? That's the question. He's able to find the first, needs a little bit more. Null Command being popped as well, and it does allow for Team Secret to get the spike down early and quick. Jesse Vash quickly coming back to regroup with the rest of his team. Hunter's Fury in for clues if they do need it. Remember, he is playing towards the boiler. Well, all them stuck up together, but Soda! What is that? The full mat dump into every player from Team Secret. That's a massacre. That is absolutely a massacre. You're looking at that flank to come out from ZETA, and you're noting that Sugar Zero was spotted out there by Jesse Vash as well. But I guess in this world, Team Secret weren't expecting a 3rd player to come through from the wrap. I'm thinking here, I'm sitting here like, oh yeah, Clues is going to be able to use a Hunter's Fury to try and find some more time for them to get a wrap. Maybe Jesse Vash is going to drop a lockdown. You could counter it with that. But no, let's just have our 3rd member just surprise Map point हो गया 2-0. Right? Yeah, I was thinking for Shoda to maybe 2-0 भाई 2-0. you know, his teammates if anything, but I mean, the fact that Sugar Zero plays it on the belt, right? I look at that replay, all 4 members look to the belt. No one's even thinking that that's going to be possible. That's a feels bad moment, but we are where we are, and it is map point for ZETA. Bit of a spam as well, just in case Jeremy might have dashed on over to Nest, but he's nowhere to be found. It's going to be over to the B site. Yeah, clear all the closer positions that ZETA have been quite proficient in finding, not gonna lie. Doing it together in numbers. Oh my god, ZETA still has 5 ultimates online. Yeah, that's, I mean, if you want to get back into a round like this, number one, you don't want to be up against, well, probably any ults. You want all of your weaponry. You don't really have that either. I mean, Jeremy,
Could layer in Convergent Pass, you can get a lockdown in there. You currently don't see anyone at the A site, but ZETA are 100% happy enough to play for a retake in this scenario. Oh, so much so. Now the question is Team Secret able to recognize this fact? Are they able to get ahead of some of these possible retakes coming through? Pit up and Wingman for the spike. Here we go. You're going to get in the Gulag, and then it's going to be a scrap. All right, let's see how the scrap goes. At least clues, though, we'll be able to find a little bit more. And XDL instantly deleting Jeremy as well. Duelist for Duelist. And all that's left are the 3 players on the other side. Steel Garden for a little bit more space. And, okay, we got a couple of primaries jammed, but where is Uncle Jesse heading? He is up by belt, and he's looking for a little bit more positioning in towards the spike. Maybe a couple of sprays. Oh, but look at Sugar Zero sneaking from right underneath. 2GE strikes one down. Jesse Bash for a little bit more. But still, the spike is getting stuck, and Jesse Bash has to swap over to the side, hops over, and gets the right click into clues. What a round for Team Secret. They hold on. कैसे निकल गया ये राउंड? Well, I guess except the, you know, the converted pass, but Jeremy was already gone. Wow, they managed to hold that one on. I'm thinking to myself, when the lockdown's in, there's no mollies going over to that safe corner under rafters that you sometimes see these teams come up with as well, because that's where you're expecting the players to be. बेचारा स्यूटा बहुत अच्छा ट्राई किया बे. Stuck in towards the lockdown, but a couple of cheeky right clicks at the end of that one, and it's been a while between drinks. I won't lie, Team Secret had been on 6 since the start of this half with that pistol, but I mean, is this where the comeback starts? You gotta start to wonder. It has to be now. It really has to. भाई 5 अल्टीमेट थे भाई 5 अल्टीमेट. But at the same time, the approaches have been a little bit stale now. We're back into it, and you know, a bit of reliance with Jeremy. 2G on towards the back though, watching the flanks. Oh, but Depp instantly deletes 2G with a heads-up duel. Jeremy finds an answer against clues as well. Yep, Convergent Pass to provide an answer in, clearing some space, getting an opening kill. Little Wingman in for the plant as well, and we're in another scenario where it's a post-plant now. Without the ultimates this time. So just a clear approach from ZETA. Screens as well as rafters. XDL to begin things, especially with the double tap shield, but Jeremy now finding his shots. Sneaky little wall bang against XDL as he moves up front. But still, the Viper's Pit now coming up from Sugar Zero. Is this his time? Is this when ZETA closes out the map? Envy in for the spray. Looking to bring something back in, but Depp suddenly springs forward. भाई वो स्टिक कर रहा है. Spraying out, a couple of taps in from Jesse. Wall Oreo, he's got them sandwiched in. कैसे राउंड निकल रहा है ये सब? Alrighty, well, Team भाई Secret, कैसे राउंड निकल रहा है ये सब Jeremy, ब्रो? pushed up against the wall when it is at the nth hour. He starts to get a little bit more activated in towards this one. Again, I just can't help but consider, you know, what if these couple of rounds that are starting to come through were just one round earlier, right? You'd have that lifeline of not seeing map point just yet, or rather series point at the moment over towards ZETA Division. Sometimes that's just one of those things that you really need. Time out. एक राउंड जीतना है बे, बस एक राउंड. Side of ZETA, I don't mind it as well, right? They were still holding on to both of them, so yeah, you're forced to do it right now, early on as well, right? Yeah. Splash of cold water. Well, they could potentially use the next one, you know, in 2 rounds' time, just before you get into it. You know, if this map is still continuing on. We shall see. Right now, sometimes, you know, you're just thinking of needing Jeremy to be that ace player, that star player, to really find some of these opening frags for the team. He's finally able to get a little bit more of that. But with that, you know, a bit of conditioning into the A site now, will they push the button, call for a bit more of a complex strategy? Yeah, I mean, we've seen, you know, a lot of pushes up through mid or through B from ZETA, right? We've already seen these early lurk potential engagements be winning some opening duels. And we have seen Team Secret looking after them, but still losing them, right? And then still recovering the rounds in the previous 2. So this time, no real potential pushes to come out from ZETA. But it is all in all for Team Secret a bit of a B look at the moment. You're still leaving Jesse Bash to lurk over towards A. And here I'm just kind of looking for Team Secret to hold a lot of this utility, right? Wait to hold that for the proper execute. Just use your refreshables at the moment. That's kind of what they've been doing over towards this B-long side of things. At least with a slower pace this time, but a sudden quick burst.
So collecting utility and keeping themselves into closer and tighter positions, and then refracting out though. Once again, the refract does take a bit of time, and that's when ZETA reclaims space around yellow. Could there be a peek? No, there's no flashes for ZETA to be able to set them up for any sort of aggressive peak at the moment. So they, if they want to, have to do it a little bit dry and contact D, and that is not going to work out for them whatsoever. Yeah, that was full dry. I thought that Depp might have come up close to set up a bit of an eye, if anything, but nope. It's just going to be Team Secret with a firing squad in full. And that gives them the spike plant as well, but okay, Clues taking down the lurker. Now allows for him to get a little bit closer to the site. If he is able to find, a single kill, then this might be a little bit better, but XDL quickly in with the contingent shield will be deleted. Just a little bit more information for Team Secret to work with. And Clues thinking to save. Oh. Shot. All right. Any more of them, mate? Nah, I don't think so. Nah. Call that one. Got the Vandal. Take the gun into the next round, that's it. If you even possibly can. And then for Envy to begin the hunt. There we go, a 9th for Team Secret. So guns robbed. They go patient mode, right? And I really like that. We saw some weaknesses, as we mentioned, for ZETA, where they get a little bit hesitant to do anything around the map if they just rest on their own. And they kind of falter time and time again, right? So that kind of also is a double-edged sword. If your opponents know that you are weak to just standing still, and you have भाई गर्मी लग रही है बहुत आज गर्मी है भाई हेवी गर्मी है yourself with your bodies that this comp, doesn't really have a good strength in finding anything besides clues on the Sova, for example. Team Secret play patient, and it works out a treat. It's a really good idea for them to hold on this map. But now is going to be one of those big challenges, Quack. Now it's another rifle round. It's a round where ZETA are pushing up into A huge collision. But XDL has not been spotted this close to Jeremy Vash. Look under him. Sorry, Jesse Vash look under him. Jeremy was already dead. The answer's no, by the way, in the eventual exchanges. 3 versus 3. But with an exchange like this, it also kind of did he spot the feet? Starves ZETA of information. That's why they're starting to bunch up together to look for a little bit more right now. Maybe with a slight spot as well. Okay, that's one of those. Is Sugar Zero stuck in the wall, or? It's a very rare occurrence. We saw it once, I think last week, but at the same time right now, just for ZETA to try to get a read across the map. They're still thinking, could they have crossed over to B? So you've spotted out Shota in mid, going back over towards orange. You know that there's going to be at least a single member of defense minimum. But that's information for ZETA to rotate everything back over to this B site. Wingman in, and you do have Thrash for the denial here as well. Okay. So we'll see how the Thrash gets piloted. No plan. Instantly dealt with by Shota. So yeah, no plan. 15 seconds left. Team Secret has to go. Wildario trying to find safer passage, especially that mosh pit. But Shockdog gets sent through as well. Thankfully, he's got his teammates covering a 6. And all that's left now is Clues all the way up from Snow, trying to spray and tap down. Same exact scenario from the round before. Still trying to clear around the corners. He's not out of this fight. But with so many targets, at least deals and isolates the first. But look at the next one. They're all stacked up. Has to go in for it quick. But 2GE denies any chance of that happening. Team Secret slowly but surely coming back. Yeah, a matter of mere moments that this map could have been over on in just around when that plant starts to go down, right? 3 versus 3. You get a shock dart that goes in there from Clues as well, but they just can't quite finish off while the Oreo going for the plants. The difference would have been, but it's not, right? Team Secret have to be counting their lucky stars just a little bit that works out for them to still hold on. You reset ZETA yet again in towards this new round where you've got the 1-1-3 set up on this defensive side. 0 point, not spotting anything around pipes either. ये राउंड गया तो गया. ZETA are starting to switch up their stance a little bit. Yeah. XDL at the bottom of pipes.
I'm looking towards these ults actually for the next round, Clack. And Kill contract possible. Empress for Depp. We saw how sharp he's been. No command for Envy though. Yeah, that's going to be an important one if Team Secret timed that one right. Especially at this point, we're so close to a potential overtime. Team Secret, all the Filipino faithfuls are hoping, their fingers crossed for this one. And the team just setting themselves up for an execute towards the A site right now. Got to give themselves enough time as well, so we're in towards it. But Depp, ZETA. I said how sharp he can be. And he's getting sharper every round. Now command is in too, by the way. Well, that just keeps those abilities suppressed. ZETA are still in sight, Komodo. There's 4 of them on the site. Those guns, those crosshairs are trained down to these very angles, and there's the first Envy for the trade. And he's looking for a little bit more, has to push it further up front. 2GE going into Flood alongside his teammate, fallen teammate. Hunter's Fury now tracks onto 2GE, but that's where Jesse Vest strikes. 20 seconds. Is it gonna be enough? You still gotta get the spike down. And 2GE trails back. Oh, he ran Shot into goes it. through, half HP. There's gonna be a little bit more. Sheriff's firing away, and ZETA looking for an opportunity to sneak up. Close in for the first, Soda for the next, and ZETA closes out the map. Final score 13-10. I'm talking about these ultimates for the next round, and I'm कमबैक की थी 4 राउंड ली थी उसके बाद तो there is no next round. We know how sharp these guys on ZETA Division can be. The Sheriffs get the job done. heavy gaming हो गई, heavy gaming. Once again, for Secret, it gets away from them. They don't give themselves enough air to breathe. Yeah, especially out from the first half on their own map pick, no less. It was definitely something that stings. This will leave a mark, but still, you gotta admire some of the effort, some of the changes to the composition with how they're playing. Jesse Vash on the lurks, he's found quite a few. Jeremy on the waylay though, that leaves a little bit wanting. Yeah, I mean, Waylay's been an interesting one with this agent coming in at the moment, right? We've not really seen too many stellar Waylays at the moment, so maybe Waylay isn't the way. Maybe it is just a little bit better to be playing on these Breach Tejos or double duelisting in, because, I mean, even on the defensive side, right, where you think double duelists are a little bit weaker, ZETA Division, right? They are shooting out with all of these weapons. Double duelists is looking great for them, and I think there's going to be a lot to learn as well for XDL specifically, bringing out the ISO, but yeah, I think it did all right. Yeah, that's the main thing. It's the fact that ZETA have done some of their prep work as well. They've brought up the reads against Team Secret. That's all from us. We're going to toss it over to the beautiful Bella with the interview up against ZETA. 네, 오늘 제타 디비전의 클루즈 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 헬로 클루즈. 인터뷰. sorry. 안녕하세요. 자, 안녕하세요. 여기 서주시면 되고요. 소연님 여기 서주시면 됩니다. Hi guys, it's Bella for the post-match interview. I'm with ZETA Division's Clues and our translator Toyo. 박수 부탁드리겠습니다. This was a much-needed win for ZETA, and Shota mentioned in the pre-show that they will crush today's game, and crush they did. Clues, you played spectacular, fantastic today. So how satisfied are you with today's win? 오늘 쇼타 선수가 프리쇼에서 우리 한번 혼줄 내주겠다라고 이야기를 했었는데 클루즈 선수가 대활약을 해줬어요. 오늘 승리에 얼마나 만족하고 있는지부터 한번 직접 듣고 싶습니다. まず勝利おめでとうございます。試合前のインタビューで翔太選手が、TS に向けてかかってこいよと一言言って、かなり大活躍したのですけど、今の意気込みをお聞かせてください。はい、本当に僕らまだ一勝もできてなかったんで、とりあえず勝ちきれて本当にホッとしてます。 우리가 아직 1승도 못 해갖고 엄청 좀 무서웠는데, 근데 이렇게 이겨서 많이 기쁩니다. Yeah, we hadn't had a win in so long, so I'm extremely satisfied and happy with today's win, which I was meaning to ask about this. This is the win that wiped the 264-day streak, so how it must feel liberating in a way to get those shackles off and to get the pressure off. 안 그래도 이제 쇼타 선수가 이야기를 해주셨었던 것처럼 쇼타 선수래.
클루즈 선수가 이야기해주신 것처럼 264일 만에 승리거든요. 그래서 조금은 이 해방된 것 같은 느낌일 텐데 그동안 부담감에 대해서도 한번 좀 물어보고 싶어요. 実は264日目ぶりの勝利となっているんですけども、ちょっとほっとした、気持ちもあるとは思います。今どういったお気持ちなのか実際。いや本当にほっとしたっていう感想ですね。 진짜로 안심을 했다라고. I was really relieved that we were able to wipe that slate clean, and the Lotus turnaround, and also the sealing the deal on Icebox as well. I want to know more about what you guys talked about so that you could bring the energy and the momentum over to your side, because I feel like that was what actually did the trick for you to close out today's match. 오늘 로터스 역전도 그렇고 아이스박스에서도 좀 이야기를 되게 많이 나누면서 분위기를 제타 쪽으로 확실하게 갖고 올 수 있었던 것 같은데 어떤 이야기 아니면 어떤 뭔가 그 자세나 태도를 이렇게 같이 나누면서 이렇게 오늘 승리를 확정을 지었을까요? ロータス、アイスボックスともに2勝で、たくさん選手同士話しているような姿が見えたんですけども、どういった内容の話をしたのか。なんか前と違って僕だけが意見出すんじゃなくて、全員が喋るようになったんですけど、対戦相手がこういうことをしてくるからこれに対してこれカウンターしようねみたいなのを全員からなんか、もうアイデアを出しまくるっていうのをやってました。 네, 킥오프 때는 기본적으로 클루즈가 주로 이런 작전을 하자라는 얘기를 했었는데 이제 스테이지 1부터는 이제 모든 선수가 말을 많이 해서 거기서 좀 아이디어가 많이 나와서 이렇게 이길 수 있게 됐습니다. During the kickoff, it was mainly Clues that came up with the IGLing, dealing with all the pressure by himself. But starting with stage 1, everyone's chipping in, giving their 10 cents, and I think that's what did the trick and brought the team's victory today. 오메데토 고자이마스, Clues. Congratulations to Zeta, and thank you Toyo for joining us. And this is it for the interview. ありがとうございました。 बहुत अच्छा खेल ली ZETA. About damn time, Zeta Division finally gets a match win in a 2-0 fashion, closing it out on Icebox here with a brand new comp, brand new look. Zotac said this in past interview in the content that they changed their playstyle, and it looks like they did. Yeah, exactly. This is what we wanted to see before, right? If you're going to say you're going to be aggressive, you're going to be in your opponent's face, rely on your individual skill. I actually said last time, give me a Reina, and they did. So I'm happy. And I felt like Depp was free on this map. He had a lot of freedom to be able to do what he wanted to do. Yeah. I feel like they played this double duelist really well. Nice to see them embracing this different style. I think there's more ceiling there. Like, I didn't even really feel like XDL delivered that much in terms of fragging impact on the ISO. And I think, look, even T1, what we've seen from a lot of their ISO comps is that even, I mean, obviously their ISO frags is Meteor, but even when you don't frag, there's still a lot of utility around the Asian, and structure-wise, although it's a more straightforward and straight-up approach, it has a lot of merits. So, end of the day, look, I think it's good to see a different gear from them. I totally agree. I think having someone like Depp in your team, the way that he was popping off early in that game, gave them so much momentum and gave them kind of the round lead that they needed to be able to, front run this game and bring it to the finish line. Yeah, things got a little bit dicey towards the end. Was worried it was, could have been a similar story to map 1, but on the reverse. But they show up on that eco round. I think it goes to show the power of being able to click on the heads, right? You don't need all the complex, fancy utility and fancy combos if you shoot your opponents in the head. And that's what they did. They win the game. Depp there, topping the leaderboards, which is exactly what you want to see if you're going to be playing Reina. You have to be getting value from the kills, and he did exactly that. I miss seeing that. Depp, yes, he has been on the top of the leaderboard for his team, but this is impact kills. This is 8 first kills. 8 first kills on the Reina. Yeah. Like, we've seen a lot of not impactful Reinas on Icebox. I've seen plenty of them, and if you're gonna pick it, you got to play with confidence. You saw a lot of that impact, particularly on the attacking side. I think on the defensive side, it's a little played out at the end of the day. Like, when you're a team like Team Secret and you're playing against ISO Reina, you just sit and expect aggression, and they play quite a slow, execute-heavy style. They use their double init util well. Well, Jesse Bash remains on the Sentinel now, but I want to know what were some of the key moments for you gentlemen during this match.
Yeah, so I think this was an interesting play, and this is what I talk about when I'm talking about a very straight up approach. Like ZETA, they're trying to go for the double mid lurk with the A play, and it was an interesting approach. A little bit hit or miss at times, and this was a round that went absolutely poorly for them. They tried to flash the turret on middle and get this A split and the double lurk through mid going, and no one was able to find any impact. And I think that was a good example of Team Secret playing anti-contact well, but for the most part they didn't. Yeah, I mean, I like the idea. It's about excelling in your individuals, and he got that free fight. But Depp, here we see him. I feel like he was a monster this whole game, especially in that first half. I think he actually understood Reyna very well as well. You know, he's playing all these off angles. He's taking these nice timings. This ace is only possible on Reyna because he gets the heal up and he would have died there. But no, he's playing Reyna, the perfect agent for exactly what he wants to be doing there. You know, take that to your ranked games. Worth mentioning as well, I mean, this was a round that you wanted to highlight in terms of just the ability of both duelists to be able to trade each other, but I was wondering, is the overheal fixed? Because if he's just picked a nerfed agent into a specific, that's what aura means. To literally pick an agent that is not working optimally and say, I'm just going to shoot you in the head and make it work anay. Yeah, I don't know if it's fixed or not, but I think it is fixed. Okay, then that's fine, But still, he's played it well regardless. For sure. Yeah, I think for Team Secret, that's going to be a tough one to swallow, though. That is a must-win game for both of these teams, and now they're going to be 0-2 in the round robin and plenty of tough teams for them to play ahead. I felt like it was also tough for them mentally after that map one. I don't think they were fully in this game towards the end where they started to kind of make that comeback, so I think map one got to them a little bit too much, in my mind at least, but we don't know. One player I want to highlight is our match MVP, and I didn't think this would have been our match MVP, you know, at the start of today. Yeah. This is a completely, you know, this surprised a lot of us, his performance. He played great. Shout out Clues, man. I mean, in map one especially, he was absolutely dominant. We spoke about it between these maps, but I feel like he won his team that map one by keeping them alive in that first half, and he had a really solid performance heading into this second map. I feel like he was consistent the whole way through today, putting up numbers, leading from the front in terms of this IGLing, and I just really like the direction he's taking the team. I totally agree. Quite frankly, in kickoff, when he was on that flash init role and the flex role, he had very little impact for me, particularly fragging-wise. He might have been one of the weakest players in the tournament, if not the weakest. So to see him MVP and play two really, really good maps in an important series for ZETA to win is very promising for ZETA's future in the rest of Stage 1. Oh yeah, I think last week when we saw their performance against T1, they lost 2-1, but there was a lot of promise for them, but we weren't really sure, you know, how much potential there was. So this, I think, is a lot more promising for us. We're liking what we're seeing from ZETA Division here. Yeah. But with that, we are going to have to see them again next week. And after this, we're going to go on a short break. When we come back, we're going to see Battle of the Reds. We're going to have T1 versus Nongshim Red Forest, guys. So don't go too far away. टेंस का नया माउस देखो गाइस, ये वाला टेंस वाला पल्सर के साथ जो कोलैबोरेशन में निकाला है वो। देख रहे हो? Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Red Bull gives you wings. Welcome back to VCT Pacific Stage 1. This is the first day of week 2, and we are going to see Battle of the Reds, T1 versus Nongshim Red Force. Now, we got a first look at T1 Freshman Masters last week with Meteor getting kill number 2,000, and Sylvan looking more comfortable as more time goes on with this team. Yeah, it was a good debut from them. You know, we did see ZETA push them, but they did manage to come out on top. That's the most important thing. Coming fresh off that Masters win, they're looking to carry that momentum as far through this stage 1 as they possibly can. And I think they certainly started strong last week, Persky. Yeah, did they though? I don't know. Strong enough. Strong enough to beat ZETA, but they looked a little like sleepy, I felt like. Like, I can't believe they lost that split game against ZETA, to be honest. Although ZETA did play well, I felt like T1 was kind of letting that one slip through their fingers, to be honest. What I am really impressed with, and I think for me, Meteor is really coming into form throughout Masters and now into this stage. I think, like I said before, for me in kickoff, he wasn't all that impressive. I think now T1 is an even more scarier team because I feel like they have even more firepower than before, and they've really started to find this identity for themselves. Yeah, I think that's exactly right. And you know what? They probably were sleepy last week. They had so much to do since Bangkok. There wasn't a lot of time there, but they have surely recovered since. They're going to be playing against Nongshim. Nongshim, they were playing against RyuK last week. We're like, are we going to get another really, really long series? It ended up being kind of long. They did end up winning it out. And Danby, for the very first time, winning on an agent that isn't Neon. Yeah, he did. I mean, I feel like his team kind of carried him kicking and screaming through that one in a lot of ways. I mean, if I was to summarize that one for RRQ, it would be like
them riding the bike. You know that meme of the guy riding the bike and he sticks a stick in the wheel and he goes, effing Nongshim? Like, that's how I felt about that series. Like, RyuK really kind of fell apart there. And for Nongshim, the thing that won them the game was definitely not the Waylay guys. Let's be honest. It was these very stable, consistent mid-round gamers like Persia, Francis, Ivy. These guys were dragging them through, kicking and screaming through a lot of these mid to late round situations, but it still was not a pretty game from Nongshim. They were just good enough to scrape it through defensive side of Split in particular, and then Pearl was where they looked a little bit better, but even that was really touch and go for me. I think we have to say the defender side Split was good. Oh, They didn't drop around, you know. I do think they showed potential. Don't get me wrong, I think RyuK lost that game as much as Nongshim won it. But I do think, you know, they still had to overcome some hurdles. They still had to get there. So credit to them. Well, one thing both of these teams really like are overtimes and long series. T1 has gone full distance, full series every single match, at least for the last 11 consecutive matches. And Nongshim, on the other hand, love also full best of threes, best of fives, and they love overtimes. I don't know how long we're going to be going on today, but surely one of these two teams has got to stop the trend. Yeah, I mean, I brought a sleeping bag. I've got a pillow here, so I'm all good. This can go on as long as it needs to. I'll let these two teams scrap it out as far as I'm concerned. I mean, that's how you know it's going to be a good game. Oh, yes. And with these two players, Meteor and Persia, you know it's going to be a good game with these two. Whether it's just two games or 3 games, I love watching these two. Oh, for sure. These are two of the kind of stable anchoring players here in Pacific. These Korean players that are going to close you out the late round. They're going to lock you down sites on defense. Even though it might be a controller and a sentinel player, you'll see them game plan wise be put in a lot of the mid to late round situations on attack, or given a lot of onus to be locking down sites on defense, or even making some individual decisions such as pushing in the mid round on defense to be able to find information and making a lot of important reads and info plays. Yeah, I think this is a really nice head-to-head, and I also think it really highlights the strength of Persia. You know, we think of Meteor as being the very top of this region, you know, the 2-time champ. But Persia's right there neck to neck with him in stats. He's leading from the front, you know, he's that kind of, the sort of older, wiser member of Nongshim, we can say. So, you know, it's great to see him still putting up numbers and be able to excel. And for me, I feel like he won that series for Nongshim against RyuK. Like, I think in kickoff, he wasn't the same level as he showed in Ascension, but particularly in towards this stage, Persia has been better and better. Now, T1, they came from Bangkok, and we didn't expect them to change too much in terms of comps on the maps currently played, but we do have 2 maps back in the pool, Icebox and Ascent. Do you think this is something that we should be expecting from T1? We obviously haven't seen either yet. We haven't seen anything too crazy yet, but now there's been a little bit more time. Yeah, so it was, if I'm remembering this correctly, they banned out Ascent in their previous game, and Icebox was banned out against them. So we haven't got a chance to see them on these new maps, and I think that will have worked nicely for them, having that quick turnaround from Masters. But now they've had an extra week, you know, you've had an extra, 6 days of practice, 5 days of practice. That is enough time to get the bare bones of a map together. If you want to pull out a surprise here, T1 will definitely be able to do that, but it's about, you know, there's an opportunity cost to it, right? If you want to surprise the team, then it's not going to be as in-depth. So I'm curious to see which way this map draft is going to go for them. I think it's going to be easy as well for T1 to mix those kind of things in for 2 reasons. Number one, they have a pretty straightforward style anyway. A lot of the times you kind of know what T1 is going to do, but you can't stop it. Secondly, I would say like the long-established chemistry and the veterancy of the players. Like you've got Stacks and Buzz that have been playing together for so long. You're going to have the Init setting up the duelist, and they used to have been played Ascent and Icebox together in the past. You can leave Meteor to his own devices and just let him play that Senti role on defense or lurk on attack and things like that. So I feel like the pieces are already there to be able to play these maps in the first place. It's just about how simple they want the approach to be, or whether they're even kind of playing their main comp or main approach in terms of strategy, or whether they're just going to throw, you know, something simple at it and see if that's going to be good enough to win. Well, we are going to be getting the map draft now, and Lotus is banned off the rip here. And No Haven, what is T1 going to start with? Icebox. It'll be an Icebox. So as you gentlemen were saying, you know, element of surprise, less time to prepare it, but this will surely be something advantageous for the team. Yeah, I think, to be honest, they'll be quite happy that they didn't show their Icebox last week. I say it was banned out against them, so they managed to
kind of save it. Ascent for this ban round होगा. two, where arguably you have a tough Fracture opponent, ban so किए. if you can catch somebody off down the line later, it's always good. Ascent is the third as well. I'm feeling quite nervous for Oh, Nongshim. okay, okay. This is gonna be interesting. There's a lot to break down now, but I do want to talk about our predictions and a bit about. Oh man, Split. I'm not surprised Nongshim picked Split either, seeing how this was the only map that T1's dropped. I mean, it's obviously only one Not match. surprised. Yeah, we saw their defense. It looked rock solid against RyuK. I mean, I can see why you would want to play. Yeah. Their attack looked terrible though. Their attack the last two times they've played Split has looked terrible. They've had time Against though. Talon in They've kickoff. also had 1 week to work on it. Yeah, you can fix those kind of mistakes. I think they had a good foundation on that map. I like the deadlock that they were running, so I want to see them. I want to see them stick with that. I think there's more Okay. to that. With that said, let's talk about the predictions. I mean, Pelski's mood is sort of guiding this. Yes, it's a full T1 flush. The Korean casters as well, full T1 flush. But there is one man who believes in Nongshim. He's watch partying right now. He's the only man who's predicted for Nongshim Ramen. But even then, we did speak to him, and he's like cheering right now. And I'm just gonna call it out. He said 40 to 45% chance that Nongshim wins. So technically, he thinks Nongshim is not gonna win. Yeah, that's not tracking. I'm trying to math those maths, trying to number those numbers. That doesn't make sense in my head. Right. Wait, is he on Nongshim as an org or something like that? Doesn't he get paid by those guys? Like, Yeah, the extra 5% is the bias there to push him into the think there's a couple of- Nongshim train. The way I see this, right, I went for T1, we all went for T1, but I don't think that this is going to be a crazy one-sided game. Like, I wouldn't have been shocked to see more people predict for Nongshim. I do think they have an opportunity to upset here. This isn't the kind of clean sweep our predictions might suggest it to be. It's just hard to go against T1 right now. I think that's what all of us would think. I mean, yes, absolutely. They're the Masters Bangkok champions, fresh from Bangkok. So, of course, we're going to pick T1. And I think Chopra was right. It's about a 40% chance that Nongshim could win this. So, with that, we're just going to have to wait and see. Let's send it down to the stage. T1 versus NS. ...2025 VCT Pacific, Stage 1. Rise Pacific. T1. This is a match Pacific has been excited about. The players themselves have expressed that it's going to be an intense match between these two. But gamers, Valoranters, I know a lot of you guys own the T1 bundle, especially after their win. I've seen it on the servers. But I think we've all heard, we're finally getting the Ascension bundles according to Jake Shin. So, Nongshim bundles, anyone? You guys, like, what are they gonna look like? Have little noodles on it? Yeah, I hope they work noodles in there somehow. Like one of the color palettes. I'm not sure how creative they can be this year, but if the classic doesn't right-click noodles out of it, I'm not buying it. That's as But far would as you I'm want it to concerned. have like soggy noodles or like the dry form before it's cooked? Soggy noodles for sure. Like, you know the right click, right? Yeah, you know, yeah. the traces are just noodles. That I would can be see it. absolutely goated.
I mean, this match is super exciting for me because this is the new wave of Korean players playing against some of the vets that have had a lot of experience and will have inspired a lot of these players on the come up. So it's almost like a moment to play against your heroes, really. Nongshim have not taken on T1 yet. Yeah, we know from Nongshim as well. They spoke a lot last year in Ascension about how Ascension welcome to the stream, Venom bhai. One of the better teams in the world. One of the better क्या हाल है गोटी? and there's कैसे no हो? bigger gatekeeper of that than T1. We've just seen what they've managed to do on an international level, and T1 are such an institution here in Korea. These Nongshim players will have grown up seeing T1 brands everywhere, watching these players play, so now they have another chance to overcome this Goliath of T1. Yeah, that's well said, guys. This is so important for Nongshim to win. They said it in their match win interview last week that yes, this is going to be a really tall order. This is going to be a tough match to beat a team like T1. दर्द में क्यों क्या वेनम भाई क्या हो गया? क्या सीन? दर्द क्यों? Yeah, I think they're kind of cooked in the veto here, guys. I'm not going to lie. I remember a little bit of Icebox from Nongshim being decent back in Ascension, personally. Their split has not convinced me. I was not convinced by that RRQ game. Their last two attack sides on split have not been great. The only weakness we've seen from T1 was that game against ZETA that they lost, which I felt like they were kind of letting that one go by the wayside. But if you go back to Masters Bangkok, they won 3 splits in a row against some of the best from each other region. So I think they're going to be very confident on that. And if it goes to Ascent, let's remember that Nongshim versus RRQ game, that was an absolute disaster for Nongshim. I am not पैर ठीक नहीं हुआ है, चलने नहीं हो रहा, तो मत चलो ना. किसने बोला चलने को? आराम से लेटो भाई, अभी तो पूरा मस्त मजा नहीं लाइफ. दाल बाटी चूरमा खाओ. अच्छा, आप लोगों को दाल बाटी नहीं, चावल दाल, पतीला चावल दाल रोटी खाओ और लेटो मस्त. ऐसे While T1 could have the element of surprise with the two map picks here in their advantage of Icebox and Ascent, at the same time, like, there hasn't been a lot of time for them to work on it. So I think there could be a lot of gaps and weaknesses that Nongshim could exploit. It will be a learning experience for T1. So let's see how they adapt to whatever T1 has planned. And here, ये अचानक केजे वेजे कैसे आ गया है अभी? Bilski, you're getting a comp that you. मिटी और रेना ले रहा है. I don't know if I like it. For T1, I like it though. This is just a straightforward approach, and it's interesting that they're starting defense on their own pick. That means that Nongshim wants to start attack. You're going to necessitate aggression with this T1 comp. Meteor's going to have to get aggressive. Buzz is going to have to get aggressive, and they're going to be having to take these duels and disrupt Nongshim as they move through the map. Across on Nongshim, we're seeing that. काम कौन करेगा आपकी गोटी? अरे काम तो हाथ से होता है ना, पैर से थोड़ी होता है. काम तो हाथ से होता है. As that chamber, pairing it up with Dambi on the Jet, you know, it's a classic look to the map in a way, and nice to see Jet still getting some. राइन्स को देख के खेजे खेलने लग गए, हाँ ना? सब लोग मेरा स्ट्रीम देखते हैं, मेरे को लगता है. राइन्स को देखे केजे खेलते हुए तो केजे खेलने लग गए. सही बात. It's going to be a bit of this ascended Korean Darby, possibly. You know, the challengers Nongshim Red Force playing up against, you know, the champions of T1. But yeah, bringing to you all the action, Quackmoto. I mean, what do you think of this comp? I'm still kind of like, whoa. Yeah, I mean, I'm looking at this and I actually thought Dami might be bringing back out the Neon on this map. I mean, he can be quite proficient on it. I'm remembering back towards the Ascension Grand Finals where they played Boom, and it was a mirror match as well, where we actually had the Viper and the Harbor as what they were running back then. I thought it would have been cool if they rebrought that one back out, but no, they're going into something different. Make some noise! I think different is the name of the game over for T1, because I've got in my notes here as well, I had if Icebox, Meteor Chamber, question mark, and the answer is going to be no. Actually, Meteor onto Reina and Buzz is onto Chamber. So I'm kind of interested to see how this switch up's going to go. Really, really interesting. Buzz has been, you know, taking up on some of the off responsibilities. He did that a little bit last week against ZETA Division, so not entirely surprised, but we'll see how this role swap actually does play out. I mean, the Reina is still a bit of a head scratcher for me, but we did see how well it worked out with ZETA operating it just before. Now 100%, Depp did a phenomenal job. Speaking of, a phenomenal job is what you want from your KO 0 points. So to be able to start off with 3 of them is not a bad thing. Very, very good thing. A bit of a tag, though, on towards Buzz, so he's going to have to kind of rendezvous away, but at the same time, early presence from Nongshim closer towards B, and that pulls Meteor away. Well, still going for a little bit more of a challenge at the moment, but you got to start to fall back just a little bit if you are T1. It's good respect, actually, from Nongshim as well, not trying to overstay anything, not trying to
give an advantage over towards T1 here too. And again, similarly, Margaret's not pushing too far up towards the A site just yet. So if needed, Nongshim can fall back away from the B site. They could shift into letting Persia lurk if they want. Oh. Another 0 point, also still 3 players tagged. But they're just waiting for the utility to refresh back in before they launch their assault. Nongshim. The salvos are gone, and now they're back in, getting the spike stuck. Buzz, though, just waiting for Francis to trail back. Eventually, Margaret's going to come through with a lurk, but I don't even know if it's going to be needed at the moment, because T1 are looking to go for this quickly. Yeah, not quite working out too well, though. Well, the lurk could come into fruition, especially if T1 continue to stay bunched up closer towards the site. Trying to move forward, though, again with a 0 point, but Stacks, good for the first one. Danby continuing to hold out from green, but here come the shots. Ivy, though! Wait, hang on a second. We missed all of that. I thought Ivy was going to be dead. There's 3 players surrounding him. How the heck has he just come away with that one? Replay, please. Yeah, I think that is warranted in this sort of scenario. I'm saying that T1's going in for this retake. I'm seeing no wall anymore from a Viper. I'm seeing missed shots out of Danby, but Ivy. All right, here it is. 1, 2, oh, okay, Stacks was low, okay. But still, I mean, at face value, that's a 4K to come through from him, and that's a pistol round for Nongshim, right? You got to alleviate some nerves somehow against the T1 Titans. Pistol round's not bad. So definitely easing things up a little bit. A couple more kills would be welcome as well. More for the Armageddon coming through, but oh, look at that. Knowing that, yeah, this is what Pilsky was talking about, you know, they would be positioned, especially with a chamber. The salvos and everything is going to make your life so tough. So Snakebite back in, but still Buzz unfortunately gets Point क्या है भाई वैसे pick का? That's just Sylvan now. Well, he's got his teammates right up next to him. High-low setups for... Yeah. Oh. And I mean, just Volume बड़ा. around as well. The importance on this game at the moment for our IGLs and coaches being able to figure things out midway through this map is going to be so crucial, because there's not a lot of tape on this map, you know, since it's come back for these two teams. Even if you want to try and stretch it back to when it was last in, I mean, it's going to be very different in terms of metas and evolution. By the way, welcome so to the stream. Goti, देख तेरा agent खेल रहा है देख. You can pilfer from other teams that are playing this map. Nongshim तेरा agent खेल रही है देख. What you've liked from what you've seen. Margaret Thatcher खेल रही है देख. Plant does go down though for Nongshim. So let's see how many of these pistols give up a duel, or how many are going to go up with the spike. Yeah, pretty comfortably right now. T1 मेरा agent खेल रही है और Nongshim तेरा agent खेल रही है. Behind, especially with Meteor. Not quite noted just yet. They do have the alarm bot in his way. But out from rafters and क्या out from, scene Danby भाई. underneath. No one's looking for this. Oh, Meteor tracking the crosshairs. It takes too many shots, but he still does at least get away with मेरे ऐसा रहना बे. guns robbed away from Nongshim right now. पूरा मेरे ऐसा रहना Despite था. continuing to tick away, pretty soon they're gonna have to find their exit out of this site. पूरा मेरे ऐसा रहना था. Francis to do all the work, a fragment as well as a guardian shot, and that puts Nongshim up to 2. Yeah, and I mean, if you want to consider that Nongshim, you know, did decide to start on this attacking side, finding that pistol and the secondary round is definitely going to be a good thing to be seeing. But I think more importantly for me, it's what is this first rifle round going to look like with the different changes that we've got on this composition for T1? Where is Meteor going to look to get activated? How is Buzz going to be playing around this chamber? He's going to be presumably positioned over towards that B site, right? So he can just rendezvous out of there from playing something like top yellow. And that's exactly what's going to be happening on here. So it's going to be the 2-1-2 default spread out across the map for T1, which actually could give some potential chances here for Nongshim. If they're able to find an opening kill or a player that's just caught a little bit ill-timed for T1. More importantly as well, I think Quack right now, with Ivy's 4K previously and some early extras, he's one away from the Armageddon. There's the ill timing I'm talking about though, by the way. Meteor down first. Yeah, reading that he has been trying to push up from before. Buzz also trying to go for some adjustments of his own, you know, no longer holding the linear line down. I'm not quite sure how helpful this will be. He doesn't quite have the rendezvous needed to get away. So Salvo is instantly deployed and Buzz into a deep spot. Still though, able to walk away with at least one around yellow. Now needing to back off. And this is where you can get a little bit of a reset happening as well. You can also consider if you want to try and use this Armageddon to clear a lot of the B side at the moment. Oh, definitely could. 5 HP lurk on Margaret at the moment, so gotta get
Keep your eyes open, see if T1 are aware of this one, but a big old swing from Nongshim as they start to scale up towards this B side. 30 seconds to go to get a plant too. Okay, Margaret hearing the trademark as well, but it just allows for the team to slowly creep up onto its yellow. Sylvan, though, holding down the lines, will be able to find a double kill. Spike down on the ground, and time slowly dwindling away. Margaret with a lurk, finding a shot against Sylvan now, and that's the chance to get the spike planted. But look how far open it is at the moment. You got to cross safely. At least that wall is up. At least Persia is still alive, so there will be time. Izu down. Now it's on to Stax. Oh, Fragment. Stax looking for the 1-on-2. He does kind of bounce it, but it doesn't quite land at the feet of Persia. So still needing to find his targets. He goes for a little trickle against the toxic screen and finds Margaret. Now, where is Persia? Goes for a little crouch, and that's gonna be the shot against Persia. No idea that he had crossed over onto the other side. Yeah, a lot of angles that Stax actually could have repositioned to and played with the time, but as soon as the wall comes on down, finding that kill. I'm not going to call it a clean round by any means for T1, but they do get that bonus round over the line. Some great damage to come on through. I think a little bit of overzealousness. भाई फिर भी वो 5 HP पे और एक को भी निकाला वहाँ पे सोवा को बहुत बड़ी बात है 3K निकाला केजे तो देखो ये यहाँ पे मारा फिर इसको सोवा को मारा this level of dominance that T1 want to try and instill, this fear factor that they have to be a team that has to be like, you got to be scared of them, right? So going for these challenges, if Meteor finds an opening like that, it could have been really well for them. But hey, there you go. Yeah. Stax is going to get his 10th clutch. 10th clutch ever. Not bad. It's always lovely. But you're absolutely right, Komodo. I mean, the fact that you got this turret placed down now, they're continuously watching out in case Meteor does push. He is, in fact, right now up towards Pipes, but we do have an outlaw from Margaret as well, marking the position. Got to see as well, by the way, that with that previous round going T1's way and only one gun surviving, they're going to have to play a little bit more respectable and balance out their own economy for these next couple rounds. So they're on the pretty save buy. Meteor given the Phantom. See what he can do. Fortunately, I don't think he's going to be able to flank or alert too much. Right now, just a lot of heat headed down Buzz and Sylvan's way. Meteor getting taken down by mid as well, thanks to Margaret and this outlaw. Izu, though, will be able to trade that off and does find the pickup for himself. It's a 2-on-3 for T1, where they don't quite have the weaponry. Yeah, but it's a good amount of time to be bought already from when the plant does go down. Some sniffing out for any potential flanks as well for Nongshim. And now they can focus on towards the side itself. That's a lot more secure, but okay. Izu, still sharp as ever, will be able to start us off with the first frag. Then on towards the next. Unfortunately, the outlaw this time not quite able to land onto its target. Ivy sidestepping away. Yeah, you got to hit both of those shots, unfortunately, there to finish off Ivy. You miss one of them, and you're not able to pull out your sidearm quick enough. 3-1, Nongshim. Are they going to have enough info and power in towards this next round, though, to continue this lead on the attacking side? I mean, we do consider, right, that it is a Masters winner versus an Ascended team, but Nongshim are not a team that you have to just, you know, think of a weaker variety. I've really been impressed by their timing on utilities in all the maps that they've been playing, some individual moments of brilliance to come out as well. Well, looking to launch more of that right now, at least. Nongshim continuing forward with this pressure into the B site. Yep. T1 have been facing against this for the longest time. Meteor might have swapped up the positions, but he's getting gunned down. Yeah, and I mean, a stark difference to what we saw from Depp, right? Where Depp's getting a lot of these openers, or he's assisting with these openers. Meteor's not able to do so at the moment. It also does invite for a couple more T1 players, especially with time trailed away. Persia times it, but still stacks. Yeah. Great on the flick. If that wall didn't come up, I think Persia wins that duel. But in the 4 versus 4 now, there's Pit around this A site. Darby dispatches of that one. Trades abound. Izu going huge. Izu. Just Izu, unfortunately, getting taken away. So down to the spike, 1-on-2. Nano Swarm down at his feet, but still, Buzz able to sneak up from behind, around to T1, finally finding the adjustments.
Absurd that Izu's able to get away with that many as well, right? When you think that there's an opening frag gone the way of Nongshim, and it's a call, it's an audible call. Let's just rotate back towards the A side after we find an opener. We'll leave Persia to lurk. He loses his life, and it's kind of the go time, right? You're trying to bully your way into a site where you also got to contend with the decay wall that comes up over at this A site. You got a Viper's Pit too, but all the kills that start to come on down, I mean, look how quickly he's just able to adjust and find all of those kills. Sensational. Just the fact that he was keeping himself tucked away as well. Yeah. So now, a little bit of a slight half vibe coming up from Nongshim. Finally peeling away from the B site. I'd be interested to see if Danby wants to use the Blade Storm in a round such as this one. There is a Stinger on board for Francis, by the way, but it's going to be the Empress popped for Meteor. He is at the correct site in a more heavy lean for T1 towards A. Buzz is close to Garage as well. If he gets the Alt Orb, that would be tour de force at the ready. But that said, especially the utility coming through, a clear strategy headed towards the site. Unfortunately, T1 not quite able to receive it. Slain down by Raptors, and Nongshim gets the spike. Does Stacks use the null command tee up? I don't think Izu's going to be able to hunt his Fury. They need to try and bring a bit of stability in this 3 versus 5 first. It's a little bit tough, but at least Stacks sneaking from right underneath. Up around 410, that's the next kill coming through. Lockdown invested, and that's the Hunter Street right back against it. A little bit of time. You still just got to brawl. Trying to keep themselves alive in case the Salvos come back alive, but still, Persia holding it all the way up. A double kill, and now it's just Stacks. Another one-on-one. The Salvos go through. Stacks running out of time. Yeah, there's no time. And that's going to be the round. Nongshim, they keep themselves alive long enough to pull off those missiles. Yeah, I don't even think if the 0 point hits Ivy and removes those missiles availability at the end there, that maybe T1 are going to be able to find that right, because Ivy can just play with the time, a little bit of peekaboo around it, and Stacks would just have to hit a very crispy shot to be able to win that one at the end there to get on the defuse. So around all of the duels, I mean, T1, they certainly give it a big old crack, I won't lie, but enough at the end for Nongshim, and they will still hold on towards this lead and set themselves up for this next round where there's going to have to be a timeout. I was kind of waiting for something like this. T1 are really being pressured on the early stages of Icebox. You know, a map that we heard from on the desk, we've not seen, right? It's either been banned from them or it's been banned against them, like the likes of Ascent as well not seen. So, you know, the fact that it is new for T1 means that this isn't a map that we're seeing, you know, just on the back of their experience at Masters, right? They've had to have some preparations coming in towards this one. Yeah, but unfortunately, you gotta imagine it's also not enough time, especially after Masters, so it's a little bit rough for them right now. It's a bit of that modified composition that they played from before, which you adequately noted, but at the same time, it's just the way that you're kind of operating it, right? They've been trying to push up forward, but Nongshim are actually doing a fantastic job of finding these positions and isolating them. Sometimes it's Meteor, other times it's Buzz. So hopefully with the timeout, they're able to switch something up. Well, that's it, right? Now you're going to rely on the tenure of Coach Autumn and all of his wisdom to try and come up with something. He loves getting reps on stage, right? And this is the perfect scenario to be able to do so. Still though, Nongshim not backing down from a challenge. You do have Danby in with the Stingers, and okay, Meteor trying to sneak through. Ooh! That's a free gun, by the way. If there was ever a shill for the Nongshim bundle, that's going to be quite a painful one, but right now, still continuing forward. It's going to be the trade out from Francis. Izu out from the back lines, and he's not able to find a chance. That's the Viper's Pit up, and that could very well be the round, Komodo. Maybe. I mean, there's a judge in this pit for Persia as well. You just don't have the guns. Oh, God, Francis, he's on the hunt. And off towards the back lines. Buzz's foot has already been spotted as well. Ivy, unfortunately, not quite able to take him out, but still. Low HP. Look at the map. Yeah, low HP, 2 players still circling around him. Sharks as they were. Buzz trying to keep himself afloat, but how long can you truly make that happen? Both of them kind of swing out towards the sides, and it's going to be Francis. बहुत अच्छा खेल रही है बे. Yeah, 4K for Francis. Do love to see that one. But it starts off with the free classic in Persia. I mean, I mentioned that he's got the judge, but the fact that it's a very deep duel as well. Look at that. That is just so quick to be able to find the shot.
Got to see the value though now, Quack, on the timeout, right? You got to see this round look to be converted for T1 and what they've been able to figure out in these early stages of how Nongshim is playing this half, right? If they're going to start backward towards the B site this time, are we going to see any impact from Margaret on the lurk? Are we going to see a shift back towards the A site to leave Persia to lurk over here? These are the things that T1 have already started to kind of figure out, you would hope. I'll tell you what, though, T1 are happy to switch things around. You do have Buzz closer towards the A site this time, especially with an op. Nothing spotted so far, and it's going to be Sylvan trailing back away to respect a lot of the possible utilities coming through. Yeah, the operator as well for Buzz on the other side of the map. So no value towards this B site at the moment, but no overcommitment in the delayed high to low peak. What's your plan now? I mean, you know that they're up around the corner. They do have the toxic screen up as well. I mean, it's what I talked about earlier though, right? Margaret not pushing too far forward in towards A. Do you draw enough rotation to then switch things up and leave Persia over to this B side? This lull in action right now is what T1 might have considered to rotate towards A, but you've got the safety net in Buzz holding the operator there, and that 0 point that just comes up, confirming a couple more bodies that are still around B. So just a little bit extra, an extra safety net, as it were. But that still leaves a bit of the contention closer towards the B site. Look at Margaret. Yeah, the timing. Uses tube this time. With the trademark at his feet as well, though, does Izu kind of turn around? He is kind of checking for it. There's less than 20 seconds and then now just getting in towards the site with the spike. Yeah, this is a little bit worrisome for sure, but it's something that they are definitely considering about. Izu still will be able to get the spams in. Margaret finds his opportune moment to strike, and the spike goes down. You don't have an opportunity now as everyone has been slain. T1, all that's left is just Buzz. Nongshim working the timer to their advantage. Can Buzz find the frags needed to clutch this out? He re-peaks! It's a double! Headhunter pulled out, and he swaps over to the automatic rifle. Where could Ivy be? That's what Buzz is thinking about right now. He could be around the corner, could be towards back site. So there's quite a bit to clear out. He has to bait out the utility first. There it is. Instantly tells where Ivy is, but does he have the time to continue to find the frags? Ivy is playing hide and seek with him, and with that, the spike will still go off. Despite his efforts. Yeah, Margaret with that lurk at the end there. I'm thinking to myself, Bus sniper भी नहीं उठा पाएगा. Versus 3. All right, he gets the first kill. That's fine. I immediately in my head think, Francis, do not peek, do not peek. And Buzz hits the shot. He hits it nicely, but no time at the end. Always in this current meta, when there's a Tejo online, you know you have to try and bait out the salvos, and there's just too much time that's ticked away. So well weathered. If you're talking about after timeout conversions, and you're talking about, all right, if there's an eco round at the next one, you'd use that for the rifle round after, right? It doesn't go the way of T1 this time. So Nongshim, 6 rounds on the attacking side, a timeout already used for T1. I think you're crossing off everything that you currently do want, and to start off a new fresh round, Quack. भाई क्या खेल रही है बे? But unfortunately, yes, the shot will not quite connect. Buzz, though, not shy about re-peaking, but Margaret will continue to press forward as well, knowing that Buzz is more than likely just alone. So even with the Armageddon being sent in as well, Nongshim will continue to push forward, and push forward they will as they find more frags. Danby taking down stacks. Spike might be, a little bit up behind, but numbers advantage has been found. I mean, you got to consider this round as an eco to come through from T1, and Buzz had the tour de force online. With all the crossfires and chaos around the A side, it comes down to the 1 versus 2. It's good recognition for Nongshim that they can just go towards this B side. You've also got your Viper's wall here as well, right? So you can play on a little bit of strengths with the agents that you do still have alive. There's a snake spite if things get a little bit haywire. If you're Sylvan and you're on the other side of the map, however, yeah, you do probably just look to save this one. Quite likely. Unless he wants to try and contend and remove these guns at the end of it, because the economy is a little bit fickle still with Nongshim. See what he can do here. If he at least gets the first one, but surely you anticipate that the next player will be somewhere nearby. Oh, the timing. Yeah, spotted. इतना देर से देख रहा था वो. And instantly Valorant timings. Especially playing around yellow. Sylvan will make some noise though, but the timer is still ticking away. At least he gets a kill away for his troubles, but the round is what it is.
Yeah, I mean, the tail end of these rounds have been pretty smartly played by Sylvan and Buzz to remove a lot of these guns. Don't get me wrong, right? But the round count, it's not going their way. T1 are trying to set themselves up now, essentially, with enough damage in these rounds to make the next one look a little bit easier for them. But we're not really seeing this convert into anything just yet for them. Not quite. And it all comes down to some of these early positions, early fights that the T1 have been looking for. Whether it's holding the angle up by yellow or pushing up towards A, they continuously get gunned down. I mean, the big outlier right now has got to be Meteor. It has to be said. He's not been able to find any value on this arena so far on this defensive side to give opportunities for T1. Not seeing too much in terms of the leaders as well. So right now, sticking to this setup, especially with Buzz still opping away. It was the tour de force before, but this time he strikes. And that's information as well for T1. Margaret. Now getting ready in case the hit does commit towards the A site. Big Boon getting an A op shot like that one and getting out of dodge with no immediate sniffing out from Nongshim. Only the stealth drone to be able to do that, really. Unless you're trying to do a pop flash to get on the line. Whoa. Surely consider someone at the top of pipes as well. Stax is nearby. Oh, Buzz swaps over to the headhunter, and instantly with that, another peek out, a quad. Angry Buzz is back. That is filthy. That is absolutely ridiculous. I mean, I know that the headhunter pullout time is quick, but the reaction time from Buzz looks a little bit quicker to be able to get those kills in that round. Individual moments, Quack. Sometimes for teams, these are what we need to see. I mean, look at that. His player cam, his posture, the way that he's locked into his monitor. That's the Buzz that you need. Individual performances absolutely putting T1 back in. Oh, they're chasing the 7-5 at the moment. Might be 7-4 when you consider the weaponry that Nongshim are going in towards this round with. We got change of positions, however, and that's going to strengthen T1's knowledge in this round. Nothing's over towards the B side. Buzz is on the line, holding it nice and forward. So in case Margaret might be around, but still, you got to watch out for the front. And that's where Izu tries his darndest to pull off his best works. It's going to be Stax and Meteor instead, though, so putting some numbers up now. Stax finding a triple, and off to the next. Unfortunately, Nongshim just throwing everything into the site. It's all dealt with by T1. Yeah, let's just double up on the 4Ks, why don't we, for T1. This time it's on Stax's case. And we move into the last round of the half, where for T1, yeah, definitely trying to chase the 7-5 this round. I mean, when you consider that there's not much weaponry to be seen from Nongshim, I think it makes it a little bit more passable for T1 that you don't ride too much into a round such as that one, right? You've got to have really good focus on your mid-round income towards this next one. You've only got the null command available for Stax. You're one away of a couple of other ultimates, but they're going to be situational in this round. Quite heavily. We shall see how they're going to be able to make them happen right now. Final round of the half, and Nongshim have been working the sites in true Nongshim fashion, but now slowing down the pace. If you go back to really old Icebox and you consider getting up towards pipes, trying to drop a lockdown in, especially when there's no Hunter's Fury from your opponents to destroy it, that 0 point is actually really big information from T1 to assume that Margaret might be trying to do that. That's why Stax is dropping in the null command as well. They don't have anything to destroy it. They don't want to lose the space. So now that that goes in, it forces Nongshim to act a little bit differently. They will still eventually get that lockdown in. But look at the space now that they're trying to spread around. Look at Kitchen as well, though. But, ooh, thanks to the trademark from Buzz, Sylvan will be able to deny that. Does he expect a second one, though? Off of it, it's still going to be Nongshim continuing to bulldoze into the side, but instantly dealt with by T1 and their holds, thanks to the information from before. So the only one left that can do anything in this round for Nongshim is just Ivy. Yep, and he's already been spotted as well. 1 on 3, and out towards the back, and the spike is down. So salvos maybe, but that's when Stax just pulls up yet another 0 point. So Buzz instantly knows where to position his crosshairs. A simple pickup, and T1 does bring us to a 5-7. Yeah, let's just remove every ability that you have to potentially scale in towards a site in this sort of round and just stop you in your tracks from getting in.
Well adjusted by T1. Again, I think I got to give props to just reading what might be plausible from Nongshim, as I said, with the lockdown and that sort of scenario getting in towards the site. A good recovery for them as well. I'm interested to see what this switch up does actually entail as well. And for me, you know, is Meteor going to get a little bit more online? Because I think his team did a huge lion's share effort over on the defensive side where, you know, you switch it up, you're Reyna, you want them finding the entries. I'm looking towards Stacks to try and set him up, or if they're going for something different as well, leaving Meteor to get a little bit more autonomous as well, a little bit lurky if he wants to, and then using Buzz as a sort of pseudo entry on this chamber as well. So there's a lot of options that I do sort of see for T1 on this switch up, but on the flip side here, Quack, for Nongshim as well, I mean, they are still in the lead. It's not like they don't know how to play this game. They're going to find a lot of their strengths on this defensive side. Yeah. And I'm thinking about potentially retakes as well. I mean, you do have the Tejo alongside the KO. Oh, that rhymed. But yeah, I mean, gotta think about how Nongshim could still bring this back into them. They started things off incredibly well. They forced out one timeout from T1, and they are probably feeling pretty comfortable with that. Yeah, I think for me, I'm looking at the refreshing utility on the side of Nongshim and how they're going to be using this one. Like, how are they positioning their 0 points? What time are they positioning their salvos in? I think those are the little early bits that I'm going to be quite intrigued about. Especially for potential retakes, but here we go, okay. Salvos up towards Belt, but T1 happy to play it safe. Yeah, belt control, peek up through towards pipes, send in the drone a little bit further on to spot any extra information. It'll find Meteor. You confirm a bit of that extra information pushing down the tube as well. And you start to adjust a couple of your numbers towards this A site. High-low as well up around pipes. Yep, and T1, I mean, they're happy to take the duel. Ooh, okay. In with the flash, Demby in with the peek, but instantly Tailwind. Nice one, Ivy. Off towards the top of Belt once again. Ivy has it marked. He wants more pistol round 4Ks, Quack. We'll see if he continues to get them up, but right now, positioned towards a safer spot. It's going to be Margaret out by screens, holding the off angles, but instantly with contact found, T1 continues to push up. A salvo sent through. That continuously halts T1. They cannot push up. Now with that gone, they're still kind of stuck behind what could be another toxic screen. Persia in with a flank. Meteor pushes up though, and he needs to find a lot more. Meteor up by screens, and there he is! Yet with another double, and Izu finds a bit more. Persia for the trade. Instantly, Meteor should know where Persia is. But does he have enough safety to get the spike down? 30 seconds remaining. Goes up the ropes. Meteor is low too, don't forget. Very true. He does stick the spike down anyway. Oh, tries to hop over onto rafters, and that's where Persia finally peeks out. Like a prairie dog, he strikes. Well, that means it is both pistols going to the side of Nongshim here on their opponent's map pick in Icebox as well. So if you want to start off your series, it certainly is the way to go. A lot of these duels a little bit haphazard over towards the A site. Start off again with Ivy finding that kill, but it's the timing on that utility that we're talking about, right? The refreshable utility to come on through. Salvo is providing some stalling power and stopping power and damage as well, really forcing T1 to not be able to challenge in it. So into the fresh rounds now. You're not going to see, well, we actually are going to see a bit of a buy-up for T1. Ooh. Okay. Let's see what Meteor can do. I don't know, it's a stinger though. And instantly the salvo's already spammed over. Well, Meteor just crawls under pipes. Yeah. Komodo. I mean, you know Nongshim want to go for the challenge to try and find some forward positioning over at pipes. Yeah, well, maybe it's something that Nongshim doesn't quite expect, but oh, you got Damby, you got Margaret, and now Ivy chimes in as well. The Guardian and everything all thrown down against T1. No entry found. I understand the idea from T1, right? You know that Nongshim in a pistol round have provided a bit of dominance and how they want to layer their information gathering around the pipes, right? They want to get a player on top of it, a player below it, and then eventually you'll drone up through belt, and it's all readable. It's all wishy-washy. Utility is strong, guns are stronger. And that's what Meteor is trying to bank on, right? The latter, that the guns are going to be stronger with a little bit of catching you off guard. Surprise factor. And potentially get in with an opening kill on the Reyna Stinger. But yeah, it doesn't work out. Francis पे इतना पैसा है फिर भी साला कुछ खरीदा नहीं है भाई. Yeah.
Still though, 400 रुपए भाई एक गन बुलडॉग आ जाती, बुलडॉग ही ले लेते भाई आप. At the very least, they do know how Nongshim are trying to set themselves up closer towards the A site. But that said, Nongshim are adjusting around this. And Oh! Dambi with a peek. Dambi has had Meteor's number in this map so far, man. Meteor, yeah, I can't wait to see what the head-to-head stats are. But right now, at least, Buzz still trying to free up a little bit more space for his team. Yeah, I was going to note Francis in the beginning of the round, actually, the 0 point towards the B side did ping up 2, and then they did also count the Izu drone to come through. But there is still a big emphasis for T1 on trying to bully their way in towards this B side. Dambi with the Guardian. If they are trying to bully their way through, at least Nongshim will defend themselves. Yeah, Margaret already यहाँ पे है. रीड तो अच्छा है, देखो आईवी भी आ गया है. रीड तो सही है, जेट का वहाँ पे पोजीशन देखो तभी इनको रीड मिल गया. But well, now with Persia gone, as he tried to push down mid, might allow for T1 to sneak their way further in as well. So that forces the refreshable utility, like you mentioned, to get spent, and that's when you then get your foot into the site. Spike planted now, and Sylvan to provide additional cover too. So Dambi and Margaret, 2 apiece, trying to sneak their way up from behind. Dambi fires off shots, and Sylvan and Stacks trying to reposition. Flooded and flushed in towards Margaret's crosshairs, but now here comes, oh, Sylvan looks up the wrong way. It's down to just Izu at 10 HP. A bit of a spam through the cloudburst, but still Izu goes for the burst. He crouches, he turns away, he finds the Red Bull clutch. A 1-on-2, and it puts T1 up to 6. Ridiculous that he's able to find that one. When you look at all of the chip damage throughout the course of that round that Nongshim are able to find. ये पता क्यों हुआ? ये पता क्यों हुआ? ये फ्रांसिस भाई ना जो शेरिफ भाई किए थे उसके लिए हुआ. 4,400 4,500 रुपए रख के भी शेरिफ भाई किए. Starting to go on down, and I mentioned, right, look at how low all of these players are. But what are we saying was a faltering thing for ZETA earlier on? It's the team going for these 1v1 peaks, right? This time against the better Nongshim, they do that. They go for these 1v1s. Even with the separate angles. Just so easily marked by a master like Izu. Just before a rookie, but now here he is, truly come into his own. That said, though, T1 still needs more rounds, and like you mentioned before, Meteor still hasn't quite yet found his stride. So possibly now with him stacked up with Stacks, looking for a bit of a peak, Meteor will be able to find that first one, but Margaret instantly trades with an Outlaw. There is an op at play as well with Dambi nearby, closer towards the B site, but Margaret still trying to play around the toxic screen. Yeah, Margaret is in a bit of a spot of bother at the moment. He has to just really play by himself. I don't think Persia's going to be able to help him too much. Yeah, look at that. And that's the Meteor that we want to see. Instantly dismissing away. Izu coming back into refill. Francis for the trade. But that leaves us with a 2-man Nongshim. One on an off, एक तो save करेगा. low HP Francis. Trying to go for the save now, but all right. Buzz far out from mid. Now the op is noted as well. Yep. So, although it's a clear save, this does inform as to what T1 needs to do for the next upcoming rounds. Yeah, I mean, you know, how early did we see a timeout come out from T1 on their defensive side, right? I wonder if Silkanon is going to be bringing one out from Nongshim anytime soon as well, especially after that previous round, right? The bonus, which looks so winnable for him. And now this one, the first gun rounds, going a little bit lopsided. Hot shot from Dambi. Still good to go. But yeah, truly, I mean, especially with an op at play, think about what kind of positions you could have set up. T1 have been looking to, you know, like you mentioned before, a little bit of a bully, a little bit of a way to abuse their way into the sites, possibly. I mean, if you want to talk about hierarchy at its finest, right? T1 is going to be the team here coming on the back of Masters, right? They're the team that they're going to have an aura around them that you got to be a little bit worried, right? But don't play scared. And we're not seeing Nongshim play scared whatsoever. Yeah, it's been quite the scuffle repeatedly, especially into these forward positions. But now, playing a lot more defensive, trying to keep Ivy alive. They are on, you know, a bit of a half buy and Stinger at play, so maybe looking to abuse some of the close range duels. Dambi, though, that's the one that we got to keep our eyes on. But right now, at least, Stacks able to find a bit of an opener. And last round, Dambi did have that
Operator over at the B side. It's there again, so no adjustment this time, and it's just little by little. T1 knocking the front door down. Whoa! Here we go, maybe. Insane flick. Is he going to be able to find a couple more? Well, at least it's going to be the rest of the team already swarming and flooding the site, noting Dambi's position once again. You have to wonder at some point, though, is this a bit of mental conditioning for Nongshim to then suddenly bring Dambi somewhere else on the map for the next rounds? I mean, yeah, I'm a little bit surprised that they didn't reposition the operator towards the A site, but you kind of also do understand. Uh-oh. What? I put my hands up. I recognize that I am dead here. You wave the white flag. I thought they were kind of, you know, just tangoing a little bit. I mean, the outlaw no-scoping is not something that you can have confidence in. He did tag it first. Regardless, it's going to be the big all-round to come through from T1. What I was trying to say is a little bit surprised that the operator wasn't repositioned, but I do understand its power if it's just solo over towards the B site right there. For the tailwind to be popped, Dami gets the pick, he can get out of dodge. Here is that timeout that I was wondering just a little bit before. And it's getting close, right? 9 to 8. T1 starting to find some good strengths on this attacking side. It's just with the way how they're able to position themselves, at least for the past couple rounds, closer to the A site. Stacks, a little bit of Meteor coming alive now. Like you mentioned, with the op possibly at play, I mean, not entirely sure if Dambi's able to purchase another one back up, but it's definitely a potential tool that Nongshim could. Yeah, I mean, when I think about one of these strengths for this composition that T1 are running, right, you want to have your chamber be able to rendezvous in a lot of different positions. That's something that the A site gives you here earlier than the B site ever can. You want to position up a lot of layers as well. Strengths are going to be being able to pop it through walls and having the rest of your team be set up. You can layer in some good flashes from Stacks as well on the KO, right? So it does make sense that compositionally T1 might favor the A site a little bit more than the B site. And then when they throw a bit of a different look in towards it, it can confuse Nongshim. That's something that they're possibly doing right now in this very round. Off picked up by Buzz as well. Uses that to clear a lot of these long sight lines up tube as well. That could give a lot more room, but oh, Margaret domes him square in the head. Got to be careful though. If you want to go for some big repositions and find some further space by yourself. Also is Dambi with the blades on the other side of the map too. Stacks noting 2 towards the A site just there. Meteor opening up. कैसे जीता ये fight? That's Persia down, so that makes a bit of a retake scenario all the more difficult actually for Nongshim. Still though, not entirely out of the question until Margaret, that is, puts himself up individually on towards the site. So Salvo's trying to deny the spike plant. Bit of time bought by Margaret, but still, the spike will go down. And in with the Viper Spit too. That's the thing that Nongshim needs to work against. Stacks up with the null command as well. Armageddon just to buy a bit more time for Ivy to try to flush him out of position on the pit. Still though, Meteor able to work out some magic. And that leaves us with Stacks and Sylvan. In for the sprays, in for the positions marked. T1, they tie up the score. Lots of utility going around that B site when that pit comes up. I mean, you're seeing the updraft from Dambi. I'm not sure he realizes which target that he wants to try and finish up. He tags the planter a little bit, but the salvos do finishing it up. When the pit actually does start to come out as well, you got that Armageddon, and everyone's getting flashed up around it. T1 stabilize. They bring it to 9 apiece, and they set themselves up now for what could be the round to gain them the lead, right? Back towards the startings towards this A site, but I'm looking at what Ivy and what Francis are looking to do. Back towards finding some belt control. Standard Viper's wall as well to provide a little bit of safe passage across for the T1 members. I mean, already getting up to the pipes. Is it enough though? Yeah, I mean, it's a bit of space, but still T1 just looked to ignore all of it. And it's Meteor off the zip lines. Stacks instantly for the trades, and that could very well be enough. Still though, lockdown forced out. Hunter's Fury back in, and it's up to Ivy to try to hold it down. But Stacks, he's so alive. He's so ready, and he's raging his way into the site. So all those players gunned down, and we're just down with Persia coming out from Nongshim down mid. Stacks already has an idea. The barrel spotted. Oh, but Stacks
Just kind of leaving it through. Buzz in with the tour de force. Yeah, Sax has just gotten away with 2 kills and then like pretty much just landing on his feet and immediately finding them. It's kind of funny when you do think about that. But hey, T1, they will gain the lead here, finding double digits first. भाई यहाँ पे लेकिन stacks कुछ अलग ही मार दिए देखो 3 यहाँ पे 1 2 lockdown while everybody is still going for the fights around it. As you mentioned, you know, like they're already recognizing that Persia is going to be coming from this little later rotate. So yeah, I really kind of do wonder, though, Komodo. This win streak started off of the little force buy round that T1 had in the second half. You know, with that, they really noticed so many of these positions that Nongshim tries to play on the A site repeatedly. And that's possibly how Stax has been positioning himself, just in case Nongshim, you know, peeks out. He's been finding these off of little timed peaks, and now it's also just Meteor once again working alongside the whole team, pushing and bulldozing their way straight back into A. मैं मार्गरेट बेचारा निकाल रहा है भाई ये लोग नहीं मार पा रहे. They can't quite withstand the force that is brought out from T1. Yeah, a little bit late in the activations on this map of Icebox, it may feel like for T1. A new wind blows their way. Again, this is just one of them eco rounds to come through from Nongshim, but when you do consider that this would be the 6th consecutive round in a row from T1, that's when you start to get a little bit more worried. Considering how they had such a strong start, but still, okay. Well, it is what it is. T1 are up to 11. Scanning ahead. So if you were Nongshim, I mean, looking for a way to work against this mid play, this A play coming up from T1. Can't buy up any ops at this point. Yeah, you got to have just a really good early decision from Nongshim here, it feels like, because T1 are waltzing all over you over at the A site, and I mean, then you got to also got to think about, are we being baited into pushing the B side or pushing mid if we're expecting them to go towards the A side or something? This is going to be probably one of the more important timeouts on this map right now for Nongshim. You know, this is going to be that potential swing round that could get them back into this map to even win at 13-11 regulation, push overtime, or it's going to be the one that could break things down and they could lose it from here. Whatever it is a round that is desperately needed. T1 kind of thinking about anticipating any potential swap-ups as well. So far, it has just been, you know, a lot of the initiator utility focused on towards the A site. But the likes of Meteor and Stax just breeze right past it. Perhaps Danby positioned towards screens now. Oh, Persia with a judge. Yeah, it would signify that the Viper's pit is probably going to come out over towards B main. A pretty standard icebox thing, and I think if you're T1, you're probably even happy to do that, and maybe even expecting it to come out, and if you're not, well, now you'll already have your adjustments kind of planned. Your 0 point over towards pipes at A has just pinged out some good information. You know there's at least a Persia over towards B, so if you want to suss out what's in through mid, you could definitely look to do so. You're not really seeing too much up through A either. Persia's trying to control as much as possible with all his smokes. I mean, the Poison Cloud out by mid as well. Margaret staying tucked away. These dry contacts from T1 can be very scary in a situation like this. Francis dispatches of Stacks behind the Poison Cloud. Nobody checks for Margaret. So a bit of a double, but instantly Meteor refracts. A bit of an opportunity for T1 to possibly sneak in towards the back of B, where you still have to deal with Persia, possibly Francis coming up from top mid, coming up from kitchen right now. Buzz with just an op. Back to back. The Korean veterans. You got to remember as well, if T1 are locked in towards this B site, they know that they can get absolutely crunched on because of the Viper's pit that's still active in the in B main. Well, at least they sneak away with a spike plant, and Salvos does kind of reveal where Ivy might be positioned, but instantly with a null command as well. So needing to frag your way out of this one. Buzz takes the matters into his own hands. Ivy gone, but now just Meteor
low HP as well. He might have the Empress, so everything needs to start with a single kill. Malcolm ended up as well, so that just makes things a lot more difficult. He hops down, does take down Dambi, refreshes a little bit more health, but needs to spot up for the next. They're starting to dwindle him down, a bit of an odd high-low as Persia dives down to take Meteor away. Noxim are able to find a win back against T1, ending their win streak. Yeah, this isn't old Icebox. Meteor can't stay at the snow pile and then just have a good eye view on towards the bridge to be able to deny it. He has to get active, he has to look for him. Gifted, I guess, a little bit of a kill onto Dambi there to refresh his HP, but some good fundamentals from Nongshim, taking that last duel together to be able to win that one and hold on for this map as well. No 12 rounds found for T1 just yet, but enough money already accumulated for them to be able to go at it yet again. So not too much pressure. Yeah, I mean, still a lot of pressure for Nongshim. You don't have the Viper's Pit that you can put over to the B site, which means it's kind of free challengeable territory for T1. Oh. Shoulder. Oh my Doesn't god. matter. Buzz just still too quick with it. Instantly anticipates it as well. I mean, he was below from before. Maybe he's up now. Look at the rotations. With the instant frag, yes. The rotations pulled over by Nongshim, leaving A a little bit open as well. That allows for Stacks to possibly find or sell a little bit more towards the A site. But you know what? You got the numbers. Let's just push and push our way through. Instantly tagging up on towards Francis as well. Buzz watching the back line. Sniper Overwatch is right there. Ivy up towards the top. And it's just Meteor. He is the queen on the chessboard right now. Gotta save. You need something to play with in the next rounds. And Dambi, takes Stacks as a prize here. I reckon, Margaret's fine in terms of economy. Francis will be okay. He's 2 off his blades. But a 1 versus 4 for Dambi, it would be an ace clutch. And he's just waltzed over Sylvan. Oh, that could be it. Sylvan looking for him, and right there. X marks the spot. Yeah, so there we go. Nice T1 try, nice try. Point of their own picking as well. भाई यार कमबैक तो कर ली है T1 ने भाई ये राउंड जीत जाए यार NS लेकिन ये कैसे involvement to come through from Meteor, but Buzz too fast getting a lot of these shots. That's a little bit of unfortunate timing. The flash drive over too from Francis fast and the peek out of yellow just being spotted just before you go for that one. You're always going to understand why Nongshim at a player deficit are going to have to try and do something to try and equalize the situation on this defensive side. But now, they're up against the wall. They cannot make any mistakes, and T1 are just... पूरे nice one Meteor पे निकाला वो frag. बच गया. Francis, knowing that T1 would push up, had walked अरे away ये with क्या one कर kill. रहा है Here comes Sylvan with a kill of his own, and Nalkaman instantly popped Stacks, wants to make this happen. You got Persia coming up from behind, and Persia. So a bit of an opportunity for Nongshim. The rest of them holding into defensive positions up around the site, but Sylvan instantly comes back to allow for T1 to stretch इन their पे guns legs. नहीं है बे दिक्कत और ये लोग छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इनको पता है ये लोग को guns मिल जाएगा. Oh my god, and Stacks still up by Ness, continues to find targets. Margaret पे जो करना होगा. A bit darker for Nongshim at the moment. If Margaret can somehow find 1 kill, he would have a lockdown available. But look at that sharp shot from Stacks. That is never going to work out for you, unfortunately, on the back end of that one. And Quack, Stacks is going to be the one to close it as well. T1 make the comeback work. Final score on the map of Icebox, 13-10. He was the one who kind of started everything. I mean, sure, earlier on was the pistol coming out from Ivy, but after that, Stacks launching the attack rounds for T1. It's his flashes, it's the way that he pushes, it's the way that he finds trades for Meteor that puts him out on top. Yeah, it's just the involvement from everybody on T1 at the later stage of the game, right? It felt a little bit sleepy at the very beginning from them. It felt like Nongshim had a really good fundamental idea on how they wanted to start off this map on Icebox. They chose their attacking side to start off for a reason, right? Things were looking very well coordinated for them. When they're layering down all this utility, when they're trading really, really well. But the tail end of that half, T1 start to really figure out, oh, we know how to play this game. We know how to shoot. We can catch you a little bit off guard. We didn't win just Masters or anything like that recently, and you switch on over and it looks like a different team. T1 on the attacking side,
very destructive. Still some good looks for Noxian, though, and I have to say, I mean, they did pull out the op at some point, but not quite the adjustments in terms of the position that we were thinking of. So we will keep our eye on this because Noxian are still definitely very much so in the game. There's not a lot of pressure on the backs of both of these teams. Maybe a little bit more so for T1 to defend their crown. Yeah, I mean, split around the corner as well. I think I heard Pilski say it a little bit earlier when we saw the map meter. I'm not too confident on split for Nongshim, considering their last series. But I mean, hey, look, different day, different teams. Let's see. Yeah, we got to see how this all looks. But for now, we will take a look at the desk with three lovely faces that we all know and love. Well, there's at least one face. What a nice young man Quack is. What a guy. I know. I mean, Morgan's got a face only a mother could love, but that's just Yeah. my opinion. Definitely the big time face. T1. Sorry, we got distracted. We were just staring at big time for a while. Man, what a good looking guy. Straight into his soul. I mean, speaking of good looks, I mean, T1 on that comeback, that was a good look from them. It wasn't a promising start. I think Nongshim, they chose that side on purpose. They definitely did play around the comp that T1 was bringing as well, which the order of things, to make it clear, is you choose your starting side. They chose to start attack before they see the comp. So, you know, they're expecting T1 to play something aggressive. They would have had a good read on that. They played around it very well. It felt like they knew exactly how to counter Meteor and limit his impact entirely, and that's what made it so hard for T1 to actually get into the game. But T1 just did what they always do. They were resilient. They came back into the game. Meteor, despite like a 1-7 or 1-8 start, still finishes dead even. So very much turned around his game once he moved over onto the defense. Yeah, I thought they did a great job to stabilize into that game. I feel like there was a few momentum rounds, a few big, you know, we have clutches, we have big 4Ks from T1 that just managed to reignite that spark. You go, okay, yeah, guys, we can actually shoot them. Or like, you just... It's a surge of energy, and, you know, I felt like Nongshim did play a great game here, to be honest. I feel like, from a macro perspective, they looked more confident than T1, but I think T1 just showed up on the rounds that matter, and really just... I think that's the experience, right? It got them across the line when it really needed them to. I think it's a good first showing for T1 on Icebox, who haven't shown this in ages anyway, especially with this particular squad. But you're right, Nongshim had great ideas. They looked really convincing, especially on that first tap there. We thought this could have been a Nongshim game, and things could have really, you know, been a very different storyline here. T1, yes, they are the Masters winning team, and we were discussing this, you know, these teams like to push the full series, but T1 pushing the full series every single time. I mean, that means they are good at adjusting on the fly, but at the same time, there's a lot that they really need to work on because it becomes really close too often. Yeah, I mean, at least for me, I have to check myself a little bit. I mean, we'll get to see some amazing individual players from T1, which is what you get with this lineup. No matter who they're playing against, they bring out the individual skill, the individual brilliance. It was Stacks that started off. Buzz was consistent all game long, and then I think Meteor really started to get fired up in the second half in particular. But I think, yeah, I have to check myself a little bit, because T1, they did win Masters, and they did kind of get declared as the best team in the world, but they have never really dominantly destroyed any team. Their initial game, they dropped a map against ZETA. As you mentioned, Vic, earlier on in the pre-show, every series that they play goes the distance, so I can't be too surprised that most of the teams in Pacific are really pushing them, and that was kind of the consensus in the content that Chopra did, interviewing a lot of the coaches. The common consensus from a lot of the other Pacific coaches is that T1 will not come back and dominate, because Pacific is a very hard region to play in. There's so many different teams that you have to play against in different styles. I mean, this that we're watching for me was really the story of the map. We're just seeing endless T1 highlight rounds, 4Ks. Stacks' big clutch on the bonus round, you know, keeps momentum in their favor. Buzz hitting some crazy shots. I think this was a game T1 got across the line on their individual level. Each person stepped up, made those big rounds happen when they needed them to, but that's not exactly consistent. It's hard to make that keep going, but they'll take it for now as they move across to map 2. But, you know, we spoke a little bit about Nongshim's split, and, you know, you don't seem too convinced, but I thought their defense was very good. So I think it's going to be an interesting one heading into map 2. They only have one more, you know, they have only half a map to fix, so... Half a map to fix? Yeah. Okay.
That's all right. Don't worry. We're just 12-0 on one defense, guys. Easy peasy. Stacks an MVP. A man that, you know, once upon a time, a little bit of sentiment criticizing his fragging. I think in current day T1, I don't know what it is about this guy, but every now and then Stacks is just like, I'm just going to win this map. Yeah. Like he just drops 30 out of nowhere on the init roll, or like when the going gets rough. I remember early on in kickoff, for example, the going gets rough for T1 on attack. The dude just starts cutting corner. He just starts dry pushing stuff. He's like, I'm just going to test the setup. I've got a read here. I'm just going to walk up a ramp on split and see how far I can get before someone stops me. You know, he just really is the kind of guy that as a leader leads from the front and will take the game into his own hands. Yeah, I think it just shows that anyone on this T1 team is able to step up. Even the IGL able to come out with a big top fragging performance there. Everyone on this team is razor sharp, so that's why it's so hard to close things out. Even when we see Nongshim come in with a great game plan, really great structure, it doesn't matter if these players are just going to keep shooting you in the head again and again. Yeah, T1 is just I mean, they've very much earned their spot here in Pacific. But I think what this is also saying is how strong the teams in Pacific are to be pushing T1 time and time again in so many different matches over the past, well, not full year, but the past couple of months. So I think this is a good sign all around, but T1 still keeping it, like you said, razor sharp. And Stacks as well, whether he's the first guy in or the last guy standing, he just kind of goes in this crazy like solo mode, and he's just like, you know what, I'm just gonna have fun and kill a bunch of people. But now Split is gonna be the second map. This is Nongshim's pick. This is a map they did end up winning, and it's the only map that T1 dropped last week to ZETA. It went into a slight overtime. There is some debate though. ZETA did play well last week against T1. They did. But we also know T1 was really tired coming from Bangkok. So is this loss going to be a big deal? I don't think so. And then for Nongshim, like, I wasn't convinced by their attacking side, in particular in the talent game, which they lost 5-13 end of kickoff. That was their previous comp though with the Neon. Now they've been playing the Waylay, and on attack, I mean, 33% win rate against RyuK, and then defense 100%. Their defense was insane, and you keep saying it, but like, their attack was not great, and they're going to have to, I'm assuming, play attack first on this map pick against T1. I mean, I still think they have a lot of good options on attack. I think the Viper still gives you strong lurk. You're able to pair up the Deadlock and the Teo util. But you should be able to set up the Waylay. Like, I feel like there's more to their attack half that they can improve on, that they can show. I think they had some good ideas, they just weren't able to pull it off consistently. They'll have gone back to the drawing board, they'll have reworked parts of it, and I think T1 will have done a very similar thing after losing to ZETA. You don't just get beat on a map and go, oh, well, that was bad from us, guys. We'll visit this down the line. I think that's the first thing they're watching back and fixing. There was a lot of promise, but I'm kind of getting to the point where, especially for Nongshim, where they're a team that I look at them, I'm like, this Waylay should be perfect for them. They should be the exact team that can coordinate utility to be able to create the opportunities for Waylay to have impact. I'm kind of getting to the point where I'm like, just don't play it. Play something else, because Darby looks so much better on any other duelist agent than the Waylay. I know people have criticized him for being a Neon one trick, but even on the Jet and a game or two of Raze, I've noticed he's a lot better than what we've seen from his Waylay. I don't really want to see them play Waylay again, but we'll see. I'm honestly inclined, like I have a similar sentiment. But to Big Time's point as well, they do have the pieces there, they do have the general ideas there, but you just need to be super like watertight with your strats here, what you have in the playbook. With an agent like Waylay, you need to work with your team, like we've seen from Talon and Primi. That's the right way to use Waylay. And you have to be confident on that attack side. Don't wait, especially when you have a Teho Waylay. Like you can't hesitate for a moment. I mean, the way I see it, Rome wasn't built in a day, right? Do you think Danby was a demon the first time you picked Neon? Do you think it was an instant? No, that's not how it works. It takes time. He was born to play that agent. Waylay still new. They're figuring it out. If anyone can make it work, I think Nongshim can. I think they know how to set up Danby. It's just they have to do it differently to how they did it on Neon. I hope so. It takes it takes more time, right? But that's fine. That's fine. Just give them the space to, you know, they'll get there. You gotta have some faith in these guys. They know what they're doing. They'll have reviewed that attack side, and I think it's gonna look better today. Well, I have faith they're gonna do it because both of these teams like full series, and so Nongshim therefore will win. And they're gonna figure out this Waylay thing. That said, you guys said the 2T1. You know, little bit of a rough split last week, and there's no way they're going to let that fly a second time around. I don't know if this is when we're going to see the pattern broken. Stick to the same comps they both played last week.
So not mega changes on other side, at least from the surface Double level. Let's see controller what- खेल रहे हैं दोनों. I think the key to this matchup, looking at the two comps, is obviously the Nongshim comp with Deadlock Viper. When it's trying to defend, it's very strong when it's controlling space. But इधर T1 double with Razor controller, looking to build a एक burst initiator, past those double chokes. duelist. So two people are past In fact, that kind of Sentinel है Deadlock, stopping वो matter utility. करेगा. So T1 do have the tools to deal with it. They also have the Razor to deal with that Deadlock. So I think it's going to be interesting how these two compositions match up. And I think T1 should feel good about it. It's going to be easier for Nongshim to attack into the double duelist variant of T1's comp rather than Izu on the Cypher as well, particularly with Waylay. So I think that's a small positive. Let's see what they've fixed on attack. Let's see what they fixed. All right, we're going to send it back to our casters. And you guys, are you thinking this is going to be a full series, or is it ending here, Quack and Komodo? That's a very good question, Victoria. I'm not entirely sure. It's definitely going to be a bit of a head scratcher. I mean, will those adjustments come in? I'll throw my hat in the ring. Yeah, maybe. Because the way that this map has gone recently for T1, even though they've been getting dubs, they've been in overtimes. So, I mean, they also need to have some reflection on this map as well, right? Yeah, and you know what Achilles always says? We only have bangers on split. That's it. I just don't know if the banger is going to be a T1 banger or a Nongshim banger, but certainly we can expect a lot of action. Will Danby finally find his way and lay waste to T1? It all starts here. So onto the pistol. Toxic screen up towards B, but instantly met with quite a bit, so they're going to have to trail off. Yeah, a bit of early utility used from Nongshim as well, but you got to remember, deadlock changes means that GravNet does come on back. So being able to use that to get some normal B main control, some garage control, not a bad idea to go about it. Better reposition in the mid. Buzz sees a lot. No one's going to give any more forward doors. And smoked off. Gate crash expired from Izu as well, though, so he's already fallen back to a safer position on towards the top of A ramps. But this is where, with those positions pulled away, Nongshim tries to reaggress in towards B. Danby still could just like burst in all of a sudden. Yeah. कैलेंडर अभी भी जनवरी दिखा रहा है. T1's utility though to do the chipper damage to you. मार्च चल रहा है. B site. So Sylvan to reposition. Not a bad idea at this point in time, but you got to be careful of what Margaret's trying to do. We'll call it his best meteor impression. Yeah, but still stacks is stacks. Yep. So we find that, but here comes the execute back in now with the rotations pulled away. Danby finds the shot, refracts back in, busts to hold the off angle, but the trades are there. Nongshim will get the site. Going in for the plant as well now. Barrier mesh to block off CT, so you're going to have a bit of a reposition from Meteor. No one's going to give you a challenge there. Try and buy some time for Stacks to get on in, but where would you even try and contemplate throwing the Haunt to try and set Meteor up? You got to rely on your element of surprise. Don't know if they're able to get that just true enough, given how Danby's jiggling back and forth, holds the line now. It's just Meteor, who's already dropped underneath Hell, and Francis instantly marks the position. In with the GravNet as well towards the end of it. So Nongshim very much aware of everything that could be happening on the map. So one out of 4 from what we saw from Nongshim on the attacking side of split last time, but immediately a infinite increase in first kills for Danby. Getting 0 last time on this map. He gets it immediately in the pistol round. So to infinity for Danby on this Waylay. Oh my gosh. Infinity and beyond is for the player on the other side. But hey, all right. Infinite increases in first kills is always nice. On the other hand, though, still continuing forth with their momentum. They got the guns, so why not make use of them? They're continuing to push down and in towards the A site already. Yeah, I mean, you can't let it be forgotten that all of the pistols so far have gone to the side of Nongshim. Say that, but they still lost the first map. Still, though, I mean, at least working with their advantage right now. Playing the long game. They picked up the alt orb. They've got Margaret deep in towards the B site, cutting noise, buying a little bit more time, and it forces T1 to think. So T1 back in towards B. Buzz will find Margaret, and that's a Marshall picked up. I don't really know if you want to take a Marshall in towards the next round, though, Quack. So we'll see if he can get some damage out with this one, if he puts on his running shoes and gets over towards this A site, because currently Nongshim planting out the spike. Run. Takes quite a while, doesn't it? It does. It does. It's not as bad as like Pearl rotates. Yeah, it's way longer.
At least for right now, kind of able to group back up with Meteor. Is this going to be anything? Probably not. Nongshim all the way grouped up. एक हेड खाया वापस भाग गया. Map and back into screen. Meteor gets dinked. See if anyone will chase him. Fall into the crosshairs of Buzz on the Marshall. If not, up with the spike. Peaks. Yeah, more than likely to spike unless Persia hunts them down right now. But he's not going to spam. Oh, Ivy actually finds Buzz as he moves up front. So that's further alt points for Nongshim right now. I can't speak. It's all right. We had a great first map. But we're only bangers on split, so let's see. Gun rounds to be coming up forward for T1, so let's actually see where their strengths are going to lie on this defensive side as well. What early challenges there's going to be. I'm interested to see as well, more importantly, when we're getting a lot of these attacking rounds, what differences have we already seen in this short time for Nongshim? You know, what have they learned in their practice, in their reviews? Will they be able to prove Morgan? Will they be able to prove big time right? So starting things off with a grab net straight in, but blind into the crosshairs of Izu and Sylvan. At least the trades were found. It's a 2-on-3, but into the smokes. Margaret, what are you trying to pull off? He pushes out all of a sudden, and Meteor backs away. He finds the frag. Francis now trying to reposition, still carrying the spike. 1 minute and 20 seconds left on the clock. What can he do? Well, he can start by potentially juggling over to a Vandal. But then you got to find the remaining 3 players, and you know a team like T1 is not going to give you 1v1s. Holding the positions. You got a bit of a high-low with Buzz up on top of Raptors, but Meteor, as soon as he spots a bit of an inkling of a shoulder, he continues to go forward. Okay, maybe he will give you a 1v1, but he's just going to win it and remove your head from your shoulders. On the board are T1 on this defensive side. And again, you know, I mean, I know I keep harping on this and everything, but it's T1 playing the same things that they did over at Masters, right? The old saying, if it ain't broke, don't fix it, right? So they've got a lot of different strategies and ideas in their repertoire that they're going to be able to deploy in this map that Nongshim really need to come through with some great mid-round decisioning. I think that Persia is gonna really be tested in this map. Quite a bit, especially now with the buy round back in. This one could work against their favor if Kami's not there, but here goes. Instantly in with a waylay, but Buzz in for the spray transfer. It's just that Francis down to low HP. The bursts are not working out. That spray transfer was gross. And now what do you look to do to bring some recovery back into all this round as Nongshim? You got to just find some really nice timing. You don't even need to see Izu stick around. He's already gate crashed out of it. And as the gate crash happens, another frag found. That was, I think, Francis down to bottom mid. It's a spike lost in no man's land. And Meteor marking it as well. Yeah, I mean, if you're trying to regain that spike, you have to do it from your own side of the map. You're not going to be able to lurk in through B or in through A as Nongshim. Yeah, I mean, you kind of got it with this position, right? Yeah. Well, 30 seconds to talk things through. So, I mean, what we've seen right now is instantly kind of what, again, Big Time's a fan of it, but he also points out the very, I don't want to say obvious, but flaws pointed out. The waylay dashes in, but without any, you know, true support. Yeah. It's just a free frag for Buzz. I mean, you also got to remember as well the way the mechanics work. If you're dashing twice, right? You're up first and you're forward on the second one. You're going in the direction you're looking. It's not like a jet where you can do the head swivel to spot enemies. So we're already sort of seeing that be a little bit worrisome, right? When you're going over through mid, you're going over the single box. You can't check any corners, and Buzz just gets a very quick spray transfer to be able to find it because his position really then is unnoted. Yeah. Oh, we'll see it again. We'll see it again here. Like, you can't check that position. If Persia is shrouded stepping in and Danby is getting in the dashes, he just massacres you. More like a flash or a stun to, you know, bolster that attack, but at the same time, you know, towards the end of it, Meteor got a pick up against, I believe, Ivy. So more alt points as well for the other side, but here it comes. T1 launching a bit of a showstopper straight in. Yeah. It floods Nongshim towards the back of mid. Oh, Buzz just not backing out. I mean, you'll take the trade.
you've removed one of the more, pivotal components of what Nongshim's plan might be on this attacking side, playing with the wall over at A. Now you've lost all of the control there as well, right? Yeah. It's going to be information that, unless you're putting a dark cover down from Persia, you can leave just a single member in stacks there to look after all of A. T1's, they don't got to worry about no more lurks outside of A. T1 really don't have to move too much around the map at this current point now. They have to leave it on to Nongshim to make a decision in where they want to try and end things up. Eventually the gate crash will fail for Izu. And he'll reposition away from the B side potentially, but with 40 seconds to go, now you start to re-clear mid. Ooh. Are you wanting to try and all wrap through the vents towards A or up in towards B tower? I mean, T1, they're just going to be happy enough to take the jewels at the moment. They've got Sylvan with a paranoia still. Yeah, falling back bound to bound. Flash is ready, and there it is. Let it rip. Saturate out towards the top of stairs, but nobody's there. So this means Sylvan as well as Izu are ready. Sylvan, in fact, keeps himself hidden, shrouded in mystery of this dark cover. Works around the back lines now, and Izu with the flash continues to find targets. Persia, though, will make quick work of both of them alongside Francis. So a bit of a spike plant now. But still, the retake with information at hand for T1. Hunt instantly reveals. So now thinking about possibly... Oh, but a bit of a slight blunder. Head exposed, allows for Persia to pick him off. Low HP, though, is Francis, and Meteor looks for the one-on-ones. Right around the pillar. Oh, smoked up. So you gotta work around the edge of it, but as he sidesteps away, shots fired, Persia comes back in to double down on the spray. Nongshim will be able to pick a round back up. 5 HP to save that one for Persia as well, by the way. A bit unfortunate for Meteor that he's not able to finish it up. Gotta say as well in there for Izu, some nice shots coming forward on this Yoru, of course. Starting to be really proficient, making that agent his own on this map for quite some time now. And I really thought, when you're looking at the repositions from Nongshim, you got to go up through mid, you have to go in towards B. I still like how they're able to quickly decide what utility they want to layer in to try and take the space. This time for the new round, we're not seeing an early Gravnet over towards Garage, so this gets Izu onto the line. Is it a bit of a false sense of security here? That's an awkward miss, but at least he gets out. Yeah, a little bit. Still, though, it is space afforded to Nongshim. A second gate crash back into safety. Meteor, unfortunately, trying to refill a little bit more, will pay with his life. So even though the op was purchased up into the round, Buzz getting gunned down towards the top of Mail as well is going to hurt for T1. Yeah, you got this plant down, 5 versus 3. I think you just got to cut your losses in this one on that defensive side and save the weaponry, right? The fact that Izu is getting caught off guard in the very early beginning with that operator, right? You're not seeing any first utility come out from Nongshim. It's a different look for a play towards B, right? Where they delay it just a little bit. It works a treat. Again, then you have that grab net for the side itself, and who does it actually find this time? It's Izu, who has to gate crash out a second time. Unless you're trying to get in quickly with that dimensional drift and go in for a pretty quick retake, and you're taking out like Darby, you're taking out these salvos and everything, it really is difficult to get a good retake on that B site unless you're removing a couple of these members early on for Nongshim. So it is the wise idea for T1 to go for the save here, have this weaponry for the next round to try and set themselves up. Do they want a dimensional drift nice and early to get somebody else on the line, or do they want to really just hold it back for a bit of a retake? These are the decisions that they're going to have to make now. And this is where the responsibility does fall onto the shoulders of Stacks as the IGL. What's the read going to be? Thinking about the Gravnet from before, this is where Nongshim's mental conditioning definitely comes into play against T1. So trying to position themselves across, it's Izu, maybe closer towards mid. But Nongshim, a quick A hit, trying to take down in towards the top of ramps. The Gravnet does land as well, though. Not able to capitalize immediately on the back of it, but you are going to send in Darby yet again with the ultimate. Okay, but we do have Sylvan backing with the flash just to hold down the line. Meteor holding the off angle as well. Buzz coming in to support. It's the snake bite that decays them down. Margaret has a snake bite of his own, pushes past, but Stacks ahead of him. Does find the next target, just to Francis, and he's able to push even further up. Does take control over Heaven. And with this spot, he might be able to get his way into the site, but Izu up from behind. Does notice position as well. The op not quite yet fired. Francis has a chance.
He's on for the 1 versus 4, and he's forced out this dimensional drift. Okay. Pushes Francis a little bit closer towards elbow. We know where he is. Meteor trying to spray and burst at him away. But Izu out of the Great Crash now, hops over with a shorty. Too many, too much to handle. And it's going to be T1 able to overwhelm with the Yoru at play. I mean, the fact that you're forcing it out means that you don't have to contend with it with the next couple of rounds, which makes your retakes, or rather your site takes a little bit better, right? You can hold, you can set yourself up some timing, and then if you are getting the plant down, that's less worrisome in a retake scenario. So I got to give credit towards Francis to at least try and make that a workable scenario too. In the very beginning, though, snake bites aren't what they once were. They're not as damaging in the very beginning when they're first laid down. So some good recognition on T1's side. Just some good, quick decision making to come out from them as a whole at the end to keep this one in a tight little contest. Yeah, very quickly. Do have to note that Meteor did kind of reposition himself from vents, so that could be something that Nongshim is trying to work against this time. And there it is. Much more of a stack closer towards mid, and they do deny Izu any opportunity. Yeah, 3 little positions that he has to really be accounting for with an operator. Look at the space that Ivy is just finding with this scary annihilation at the moment, but Darby taken out. Buzz was caught in the grav net, by the way, so stuck in the vents for the little bit. Over eager from Stacks as well, and Quack, well, T1 stuck. Bit of an open sight, but still, even with a stuck T1, Meteor is still able to anchor as best as he can. Spots down falling Ivy, but no! The shot lands square on Meteor's head anyway. 1 on 3 for Buzz. Yeah, Ivy is poisoned in this round. Margaret as well, quite literally the poison in terms of the agent. Buzz has no idea where Margaret could be. Gravnet sent out, and he kind of knows that they're closer towards the pillars, maybe garage, but there it is, Margaret. Well, another one back over to the side of Nongshim. So they have found more attacking rounds now than they did against RyuK. So credit where credit is due to them. They've been able to, what we might presume is learn from their mistakes, play towards more of their strengths. They've got some really good ideas in this map so far and some good patience as well, right? Changing it up between speed and slow. And then just hitting their shots where they need to as well. Have to admire it. A lot of variety. Pilsky, are you watching this? Are you more convinced now with the Nongshim's attack side? That's too early to tell. that's a great Pilsky impression. That was horrible. Back towards what they tried on the pistol round before getting stalled out by the early utility of T1. They will gather some garage control, but are really close towards an ultimate. There's no real rap or reason to be able to. ये round तो इनका होना चाहिए 6-3 होना चाहिए. To see what you can find. No idea क्या होगा. T1 है. T1 as well though. Pushed all the way up. Trying to hold on to these cheeky positions. Nongshim aware enough to check. Yeah, Francis is not leaving any stones unturned at the moment. Definitely very admirable. Hello. Danby with the chase as well on the shorty. That's the waylay that you want to see. Yeah, this is really, आज Danby पहले अच्छा खेल more रहा है. set up by the team and the team being more coordinated now in how they want to try and set him up and the small gap right, तो उस दिन have after coming out from the light speed, थोड़ा अजीब खेल रहा था. up your gun, RRQ के साथ. combinations, right? It's not like you're throwing your utility immediately when you're dashing, right? There's slight changes in times that comes out as opposed to where you would have a jet. Or even just, having a little bit more information before going in for it. I mean, it is, slightly anti-eco for Nongshim. Yeah. But still, we are very happy, as is Chobra, with the WatchParty on the other end right now. Okay, hang on. I'll admit, I might be getting too far ahead of myself because that was Darby's 3rd kill. I feel like he's gotten a lot more value in this map so far in actually finding the space for his team to get the kills where he's not been. Which again, sometimes that's still value. You take what you can get. That's it. And it does force the timeout from T1. Met with a couple of rounds of sudden bursts, whether it be in towards the B site or A, playing around the timings of the grav nets. T1 are now faced. I mean,
from my perspective, this is actually quite scary now that Nongshim have actually managed to find 6 on this attacking side, because when I look at their composition, I think, well, that's pretty, that's pretty damaging on the defensive side, right? You've got Ivy playing on the deadlock, so you're going to have walls and grav nets for days that you need to try and bait out. You've got Margaret as well, when you've got these walls and these smokes that you can chop and change up with Persia too. You add in the salvos and how Dami's actually going to use the hinder, more importantly, instead of trying to refract in for these frags with the light speed and everything. You have to try and contend with so much on the defensive side, and we already saw that be a huge struggle for RRQ, not to mention when they're just getting timed out on the rounds. I chuckled, but yes, Komodo, you are absolutely right. T1 definitely needing more rounds in this first half. They've got the double duelist, but right now a lot of it is दोनों पे ऑफ है क्या? Izu will continue. इनको ओमेन ऑफ कर रहा है, बताओ. Himself up in an observational post with that op. How's your favor with a attacking sided Omen operator? Ooh. On your leader. Well, it is Nongshim. Yep, that's true. If there's anyone that's going to be able to make it work, it would be them. Well, at least for now, just watching out in case T1 pushes out. I mean, this was off of their timeout after all. The Armageddon, though! That actually got Buzz! Yeah, was he stunned up? Nonetheless, it's going to be Stax who now tries to hold, but instantly refracted away. Danby! I'm actually looking at all the utility, and they just got caught out trying to escape the vents, trying to get out of it. Because you got to go down one rope, up another rope. Otherwise, you're going out into mid and you're taking a duel that's really uncomfortable. And with the positions now noted and held, Nongshim looking to aggress into a site. Izu, though, will make it a little bit more tricky for them with that op shot. Yep, and he's on the line for another one as well, but the timing of the wall will permit a little bit of passive approach for Margaret, though. I'm looking at the clock right now, Quack, and I'm seeing 20 seconds. I'm seeing Izu still here with the operator. He's got all his utilities to play around. Yeah. Okay, but Izu still able to work around it. Nightfall instantly coming out from Stax, providing additional support. Izu re-peeking back and forth. Maybe the wall in his face is going to be able to buy a little bit more time for Ivy, but still a 1-on-3. Ivy shots fired, and they instantly know where he is. Oh, Sylvan, though, trying to take him down to 1-on-1. It does buy the attention away for Izu to find the shot in the back. T1 managed to scrounge around back up against Nongshim. Yeah, really well played by Izu and his patience level over at the A side as well. Not enough heat over in through mid or anything over in through B to really force him to get out of there and reposition and help the rest of the team. You'll see on the replay, yeah, it literally was just caught in the ultimate, because it's what I said. You got to go down one rope and get up another rope. Really wise ultimate to come out from Nongshim there to try and gain advantage, but Favor in the beginning does not bring fortune in the end, unfortunately, for them. Yeah, and instead it's going to be Izu finding a lot of these fortunes. Fortune favors the bold, and with the way that he positions himself, because he has that gate crash, just gives him so much control. Now, they switch up the defensive setups. It's Izu closer towards B, marking down Garage if anyone from Nongshim does decide to push up. Nongshim, however, this time, trying to aggress in towards A. So you can see this is where some of the adjustments coming through, possibly thanks to Stax's calling. They're trying to find a bit of a pinch against what could be Nongshim trying to cascade forward in towards the A site. I wonder how itchy Buzz's ultimate finger is right now. Yeah, very much. He's getting that tingle, and there it is. Flashbacks through. Oh, just for the one. Margaret for the trade. Yeah, but can you keep going? A pinch towards the heavens as well. You really want to regain some control, but they sneak on by. That's info, though. That's info for the players at B. Very much so. You can instantly see Sylvan into position around stairs. Has to be careful, though. He does have the paranoia, and he's trying to set up for it. Izu for the first contact op shot. Can gate crash out. Oh, that's beautiful. Sylvan and Marcus back as well in case anyone does come in with a split push out from Garage. Oh, but a whiff from Izu! Still back in from Meteor. He leaves the Viper's pit. Yeah, Sylvan flashes out, positions himself safely in towards Garage. Meteor, though, a little bit of a whiff. And that's going to be Nongshim picking the spike back up. They can still make this round work unless Sylvan puts up a wall around it. It's not going to happen. Margaret takes him down. It's just Stax now. With a sledgehammer, trying to break it through. Takes down Persia, but down to 5 HP. This is way too tough. Yeah.
can't get that operator either for the next round, so you got to call that one. I mean, easy, that op shot had to have been hit. I got to say, Nongshim, they dug so deep to regain control. When there's 20 seconds to go, the spike is down in mid. Persia doesn't have it from the shadows to be able to re-pick it up. They got to get back in towards this B side as well, and it really relies on, you know, a couple of key members hitting some shots, winning those duels around the site before you can even get the plant back down. Really well played out for Nongshim. I thought that round was looking especially hairy for them. The mid-rounding and all the way across the map. Yeah. They do manage to bring one back, which means we won't have an equalization at the half. We'll have a Nongshim lead no matter what, but will it be 8-4? Will it be 7-5? Have we seen enough from T1 on this defensive side? I think my answer is no, just given by the differences in these comps as well, right? When you're thinking about double duelists versus a much more defensively inclined agent pool like Nongshim are running here. Yeah. So this round is going to be, you know, quite important for T1. You talk about then getting the pistol in the second round and you're all tied up. If not, Nongshim can certainly start off their defenses quite strong. A quick one in towards the B site though, Quack. Yeah, last round of the first half. Why not just dump everything into the site, refract away as well? And here comes Persia in for, you know, a bit of that staggered approach, finding one towards the top of heaven. And you're going to give the plant over towards Ivy here as well, so you can get the Annihilation back online as well as the pit. But the Dimensional Drift in now for Izu. Oh, but he's blocked by the wall, the barrier mesh. So teammates needed to kind of break that apart. And that is going to be a little bit more information, but just as he comes out of the drift, it's going to be a bit of a shot out from Francis. Everything engulfed and blocked off, vision obscured. It's Nongshim dominating in this very side of B. 8-4 half. You'd be absolutely happy with how that half did pan out for Nongshim as well. A lot of great strengths and a lot of great patience to come out from them as well. Just ultimately really good decision making. I'm quite impressed by how they were utilizing the Waylay on this one. You know, not for Darby getting kills, but to be the distractor, to draw attention to his body, but then his team to not just get one person in to try and look for the opening frag, but to get 2 or 3 going in together to really strengthen that bond for them to just take over the sites. That is, you know, them kind of figuring out their own little recipe for Waylay with this composition at the moment, which now, yeah, it changes up for them on this defensive side that they go to. Yeah, as a very dashing young man on a desk said, you know, it takes time for Waylay. Rome wasn't built in a day. Rome wasn't built in a day. Well, maybe now this is where we're starting to see how, you know, Waylay is meant to be, you know, deployed or utilized, especially the refract instantly back in that previous round. It was quite lovely to witness as well. And this is, yeah, you know, you kind of mentioned it a little bit before. T1 definitely worrying somewhat because Nongshim has had a very successful defensive side last week against RyuK. Point of discussion that our desk has been bringing up here and there. Just to put things into perspective, how successful that was, it was 9 wins in a row. Yeah, flawless on the defensive side. Do I think that that's going to happen here? No. Probably not. Do I think it could? It could. Like, there is a real world. I mean, I don't think it will, don't get me wrong, but it could. Yeah, it's quite clear that, you know, T1's double duelists, some of the protocols, you know, Nongshim are quite aware as well. You know, as soon as that Dimensional Drift went out, the shorty at hand from, I think it was Francis, just in case Buzz would show up as well. That said, though, T1 starting things off a little bit split across the map. Yeah, I mean, for me, I think you got to just really figure out how Meteor is going to be playing around his utility at this A site. How much do you read into him just lurking or the whole team being behind him, specifically when you're using a really early drone as well from Francis there. Already spotting him out, but Meteor is still Meteor anyway. Straight out from this toxic screen, he comes in, finds one shot, finds Danby as well. He's so good, man. It's crazy. And now, wall back up. He's thinking about Margaret on the other side. Still though, this is a lot of space, a lot of efforts then for our T1 to really consolidate everything into the site itself. Blast through Izu with the support, Frenzy to spray everything down. Meteor notes out the last player. And at this point, if you're Persia, just trying to reposition. Well, you're going to give it a crack no matter what. It is a pistol round. Starting things on for off from screens at least, because they already knew that he would be closer towards heaven.
At some point, he's going to have to possibly watch his back. Utility would reveal his position a little bit further, so he's just waiting for them to push on through, but oh, the shot's not quite found. Buzz making use of that little wall with the wall bang as well. That's going to be T1 now, taking up the pistol. Yeah, first pistol that they're going to be able to gather in this series so far as well. So they'll be at least happy with that they can start off their own attacking side. I was seeing how they're, you know, on the back of Meteor getting all those kills, exploding back in towards the site, right? Awele could never. And that's one of the differences that we're going to start to see in these little aggressions into these sites, right? When you've got flashes available from your Yoru, when you've got some satchels that you can fly and strafe around in the air as well for Buzz, you know, it does open different space and different positions that the Waylay compared to the Waylay rather. Yes, T1 is known to do, but wow, yeah, look at this. Yeah, they're in Ramen. Buying up and trying to surprise T1, but T1 Francis just क्यों pull आया? it back and refill that space. That said, though, taking out Meteor is quite a huge factor for Nongshim. That's a weapon picked up as well. Oh, okay, not quite. No. Still, I think it's fitting. Nongshim getting into Ramen early. Yeah, I see you. However, I think it's Ramyun. Maybe if we're getting specific. In the dark cover though, gun barrel spotted. That's awkward for Persia. Yeah, but instantly back in with Danby, trying to position himself around the pillar. Still though, instantly taken out very quickly. Tried to get a little bit too far ahead, and he was by himself, so that gives T1 numbers advantage right now. That said, it is, you know, just the second round. Yeah, just trying to navigate an anti-eco as T1, which, I mean, in the very beginning, not too crash hot at being able to do so, with Stacks and Meteor falling, now Sylvan as well, but you do recover a little bit, and you'll take 2 guns in towards the next round. So all in all, I mean, you back up your pistol with your second round, no shenanigans afoot where you drop that one, and now, I mean, if I'm looking to the paper notes, right, I'm thinking, again, this defensive side of Nongshim's, just with the agent lineups, it has to be strong. So you really need to be in the early stages of these rounds as T1 baiting out a lot of the utility, making sure that you can play it together in numbers or find some right timing for opening kills, doubling down, good rotations. You know, there's so much that I feel like T1 are going to have to do correct here. So far, so good, though. I mean, it is quite early, but I do admire how Nongshim has, you know, a lot of options with how they can push out sometimes. At least for now, a bit of information off the Jiggle Peak. And noting Persia as well. T1 now looking for the pinch against him. And Persia tries to stay away from that splash damage. Does get decayed though, and the flash comes out, scrams through. And that's going to be then Ivy trying to refill that space, taking down Sylvan, goes for the next one, maybe the next. It's the 3rd kill, and he's running out of ammo. Tries to reposition, but still stuck in mail. T1 able to recover. Yeah, but you'll immediately see Margaret start to re-clear some garage positions as well and get an idea that if they do go into B, it'll have to be through Heaven. Otherwise, they might wrap back towards the A site. You got to remember, Meteor's wall is currently over here as well. So if you want to play towards your own utilities, that isn't a bad idea. You got salvos that'll come online soon for Francis. You got a lot of that utility there for Danby as well. So just waiting for that sound, that tap. 30 seconds left. Do note that Izu is one away from the dimensional drift, but you're not going to try and bring any priority on towards using that in this round. Or hunting for it. Bait a reaction out with that fake gate crash. No sound just yet from Nongshim though, but you are absolutely right. They do have those salvos back up. Spike still planted, 7 seconds, but Izu straight back in, spots out Danby. Just a stinger though, so still not out of the woods yet, T1. Francis and Margaret slowly creeping up, trying to make use of their angles and positions, but Izu notes all of it. Possibly the ace now. Gate crashes in towards elbow. You can toy with him as well. Yeah, it could be a fake. Margaret still dropping down, and there it is, Izu. Nail in the coffin at the very end of it all. All 5 kills in round 15. We have had a lot of aces so far in VCT Pacific for this stage, I've got to say, but that one, the mechanics of Izu to just do it around from starting in the middle of the map and then around to that A side. I mean, I'm seeing a 3 versus 2,
And I see the hinder go down from Darby, the saturate, and I'm thinking, why is he jumping down onto the site by himself? I know his refract is popped, but there's so many angles that he has to clear. His team is nowhere near him. That's the second time that he's kind of done that now. Yeah. So it's a little bit painful to watch, surely, but still, nonetheless, it's T1 beginning to catch up to Nongshim's scoreline. Slow and steady is the race, and Nongshim looking to create a little bit more pressure, a bit of a one-way towards Ramen. Just on the eco, though. Yeah. But if you can kidnap someone as Ivy, you can also get a gun upgrade. I don't know if you want to use it in this round. Clone out, footsteps found. Oh, sonic sensor placed, and they know where he is. Persia, though, that's the real trap. And that's the first shot, but oh, just as it gets fired. Sylvan for the trade. Ivy back in towards Mail, still close range with the Stinger. Oh, how much damage a GravNet could possibly have done just then as well. And that's when T1 peels off. You've got Meteor up towards A. Yeah, but he's seen nothing. No over-aggressions from Nongshim. Now Izu incentivized to try and open up some space. Force them back over at B, then come back over towards A where your team has been waiting. You've noted 2 players towards the side at the moment. 30 seconds left. Yeah, quick pinch. Gate crash out. Noting Francis' position. Good stun though, but the flashback in it as well. Izu pops over onto the shorty and hunts down the next. Stacks for support. The Annihilation gets popped now of all times, but I don't know how useful it's gonna be. Ivy at least still uses the Stinger to spray and bait them out of position, but Sylvan marks all the way down towards the back of the ramps. Double kill found, and that brings T1 up 8-8. I mean, you got to think as well, if they're trying to go for a plant and you're able to pick up the planter, right? That buys time, that gives a little bit of scurrying for T1. They have to try and reclaim the spike and get a bit of a plant in there. Do like the little trap plays in towards mid, right? On the expectation that the clone is going to be thrown in first, then putting out the sensor, but with the trade that already does happen first there, and you know, he's not able to play off his own sensor, unfortunately, in mid as Ivy, it doesn't really work out there. So they try their best on their little eco that does come through on that round, but you've lost 4 rounds in a row at the start of this half, and yeah, you do need a timeout from your last installment of Split that was flawless on defense. Well, now it's a big donut. Huge flip off towards the other side. Maybe this timeout will aid them somewhat. I mean, the round that I really liked from Nongshim was when they tried to force something, you know, buying up the Stinger, pushing down mid. T1 surely respected and still were somewhat able to turn that around, but that was as close as it got. Yeah. The problem that I'm going to see in a scenario like this is you've given, or you haven't really given it. T1 have found their own momentum. They're figuring out what's working on this attacking side, and Nongshim is still a quite young team, right? They're still learning all these stage environments and how these games will play out and everything. So they got to figure out their own way to get back into it, right? And when you're seeing this Waylay have another pretty rocky performance, right? You got to not let it get into your own head as Darby. You got to play with your team. Yeah, and really have a good discussion and have some good decision makings as well, right? Because I mean, it's unfortunate as it is, and I'm highlighting it because it's something that they can work on. That's two peaks that they've lost, both of them. 2 open peaks. Okay, Francis trying to get ahead with the stun, but still good little kill. How much is it going to provide? Health back up. Still able to control A. Lurk's eliminated, but here comes the flash. The burst in towards Mail. And instantly up towards the top of heaven with that blast pack. It's just Persia here. He does deal with the first, but then Izu for the trade. It's all too clear for T1. Francis out and cold. Izu at the bottom of hell instantly marks and spots him out. And that's straight after a timeout as well. So I know, you know, one of those things where it's percentage rates for a team after taking a timeout. It's not really working today from my memory on the back of that one. But yeah, I mean, I want to highlight, right, Meteor just getting the open peak over towards A to start things off, that open peak in towards mid, and then it's just strength in numbers, right? The steamroll in towards the B site, stretching out through mid. It's just, you know, a couple of sharp shots from T1 and pretty clinical to close it out from there. I have to imagine, you know, a little bit of that mental game as well. These like stacks buzz,
players that you respect and revere so much. Yeah, I mean, it's not stale by Nongshim by any stretch of the imagination, right? They're still trying to generate these different ideas and how they want to be playing on this defensive side. It's just T1, they're changing it up between haste and passive plays. Repeatedly. Yeah. At least right now, though, Nongshim once again trying to set up for a bit of a trap play. 39 it's like HP. Izu is the right agent to be able to get out of a trap play, right? So it's like T1 is still playing to their own agent strengths as well. Okay. Oh, that's gross. A bit of an attempt by himself, Ivy, but still quickly dealt with by the next player from T1. Izu backline support once again. Barrier mesh dealt with. You got the blast pack, you got the flight path. Oh, into heaven of all places. From the shadows from Persia, though. And it's gonna be a little bit of help, but oh, the shots! A bit of a blunder, and Sylvan happy to capitalize. You call it a bit of a blunder, that's a catastrophe because everything crumbles on the back of that one from there on out for Nongshim. T1 come away with a flawless round. So far, flawless on this attacking side. And it's just, you know, not निकाल सकता था just the अगर फेड और round as ओमेन well, दोनों but को. as we take a look at the scoreline and the economy for Nongshim, this is where things really makes you feel like you're down in the dumps. Well, yeah, I mean, that's why sometimes you got to take time out, right? You got to have a discussion with your coach. You got to rely on them coming up with a game plan, right? One of the harder roles that we're seeing some people in our region see in these, videos that we're seeing from them is, you know, coaches are in a hard role, right? So there's so much importance on, I think, more importantly, just coming up with a winning idea here for Nongshim, right? It's one foot in front of the other. This agent lineup that they have can be very destructive on this defensive side. But I really think that T1 have done their research well, coming in towards their series. Their mid-rounding is looking really good, whether or not they get the opening kill or they're losing it. Again, one of the biggest things is Meteor's timing and Meteor's presence or presence that isn't there over at that A site, right? With these walls, he is with or up and down. He's a ghost. He's living rent-free in their heads. Yeah, very much so. Constantly haunting them round after round. T1 does have a very extensive coaching staff. Autumn is not the only one there. So wouldn't be surprised if there's a lot of tape studied up from that game against RRQ. But we'll see what Silkanon has cooked up, at least for this round. Nongshim and the likes of Persia, they've been trying to set up for some of these plays and traps here and there. Ooh, and we get greeted Technical with our pause. friend. No! I haven't seen him for like the past, you know, several days. I know that Achilleos were met with one last week. Well, here's another first, I guess. My first tech pause. Oh yeah! Congrats, Komodo. Welcome to Pacific. Can we be blessed for it to be quick? It's been good so far, though. So I do count my blessings. This is, you know, it's all right. I mean, it's all right. I know it wasn't a great showing in kickoff against the old Talon on this map with their old agent lineup, right? When they were running like Persia on the Astra, Dami was on the Neon and stuff. But I think there was a lot of glimpses in there that they were playing towards a pretty strong meta in the Breach Teho, that they could come up with some cheeky reactions and play off the back of the util damage, right? When we're looking at this, we're not really seeing options on Nongshim's side to play off the back of the util because ऋत्विक भाई welcome to the stream. ये अपने वाले ऋत्विक भाई है क्या? We're not seeing, you know, good saturates coming down at the moment because we're getting this idea that ऋत्विक भाई आप चैनल पे नए हो या अपने वाले ऋत्विक भाई हो? एक बार आप कंफर्म कर दोगे? Ivy playing at B Tower a lot, and we're expecting these grab यार मेरे बाल ला भाई. You know, T1 are not going too far forward to waltz into that to then get grab netted and then just die to salvo straight away, right? Or if they are, they're just sending Izu. भाई सो रहा है भाई. भाई वो सो रहा है. These are the sort of ideas where it's like you भाई ऐसे सोने से कैसे जीतोगे गेम भाई तुम लोग? This composition is going to potentially be strong on because T1 are playing a composition that can get out of those scenarios. Happens a lot. तन्मय भाई गुड नाइट. Izu. मैं वही हूँ भाई. ओके ऋत्विक भाई और तन्मय भाई दोनों का मेरे स्ट्रीम पे स्वागतम. क्या हाल है दोनों भाई लोग, कैसे हो? Thank you for small tech. What about the retakes though? I mean, possibly for Nongshim, that was something that we were kind of toying with before we started the second half. We haven't really seen too much of because T1 has been picking them off. Yeah.
That's it. If Nongshim want to give तन्मय up भाई the गुड side नाइट नहीं here गुड to मॉर्निंग बोलते हैं. potentially even full retake, I mean, you're just giving Dyslexic साला. T1 all of the space to set up a stronghold. This time, though, it's going to be a bit of a contact to explosion in towards this B site, and there's nobody to help Persia here. He's alone. Paranoia. Oh, raise the blind, raise the blind, raise the blind. So he's being met with a lot. Buzz just spraying at his feet, but still, Nice, Ivy nice, finally nice. arrives just on time. But there's And as that happens, there's Meteor's lurk. Arey, He's just going to call that. How much space can he find, however? Oh. This is common. मार्गरेट का कॉल देखो बे, उसको पूरा आ रहा है साउंड. You know someone on your opponent's side on the attack has gotten the A site. You know that you can cut them off through sewers. पूरा मार्क दे रहा है वो. A T1 going to be ready for Margaret. 30 seconds left. Kind of looked and glossed over it though. Margaret still nipping away at the heels. This is a great time to strike, and there it is! The double kill! Margaret might have just saved the round for Noxion. Meteor up from the top, has to do it all by himself now. Where could his opponents be? He's out of time. Persia just needs to hide. So does the rest of Nongshim. And as soon as the timer tricks away, they're on the board. Flushed out of position. Nongshim on the board, thanks to a timeout and a tech pause. I do not want to set up a timeline where a tech pause gives a team a win, Quack. I'm not about apologize for my I mistake. am not about that. No, well done. Really well done to be able to stave off the assault in towards the B site, and again to just recognize that you have a gap in पहला डिफेंस में राउंड जीती भाई. flank happening. As well as the opening kills being found. Still, it's not over just yet. T1, a lot of strong ultimates to be able to open up some space around the map and set themselves up for a post as well with that pit if they need. Okay. And you're just really playing the spread default here as Nongshim. Yeah, more or less the same positions all the way. T1 though, happy to pull out a page from their very thick playbook. Yeah. Okay, but this time we do have the bear match instantly up, and that does allow for Margaret to take Sylvan away. Okay. Showstopper traded. Yeah. Sylvan will shroud a step in towards fence. That one cleared. Meteor's हमेशा ये फ्रांसिस को मार रहा है भाई, हमेशा. वो बंदा वो टिल्ट हो गया होगा अभी तक तो भाई, हमेशा ये एक फ्लैंक दे रहा है. And that's just the very keyword right there. Again, Meteor has done this so much now that it's just so tough for Nongshim to deal with. Yeah. At least though, Ivy in position around screens looks to find some duels. Double! He sprays and runs away. What is that? The triple found. He Annihilation sent through as well. And it's just Meteor again. Picks up the spike back in. Ivy kind of has an idea. They're spread though, Quack. They're split, so they need to reposition to potentially do this together because of how low Ivy is. At least to play off of contact. Ivy has the grab net. Got it. Instantly sends it. Oh, Paranoia. Kind of whiffs, but still is enough for Persia to go in for the swing and to pick up the equalizer for Nongshim. Yeah, a little bit unfortunate for T1 where Izu's in the dimensional drift and he's kind of walked two of his teammates into their demise, right? I'm spotting out the opponent, yeah, but you guys have got to win the duels, and well, unfortunately they're not, and that drive-by at the end there, that was, yeah, it was kind of ridiculous. Dirty. I mean, the fact that फ्रांसिस बोलेगा कि भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं इस बार अकेले साइड पे खेलूंगा ही नहीं, ए साइड पे कोई मेरे साथ रहो वरना मैं तो बी जा रहा हूँ भाई. भाई लगातार तीसरा राउंड है शायद से वो डिलीट हो रहा है. Ivy able to find it. That said, 10-10. क्या काऊ क्या कर रहे हैं अभी वो? Very much so alive and kicking in the game. Francis with the op this time. Yeah. Trying to deal with Meteor from longer ranges. ले भाई. इस बार डैम्बी भाई को बुलाया तो डैम्बी भाई पिल गए. Viper's pit though, down bottom mid. And T1 are Can't stop Meteor. Fake gate crash. पूरा मीटेराइट जैसे गिर रहा है भाई. वो अकेला ही एक फ्रैग निकाल रहा है पक्का. Still for stacks, all of the fade util, which is going to be an avenue to get in towards this B side. If you were to just go back to Old Faithful, you can set up a gate crash to the back of the site, you can nightfall in and just try and catch them off guard.
नहीं 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 इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने मत दे वाइपर वाइपर नहीं वाइपर वाइपर नहीं वाइपर Meteor in with the lurk. Now he hears the footsteps. Again, there it is. Oh, but Margaret turns back as well. Spots him out. And there it is. Nongshim able to shut down T1 with her approach. The bear mesh broken, and they all note where T1 would be approaching from. Just stacks. Hit with the salvos as well. Instantly turns tail and runs away. That's the round for Nongshim. I mean, when they get the idea that it's going to tend towards this B site, right, you only really have to look at two positions. It's going to be Alert potentially to come in through mid, which was Meteor. So nice positioning from Margaret to be able to stop that one. And then, well, the remaining forces are T1. They're just going to come in through Garage, and that's why I highlight the importance of the barrier mesh, right? You cannot respect that and wait it out when there's that little time left on the clock. You're going to have to try and destroy it and get in towards the site where you've already then got the numbers started to rotate over for Nongshim. So really well played out from them to be able to do that. And to survive with 4 alive as well when your economy is near broken. Talk about needing something on the later stages of this half. 3 ये वाला राउंड हारे तो फिर नेक्स्ट राउंड बाय नहीं आएगा. Take whatever you can get at any point in time. But this is 100% coach's timeout finding its value. Well, speaking of T1, they need to have a discussion. And they're going to probably be calling their timeout here to come on through because, I mean, you're looking to have a flawless run on that attacker's side from the get-go. You're besting bonuses. You're just getting destruction around the whole map. And, well, suddenly the newcomers in Nongshim, they get 3 rounds, they reclaim the lead, and they're getting nearly close to closing out this map. Right? A lot of it just comes through with the, they're still working around these somewhat default setups that they've been working with, but it's the timing of that barrier mash, or even just the fact that this time you've got Francis playing so much further back, not giving Meteor. Yeah, but Dambi still. It is what it is, but still, I mean. At least he's laughing. They were able to block off a lot with that. There was a bit of that Viper's Pit as well, so that's another thing to think about. Yeah, important moments here in the tail end of Split. Don't even really want to consider Ascent just yet because remember, folks, this is Pacific. Yep. There's only bangers on Split, which means we should get overtime. Yes, we should. At least now, take a look at what T1 might have set up. Keeping Meteor on the lurk. Francis and Dambi, though, together alongside. Yeah, early drone. Early drone, sniff out a little bit of information. You know that there is someone there. You don't want them to progress too far forward. You're buying a little bit of time. But that's where you're going to see a bit of a challenge in through mid. Yeah, I gotta imagine T1 trying to bait out the barrier mash or something. Yeah, if you can try and get that deployed, that's great, but grav nets are refreshable, and they just lock you in, right? You can't combo that with the salvos right now, unfortunately, but you can play it for some information. Oh. Yeah, possibly, but right now, just bypassing all of that. Now it's going to be really crucial on how Meteor is going to use his wall to allow his team to play around it, and how he wants to play around it as well. Margaret in position as well, though. So quite a bit to deal with. And I do wonder if Nongshim does go back to play a bit more retake at some point. Francis does have the Armageddon as well, but all of a sudden here comes Dambi in with a judge. Sylvan for the trade. Francis still marking the positions with an op. But here it comes straight through. Persia in with it from the shadows. Stacks trying to flood the site, but here comes Buzz and Sylvan. Every position marked, every angle under lock and key. T1 dismantle the defenses from Nongshim on a site. Yeah, they hit all the shots where needed. I thought as soon as that first operator bolt was missed from Francis that the Armageddon was going to come on through and potentially make them hit the heels running, right? But no, it doesn't. Everybody starts to fall on through. You got it from the shadows repositioned to the back side as well, but just strength in numbers. T1 just straight in towards the site, straight towards heaven. 4 alive at the tail end of that, and that does mean we get all rounds of regulation to be played here on Split. So regardless, we're on our way. We're on our way, that's it. All right. Look at these adjustments though, Komodo. Sonic sensors towards vents this time. Yep. A little bit deeper on, expecting a potential Izu gate crash play. Alt still online for Nongshim. If this is set up for mid and there's a gravnet deep mid, it could bring value. Still though,
No information for Ivy. He's getting very, very antsy. Supported by Francis now of all times. The armor getting sent through. T1 just avoids it. Here comes the timing from Meteor once again. Dambi, surprise, surprise. And that's the judge lost. Meteor uses this now to push up in towards A heaven. Respecting where Margaret could very well be. I think he's spotted at the back. You're right, Komodo. Still though, T1 will look to swarm past this dark cover. And here comes Meteor! Just striking from the heavens above. Off with a snake bite as well to block off any further rotations. Continuing to mark it down. Spots out the shoulder of Persia. A slight whiff, but that's okay. T1 has the sight and the spike planted down. 2 versus 3 though. This is so important for Nongshim at the moment. You talk about credits. You have to get a kill. You have to do something now. And there it is. Persia marking the position, spotting out Buzz. Back to a 2-on-2. Ivy uses this to try to sneak in towards Elbow, but Stacks from the site marks all of it down. Sylvan providing additional cover. It's T1 to make it to map point. But you look towards Meteor yet again to just provide some impact in the round. His kills, timing around it, all of the information that he's able to find as well. I mean, that shot is so ridiculous, but then his team waits for him to go through heaven before exploding out the dark cover, right? There's layers upon layers and just trust in this team when anybody makes a call. And now T1 find themselves on series point here. But Nongshim, they will fashion a buy. They want to try and send us to overtime. What have you got? Cult नहीं है, बस Dambi cult है. The concerted effort from T1. The tip of the spear and Meteor. Bit of a jumping out from Dambi now. Has the ult at ready, but is that gonna help too much? We saw the Armageddon from before. I mean, we've seen some good strength from T1 in mid, right? So if you want to try and remove some strong positions, it's not a bad idea to be deploying to try and catch them off guard. You'll use your body to spot some information. It's an idea. But you saw that, the Gravnet as well as the salvos. Refreshable, sure, but Meteor just avoided it. Yeah. I mean, the Gravnet takes a little bit of time to land as well, right? A bit different than a fault line. Deploy from safety. Oh, that's rough for Margaret. And Meteor all the way up in towards the back B heaven, into vents as well. Nice one, Persia. Get back in towards the site for his team. Saturate landed at the feet of Sylvan, but from the shadows, back into safety. T1, slippery as heck. Yeah, 4 versus 4, but 30 seconds to go. This is thrown Nongshim a massive confusion. They've all rotated towards A bar 1 and Persia. I mean, is he going to be able to do anything to stop the plant? They're really taking their time to get in as T1. Meteor has a pit as well, don't forget. This could become quite difficult. And early salvos, I think that's a little bit too early. Very dastardly. It all comes down to Dambi with how he's able to work his judge out from the top of heaven, though. Oh, but still, Meteor and Izu able to mark it down. Ivy's gone, and that's Francis. T1, quick with the adaptations, quick with the round back in, and bringing out the final score, 13-11. The bangers on split still very much in effect. I mean, you talk about a close series, no matter which way you look at it, right? Nongshim certainly gave T1 a run for their money here. We got something new from them as well on Icebox, which, you know, you can pick apart a little bit as well for our teams looking down to our further weeks, but I mean, T1, no matter which way you chop it, they're still a huge contender here. Very, very much so. It was close, but this time it wasn't a full series. That's one thing, one pattern that has been broken. But we cannot deny, you know, this entire discussion without bringing up Meteor. Yeah, I mean, again and again and again, this guy just provides impact upon impact and value. He leaves craters in his wake. And, I mean, why are teams letting Split go through? Nice try, nice try. I mean, to be fair, what else do you let through? Let's be real. Yeah. Nice try. So much going right for T1 right now. Nomshin, nice try, very nice try, and very well played. They were almost able to bring it back close. Yeah, I mean, good credit where credit is due towards Nongshim. I think there's a lot more that we can say, you know, good job, well done on Split today. Even though they, you know, bested RRQ, we forget the second half, right? Yeah, but that said, you know, we're going to toss it back over to Bella with the interview, the winners of T1. 네, 안녕하세요. 어떤 감독님, 그 체인버 레이나, 체인버 레이나 한마디 좀. 어떤 걸?
다들 많이 궁금해하시는데 다들 반응이 체인버 레이나 what? 그거 저희가 일단 체인버를 그 메인 오퍼를 잘 쓴 병철이도 있고 그 태호가 저희가 이 ये ऐसे करके पूरा डायरेक्ट 포함한 픽오프를 बोलो 보시겠지만 बोलो 컨택이 बोलो 한번 더 ऐसे क्यों कर रही है 사람들과 W 킬 한 번 더 밟을 수 있는 पकड़ाओ भाई आराम से खड़े करो वहाँ पे माइक 레이나를 पकड़ाओ फिर 저희가 어비스 한번 시켜봤을 때 되게 괜찮은 포텐셜을 봐서 भाई थोड़ा इंग्लिश 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 Autumn said that, you know, we got the buzz on the chamber up, and we thought that Reina would be a really good counter to go against Teo's. और आप जो सवाल पूछे था उसका इंग्लिश The chamber Reina. Thank you, Autumn. 감사합니다. 그럼 인터뷰는 스택스 선수 만나보겠습니다. T1의 스타 스택스 선수 안녕하세요. 박수 부탁드리겠습니다. Alright, who won? T1 did it again. You ended your 11 full set days today with this win, and this was your first time meeting 농심. So how was that? 오늘 12경기 만에 풀세트의 저주를 이렇게 끊어내고 처음 이렇게 농심을 만나서 승리를 가져가게 됐는데 소감 먼저 부탁드리겠습니다. 뭐 예상했던 대로 확실히 잘하는 팀이기도 하고 색깔이 다른 팀이기도 해서 굉장히 신선했고요. 근데 저희가 풀 세트를 갈 뻔했는데 저희가 조금 실수가 많아서 힘들게 이기지 않았나 싶네요. I mean, you know, they play as much as we expected, and they're a very different style than we normally play, and it was really fresh and awakening in a sense. And we almost went the full set today, but hey, we came out today with the win. All right, you had us all thrown back, everyone with the Autumn's new meta, Reina Chamber. So I want to know more and hear from you about the backstory. 이제 어떤 감독님의 뉴 메타 그 아이스박스 체인버 레이나에 대해서 정말 많은 분들이 이제 물음표를 이렇게 띄워주셨어요. 그거를 좀 스택스 선수한테서 좀 더 자세하게 들어보고 싶습니다. 처음에 휴가를 갔다 오고 나서 아이스박스를 연습을 시작하는데 갑자기 레이나 체인버를 하자는 거예요. 그래서 연습을 진행을 했는데 진짜 너무 IGL로서 너무 힘들더라고요. 처음에는 와 진짜 이걸 어떻게 해야 되냐 이러면서 이제 하고 있다가 이제 그냥 해 임마 이러길래 이제 그냥 했던 것 같아요. I mean, we got back from our master's vacation, and Autumn was like, "Hey, let's try the Chamber Reina." And you know, as an IGL, it was tough, and Autumn said, "Hey, just do it, man." And yeah, that's how that comp came to be. That was a very interesting story. Thank you, Stacks. And we're seeing Waylay a lot, and we saw 농심 play Waylay twice already. And was the counter strat that you prepared different than you expected it to be? Because although you managed the comeback, it took a little longer than expected. 이제 웨이레이가 정말 많은 지역에서 이렇게 좀 보이고 있고 농심은 또 스플릿에서 2번이나 기용을 했어요. 예상했던 그 카운터가 조금 부진했던 그런 이유가 있었을까요? 그런 점들 느낀 게 있었을까요? 그냥 개개인 실수가 많아서 솔직하게 말씀드리면은 오늘은 그냥 스플릿에서 이제 태호 형한테 저희가 절을 해야 되고요. 빠따 맞을 준비해야 됩니다. 그래서 이건 좀 그런 것도 있고 그리고 웨이레이는 별로 안 좋으니까 안 쓰는 게 추천드릴게요. 오, 그럼 이제 T1은 웨이레이를 안 쓴다 이런 건가요? 그럴걸요. 그럴걸요? 아마도? 네, 아마도. And as for Split, I think we all have to, you know, bow down, give a salute to Meteor because he carried us all. And as for Waylay, I recommend not using it because she's just not that good. And I asked him, is T1 not going to use Waylay? And he's like, maybe. So we'll see. That's not a yes or no. And next is Team Secret, Mr. Beast Stacks. What do you have to say to Team Secret? 이제 짐승택 씨. 다음은 팀 시크릿이에요. 좀 한마디 해주실 게 있을까요? 굉장히 개인적으로 제 시베시를 좀 좋아하는데 오늘 경기를 보고 조금 많이 아쉽다라는 생각이 들어서 저희도 그냥 똑같이 이겨드릴 마음입니다. 그럼 겸손하게 이겨드리겠다. 네. I have huge respects for Jesse Vash, and after watching their game today, you know, I'm sorry, but I guess we have to win against you as well. All right, thank you, congrats, Stacks. Thank you for the interview. Thank you. All right, 지금까지 T1의 스택스 선수 인터뷰 만나봤습니다. That's all from the interview. Bye. हैं? ये लड़की नाचती क्यों है पोस्ट इंटरव्यू के बाद? जेसी वाश तो भाई ओजी है. What a guy.
why the Stacks, you know, one of the most experienced players in VCT, especially for Korean Valorant, and he's just still so good, continues to be so good. It doesn't लेकिन matter एसेंशियल टीम होने के बाद भी T1 को ऐसे मारी है, अच्छा है भाई, मतलब still bring his team finally for the first time ever. अच्छा लगता है. A 2-0 score. Yeah, they'll be happy to be able to leave a little bit early today, I'm sure. But, you know, a great interview from Stacks. I always love hearing what he has to say. But this was a great split, you know. We went back and forth before about if Nongshim could turn the split around, but T1 were the ones who got it across the line in the end. Yeah, it was clean as, right, guys? Like, I never had any doubt. Definitely wasn't worried when, you know, Meteor was like 1-7 on the first map. Definitely wasn't worried when they were trailing at the half in this one. I mean, it's T1 masterclass on attack both times, grinding the game all the way back. Especially those last few rounds, they just had Nongshim in the pressure cooker. And unless you are a player that is sat and had to play against that style and being in the game, you don't know how that feels. But when the other team is slowly but surely taking more and more control away from you, denying your information before they finally make that mid to late round call, and you're playing a team that you really respect, that you fear, it's impossible to hold your nerves sometimes, and I really felt like that was the case for Nongshim, unfortunately. Those last few rounds where, you know, you had Francis with the op and they had the judge set up on A, a lot of the times it felt like they even had a lot of players rotated to the right spot, and they just couldn't stop T1. You just can't stop T1, even if you have the read, man. That's the magic of T1, right? It doesn't matter. It doesn't matter if you understand what they're going to do. They're just able to get through your defenses anyway. But Nongshim's attack half was more improved. I want to ask about that. Are you... It was better. Are you satisfied? Yeah, ideas-wise, sure. But I've got to say it, guys. It's time to stop. It's time to retire the Waylay. I've seen enough. No more. I don't want to see Danby a player like one of the best up-and-comers. I don't want to see him go 5-19 again. I don't want to see him go -4, -5 in opening duels. You can do what they're doing with a better agent that he's going to deliver more impact on. And I dare to say that in a 13-11 game, if Danby gets a couple more kills, if Danby gets a couple more openers, that's a dub. I'm not digging the Waylay. There's some interesting ideas, but I just put him on Raze next game, please, for the love of God. Yeah. Big Time, do you agree with this? Because you were like something about Rome building and I don't know. Do you still crumbling, terrible foundations. Like, I think this might be the Nero story. I like the theory that they have, but Danby clearly isn't comfortable on it. I think that's the biggest thing. Compared to the performances he was able to put up on Neon, he's got nowhere near that with the Waylay yet. Now, he could just need more time, or it could just not be the right fit. I wouldn't be shocked if they do end up dropping it after a performance like this. I think after a 2-0 loss like this, you want to change things. You're going to want to adapt. So they might be trying different things. But we'll have to wait till next week to see. Meteor takes on map MVP on this Viper. I was really impressed with him. Meteor he to understands this agent so well. God. Really nice. Such a contrast. God. From map 1, but for sure. A very well deserved map MVP. Yeah, I think he understands how to use the wall cycling and when to pump, when the map pressure comes in, and he can find gaps in the defense, and he's just got that confidence. Not only does he have such a clean read from the game, but he's just confident enough to just walk out A main into like a 3-way crossfire and just be confident he's going to react and hit the shot, and he does it so often. It's ridiculous. Like the kind of play that, like, if I watch my A lurker in like a lower level team do, I'd be like, dude, you are straight trolling the game, but it's Meteor, he's the GOAT, no one can criticize him, you know, I'm just a mere mortal, dude. I mean, we call him the back-to-back Masters champion, player, well-deserved, and you're right, when he just strolled up A ramps and just A main one time, he just walked out A main, took like 2 bullets in the side, just flick one-tapped him, you know? Like, he can do whatever he wants. He can do whatever he wants. He's the best. Which is why he is probably our match MVP. I didn't see how all the votes went. I just know it's pretty unanimous here. There you go. All right, it's Meteor. You know your stuff, Fig. Wow. Yeah, well, I knew you guys picked him. And, I mean, it's got to be Meteor. The thing is, like, one half he just didn't do anything, but he's still just too good. Like the next 3 halves he just dominated, and that's he just existed. It's like rock solid mental, you know. Like most players, they go like 1-9 on Reyna. The series is over for them, but Meteor is just like whatever, you know. Just next half he just recovers it, plays amazing. So it was actually on that note, it was a little bit interesting the debate on who the match MVP was, because different players stepped up at different moments on the 2 maps. Yeah, I thought this was a nice team performance from across T1, where we saw like
the likes of Stax and Sylvan topping the scoreboards in that the first map. Then we see it be players like Meteor, Aizu, different people coming across. I think that's the strength. Aizu, yeah. He is now Aizu. Apologies. Aizu. I'm so sorry, He says Aizu. Aizu. But I think that's what's so good about this T1 team, right? We call them a super team because everybody on this team can go crazy, and I think that showed the strength across their roster today. I do like what Stax was saying in his interview as well. He definitely gave respect to the Nongshim Red Force team, saying it's a fresh play style, they play very differently than most of the teams here in Pacific. I'm inclined to agree. I'm sure you guys agree as well. But also, like you guys said, like Stax also said, maybe Waylay is slightly not the best agent to play on every map, and definitely not for every player. And here we are on the standings. Things are shifting around a little bit. ZETA has finally, gone into the green zone, no longer in the red zone. This is a good sign for them. How are you feeling as we move through closer to playoffs? Yeah, ZETA getting that win is huge. We can see if it ended today, they'd make it through, but of course it doesn't. We got a long way left to go. It's really hard to predict with both of these games today being Group Omega games. It's really hard to kind of decipher who's going to make it through here and get that top 4, but T1 getting out to a clear lead, getting that 2-0, a good round difference, good map difference, ready to propel themselves through the rest of this split. Yeah, I'd agree with that. I think Team Secret have got their work cut out for them now. Very little room for error at this point, going 0-2 and already playing a beatable team in the head-to-head today, and unfortunately going down against ZETA. That's going to be a series that could come back to haunt them. So, look, moving over to Group Alpha, we'll see who's going to start to break away from the pack as well. Big time, did you see who's #1 in Alpha? Just for this moment. Alpha was GE. Yeah. Top of the board, yeah, like, 2-0. We are in a new reality. Difference. Yeah. I mean, I think it's positive signs, right? They had that really good opener, but they have a tough game against Boom later on in the week, as we can see on day 6 there. So things can change because Boom are right there with them at the top of the scoreboard. I mean, yeah, these next 2 days are really going to define how the rest of this group goes. I think 2 kind of shakier Titans, Gen G, PRX could go either way. DFM, कल बहुत हेवी मैच है जेनजी PRX DRX DFM PRX, unless they're going to be playing that double duelist and doing some funky बहुत stuff. heavy Maybe match there could है be some weakness there. Talon RRQ going to be a very important game for both of those teams, and Boom GE, yeah, I think it could go either way. I think that's another one of those like make or break games that you really got to be winning if you're going to be guaranteeing yourself a spot in playoffs. I think all of these matches for these next 2 days today included will continue to be a little bit of a coin flip in terms of predictions for us. Really hard to call, and no matter who we end up picking or predicting, it's really hard to say. We're not going to be surprised if it ends up going the other way, which is why it's so cool. My predictions are terrible. I'm doing terrible. I think I've got like almost nothing right, and every time I like it's my copium, but I'm just like, it's not even my fault. It's not my fault. They should have won. I predicted for DFM. They didn't even show up to play the game. Like, what am I supposed to do? It's the classic. I should have been right. I was right if they did it properly. It's the kids that are wrong. It's the kids in the server. I'm almost 30, and it's these teenagers that just, they're not just frag guys. Yeah. Well, either way, it's really good signs for Pacific. Continues to be good signs for how high level the gameplay is across the board. And with that, we're going to close out for tonight, and tomorrow we're going to have more VCT Pacific action for you. I'm Victoria together with Pilsky and Big Time. Everyone have a great night. See you tomorrow. Adios. Adios. Cruiser has to stay alive as well. And here comes that mid-round call. Sugar Zero trying to stay alive. Gets Jeremy, the star duelist of the Team Secret 2GE with just the pistols. And that is the call for Death to go slaying. Zeta are finding these positions of power and they're holding. Will still be able to regain his... अपना हो गया गाइस वॉच पार्टी का समापन यहीं पे अपन पहले पूछते हैं अपने वो भाड़ू दोस्त को कि अवे आउट खेलेगा कि नहीं अभी ठीक है जो कि मेरे को लगता नहीं है खेलेगा मैं एक बार वैलो ऑन करके देखता हूँ वो वैलो में होता है तो पता नहीं साला आजकल इंस्टा यूज नहीं कर रहा है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं
हम्म। V25 Act 2 Act 2 popcorn. नहीं, गेम में तो है नहीं वो। गेम में नहीं है, इसको इधर ही कॉल करके पूछना पड़ेगा। एकदम भाड़ू है भाई, भाड़ू। आ रहा है क्या? हाँ, रिंग तो हो रहा है। रिंग हो रहा है, उठा नहीं रहा है साला काम। हम्म। इतना बड़ा घंटू है ना। हम्म। क्या कर रहे हैं गाइस? अपने को वो करना पड़ेगा, फिर वैलो खेलना पड़ेगा। एक सेकंड रुको। आज 100 थीव्स का है। अबे कल कौन जीता भाई? मैच फाउंड। सेंटिनल्स का मैच था ना कल रात को, मतलब आज सुबह 5 बजे।
चलो थैंक गॉड डॉज हो गया. Match found. Mullah. Nothing stays hidden from me. Nothing. क्या है रेना दो इनिशिएटर पे. Let's see what I have to use. Pictures of their children. दिक्कत तो हो सकती है. Way too dark. Reloading. What the fuck did he say? They respect it. Cover going out. Shadows traveling. Here. Nice. इधर एक था. Here. Head. Someone's mid. Reload him. Carrier's down. Spike down. सोवा और ये पे थे. ये ट्री. साइट आ जाओ ना भाई. हाँ. एक इधर. I have retrieved the spike. जबरदस्ती 3v2 में एडवांटेज ले रहा हूँ. Planted the spike. Last player standing. सोवा लो है. 100. Camera taken out. One enemy remaining. अरे नाइस ट्राई. नहीं जाना था भाई बाहर. वो स्पैम थोड़ी कर देता. हाँ करेक्ट. वो स्पैम नहीं हो सकता था ना घोस्ट से. केजे हाफ शील्ड ली थी. उसको पहले भी हेड दिया था. वो करते हैं क्रेजी वापस से. बाय हो गया था. सॉरी प्लांट हो गया था. बाय करें. नहीं. मिड आते हैं ना सारे. मिड चलते हैं. यहाँ पे एक पिक लेगा एक बंदा. तो सारे इसको पहले क्या स्मोक कर रहा हूँ. नहीं स्मोक में मारते हैं उसे. मेरे पास.
Spike down B. Last player standing. Andy. Nice try, nice try. Their clove returns from death, yet natural balance is preserved. भाई मार्शल से डैमेज 45 कैसे होता है? क्या करना है? बी जाना है, ए जाना है? स्प्लिट करते हैं। बाय राउंड में क्यों स्प्लिट करना है भाई? मैं फ्लैश करता हूँ। बाय राउंड पे स्प्लिट खेलते हैं। भाई गन मिल जाएगी ना, अपना स्प्लिट वाला बंदा मर गया तो उनको। Bring them down. We found one. Cover going out. Here. Time to jump. Decoy. Find you. Wow, my eyes are down. पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। ठीक है। पीछे हो। अरे वो पुश करे जा रहे Spike भाई। down B. Put down. My Last ultimate is player ready. standing. पुश हो रहा है तेरे पे करने का। One enemy remaining. 3 out of 5. अल्ट मार यहीं है ब्रीच बी पे। Where is everyone hiding? अरे नाइस, प्लान कर दे। I have 30 retrieved the seconds spike. left. I planted the spike. एंटी I'll pick them apart. You clean up whatever's left. Reloading. हमें अटैकिंग राउंड में साथ में पुश करना चाहिए था जब हमारे पास गन्स थी। बहुत स्लो खेला हमने। स्लो खेलो। फास्ट पुश करके कोई पॉइंट नहीं वो है। कर नहीं सबके पास आ जाना। दो इनिशिएटर्स हैं पे, इनको लेने के लिए कोई मिड स्मोक कर रहा हूँ। शेड नहीं देना चाहिए था फिर मुझे। Back soon. Cover going out. बी मेन क्या है देखो। Camera taken out. रेना इधर था, सोवा भी इधर है। ब्रो तू पीक तो लेके रख ब्रो, अगर कंट्रोल रख रहा है तो। अब है केजे भी इधर है। अरे योरू भाई तोड़। Nowhere to run. Last player standing. जीजी टीम मिली है भाई। फिनिक्स भाई कुछ माइक वाइक है आप पे? The MVP is mine. Let's do this. हम लोग इतना स्लो खेल क्यों रहे हैं वैसे, मतलब रीजन? क्योंकि अपने ड्यूलिस्ट पे माइक नहीं है, कहाँ पे क्या चाहिए कुछ पता नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं घुस सकते। बट वो अपना काम खुद तो कर सकते हैं ना, मतलब ड्यूलिस्ट थोड़ी कॉल देगा यूटिलिटी का। मैं यूटिल डाल दूंगा, घुस जाओ। ठीक है देखो फास्ट करके क्या मिलता है। Bring them down. Time to jump. They're blinded. I'll handle this. Blinding. Where are you? साइबर टेबल प्लांट है। यप आ रहा। Planted the spike. मेरे पे गन नहीं है तो देख के।
तीनों हेवन पाए करते यार भाई भाई है ही नहीं तो कहाँ से करूँगा? टाइम निकाल सकते हो। Last player standing. एक साइट इजी मिल गई थी, गन्स होती तो निकल जाता राउंड। ये वाला पिक लेना ही नहीं था ब्रो, ये वाला जो भी लिया। ठीक है यार, वो आई गॉट इट, नहीं लेना चाहिए था। फिनिक्स सबसे पहले तो योरू गया था, अल्ट विंग गया था, बट योरू अल्ट पे था, तो योरू एक लेके मारा था। ठीक है, वो योरू ड्यूलिस्ट का चलो ठीक है, बट 4v3 था तो वहां पे तो मारो ना बहनचोद, एक किल पे ज्ञान चोद रहे हो। कौन? रुक जा। Will rotate. Omen, will rotate. अच्छा, साइड क्लियर कर दिया है उसने। आजा। साइड पे कोई है? केजे रहेगी ना, केजे की यूटिलिटी। स्मोक जाने वाला है। मैं देख रहा हूँ, जा। जाओ मैन, तू जा, प्लांट कर। Last player standing. Spike down B. किसका वेट कर रहा हूँ मैं ब्रो? तू तो निकलेगा साइट। अरे साइट क्लियर है, नहीं है पता नहीं। अपना बंदा साइट पे था, तू जा तो। That makes 3. तू जाएगा तब ना उसको सपोर्ट मिलेगा भाई। तू ये इधर मंडराएगा तो कहाँ से होगा? There are 5 of them or 50 of them. Let's go. Reloading. Endless. Reloading. Reloading. केजे है इधर। My ult is ready. एक ट्री है एक। ब्रीच है इधर। केजे साइट है। और तो ये ट्री था। Enemy spotted mid. So what tree है अभी भी? हाँ ये अभी भी इधर ही है, राइट साइड। सोवा ट्री है। Thirty seconds left. एक मिड है। Last player standing. और एक ट्री है। वो पीछे है। एक ही नहीं है बहन छोड़। I have the spike. Bring them down. 10 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. Had your fun. My नाइस turn. ट्राई यार। ना बज रहा है, बजने दो। Their teeth will chatter in the cold and dark.
क्या करना है? मिड जा रहे हो? Where to set up shop? कुछ भी करो, अपना अपना जाओ, मर जाओ भाई 4 राउंड खत्म होता है कि नहीं अपने टिल्ट हो जाते हैं, कहाँ से खेलोगे भाई? बंदे भाई कॉल ही चूतिया है। जो राउंड पुश किया उस टाइम राउंड बाई नहीं किया तुमने। उस बाई नहीं था तो मैं कहाँ से बाई करता? सेव किए हुए हैं भाई तुमने, क्या क्या भाई नहीं था? भाई 2100 रुपए। हाँ तो भाई मैं फॉर हाफ आर्मर के बाद 2100 थे। बैंडल हाफ आर्मर आ जाता है। 80 ऊपर लॉक कूदा भाई फीनिक्स। Last player standing. 140 Hadi, again. भाई मेरे पे उस राउंड 3000 थे और मैंने शेरिफ के बाद हाफ शील्ड बाय करने के उसमें किया था, ठीक है? 800 और तो हाँ शेरिफ हाफ शील्ड में कितना? 1200, तो भाई 1800 गए। 3000 थे टोटल क्रेडिट उस टाइम पे। 2100 सेव थे तेरे पास, मैंने देखा था। क्योंकि मैंने प्लान किया था तो 300 तो मिलेंगे। अच्छा Reloading. W के क्लोज फिंगर से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ कहीं कुछ हो रहा है। I'll find you. Here. Bring them down. Cutting through. रुक जा काफी आ चुके हैं। रोटेट कर सकते हैं। Reloading. Scouts down. My own. Bring them down. Have the spike. Spike down A. Here. Spike planted. Heaven both. Where are you? Catch them. Nightmare, take them! One enemy remaining. Last player standing. नहीं यार 86 था ब्रीच। नाइस ट्राई। आप एम लैब्स करो पहले। बोल भी कौन रहा है, हैं? Y'all better keep up. भाई इनसे माइक खुलती नहीं है भाई, ऊपर से ऑडेसिटी देखो भाई, जो मार रहा है उसी को उल्टा सीधा बोलो। टूटी है भाई। और शुरुआत में खोला था इसने, फिनिक्स ने माइक हसमुल्ला बोल के, फिर नहीं खुल रहा है इससे माइक। बकचोदी कराने के लिए पूरी माइक खोलते हैं ये, वही बच्चे रहते हैं भूसड़ी वाले। वो तो फिनिक्स ने नहीं, ओमेन ने खोला था। नहीं वो मैं बोला था ओमेन बोला था क्या? हाँ घुस रहा हूँ ना। Bring them down. Cutting through. मैं जेनी फ्लैश कर रहा हूँ। Bring them down. लेफ्ट फ्लैश है। They're blind with fear. Gotcha. साइफर प्लांट है तेरे का। The hunt begins. हो गया ना? Planted the spike. Enemy spotted. Time to jump. अरे मिड है एक मिड है। बताता तो यूरू। अच्छा ये माइक ही नहीं है इसके पास। You should run. एक ऊपर है। Decoy. ओमन अल्ट कैंसिल कर दे, अल्ट कैंसिल कर ले। नाइस ट्राई। टाइम नहीं है। चेक कर कैम से चेक कर। नहीं कर रहा डिफ्यूज, नहीं कर रहा। नाइस। Anyone else? साला कैम भी फ्लैश्ड ऑफ है। जो बोल रहा है वो रात को दिखा देगा एम लैब्स नहीं करके भी। अरे समय आएगा। अभी 2 महीने ही एम लैब्स करके सेम लेवल पे पहुंच चुका हूँ और 2 महीने करेंगे फिर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरा रैंक दिखा देगा फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने से क्या होगा? Reloading. बोलने से ना मेरा रैंक बढ़ेगा ना कुछ। भाई 2 महीने में इतना हो गया है कि डायमंड टू डायमंड 1 में डिफरेंशिएट आ गया, एक ही रैंक का डिफरेंट है। बस और 2 महीने करेंगे तो वो एसेंडेंट भी चले जाएंगे।
फिर पता चलेगा कि कौन एम लैब्स किया है कौन नहीं किया है। Where is everyone hiding? You had your fun. My turn. One enemy remaining. ट्री देखो मैं जाऊँ तो एसेंडेंट। अरे मैंने कब रोका है? मैंने तेरे को बोला है कि नहीं नहीं राइंस मत जा मत जा मत जा। मैंने बोला है क्या जाओ? I knew your every move. जाओ। मैंने कब मना किया भाई? मैंने ना तेरे को पहले रोका था जब मैं गोल्ड में था तू डायमंड में था कि भाई मत जा। और अब तो प्लैट डायमंड भी हुआ फिर हम डायमंड हो गए अब तो। घुसो भाई एडमिशन माँ की चूत वैसे भी क्या ही होगा हारेंगे। घुस जाओ और क्या। कुछ नहीं भाई घुस जा भाई तू बोल बस। कर ले एसेंडेंट भाई फिर तुम नहीं खेल पाएगा ना मेरे साथ। अरे वो तो भाई कॉम्पिटिटिव मोड में फिर क्यों करो तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली तो खेलो मतलब। अरे मैं डाउन हो रहा हूं अब तो Bring them down. Nowhere to run. Cutting through. Decoy. Nice. Where are you? Gen flash. Gen पे एक है। सोवा निकलते Fake teleport. फिनिक्स तू कंट्रोल रख वहाँ। Back soon. निकल लो भी निकल लो। क्यों मिड पी क्यों लेना है जब बी जाने का कॉल आया है? ये बी मैन देख। Last player standing. Spike down. Attacker spawn. नाइस ट्राई। Off your feet. मैं नहीं खेल कर भी तो डायमंड ही हूँ। आप खेल के आए हो डायमंड। हम डेली खेलने लगे तो हो गया। 3-4 स्पॉट तो खेलो भाई। मैंने कब मना किया? और मैं भी कौन सा हर दिन वैलो खेल रहा हूँ। वैलो खेल भी रहा तो 2 मैच खेल रहा हूँ। जाके मेरे स्टैट्स देख ले इसमें कितना खेला हूँ। जितना तू खेला होगा उतना ही मैं खेला हूँ। जाके देख ले। क्योंकि मैंने 2 महीने में 3 स्टोरी मोड गेम्स खत्म किए तो मेरा स्टोरी मोड गेम्स का वो बढ़ गया है। एंड मैं भी वैलो खेलना आधा छोड़ चुका हूँ। एंट्री कभी करी नहीं। एक राउंड बस घुसा अल्ट लेके। खेलो। मैंने कब मना किया? अगर मेरे ऐसा खेल का आप एसेंडेंट पहुंच पाओगे तो खेलो। देखते हैं मैं भी कितना पहुंचते हो एसेंडेंट। तेरी बहन को होगा थोड़ा। मेरी बहन को नहीं है। टाइप कर लो रे टाइप कर। इधर आ रहे। बी स्मोक कर। ओके कर रहा हूं। Careful now. We found one. Bring a kill. Nice. Found. 30 लो Shadows traveling. सोवा मेन है अभी भी। नहीं साइड घुस गया। एजे का पता है क्या? नहीं। One enemy remaining. Last player standing. मेन है। लेन आ चुका होगा। हाँ लेना। नाइस ट्राई। एजे का लगा ही था मेन ही था मेरे को। Move in after I strike. That's when they're weak. Phoenix bro, spend some money, buy a mic bro. How are you playing Valorant without mic? भाई हाँ भाई इनका तो एक समझ नहीं आता है। ये लोग मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं विदाउट माइक कैसे खेल लेते हैं भाई। इतना गरीब है तू माइक नहीं है तेरे पास। भाई क्या कर रहा है बेचारा। भाई इनको कोई मतलब लैपटॉप मम्मी भाई एचपी का लैपटॉप शायद फिर ये मम्मी एचपी का लैपटॉप खरीद के दिए हैं पढ़ने के लिए। लोग साला वैलो खेलेंगे तो यही होगा ना। एक हो सकता है। संभाल के। हाँ रोटेशन होगा। रोटेट करेंगे आई गेस।
ब्रीच है, मैंने वॉक इन करा। हाँ पीछे गया वो। हाँ वो पीछे गया। 67 लो है। ब्रीच 1 HP है, ठीक है। ये ब्रीच 1 HP है। Spike planted. Reloading. Enemy spotted. A. Last player standing. Three. Match point. Reloading. If one negotiates the rest This goes here. That goes there. Wow, this is a nice spot. Engineers down. ये सोवा इधर है। Tripwire destroyed. My camera is destroyed. Gun here. भी आ रहा हूँ। नाइस वन साइफर। Breach. अरे साइड पे बंदे हैं क्या? हाँ एक रेना है। दोनों है भाई, क्लोव भी है। दोनों है। बताता तो भाई, हमें लगा ये रेना का पता है मेरे को। आ गया, हसमुल्ला का माइक आ गया। Spike planted. Last player standing. भाई इन्फो की वजह से पता ही नहीं था बंदे साइड पे यार, बताता साइबर। अरे भाई साले ये डूलिश 25 माइनस दे दिया भाई। अभी मेरे को अच्छे से खेलना पड़ेगा क्या +20 करने के लिए। 45 माइनस आया है लास्ट 2 मैचेस में। शिट हैवी गेम प्ले चाहिए इस मैच में। हैवी गेम प्ले। कौन से लॉबी की मतलब लॉबी के प्लेयर्स थे? ये तो सारे डायमंड थे। Match found. इतना बज क्यों रहा था? अब P3। हाँ तो होगा। इसमें क्या है? मुझे पता है मेरा एम कितना है, मुझे पता है मेरा गेम कैसा है। ठीक है, होगा तो होने दो भाई। भाई बहुत बुरा खेला तू, कुछ नया बोलो सीपीएस गेमिंग जी। सीपीएस गेमिंग भाई आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है भाई। चैनल पे आप नए हो तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है, कैसे हो? हाँ चलो, ये भी एक माइनस नेगेटिव मैच हो रहा है, लेकिन इसमें P3 नहीं जाऊंगा। ये तो शील्ड है ना, शील्ड एक्टिवेटेड है तो जाऊंगा तो नहीं नेगेटिव में। क्या बोल रहे हो, क्या खेलूं इसमें? कुछ मजा नहीं गेम प्ले में तो सीपीएस भाई ओके, इट्स ओके। मजा नहीं है तो चलो, ये तो जीजी हो रहा है। Select your agent. इसलिए नो सब ओके, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, जैसी आपकी मर्जी। नो वरीज सीपीएस भाई, नो one's forcing you to sub. No one can hold their breath forever. अरे ये वापस सामने आया है क्या डेविल के नसमुल्ला? लग सामने आया है क्या?
bunch of Zarko want to fight us. They must really want to die. पीक रैंक क्या है भाई? प्लास्टिक है भाई. स्ट्रीम स्नाइप होगा अब. हाँ तो करो भाई स्ट्रीम स्नाइप, दम है तो. स्ट्रीम स्नाइप होगा. ओके वही लग रहा था गेम प्ले देख के. ओके अर्नब भाई वेलकम बैक. क्या हाल है? करो भाई स्ट्रीम स्नाइप. Might be B. B plant. Yeah, B planting. Spike planted. Enemy down. Enemy spotted B. Last player लोग standing. मैं नहीं हूँ सामने. हाँ तो जो भी है. You fought well. Barrier created. अरे नाइस ट्राई. अरे करने तो दे पहले. अरे Reyna, time to hunt. और सीपीएस भाई क्या हाल है? कैसे आज लंच में क्या खाए हैं बताएं. अमन भाई आप भी क्या खाए? यार नो भाई सब क्या क्या खाए हो बताओ यार. चल स्क्रीन नहीं दिख रही. मैंने स्क्रीन हटाया था ब्रो. स्क्रीन हटाया था. नीरज पेप्सू दिल में बसे हैं. मिड बी पे भी साउंड. बी पे सोवा वाइपर. ये तो वॉल ऑन करेगा. हाँ ये ब्लांड. Spike planted. राइट ले रहे हो इधर. Toxins going up. रिस्की मार. Last player standing. मैंने तो अभी जस्ट 3 पैकेट मैगी खाई. 3 पैकेट. मैं रोटी चिकन फ्राई खाया. आपने भाई मेरा तो आज वेज वाला डे है तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया. दूध ओट्स वही ठीक है. डरता है क्या करने से स्नाइप फिर भी हेड मारना? देखो डरता तो मैं नहीं हूँ भाई. RyuK भाई वाइपर यस. एस्ट्रा खेलने का मन नहीं था. या एस्ट्रा इस मैप में इतना कुछ खास नहीं. कहाँ कौन क्या खेल रहा है बता दो भाई. एक खेल रहा है. भी एक बंदा आ जाओ अगर हो सके तो. मैं आ रहा हूँ. कीड़े पे एक मिनट देख लेना भाई. हाँ. बी आ रहे. ये मिड खाली है. मिड पे हो सकता है. बी पे भगा दो. एक पे ठोक. कर रहा हूँ. हो रहा है प्लांट हो रहा है शायद अभी. ऐसे नहीं. हाँ वो घुस रहे हैं अभी. भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा. लगे अम्प्रेसा ऐसा कुछ था ना. शॉट. Spike planted. जज शॉट में क्या शॉट बोल रहा हूँ. अरे भाई हेवी टीपी किया भाई. ये तो गन तो ले ले पापा. अरे भाई गन यहाँ से कैसे मारेगा भाई. भाई एक भी आओ ना.
3A पे खेल के क्या होगा? एक साइड पुश करना है तो बोलो, कर सकते। बाय कर रहे हो सेव कर रहे हो बताओ पहले। सेव सेव। हाफ बाय Time to jump. Enemy spotted. B. ये बैटर पास लिया है। यार अब रोक ही नहीं पा रहे हम। है ही नहीं कोई Last एजेंट player रोकने standing. लायक। Spike planted. Flawless. रोकेंगे कहाँ से? मैं वॉल कर सकता हूँ बट वो तोड़ देंगे। They don't have a single life एजेंट ही worth नहीं saving. रोकने का। वाइपर बोल रहा है एजेंट ही नहीं रोकने। यहाँ पे वॉल कर दे। हाँ जो भाई। भी फटी गांड वाला पाइल होके आएगा। हाँ भाई फिर उसकी मार। सेज इधर वॉल मत कर फिर। सेज कहीं और खेल। अरे इस राउंड भी आएंगे मैं रोक लूंगा मेरी गारंटी है बस मिड देख। इन्फो दे बस 4 लोग भी हैं जो इस बार आएंगे। बी पे साउंड है बी पे बी के बाहर। Poison orb emitting. पे एक लौंडा। Poison's off. बाय लेफ्ट टेक। Toxins going up. You will not kill my हाँ। allies. पीछे आ जा। Toxin screen down. पर वॉल उतार दे। पीछे आऊंगा ना तो प्लांट हो जाएगा। Copy killed. वाइपर वॉल चढ़ा दे तो वापस। Last player standing. ब्लाइंड में मारा देखा किसी ने? देखा भाई इतनी माल बनी थी मैगी अभी तक उठ नहीं पा रहा जगह से। उसे आलस कहते हैं आलस। फुल ब्लाइंड में मारा भाई तुझे। अर्नब भाई उसे आलस कहते हैं। ये तो एक काम करते हैं सुनो बी छोड़ दो पूरा छोड़ दो बैंड छोड़ अपने पास अपने अल्टरनेट रिटेक हो जाएंगे। Let's start this party. योर उस साइड मत खेल भाई। बी 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 मेरे अल्टी में ऐड करने बी वाला। आ रहे। Toxins going up. Reloading. प्राइम वॉल प्ले। Reloading. मेरा गन लेगा तो ले ले, उठाएगा तो उठा दो। One enemy remaining. एक फ्लैश जा रहा है। पीछे ऊपर राइट ऊपर ऊपर यस पट्टे के 80 मैं नहीं कर रहा हट। मेरे ऊपर आगे थ्रो कर दिया 80 हिल कर लेगा। ये भागेगा ना तो तू वर्ल्ड करियो ठीक है ये जाके। कैसा मारा उसने वॉल के थ्रू? किसने वॉल के थ्रू कहाँ मारा उसने? We have come back from worse. Let's go. सही स्कोर चल लिया है। रेस गलियारे में फायर इन द होल। यूं ही पहला बैठ तो दिखेगा उसकी मार। कर दो तो साले भाग जाते हैं। अरे नहीं हाँ एक मर्डर करके भाग जाऊंगा। I'm coming for you, Sabine. यहाँ खड़े रहता हूँ ठीक है। तू लड़ाई करेगा। मैं स्पॉटिंग करा। You want to play? Let's play. मिड देखना भाई पर एक जगह पे। अरे ड्रोन तोड़ भाई चल इसको तोड़। Poison orb emitting. एक कहां? Poison's off.
मिड पे ऑफ हो सकती है। मिड पे ही ऑफ है, देख के मैं स्मोक कर दूंगा। रेना फ्लैश दे रहा, फ्लैश दिया, अरे वो फ्लैश दिया। ट्यूब चढ़ गया भाई, किचन आ गया, किचन। शट। ठीक है छोड़ दो, किचन आने दो उसे। किचन है। Welcome to my world. कहां पे ये हुआ है भाई? ये छोड़े क्यों? आ लो मेरे पास वाइपर की गांड पे अल्ट को बहन को यही करते रहे। से आ रहा है। Enemy spotted mid. अकेला चौधरी। मेरे पास आ वाइपर। स्मोक के थ्रू शूट करियो, वाइपर ठोकूंगा। वाइपर पे बॉडी ब्लॉक करूंगा। वाइपर यहाँ पे, शूट मी, कीप शूटिंग। Last player standing. ऊपर से मेरे को शूट कर दिया। ना नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। भाई एक ट्यूब खेल लो ना यार। Pick something nice to kill them with. It's the least we can. अभी तो एक राउंड जीते भाई, कौन किसको थ्रो करना है? क्या बाय करना है? इको करना है? तेरे बाय नहीं है। बॉल कर ऐसे ट्यूब में, बॉल कर ट्यूब में नहीं आएगा। ठीक है बाय तो दे दो भाई, वॉल तो मैं खरीद लूंगा। है कुछ? नहीं थोड़ा इको करना हूं मैं भी सेम नहीं आएगा। इस राउंड नहीं वेस्ट करना, मैं इको है तो। Spike down A. Reloading for you. चेंबर लेफ्ट साइड ही है। Reloading. Poison orb emitted. ए भाई यार कैंपर है भाई साले। ए जा रहे, बी जा रहे। ए आई गेस, Poison's off. क्योंकि ए पे स्पाइक ड्रॉप होता है ना। रेना ने मारा एक को। हाँ ए प्लांटिंग। Spike planted. ये ऊपर गए। हाँ ऊपर रैम्स पे तेरे पे एसएच। Last player standing. भाई VCT खेल रहे हैं क्या बहन के लोड़े? I want their life, not yours. भारी लेवल पे। रेज का सोवा का ड्रोन तोड़ दे इस बार। तोड़ ही रहा हूं। हाँ इस बार पक्का तोड़ दे, मैं बहुत आगे जाके पुश करके टीपी आउट करूंगा। जल्दी टीपी Let's go. मेरा टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ पे 7 सेकंड। The hunt begins. मिड साउंड है क्या? इसने जिगल कर। मिड अरे मिड पे अरे घुस गया। अंडर ट्यूब घुसा है। एक और वेट कर रहा था। भाई घुस के मार रहा है, छोड़ो। अंडर टू Toxins You going will up. not kill my ally. ये बी मेन पे रेज हुआ है। Toxin screen down. फ्लैश कर रहा लेफ्ट साइड। एक ऊपर है, ऊपर। नहीं दोनों मेरे को देख रहे हैं भाई, क्या है? चारों उधर है क्या? हट में 3 दिखे मेरे को, 3। सेज को वॉल। रुक जा। Spike planted. Last player standing. अरे मिड से और सोवा एक अंदर। Put down. Prepare yourselves. भाई वो Fight चेंबर ना once again. भाग के आता है और बी जाता है, जैसे उसके बाप का मैप है। इतना साला कैसे? हार्ड है। पैसे नहीं है, ई को कर लो। ए पुश करते हैं बहन, तो पीछे से ट्रेन बना के जाके चल। I'll cut.
Brand shoot. Last player standing. Don't stop fighting. You must keep going, even if you're the only one. ट्यूब वॉल का चलिए देख ले तू किचन में जा रहा हूँ यहाँ पे भाई मैं भी खेल रहा हूँ भाई कौन आता है ए पे डार्ट है एक एयर भागो ए छोड़ ए पे साउंड है दो लोग किचन देखो ना कोई है ए पे है भाई ड्रोन छोड़ देगा कोई मेरी मौत हो जाएगी Toxins going up. I'll return. चारों इधर है Spike down A. भाई है और जिंदा रहे बस छोड़ दे जिंदा रहे बोलो उसका ध्यान बस 120 चेंबर लो है भाई Stealing sight. Last player standing. भाई इतना कैसे वेट करूं भाई One enemy remaining. Grenade! उसको ऊपर चढ़ना 30 पड़ेगा seconds left. लेने के लिए 30 HP है मार सकते मार Satchel out. Satchel out. Spike planted. नाइस ये शोभा को एग्जैक्ट पोजीशन पता है ये भी क्रेजी खेल रहा है लौंडा Clutch. Don't mess with this Bayana. Last round in the half. We can't take anything with us after this. तो गाय चाहिए तो बोलो मैं Anyone have funds to spare? Thank you. तेज भैया पीछे के साफ कर दिया Breathe deep. मैं ट्यूब वॉल कर देता हूँ You want to play? Let's play. ए पे वेट आ रहे Toxins going up. भाई तेरा वॉल सेज मेरे को क्या पता भाई वॉल तो इंटैक्ट है Toxin screen down. Get out of here. My ult's ready. Toxins going up. Nowhere to run. Toxins Last player standing. प्लांट हो रहा है टोवा इस तरफ है इधर और रेना इधर था वाइपर का पता नहीं Precision kill. अल्टा तेरे पे वाह बता कहाँ रेना साइड पे था Switching sides. I'll choke their sight. सुनो बी पे अच्छा खासा एंट्री हो सकता है अपन क्लीन डोर लिस्ट है फ्लैश वगैरह बहुत है सुन योर यहाँ पे टीपी डाल के फ्लैश टीपी कर ठीक है भाई बी प्लांट नहीं कर पाएंगे भाई बी प्लांट नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे आओ सेज का वॉल है कैसे नहीं कर पाएंगे मेरा भी वॉल है क्यों नहीं कर पाएंगे आओ यूरू भाई साथ आ जाओ मैं यहाँ पे आऊंगा और पीछे से ए एंड बी करूँगा 2 बार कर सकता है तीसरी बार तेरा टीपी एक्सपेक्ट करेंगे वो लोग पहले बता रहा हूँ हाँ तो बार बी का प्लान तो कोई दे इसको देना मेरे को
Enemy spotted. मारो loaded. 75 Grenade. Toxins going up. भाई बैकअप थोड़ा सा Spike ये down. रुको रुको B. रुको स्पॉन में एटलीस्ट 3 बंदे वेट 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 B. I have the spike. भाई हील किसको दिया ब्रो तू? Toxin screen down. पहले ट्राई करता हूँ Last player standing. Toxins going up. Toxin screen down. अभिषेक दासगुप्ता जी, आपका मेरे स्ट्रीम पर स्वागत है भाई। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है भाई, कैसे हो? साथ चल लो भाई, साथ चल लो। बहुत अच्छा एजेंट सिलेक्शन किए हो तो साथ चल लो। I want to see you crawl. यहाँ पे जाओ घुसो। Toxins going up. अरे 130 130 भाई कटवा साइड का क्या हो रखा है? रुक जाओ वालों। Last player standing. बढ़िया एंट्री कर रहे हो Match ब्रो। point. अरे कोई नहीं हो सकता भाई, किसी की कोई गलती नहीं है, लोग बेटर खेल रहे हैं। चलो चलो मैच चल के खत्म करते हैं, जो अगला खेलेंगे। अब अगर हर चीज़ अच्छी भी कर लेंगे तो भी टैप दबा के देख लो एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों आ रहा है। एजेंट सिलेक्शन ईगो में लेंगे तो क्या ही होगा। एक्सक्यूज बना रहे हो, बेटर है वो। अच्छा Enemy spotted. ये देख mid. ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के अंदर है। एजेंट पे क्या है? Last player standing. Spike down mid. Rest. वाह भाई हेडशॉट, चलो जी। Defenders win. हाँ भाई, कुछ आप बोल रहे थे? हाँ भाई, कुछ बोल रहे थे आप भाई? हाँ भाई, खुद गए तो आप तो। हाँ मतलब फिर आगे? कुछ नहीं भाई, इसलिए बात नहीं करते। अच्छा हाँ अच्छा, फिर आगे? एक नंबर का नहीं है भाई तू। आगे चूतिया है वो। ठीक है, आगे फ्रेंड का यूट्यूब। आगे
हाँ टाइनी ऑन वाईटी जी, आपका मेरे स्ट्रीम पर स्वागत है भाई। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नुबड़ा ओके, थैंक यू। रो मत भाई, सॉरी। अच्छा आप वही थे क्या? नहीं भाई मैं रो नहीं रहा था भाई, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा था। तो जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं 100 to 1 बैकवर्ड्स काउंट करता हूँ, वरना फिर सामने वाले की गांड टूट जाएगी ना, इसलिए मैं रो नहीं रहा था भाई। मैं बस वो 100 to 1 बैकवर्ड्स काउंट कर रहा था। वो जब तक 100 to 1 आएगा नहीं तब तक मैं एक अपने मुंह से शब्द नहीं निकालूंगा जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो वो आप सोचे कि मैं आपको कुछ नहीं बोला तो आप डर गए, मतलब मैं डर गया क्या? ऐसा गलती ना करो भाई। पहली बात तो आप जिस स्टेट में हैं, जिस पोजीशन पे हैं और मैं जहाँ पे हूँ भाई, बहुत डिफरेंस है भाई। तभी आप उधर हो मैं इधर हूँ। लम्हा हो घंटा, अच्छा ओके ठीक है भाई। घंटा आप टाइनी ऑन वाईटी हो ना, तो शायद टाइनी ही हो गया आप। छोटे ही रहो, हमारे जैसे बन नहीं पाओगे कभी। बन सकते नहीं हो, बन पाओगे क्या? बन सकते नहीं हो कभी आप। कोई बात नहीं, कोशिश करो। लव यू। मेरी तरफ से तो भाई मैंने कभी आपको हेट दिया नहीं, ना वो पहले वाले मैच में दिया था ना सेकंड मैच में। बस आप दूसरे टीममेट को गाली दे रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि ऑडेसिटी क्या है वो जो भी। ये मैं पिछले मैच में तो आपको मैं कुछ भी नहीं बोला, आप गाली दे रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरे तरफ से हमेशा प्यार है भाई, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं होता मेरे भाई। आप हो गए भाई, आप खेल रहे हो अपने मम्मी के दिए हुए या पापा के दिए हुए डिवाइस में, ठीक है खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है हम कहाँ पे हैं। ये वाला भी हारे क्या? 13 हाँ मैं 815 नहीं हो सकता। यस यस टैनी ऑन वाईटी जी, 815 नहीं हो सकते आप। मतलब आप तो इतू से हो यार, आपसे क्या ही मतलब, समझ रहे हो? अब मेरे को जो मैं जहाँ पे जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, या मैंने जो हासिल कर लिया आप वो भी कभी कर नहीं सकते। तो यू नो बजो बिकॉज मेरे को पता है मेरा एम कैसा है, मेरे को पता है मैं कितने को कैसे ऐसे ऐसे मसल सकता हूँ, समझ रहे हो? मेरे को पता है वो। तो आई डोंट नीड गाइज लाइक यू टू नो सपोर्ट और शो ओ माय गॉड क्या खेलता है। आई डोंट नीड और योर ऑल ऑफ दिस। आई नो व्हाट आई एम एंड बस आप लोग रहो इनसिक्योरिटी में भाई। 2 मैच अच्छा खेल लिए, 2 मैच नहीं एक्चुअली 1 मैच, क्योंकि दूसरे वाले मैच तो हम हमारे साथ ही पी लेते। मेरे को जितना याद आ रहा है आप हमारे साथ ही थे। यस अब हमारे साथ ही पी लेते भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका भी मैं देख ही ले रहा हूँ 10-15 ऑन ड्यू लिस्ट। इस मैच में कितना कर लिए भाई? 12-10। चलो इस मैच में पॉजिटिव केडी है, चलो ठीक है। पॉजिटिव केडी है इस मैच में भाई। 10-15। इकॉन रेटिंग 49 का है। कैन नेवर भी भाई, यू कैन नेवर बी मी, यू कैन नेवर भाई। आप टाइनी ऑन वाईटी ना, आप अपना नाम जस्टिफाई कर रहे हो भाई बढ़िया सा। एटलीस्ट मैं खराब खेल के किसी दूसरे को तो गाली तो नहीं दे रहा भाई। आप जैसे लोग ये आईजीसी को आज यहीं पे यही पोजीशन पे पहुंचाए हो। आप जैसे लोग ही नो, एक वाइट शर्ट पे एक ब्लैक डॉट होता है तो पूरा वाइट शर्ट खराब दिखती है ना, तो आप लोग वैसे हो आईजीसी के लिए। उस मैच आई स्टॉप्ड प्लेइंग। अच्छा हाँ ओके मान लिया भाई, मान लिया ठीक है, मान लिया। एटलीस्ट मैं गाली तो नहीं दे रहा किसी को भाई, ना उसमें चैट में बज रहा था मैं उधर, ना मैं टाइप करके कीबोर्ड वॉरियर बन रहा था, ना मैं ये पिछला मैच में भाई मैं हार रहा हूँ, ठीक है आई एक्सेप्ट माई डिफीट। मेरी टीम में अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई कुछ कर सकता है इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं कर सकता इट्स ओके। हारने पे भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्या यार कैसे छूती हो तुम लोग खेल नहीं पा रहे हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्या? दोनों मैच में आप जाके देख लो, मैं किसी को ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता है मेरा लेवल, ठीक है। तो आपके ऐसे एटलीस्ट मैं रिएक्ट तो नहीं कर रहा था कि अगर टीम हार रही तो नू जो भी वट एवर लैंग्वेज यू रोट। क्या
तो ना दिस गाय इज यूजलेस दूसरे टीम्स को दूसरे टीममेट्स को लिख रहे थे, इसलिए आप खाए भी, तू कितना काम का है। सी यू गाइज लाइक यू कांट नो नेवर कैन नेवर मैच ब्रो। तुम्हारे वजह से ही तो आजकल, पहले ये मोबाइल कम्युनिटी में था, अभी ये लोगों को लैपटॉप जो सस्ता कर दिया ना यार, ये लैपटॉप सस्ता करने के बाद ये पीसी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग आ गए, दिक्कत हुआ है। बैंटर इज ओके, बैंटर इज टोटली फाइन, बट दिस इज समथिंग एल्स, समथिंग ग्रेटर देन, समथिंग मोर देन द बैंटर। तो ये साला लैपटॉप सस्ता करके ना और गेमिंग लैपटॉप्स बना के दिक्कत कर दी है लोगों के लिए। मतलब ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे, ये पहले फ़ोन वन गेम्स में ठीक था, इसलिए मैंने वो फ़ोन गेम्स छोड़ा था ऐसे ही लोगों के लिए। ये देखो अब भाई मेरा जो रायट के साथ कांटेक्ट है, मैं ये सब को करके भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ भाई, ठीक है। शुक्र मनाओ 100 to 1 काउंट कर लिया, करना तो हाँ छोड़ो भाई, मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ, टाइनी लोगों के मुंह नहीं लगता है, दिखते नहीं है ना मेरे आंखों के सामने, लैंड के नीचे ही झूलते रहते हो लोग। शिट, मैं भी एग्रेसिव हो रहा हूँ क्या? माफ करना, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, माफ करो यार। मच लव टू यू बडी, खेलो आप अपना, आप बहुत प्राउड कर रहे हो, अपने आप को फील करवा रहे हो, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को करते हो, माइंड ब्लोइंग। RyuK भाई, अगर आप एक एग्जाम में फेल हुए हो जिसमें तुम पिछले 5 ईयर से टॉप मार रहे थे, तो आप रिपोर्ट कार्ड में पिछले 5 साल का स्कोर दिखाओगे या फिर अभी फेल हुए हो उसका है? रुको RyuK भाई, अगर आप एक एग्जाम में फेल हुए हो जिसमें, ओके तुम भाई, पहली बात तो ये ऐसा कौन सा एग्जाम है जो तुम 6 साल से दे रहे हो और 5 साल पास होने के बाद भी 6ठा साल फिर से वही एग्जाम दे रहे हो? एग्जाम्स तो होते हैं फॉरवर्ड जाने के लिए ना, मान लो जैसे अभी क्लास 2 में एग्जाम दिए, पास हुए तो क्लास 3 गए, 3 में पास हुए तो 4 गए, 4 में पास हुए तो 5 गए। हर एक साल में एक ही एग्जाम दे रहे हो ना, मतलब वो आगे बढ़ने के लिए। ये 5 साल से एक ही एग्जाम दे रहे हो क्या आप? हैं अर्नव भाई? पांच साल से एक ही एग्जाम दे रहे हो क्या भाई? मान लो ना ऐसा है देखो, आप मेरे को तो जानते ही हो यार, मी बीइंग ऑनेस्ट, मैं ऑब्वियसली फेल हुआ हूँ अभी, तो मैं फेल वाला ही दिखाऊंगा। 5 साल टॉप मारा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, अब आप मेरा गेम प्ले जानते हो, ठीक है, अब मेरा गेम प्ले जानते हो। अब मैं ये गेम्स में मैं 32-13 में हारा हूँ, मैंने जो खेला है, तो मैं अभी यही दिखाऊंगा ना, मैं अभी इसको ओमिट तो नहीं कर सकता ना, या मैं किसी को बोलूंगा तो नहीं ना कि भाई मैं अच्छा खेलता हूँ भाई, ये वाला मत देखो। इट्स ओके, इट्स ओके इफ यू आर फेलिंग, इट्स ओके इफ यू आर लूजिंग, इट्स टोटली फाइन इन दैट। लाइक लोग आपको जज करेंगे, जैसे टाइनी भाई जैसे लोग आके जज करेंगे तो चलेगा ना भाई, उनके जज करने से मेरे को पैसा थोड़ी मिल रहा है, या ऐसे लोग ही मेरे को मतलब जज कर रहे थे बोल के आज मैं VCT का वॉच पार्टी का एक्सेस लेके स्ट्रीमर को स्ट्रीमर बन के बैठा हूँ, ठीक है। तो आई डोंट, मतलब यू शुडंट केयर, अगर आप सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल का दिखा दिया, तो यू शुडंट केयर अबाउट दिस। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। तो भाई CSK फैंस अपनी पास्ट की ट्रॉफीज पे क्यों ओवर कॉन्फिडेंट बनते हैं? देखो, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। अब एग्जाम इज अ सर्टन थिंग और ट्रॉफीज जीतना इज अ सर्टन थिंग, ठीक है। वैसे बोलोगे तो फिर भाई हम लोग फिर 19 नवंबर का दुख क्यों मनाते हैं? आप मेरे को ये बताओ, 19 नवंबर को वर्ल्ड कप हारी थी तो उसका दुख क्यों मनाते हैं? आज भी धोनी को लोग कोसते हैं क्योंकि वो न्यूजीलैंड के लिए वो रनआउट के लिए डाइव नहीं किया था, उसके लिए हम लोग क्यों रोते हैं? मेरे को आप वो बताओ। हाँ, 2023 वर्ल्ड कप में 19 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हारा था इंडिया में, तो वो भी क्यों हम लोग रोते हैं भाई? हैं? अगर पास्ट लाइक चीज पे वो घमंड नहीं करेंगे
तो फिर पास्ट के दुखद चीज पे मतलब दुखी चीज को याद करके फिर रोना भी क्यों है, मेरे को वो बताओ, क्यों रोना है? एंड ट्रॉफी एंड एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग. ट्रॉफी इज लाइक एन ऑनर. एग्जाम आप क्लास 2 क्लास 3 पास कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई ऑनर का मेडल नहीं दे रहा है. समझ रहे हो? आप क्लास 2 क्लास 3 पास कर रहे हो, इवन आईआईटी भी अब अगर जेई भी क्रैक करो तो इसके लिए आपको कोई ऑनर नहीं दे रहा है, नोबेल प्राइज नहीं दे रहा है, कोई ट्रॉफी नहीं दे रहा है. कॉज हर साल कम ही सही लेकिन आईआईटी में एटलीस्ट 5000 बच्चे तो सिलेक्ट होते हैं हर साल. तो कम ही सही, भले ही दूसरे कॉलेजेस में लाखों लाखों होते होंगे, आईआईटीज में 5000, एनआईटी में 5000, तो ऐसे लेकिन होते हैं ना, तो उसके लिए मेडल नहीं मिलता. दिस ट्रॉफी वाला थिंग इज अ डिफरेंट थिंग. इट्स एन ऑनर. You guys get medal, you guys get the honor of achieving that. तो जिस चीज़ में ऑनर मिलेगा उस चीज़ को तो ऑब्वियसली भाई पूरे याद रखेंगे भाई. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीएस के फ़ैन हूँ या मुंबई इंडियंस फ़ैन हूँ. मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं आईपीएल में किसी टीम का फ़ैन नहीं हूँ. बट आई एम टेलिंग दिस बिकॉज अब जो है वो है. ऑस्ट्रेलिया के पास अगर 5 वर्ल्ड कप है तो उस चीज़ का वो लोग घमंड 100 साल तक करेंगे तो करने दो भाई, उनका वो है हक. आई बिलीव इन लेट द पास्ट बी पास्ट. अर्नव भाई अगर आप ऐसा बिलीव करते तो भाई आप अपनी एक्स को याद करके शायरी नहीं लिख रहे होते. एक दिन आप एक्स को याद करके शायरी लिख रहे थे ना, तो वो तो मेरे को नहीं लगता. यू लेट द पास्ट बी पास्ट. ओके अंडरस्टैंड यू ज्ञानी बाबा. ज्ञानी बाबा क्या भाई, आप मेरे को पूछे तो मैं जस्टिफिकेशन कर दिया. टाइनी ऑन का सब टाइनी. अरे नहीं नहीं यार, होगा टाइनी भाई उनका. हमें क्या लेना देना, उनका टाइनी हो बड़ा हो, हमें थोड़ी ना डालना है ना हमें लेना है. हम क्या करेंगे, टाइनी होगा भी तो. उसकी बात नहीं करते हैं. हाँ अर्नव भाई ठीक है. तो अगर लेट द पास्ट बी पास्ट तो आप अपनी एक्स को देखकर या दुखी भी नहीं होते एंड अपने ये पिछला डेट को लेकर खुश भी नहीं होते, कॉज वो तो पास्ट में हो गया ना. लेट द पास्ट बी पास्ट. समझ रहे हो? बहुत मुश्किल होता है कहना, आसान होता है, मुश्किल होता है करना. ठीक है याद रखना कि लेट द पास्ट बी पास्ट. Even if it's a happy thing or a sad thing, you can't move on from your past. हैं? क्या हो गया अर्नव भाई, क्या सीन? ऊपर एक पिकअप लाइन लिखी थी, पढ़ी नहीं? रुको पढ़ता हूँ, 1 सेकंड रुको. एक काम कर रहा हूँ छोटा सा. वीपी परचेस कर रहा था. रिक भाई एक स्विफ्ट ओके लगाओ और अपने टीममेट्स को बोलो कि सारे कंट्रोलर ले हैं.
ऊपर पहले तो पिकअप लाइन पढ़ लेते। तुझे देखा मैंने जाते हुए, तुझे देखा देखने के लिए मैं मुड़ूं, तेरे प्यार में मैं कब से चल रहा था तो अब क्या उड़ूं। ये कैसा लाइन है पिकअप लाइन। रुक भाई एक स्विफ्ट ओके लगाओ, स्विफ्ट ओके लगाओ। वीपी परचेस किस खुशी में। Match found. दिखा था आपको, रुको। शिट यार। स्विफ्ट प्ले, अच्छा स्विफ्ट प्ले, लेकिन स्विफ्ट प्ले कंट्रोलर वाला गेम अलग होता है ना, ये तो विंडोज वाला है, पीसी वाला है। इसमें कहाँ से कंट्रोलर चलेगा, उसको अलग से एक आता है शायद से, जितना मेरे को पता है, डोंट नो। यूरो लिया, क्लोव लिया, अच्छा तो एसेंट है। एसेंट में इनिशिएटर में क्या लूँ। फ्लैशेस, मैच की माकियां। अच्छा कंट्रोलर जैसे एन एजेंट टाइप, अच्छा वैसा बोल रहे हो। ब्रीच थे हो या केव कुछ नहीं लोगे भैया। अरे सोवा लिया ना, चलेगा। क्यों लग रहा है मेरे को इस मैच में मैं टॉप फ्रैग करने वाला हूँ। डिफेंडिंग है पहले तो। पहला अर्नव भाई क्या लगता है हाफ क्या होगा। 7-5, 8-4, 9-3, 6-6। इनिशिएटर कौन सा लू बोल के सेंटिनल उठा लिया, तो हमारा इनिशिएटर ले लिया ना वो सोवा। वो सोवा पे स्विच कर लिया ना, पहले वो साइफर पे स्विच किया था, तो फिर मैं इसीलिए देख रहा था इनिशिएटर कौन सा लूं, फिर वो सोवा पे ले लिया, तो मैं फिर बोला ठीक है तो बढ़िया है फिर। Yes, this should do. That goes there. Reloading. You see yourself, you see yourself, you see yourself in the mirror. क्या इधर आ रहे, बी आ रहे। Reloading. Caught one. Require destroyed. 105 Sage. One enemy remaining. Nice one. 12-0. कोशिश करते देखो, कोशिश करते। अभिषेक दासगुप्ता जी आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है मेरे भाई। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आई गेस पहले भी आए थे आप अभिषेक दासगुप्ता जी। मेरे को क्यों लग रहा है पहले आप हाय बोले थे फिर आप चले गए थे स्ट्रीम पे, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को। This goes here. Alright, muckers. Off we go. Yes, this should do. No peeking. Drop in a smoke. Enemy spotted mid. यूरो वन शॉट है। फ्लैट वाले मिड पे भी एक है। Back off. Decoy
2 मिड योरू केजे मारो भाई से नाइस One enemy remaining. Spike down A. Reloading. इतना गंदा विफ किया योरू के सामने योरू आ जल्दी आ उस पे ओके RyuK भाई वुड यू लाइक टू ड्रिंक फैंटा नहीं भाई बहुत गंदी लगती है मुझे मिरिंडा ठीक ठाक है फैंटा तो एकदम बेकार टेस्ट कर रहा है बीच में बैन हुई थी उसके आनी नहीं चाहिए थी उसके बाद Reloading. Oh, this is a nice spot. That goes there. Smoke him in, please. ए भाई डोंट डाई अरे भाई साहब एक बुलेट कनेक्ट नहीं हुआ है एक कल ही उसके पैर में लगा है Cutting through. Spike planted. हमको पता है तुमको क्या पहनना पसंद है हैं One enemy remaining. नाइस ट्राई तन्मय भाई वेलकम टू द स्ट्रीम क्या हाल है Never show weakness. बिकॉज यू आर फैंटास्टिक इको कर रहे हो लेट्स पुश ना ए पुश करते हो सो भाई आ जाओ ये आ जाओ क्लोव भाई आप भी आ जाओ Drop in a smoke. पीछे एक इधर ही है मिड पे और एक एसएच भी है अरे यूरो 40 ओह तेयो 40 One enemy remaining. इधर Spike down B. 2 सेकंड रुकना रिवील है मेरे पे गन नहीं है नाइस नाइस One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. मैं पहले देखता था तुम्हें पीछे पिंक वॉल था तुम कैप पहनते थे अच्छा अभिषेक भाई आप इतने पुराने हो मेरे चैनल पे क्या बात कर रहे हो भाई और ओजी हो फिर तो आप तब तुम क्लीन शेव्ड रहते थे शायद अच्छा हाँ ना अभी तो तुम्हारा भाई थोड़ा सा हीरो बनता है Who's next? Scanning ahead. Found them. इधर ही है एक पी पे जस्ट मार्केट के बाद Decoy. Spike planted. I'll return. 90 over. I'll handle this. एक अपने हाँ उधर है दो है Fake teleport. अरे ये क्या स्पैम Last player standing. वाह क्या फ्लैश दे रहा है I just bought a cake. Would you like to be a cherry
इन टॉप ऑन टॉप होता है अर्नव भाई, ऑन टॉप। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ऑन टॉप होता है। नागपुर की पब्लिक ड्यूलिश नहीं घुस रहा, पर सेंटिनल को घुसना है। अरे माफ करे, माफ करे। This goes here. Cypher by. Yes, this should do. Track them down. That goes there. वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा में खुल खुल जाई, सबकी पसंद निरमा निरमा। अरे ऊपर आ रखा है वो, ओमन ऊपर है। Spike down A. रुको रुको जेट भाई, You will not kill my allies. जल्दी आया साइफर। Last player standing. Spike planted. ओमन आउटप्ले कर रहा है, थोड़ा देखिए। थोड़ा एग्रो खेलना पड़ेगा। ठीक है, इनको करो ये राउंड। पुश करना है तो आओ ना, बी पुश करते हैं या ए पुश, कोई एक साइड। बी पुश तो मिक्स कर दो। अगर वो तुम्हारी साइड पे आ रहे हैं। जेट भाई मैं हूँ, आप जाओ, आप इधर जाओ, ठीक है? आप इधर जाना, मैं कैमरा लेके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। क्लोव अपना है ना। You should run. Back like I never left. थोड़ा सा रुक जाओ यूरो भाई। One enemy remaining. Spike down A. नाइस वन यार जेट। बस ले लो। सॉरी सॉरी सॉरी। Nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. लड़की है वे, अब तो तू देख, अब तो मैं परफॉर्म करूंगा, देख। ला 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 लड़की है, देख। साइफर अपना सेटअप चेंज कर। This is a nice spot. नेक्स्ट राउंड चेंज करियो। ठीक है, मैं बी मेन पर रिवील करता हूँ, कोई आया तो अल्ट कर रहा। Reloading. This goes here. There they are. Enemy spotted me. Shot down. Who's next? अल्ट कर दे साइफर। थोड़ी देर बात करूंगा। वहीं पे रुको यूरो भाई, आप वहीं पे रुको, रोटेशन का पता चल जाएगा। My eyes are down. Where is everyone hiding? Last player standing. इसके मोमेंट पे देखा उसने भी। Snack time. Sorry, only brought enough for me. कौन लड़की? अरे क्लोव लड़की है, तभी तो मैं गा रहा हूँ वॉशिंग पाउडर निरमा। क्या देख रहे हो अर्नव भाई? मतलब क्या लगा दे, क्या लगा दे, और एक शॉट लगा दे, मिड पूरा कवर हो जाएगा। हैं? क्या देख रहे हो अर्नव भाई? मेरे को समझ नहीं पा रहा है। मतलब स्पीकर ऑन किया फोन का? वो क्लोव ने गन मांगा, उसमें वो लड़की का वॉइस है, मैं इसलिए गाया खुश होकर। थोड़ा सा चोमटी है वो क्या?
Shock dart. Careful now. Shock dart. Drop in a storm. अरे क्यों पुश कर रहा है ब्रो? एमएन स्मोक दे। Found. Last player standing. लेफ्ट साइड। Spike planted. सेव कर ले जरा। सेव करो सेव करो। मेरे को तो फिलहाल 6-6 लग रहा है। Killed them. Decoy. क्लोव भाई जब साइड कंट्रोल है आप इधर क्यों जा रहे हो? Don't forget that. अटैक नहीं करना है। Reloading. साइफर मिड पे लगा, मिड पे लगा। वही खेल रहा है ना हमारी। यप वही कह रहा ना तभी तो। लेकिन मेरे को जेट को थोड़ा फर्स्ट किल निकालना पड़ेगा। यार मेरे फुटस्टेप चली गई। शिट। Go ahead. Stand your ground. Last player standing. तेरा कैम तो था, तेरा कैम क्यों नहीं यूज किया? मेरे को पोज ही पता होता है। BGMI में 5x स्कोप आया है ऐसे सुनने में आया भाई, मेरे को नहीं पता। साइफर ए शॉट और यहाँ लगा दे और तुम तीनों भी खेलो। ए शॉट लगा, कुछ नहीं होगा, वो ब्लाइंड फेंक रहा है। कौन ब्लाइंड देता है? जरूर तुम पुश करेंगे, डैश करके आ जा। साइफर मिड पे लगा रहे। तुम तीनों बी जाओ, बाकी तीनों बी जाओ, बाकी तीन बी जाओ, मेरे से जेट आ जाओ बस। आइजा। हाँ शायद मैं 3 साल बाद स्ट्रीम पर आ रहा हूँ। 2022 में मेरा 12th शुरू हो गया था और उसके बाद तुम्हारा चैनल नज़र से थोड़ा दूर हो गया था। Deploying drone. आई एम शॉक्ड कि तुम अभी भी कंटिन्यू किए हो। अरे अभिषेक भाई हम कंसिस्टेंट हैं, कंटिन्यू सब। 10 साल बाद भी देखोगे तो भाई उनको पता लग गया था। एक बी के बाहर है, 2 बी के बाहर है। Tripwire destroyed. You will not kill my ally. One enemy remaining. साइड साइड। नहीं कर। ठीक है रुक जा, वो प्लान करेगा, उसको टाइम नहीं। ये पकड़ 30 seconds left. कैमरा से चेक कर। यप प्लान करने तो तब करूंगा। जीरो मरना मत। नहीं कर रहा है। 10 seconds left. Got you. Spike planted. Last player standing. 40 लो। Nice one. Nice shot.
ये वाला जीमेल लॉगिन किया आज और देखा कि पुराने चैनल्स में बस तुम ही कंटिन्यू किए हो, बाकी सारे तो 1 ईयर अगो 2 ईयर अगो लास्ट लाइव और वीडियो अपलोड है। अभिषेक भाई बस Last round before the switch. यही खासियत है हमारी। There's Yep. no bank in hell. जेट फिर करेंगे पुश Need a आजा drop. सेम करेंगे Thanks. साइफर एक यहाँ पे मिड पे लगा और ए शॉट पे लगा आ जाओ तुम तीनों बी मेन खेलो। साइफर जल्दी आ भाई जल्दी यार। आ रहा हूँ भाई सॉरी। एक ए शॉट लगा दो बस और एक बी मिड पे लगा दो। ए पे क्लियर करना। This goes here. जेट मैं वो करूंगा सीधा। Who's next? जेट ज्यादा एग्रो मत हो भाई जेट अब रुक जा। साइड क्लियर है बी पे। बी पे कोई नहीं आजा। Spike planted. अबे क्या हो रहा है आज एम को? Buried. Here. सेज इधर। लगा ही था मेरे को। साला 134 भाई। मार उसको। One enemy remaining. Time to jump. 5-7 हुआ। वो पे सेज को मार दिया रहता ना यार, क्या हो रहा है? Switching sides. फेस कैम माइक ओवरले सारे इम्प्रूव है 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच यार। भाई अब थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तभी तो होगा। अपना सेटअप भी इम्प्रूव हो गया है सब कुछ। सारे एक काम करते बी हां ए शॉट से चलेंगे। पहले मैं अपने घर से स्ट्रीम करता था, अभी दूसरे शहर में रहता हूँ अकेले, वहाँ से करता हूँ स्ट्रीम। अपना क्लोन छोड़ूंगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जेट ए शॉट से जा रहा हूं। डिफरेंस तो है, ये अपने ओजी लोग ही समझ पाएंगे। ये साइफर को आजा मेन से आराम से स्लो आइयो, जस्ट बहुत स्लो आइयो, जितना लेट हो सकता है आइयो। This is a nice spot. जब हम घुस जाएंगे ना ए शॉट पे तब क्लोज स्मोक मिड। साउंड दे दिया क्लोव। स्मोक बहुत गंदा है क्लोव। रुक जा जेट। जेट रुक जा। चलो रुको हम लोग घुस नहीं सकते, तेओ का वो है। अब घुसो। कोई है अंदर, ऊपर है, हेवन है। Reload. अरे इसकी मां का spike down. One My enemy bad. remaining. कहाँ है ये? नो आइडिया। ओ शॉट। अरे हेवन वाला 3 मार गया, सुबह तो उसको पुश करके मार सकता था, पता है? स्मोक था। I find them. तो क्या हो गया, वो हमें मार रहा, घुस जा स्मोक। दूसरे शहर पेरिस चले गए क्या? अरे दूसरे शहर बोला, देश नहीं बोला अभिषेक भाई। सुनो सेम करेंगे शॉट से चलो। सेम एग्जैक्टली सेम जहां बंदे दूसरा देश नहीं बोला, शहर बोला। शहर माने सिटी, देश माने कंट्री। तब मेरे क्लोन के पीछे जाइए। क्लोव योर स्मोक वाज नॉट गुड। ये वाला थोड़ा गैप था यहाँ पे। मेरे को शेरिफ दे सकता है जेट? वन स्मोक। Gun here. Spike's here. I have retrieved the spike. जेट वेट। योरू है ए मेन। चलो Tagged. मेन बोला तो योरू है मैं। हेल अरे भाई इन पे गन से फाइट लो ना। One enemy remaining. Spike carrier is dead. हां ट्री है। Fake teleport. मैं लो हूं, ठीक है? ये भी अच्छा जेट Cutting through. फुल एचपी। हेवन गया। भाई इजी। Spike planted. Last player standing. Well played यार।
नाइस वन। If they try something, I'll see it. बोनस कर लेंगे पिछला राउंड बोनस। अच्छा नहीं, बाय कर लो। क्या सीन है? जिन पे गन्स है वो रखो, वरना फिर बाकी लोग बाय कर लो। भाई होल्ड करना ये पे, मैं बी पे फेक करके आऊंगा। सोवा मैं बी पे फेक करता हूं, मतलब क्लोन वगैरह, ठीक है? तुम होल्ड करना बस। योरू के दोनों फ्लैशेस गए। चलो चलो चलो, एक घुसो ए पे आओ, ए शॉट पे ए घुसो। मैं बी पे क्लोन छोड़ रहा हूं फेक के लिए। Time to jump. मिड से यार साला Reload. आज मेरा एकदम दिन नहीं है भाई। Last player standing. Killed them. बैड यार। पेरिस टू फ्रांस का ही सिटी है। वेल जोक्स अपार्ट, किधर हो अभी? अरे पेरिस फ्रांस का सिटी है, लेकिन फ्रांस तो इंडिया से अलग है ना। फ्रांस तो अलग कंट्री है मेरे भाई। अगर मैं दूसरे शहर, हाँ आप अभी इंडिया में कोई दूसरा शहर बोलते तो समझ में आता। आप एकदम पेरिस। भाई मैं पेरिस होता तो इंडियन सर्वर में खेल रहा होता, हिंदी यहाँ पे बोल रहा होता। क्या कैसी बात कर रहे हो? ये सर्वर में खेल रहा होता। सीधे सीधे पुश कर दादा पे। Yalla, machine. वो योरू फ्लैश पिक लेता है तो मैं एंटी फ्लैश खेल रहा हूँ। भाई ये क्या रिवील कर रहा है? साइड देना। आ जाओ भाई, मिल गई साइड, आ जल्दी। अबे हेवन तो देख लो भाई, कौन है हेवन ब्रो? भाई क्या कर रहे हो यार? हेवन बंदा खड़ा है हेवन, वहीं से मार रहा है। हेल्प पे तो तब से ही है भाई यार। हेवन वाला वो तेजो हर बार मार रहा है भाई। भाई सोवा यार, तू अपना रिवील कहाँ है? अरे भाई हेवन पे नहीं था, तेओ अंडर हेवन था। अरे एक सेकंड, अरे सोवा भाई रिवील यहाँ चाहिए भाई तेरा। तू रिवील यहाँ क्यों? रिवील मैं तो बोल के कर रहा हूँ, रिवील क्लोज का दे रहा हूँ। नहीं बोल के किया, मैं बोल के किया। अच्छा ठीक है, इस बार कर देना। चलो सेम, कोई बात नहीं। हमें साइड का चाहिए, बोल ना साइड का चाहिए। जेट तू साइड पे मत जा जब तक ये ड्रोन नहीं करेगा भाई। बिना इन्फो के घुस रहे हर राउंड भाई। उनके पास एडवांटेज है, अपने पास रिवील एजेंट है, फिर भी उनके पास एडवांटेज है। जेट भाई तू बहुत तेज भाग रहा है, रुक जा अभी। उसके रिवील के भाई भैया मैं साइड में टीपी करूंगा सीधा, मतलब यहाँ पे, ठीक है? ओके रिवील इधर दे रहा है ये वाला। अभी मत दे, यहाँ पे यहाँ से ड्रोन करिए। ठीक है, ड्रोन कर लेगा। Here. Take flight. Reloading. My ultimate is ready. इधर केजे का वो है, ये लेन पे। रोटेट एवरीबॉडी फास्ट। सोवा जा भाई, सोवा जा। Enemy spotted mid. Reloading. Go everybody. आओ भाई, जाओ ए जाओ। मार 120। Where is everyone hiding? Enemy spotted. Last player standing. Like I never left. One enemy remaining. ये बी प्लेयर 30 seconds left. 14 है इसके पास, ठीक है? आगे। Last player standing. नाइस वन। ओडिन उठा। Made a mess of yourself. नहीं जा सकता वो, जाते टाइम लगेगा।
चलो जा रहा हूँ अभी, बच्चे आ गए, ट्यूशन का टाइम है। कभी कभी कभार आ जाऊंगा, पढ़ा लेता हूँ बच्चों को। अच्छा आप टीचर बन गए अभिषेक भाई, क्या बात है वे। लव यू यार, आप ग्रो करो यार, मैं तो यही चाहूंगा यार। अभिषेक भाई जॉर्ड पढ़ा लो, आते रहिएगा यार। अच्छा लगा आप आए यार, अच्छा लगा, बहुत दिल से अच्छा लगा भाई। I'll cut through. Time to jump. Who's next? Healer kill. Nice one. ओए जेट के पास। Spike down B. Revealing area. Cage trigger. Found them. Enemy spotted mid. I have retrieved the spike. Reload. एजा केज फेंकते हैं ना। केज नहीं है तेरे पास? Cage trigger. वो स्पैम देगा ना केज देने से भी, इसलिए नहीं कर रहा था। Last player standing. अबे दो मिड पे क्या? Spike down B. ब्रो भाई यार क्या कर रहे हो यार, बहुत फंस जाते हो पता है। वो बी मेन पे वो कर रहा है तो तुम फंस क्यों रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फंस नहीं रहे, वो स्पाइक गिरा के मर गया ये अपना क्लोज। तो मैं बी पे अल्ट कर रहा हूँ, उसको पेलते हैं, आ जाओ। इसको इसी को पेलते हैं, बहुत हो गया। वो ओडिन कर रहा है ना, इसी को पेलते हैं, आ जाओ बी पे। मैं अंदर घुसूंगा, मैं क्लोज का मार्क कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? मारे कैसे लेकिन? मैं अंदर जाऊंगा ना, मैं क्लोन छोड़ दूंगा। सुनो सिटी मैं क्लोन छोड़ दूंगा ताकि अपने यूटिल्स यूज कर ले। या क्लोज का ड्रोन कर देगा। रुक जा, कर रहा हूं। I'll handle this. Cutting through. ये रहा उसका। Go ahead. Stand your ground. यार ओपन रैप हो जाएगा। ये डोर बंद करो। इधर रैप हो जाएगा, मार उसको। भाई साइपर, भाई मैं अटका पड़ा हूँ, मेरे को क्या निकालेगा तब ना। यार स्पाइक लेके करो। ब्रो मैं अटका पड़ा हूँ वहाँ पे, इधर डोर बंद करेगा तब ना निकलूंगा मैं वहाँ से। मार्केट में देख रहा था मेरे भाई मार्केट में ऑलरेडी दो बंदे थे, कैसे आ जाऊँ मैं? यार तू बहुत देर खड़ा रहा, स्पाइक ही नहीं प्लांट हुआ। यार बहुत ऑफ खेल रहा है भाई तू साइड पे। वाह भाई वाह, ठीक है भाई ये स्पाइक पकड़ लो भाई आप लोग। भाई अजीब है, मैं अटका पड़ा हूँ वहाँ पे, मेरे को टीम हेल्प चाहिए। नहीं भाई अब सब अपना अपना खेलेंगे तो कैसे होगा? Chin up, cuties. It's not over yet. My ultimate is ready. Everyone hiding. Spike planted. Cage trigger. Reloading. वो रिवील है। नहीं 15। You should run. Take flight. One enemy. मार उसको। नाइस। गन ले ले यूरो। There they are. निकल जाओ, जीत गए। ब्लेस भाई वेलकम टू स्ट्रीम। कोनिचिवा, क्या हाल है, कैसे हो? Stay taut as a bowstring. The fight demands it. Reloading. सुन ना, तुम लोग ए पे फेंक करो ना बस। ठीक है भाई, थोड़ा सा मिड पे ना परेशान करना बहुत जरूरी है, उनको पता है। तुम लोग बस ए पे फेंक करो। साइफर जा तू पीछे। वो इस तरीके से जेट और क्लोव साथ में डीले हो। Revealing area. मिड पुश है ओए तुम लोगों की तरफ। फ्लैश होके मार रहा है वो। सेज मिड टॉप।
You will not kill my मिड पे उठाया 120 Last player standing. Spike down B. Idiot. One enemy remaining. ये कहाँ था right here. पीछे है, पीछे है, पीछे है लाला पीछे नहीं, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, Out उधर of गया। charges. Last player standing. I got the Spike spike. down mid. Time to jump. लो आराम से खेल। I can smoke market. भाई ये नॉर्मल गन क्यों नहीं लगा रहा? चला रैंक पुश नहीं हो रहा बीजीएमआई में, क्यों? Cutting through. ये पता है ये वो टीपी करेगा और वहां पे मरेगा, 3 टीपी 30 करेगा, seconds left. फेंक देगा मेरे को लग रहा है। Spike planted. अरे यहाँ कैसे आ गया यार, हट। कैसे आ गया मतलब अल्ट। टॉप 5 पहुंचता हूँ सर्वाइव करके, फिर भी सिर्फ 5-10 का प्लस। ऑब्वियसली भाई किल नहीं करेंगे करोगे तो उसमें 5-10 का ही प्लस मिलेगा ना। साइफर तूने लिटरली मिड टॉप से स्मोक के थ्रू पुश करा है, क्यों? समझ नहीं आया, मैं तेरे साथ ही था, तू स्मोक से बाहर क्यों निकला? Match point. वो आपका क्लोन को मारेगा फिर मैं उसको मारूंगा, इसलिए मैंने क्लोन इन लोगों के लिए किया था, ये लिंक से मारते उसे। लिंक से तो तेओ को तो मार दिए थे लोग। मैच ही तो है भाई, क्या हो गया? Where are you? Who's next? Dropping smoke. तो मिड से पुश कर दिया। Last player standing. ये यहाँ क्या कर रहा है? अल्ट अल्ट Fake teleport. तो भाई एक तो ये जज लगा रहा ना दिमाग। 120 मैचेस लगा लिया बस क्राउन नहीं हुआ। अरे ब्लेस भाई तो वैसे प्लस नहीं होता है मेरी जान। आप अभी भाई कुछ सर्वाइवल करोगे, किल्स के भी मिलते हैं। आप अभी मिनिमम 7-8 किल मारोगे या वैसे आपको गेम प्ले में वैसे प्लस होता है ना, ऐसा थोड़ी है। अभी मैं अपने ऐसे रेडियंट अगर या इमॉर्टल के 4 बंदों को बुलाया और मैं बोला कि मेरे इसमें मेरे को खेलाओ, ठीक है, और वो लोग कर रहे हैं 20-25 किल और मैंने किए 5 किल, तो मेरा क्या ज़्यादा प्लस होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा ना वैसे ही। I'll handle this. I'm back. One enemy remaining. Time to jump. Defenders win. तो भाई क्या करें, अभी इतने अच्छे भी नहीं है हुए कि किल्स निकाल के टॉप 5 पहुंच जाए। अरे तो प्लीज भाई फिर देखो, मेरे को समझ नहीं आता। आप अगर ठीक है वो मैं मानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई अच्छा खेले। आप नहीं हो रहे हो तो आप नहीं किल्स कर पा रहे हो, नहीं हो व्हाटएवर, देन व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि आपका रैंक पुश होगा? आइदर यू प्ले वेल एंड यू एक्सपेक्ट रैंक पुश होगा। इफ यू डोंट प्ले वेल, यू नो दिस, ये कि ये मेरा नीचे है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा ये यहाँ पे रहेगा। इसको भी नीचे करो ना। अगर ये वाला इधर रहेगा, ये वाला इधर रहेगा, देन इट्स ओके। अगर आपका ये वाला ही पता है आपको नीचे है एंड योर एक्सपेक्टेशंस आर लाइक दिस, यू कांट रीच ना। ये ऐसे ऐसे होगा, लॉक होगा ही नहीं। आप नीचे रखो थोड़ा एक्सपेक्टेशन, फिर लॉक होगा। 7 से ये गेम खेलते खेलते, अरे तो 7 मंथ से कुछ नहीं है प्लीज भाई, मैं बस ये बता रहा हूँ। बात तो सही है, गलत बात बोलता ही नहीं हूँ मैं कभी प्लीज भाई। जब बोलता हूँ तो खुद बोल देता हूँ कि नहीं भाई गलत है, ऐसा तो टेंशन नहीं लेने का। इतना सोचो मत भी। रैंक पुश करो, सोचोगे ना
भाई मैं एक बार कॉन्करर रैंक पुश में बता रहा हूँ ना, कॉन्करर टॉप 500 में होता है, मैं 900 या 1100 कुछ एक ऐसे ही था, 900 रैंक या आई गेस 1148 ऐसा रैंक तक पहुंच गया था, समझ रहे हो। तो और भी 7 डेज थे ख़त्म होने के। एक मैच मेरा -30 हुआ, मैं पूरा मैच टिल्ट हो गया, उसके बाद 2 दिन गेम नहीं खेला, तीसरे दिन पूरा फुल, उसके बाद से मैंने रैंक पुश करना छोड़ दिया। ये रेवेंजर इन लोगों के साथ ही करता था रैंक पुश। 900 था शायद से, मेरे को जितना याद है, टॉप 1000 में आ गया था, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी। रैंक पुश इतना आसान नहीं होता, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्क्वाड। कोई भी सोलो रैंक पुश नहीं कर पाओगे आप अगर स्क्वाड में कर रहे हो, समझ रहे हो। इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी भाई, नहीं करोगे तो कैसे। और नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एंजॉय द गेम, नॉट हाउ बेटर यू प्ले। अगर बेटर खेलना होता तो आप ई स्पोर्ट्स में होते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। पॉकेट का स्टार भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। जब मजे मजे में खेले स्क्वाड में तब इस मास्टर लग गया, जब सीरियस देखो ना, वही ना, मेरा भी वही है, मैं मजे मजे में खेलता हूँ, देखो कितना ही सीरियस खेलता हूँ। एज डोमिनेटर पहुंचा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। समझ रहे हो, मजे करो, मस्ती करो, रैंक पुश ये सब इतना सोचो मत। दोस्त लोगों के साथ अगर खेल रहे हो ठीक, अकेले खेल रहे हो तो बस चिल करो, इतना रैंक पुश मत सोचो। रैंक अगर आपका कॉन्करर हो भी गया तो क्या कर लोगे, मेरे को बताओ। अब अगर आप कॉन्करर हो गए तो आपको लाखों लोग पहचान लेंगे, या आपके गिन चुन के 100 लोगों के सामने थोड़ा फ्लेक्स मार लोगे। रैंक इज नथिंग ब्रो, रैंक इज नथिंग भाई। मैं अभी यहाँ पे एसेंडेंट पहुंच भी गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, इट्स जस्ट अ रैंक। अगले सीजन फिर से नीचे आ जाऊंगा, क्या होगा, रिसेट हो जाएगा फिर। आप कैसा खेलते हो वो मैटर करता है, आपको पता है कि आप कैसा खेलते हो। इफ़ यू प्ले लाइक अ कॉन्करर लेवल प्लेयर, ठीक है, इफ़ योर रैंक इज एस मास्टर, चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हर गेम में वैसा ही है। इफ़ आई नो माई एम इज़ लाइक एसेंडेंट, ठीक है, अगर मैं प्लेट में बैठा भी हूँ तो चलेगा, क्या है, जस्टिफाई थोड़ी करना है लोगों को, ये स्पोर्ट थोड़ी जाना है। ब्रीच बोलो भाई। ब्रीच कनेक्टर है, अरे उनका ब्रीच। अच्छा रुक जा अष्टा, इसको लेंगे, रुक। और एक दो सिटी भाई, आ जाना इस तरह, इधर आ। ए पे आओ, ए पे आओ। One enemy remaining. Kill everyone and our job gets a whole lot easier. सही बात। एक चीज पूछनी है, आईपैड की बैटरी किसकी कैसी होती है, मतलब ड्रेन कितनी होती है, आपको पता है? जैसे नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट इतना भी नहीं कि भाई। अब ब्रिज भी लाइक सेम बट डिफरेंट। हाँ भाई, सेम बट डिफरेंट। भाई मेरे साथ एक बंदा रहो, उनको गलती से फैंटम मिल गया ना तो फिर एल लग जाएंगे। ऐसा उसको हेल्प कर।
ओए वो लोग एमएन पुश किए हैं, एमएन पुश है। तीन बंदे हैं मिनिमम। वो एस्ट्रा देख के रुक। तेरे पास स्पाइक है एस्ट्रा? भाई मेन 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 फैंटम मिल गया उसे, हो गया ठीक है। एस्ट्रा मेन है, फैंटम है उस पे, किल जा। Down. Spike down A. रुको रुको ये आ रहा है। Last player standing. दोनों रे। तो जिस चीज का डर था वही हुआ। यार मैं आता हूँ रात को स्ट्रीम पे, हैव फन। ओके Time to take these arms for a spin. भाई एस्ट्रा को मैं बुलाया, आया नहीं यार, मेरे को लगा वो है ना, वो कैसे पुश करेगा? तो पुश, अरे पुश का नहीं, मैं साइड पे आने के लिए बुलाया, तो तो फाइट कर रहा था साइफर से। वो आया ना, कोई नहीं चलो। आता तो मैं क्यों पुश करता। ग्लिच भाई ठीक है, आप आओ फिर आपको आईपैड के बारे में बताते हैं। मैं स्टन दे रहा हूँ, तू पुश कर। रुक मत दे। Enemy spotted. B. पिक ले फिर से ले। साइपर है पे। तेरे पे गन है, रुक जा ना। Spike down A. फ्री चल। Last player standing. फ्लैश पिक। आई बैड। Astra, after this, let's grab coffee and talk theoretical physics. Just us girls, yeah? भाई सुनो इधर आओ। एस्ट्रा भाई आप ये वाला स्टन देना। ये अरे यार मार्क भी नहीं हो रहा है मेरा। पीछे का दो जो है ना, वो वाला स्मोक दो। मैं स्टन दे रहा हूँ लेफ्ट साइड। पीछे के दो? हाँ पीछे के दो। Where are you? और मैं इधर स्टन दे रहा हूँ, चलो घुसो। साइपर है लेफ्ट में, साइपर है। अरे रेना तू घुस तो भाई। तुम तीनों दोनों आई मीन 3 हो। Spike planted. बस भाई क्या फ्लैश हो रहा हूं तो। KJF के है वैसे। Last player standing. किसके पार्टी पे? कमाल। क्या लोग यार। No worries, Charlie. No worries. स्लो खेलो फिर। अबे किल्स के लिए खेलो, प्लान बाद में करते हैं। ये वही करो, मिड आओ, मिड से ही करेंगे। सुन यहाँ पे अगर पीक ले रहे हो ना, 2 बंदे घुसो मिड डोर्स, मैं ये वाले को स्टन दे रहा हूँ, तो ये वाला तो पीक नहीं लेगा। यहाँ से 8 में साइपर रहेगा। हाँ ठीक है, उसका नहीं, तुम लोग मिड डोर्स वाला को पीक लो। There. वॉक करना एक्स्ट्रा। Bring them down. Enemy spotted. I know exactly where. Bring them down. Last player standing. भाई थोड़ा टीम के साथ ही खेल लो भाई। ये वाला बंदा अगर नहीं सुनना है तो बोल दो। नहीं सुनना है तो बता दो भाई। ये में चलो।
मैं तो उल्टी गया था ब्रो। हाँ तेरा तो कुछ गलती था नहीं, जो बी पे गया था पता नहीं कौन गया था। Now why not? New energy now, eh? एक तो वॉक करो, तुम लोग दौड़ लेते हो पहले से पता चल जाता है। Where are you? Blocking vision. Yeah, nice. Right, क्या ब्रीच पे क्या हो गया? तो करो कसमों कटने पे। Reloading. Flash. Last player standing. Spike down A. One enemy remaining. You were pitiful. As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. Mid. Time to work. Remain push होता है ब्रीच पे। मिड डोर स्पीक लो। Hyper mid. रुक अस्त्रो। Concealment. Have the spike. Trevor. Reloading. Last player standing. भाई तूने वो तोड़ा नहीं ट्रिक? ट्रिप टूटा ही नहीं, वहाँ पे लगा ही नहीं, उसने यहाँ से लगा रहा कुछ तो लगता है यहाँ से। Trust me, they'll know. तो लेफ्ट साइड में तो कहीं पे चिपकी होगी। फुल लेफ्ट साइड पे ही था ना, एक ग्रुप में पकड़ा वो कर दिया था। तो कॉल आउट दे दो भाई, माइक रखे हो तो कॉल आउट दे दो, नहीं टूटा है ट्रिप। Where are they? साउंड मत दो। साइफर ए पे। Find you. Mark 2. एक तो 10 है। Last player standing. Spike down A. बीच में। Are so meaningless. फिर भाई जब आप केजे आ गया ओए। जब आप रिवील डाल रहे हो तो एक बार बता के रिवील डालो, फिर रेना अपना फ्लैश में अपना स्टन करके फिर घुसेंगे। ओए बी आओ। तेओ ये खेलता है। स्मोक करके स्मोक में बैठेगी। Placing sentry. No need to suffer. Right. Concealment. Concealment. प्लांट कर। Trevor. अरे ना ये चला। पीछे आओ ना, पीछे आओ। Bomb grenade out. 3 बंदे तो Your है। feet. My ult's ready. Enemy spotted. B. Still in sight. Turret destroyed. Obscuring. One enemy remaining. मैं प्लांट करता हूँ। हेवन पे।
planted. Reloading. स्मोक में जा रहा हूँ. Plan. Enemy spotted B. Yes. I hate waiting. Let's do this. बी पे फेंक दो, ए पे प्लांट करेंगे. आओ एस्ट्रा आजा. मैं जाऊँ या तुम्हारे साथ आऊँ? हमारे साथ आ. उधर 3 जन हैं. मैं ऑफ करके आता हूँ. ओके ओके. केजे तू यहाँ पे और जगह हमारे साथ. In här, Sheldon. उधर एक स्मोक देना इधर एस्ट्रा, और इधर साउंड मत दे. Obscuring vision. रुक 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 रुक. पीक मत ले. टीपी. Blocking vision. Placing sentry. Placing swarm grenade. कर लिया था उसने. Placing swarm grenade. Spike planted. मैं इधर ही गया. ठीक है. तू अल्ट हो जाएगा मेरे अल्ट पे, ठीक है. You are divided. कितना हो रहा है? Last player standing. बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेरे को बताओगे? ये इधर कैसे मर रहा है? Leave it to me. I'll rough them up. बिना माइक का मल्टीप्लेयर गेम्स खेल कैसे लेते हो भाई? बात ये नहीं है, प्लांट तो जो दे रहे हो ना बहुत अर्ली प्लांट है. थोड़ा सा किल करने के बाद नहीं एक्टिव साइड खाली हो गया था, बट फिर ना साइड खाली था. किसको मारते हो? करने का रे थोड़ा. Who's next? One down. Gun here. Spikes down. ये देखो. Spike down A. Reloading. Pulling them in. Last player standing. Just swag. My ult ready. Two bullets. 30 seconds left. Last round in the half. Don't be king. Spend it all before it's gone. आजा भाई इधर आजा. दिया दिया. Right there. ऑफ लगाएगा ऊपर. तो इधर एक करना, फेंक देना. इधर स्मोक दे. इधर एक स्टार लगा. F दबा. फिर दबा F. Turret out. Bring them down. Obscuring vision. You dead. I'll find
find you. Flash out! I know exactly where you are. You're 120. Spike planted. Hey door. Nice. Plank. Good. One. एक plank है. दोनों फ्लैंक है. दोनों. Open plank. Blinding. One enemy remaining. Hurry out. इधर ही right side में तेरे हाँ. पेड़ के क्लोज हाँ. Last player standing. पर net गया. ब्रो थोड़ा रुको ना. Clutch. पीक करना क्यों है? Switching sides. वही net चला गया था मैंने पीक नहीं. बाहर ही है मेरे को. वाओ क्या हो गया? वहीं पे रहे एक्स्ट्रा. Right there. क्या हो गया? वहीं पे रहे Right there. इधर क्रॉसफायर Rise खेलते. and bring glory. ओके. पीछे. Hold देना. Bring them down. Spike down A. Enemy. One A. enemy remaining. हाँ 8 पीछे. Last player standing. अरे ब्री. Come here. Targets आराम से destroyed. खेल, आराम से खेल. जा मेन जा आराम से. Clutch. जी भाई, नाइस थ्रो. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. ओके आया नहीं वो. क्या किए ब्रिज भाई? भाई हाथ में फ्लैश था, मैं सोचा फ्लैश पिक लूंगा. जरूरी था क्या? जरूरी मेरे पे क्लासिक था, उस पे घोष था. पुश करना जरूरी था क्या? मैं पुश कहाँ किया? मैं तो इधर था, इधर खड़ा था. अरे वो साइफर आया तो इधर राइट में आ सकता था. रिलोकेट करके इसके साथ खेल सकता था. पीछे. Reloading. तू पीक ले रहा है, तेरे कांटेक्ट पे मैं स्टन दूंगा. बी स्मोक हो गया. आगे इधर आ. वापस गया. Can't use that. Spike planted. छोड़ के क्यों गया ब्रो? Last player standing. Good thumbnail. Thank you. Enemy only looks composed. Their heart's still a क्या? different story. अरे यूटिल डंप होता मैं देख लिया था इतनी शेरू दोनों से. अरे भाई मैं तो फंस गया. एटलीस्ट स्मोक क्या कुछ पुल ही कर देता ताकि मैं निकल सकता. मैं खेलता नहीं हूँ ना. Where are you? मैं Mark 1. Mark 2. ले लिया इन्होंने कनेक्टर.
सारा ब्रीच तेरे इधर से आ सकता है। ब्रिज ए देख ले, स्मोक में बैठा है इधर। यार तो नहीं है, तो भाई भी आ रहा है। Last player standing. DB planting. Spike planted. One enemy remaining. 80. Flash out! Concussing! No. After Come on. Clutch. Doubt me again. I know. I'm great. You're welcome. बनाया हुए गोट नहीं है, बकरी ने बनाया, मेरे को पता है वेनम भाई, बकरी ने बनाया। Enemy B. On my mark. एक 8 है, 8 से घुसा है भाई। क्या बैठते हैं यहाँ पे? Can't use that. Killed the rat. हाँ उधर ही है, तीनों उधर है। साउंड आया, मास्टर और बीच तो पक्का है। हाँ तेओ भी है, सब है। ब्रिज तेरे लेफ्ट में खड़ा। One enemy remaining. तेओ भी उधर का डोर Spike down mid. हाँ क्लोज। Flash out. 30 seconds मारा left. 8 के टाइम। Who could have predicted this? All right, I did. My people, are you ready? You must cultivate a sense. Need a drop. उसके एस्ट्रा का स्मोक को उसके अगेंस्ट यूज कर दिया, मजा आया। भाई ये जो बीमेन से आता है ना तेओ का ड्रोन, एक बार आप तोड़ दोगे ना तो बहुत मेहरबानी होगी भाई, क्योंकि आके वो मेरे को ही करता है। Who's next? Spike down. 78 थे वो, 78 डबल डोज। शुरू है मुझसे। रीलोड कर ले। ठीक है रुक जाओ ना, इजी। So shots. My ult's ready. Enemy spotted B. भाई Still in sight. दोनों भी में। योरू ए जाएगा, एक बंदा ए जाओ, केजे ए जा। Thirty seconds left. Got to target a क्या कर star. रहा है ब्रो? दोनों भी में। I know exactly where you are. One enemy remaining. फुल करना। Ha! I end them. Feel
एक्स्ट्रा वो हाँ वो वाला पुल नहीं करके ये जब प्लांट करेगा ना तब उसको पुल तो करना। यहाँ पे बंदा I can't be away for long. मैं उसके वल्नरेबल ये जो मेरा साइपर सेम पोजी मत खेलो तेव अल्ट मारेगा। हाँ मरा एक्स्ट्रा इको राउंड है। मिड है टॉप में कुछ नहीं ये होल्ड करना फिर घुस गए Reloading. साइड पे Go ahead. Stand your क्या ground. कर रहे ना। हेलो Enemy down. Spike planted. One enemy remaining. मेन होगा ये मेन था। Concealment. Bring them down. रेना ब्रो तू क्या कर रहा था वहाँ पे? Push a button. Save the day. Reloading. Don't die. If you need help figuring out how, just ask. Need a drop. Thank you. भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरे पास टीम गेम खेलते ही क्यों हैं लोग पता नहीं। जीत सकते हैं क्या हम लोग गेम? क्या क्या? जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। आ रही थी क्या करना। रुक जा एक्स्ट्रा एक के बार है। हाँ क्या तू जिंदा रहना मैं अल्ट मारूंगा उनको। Enemy spotted. Off your feet! You want to find it? Nice try. स्मोक दे ब्रो एक्स्ट्रा। Reloading. इधर कनेक्टर आ गया कनेक्टेड है। Too late. कनेक्टेड है स्पॉन भी हो सकता था। 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. Good board. I set the punishments on them. Have I told you you're okay? You're okay, fam. Good even. ये तू अपना पोजी चेंज कर ले बस क्योंकि वो योरू को पता है तू ये पोजी खेलता है उसके अराउंड प्ले बना रहा है। Placing swarm grenade. हाँ तो Placing swarm इसको ना grenade. सपोर्ट कर दे रहे अल्ट है ना ये रुका हो सकता है। ये इधर है। Who's next? ये मेरे पे है। Help. मैं रुक Spike down. Defender spawn.
Last player standing. Killed the rat. दोनों spawn है अपना. बहुत Spike planted. हाँ site ही देख लेंगे दोनों. Okay. One enemy remaining. Concussing. Match point. Make their fear your weapon. Or use a gun, whichever. वो आए कहाँ से लेकिन? डबल डोज. डबल डोज से योरू ने ऐड किया. इसने मेरे को भेज दिया यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे चल जा पीछे खेलना तेरा अल्ट है. अल्ट मार के रोटेट कर सकते. ए पे साउंड है. Concealment. Flash out. Spike down A. Multiple enemies A. Abwa. बाकियों का पता नहीं. मे भी लर्क होगा देख के. ये 8 ये हो सकता है अपने spawn पहुंच जाएगी साइड पर. ठीक है वहां से आएगा तो टैरेट है इसका केजे का. नहीं वो टैरेट वो केज कर देता है ना. जो दोनों 8 से I know exactly where you are. One enemy remaining. Turret down. टैग नहीं किया मैं. रुक जाओ पहले मारना. User survival registered. Congratulations. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Placing sentry. लेना पुश मत करना. ये साउंड ये केजे अच्छा है. लौड़ा अच्छा है. फेक था गुस्से नहीं है. केजे सुन मेरे पे जब पिक करेंगे तब लेना. रुक जा. होल्ड करो. केजे का अल्ट है. रिटेक कर लेंगे. प्लांट करने दो. Spike planted. अल्ट मार केजे वहां से अभी. One enemy remaining. उधर ही है. Flash out. Last player standing. Imagine if I died right now. So funny. नहीं होगा. ओ भाई. Clutch. Attackers win.
ये केजे अच्छा है बोलता है भाई इसको। खेल रहा है क्या? ये खेल रहा है, मैं स्टार्ट करता। तू आ रहा है क्या राइन से भी? हेलो, आ रहा है तो फिर आ, नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा। आ रहा है अभी? तन्मय भाई क्या हाल? बाद में अभी भी चल रहा है मीटिंग। अच्छा, ये देख रहे हो तन्मय भाई? मैं चले जाता अगर राइन्स आज अगर नहीं आता तो मैं अभी स्ट्रीम बंद करता। 2 जब हारा तभी मैं बंद करता भाई। मेरे को वैसे भी मन नहीं था आज वैलो खेलने का भाई। एक तो ये हॉकाई को इतना मारूंगा ना भाई, इसीलिए ना कि डुओ वाला गेम खेलना ही नहीं चाहिए, किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए भाई। उसके वजह से वे आउट स्टार्ट किया था, वे आउट खेला साथ में 50% के बाद उसको मैं 3 दिन से मैसेज कर रहा हूँ भाई, माँ चुदा है भाई वो गेम में, अनइंस्टॉल मार रहा, माँ चुदा है वो माँ चुदा है गेम। मेरे को पॉइंटलेस भाई, इतने बार भाई मैं इतना नहीं बुला सकता किसी को भाई। तुमको आना है आओ, नहीं आना है माँ चुदा हो। मैं अपनी मम्मी पापा को इतना मक्खन बटरिंग नहीं करता जितना, तो भाई तुम लोग तो दूर का बात है। कोई ने रेड कट कर लो, मैं आने से ग्रीन करता तुम्हारा। अबे जान दे साला, 4 राउंड हारेगा फिर तू भी रेज करेगा। तने भाई कैसे? अरे थोड़ा गेम खराब जा रहा है और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कल देखा तुम्हारा ग्रीन कारपेट, कल तो बड़ा शांत था मैं। मतलब पूछ रहा है या बता रहा है? बड़ा शांत था मैं पूछ रहा है कि बता रहा है? I'll fight anybody. I'll fight. शांति होगा ना जब थ्रो करेगा तो। वो ये वाला ही था ना मैप, लोटस मैप ही था ना। हाँ देखा ना तू प्लस तो हुआ है जो भी बोल रहा क्या? हाँ देखा ना तू, प्लस तो हुआ है जो भी बोल रहा। मैं शांत हो रहा धीरे धीरे। अच्छा लौड़ा हो रहा है तुम, ठीक है जिस दिन होगा मैं बता दूंगा। 4 राउंड अच्छा जाता है कि नहीं, तुम्हारा शॉर्ट टेम्पर आ जाता है। पहले मैं ऐसा होता था जब सैसी ये लोग खेलता था कि गुस्सा भाई, अगर मैं अपने बंदों के साथ खेल रहा हूँ तो आई ट्रस्ट देम, एटलीस्ट कुछ गांडूपंती तो नहीं करेंगे रैंडम्स की तरह। तुम साला 4 राउंड के बाद भड़कने लग जाता है। जिस दिन तुम शांत होगा उस दिन मैं खुद बता दूंगा कि हाँ भाई इम्प्रूवमेंट हुआ है। शांत हो रहा है साला। मेरा कल कुछ प्लस नहीं हुआ 50 आवर्स खत्म। नो प्रोग्रेस तो मैंने किया है नेगेटिव में। स्मोक और मिल जाएगा तो। Killed the cypher. दोनों Spike इधर। planted. One enemy remaining. मेरा तो हुआ, इतना मारूंगा ना क्या? मेरा कल प्लस क्या हुआ तन्मय भाई?
किस चीज में BCVC लिख रहे हो? That cipher is a dead man. Not your best. Not enough. इधर एक बॉक्सेस के पीछे बैठा One enemy है और remaining. एक डोर खोल रहा था. Okay, quick break. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. घोस्ट या शेरिफ कुछ है? शेरिफ दे दो. आइसो भाई. थैंक यू. पुश करोगे क्या अभी? I'll flash for you guys. Dropping smokes. अरे भाई. Cutting through. 124 Spike Pro. planted. Reloading. Decoy. Last player standing. No Okay, peeking. which gun to pick this time? ये वैंडल अच्छी है. हाँ ये वैंडल अच्छी है. Over there. भाई टीपी तो डाल देता पीछे. मैं सोचा मैं डाला हुआ हूँ पिछले. वहाँ पे रेज है. मैं सोच रहा अरे हूँ. यार वो घुस गए. अरे यार मैं सोच रहा हूँ मैं डाला हूँ पिछले राउंड का जैसे डाल. Last player standing. Spike planted. सेव कर ले. ब्रिज को अच्छा मारा बाकी हगास कर दिया. अरे यहाँ भाई पे ही अर्नव भाई छोड़ो यार कुछ बोलूंगा नहीं यार छोड़ो. मतलब सामने बंदा आएगा तो Teleport's ready. मेरे को मारना ही है. सामने वाला अच्छा नहीं मार सकता. इट्स लाइक मेरे सामने आया है और मैं नहीं मार पाया और सामने वाला मारा मतलब मैं हगास किया हूँ. जब तक आप गेम को ऐसी नजर से देखेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई. That cipher thinks he sees everything. I go invisible, idiot. Come get me. जिसमें ब्रीच को मारने का प्रोबेबिलिटी मेरे कम थी उसको मैं मार दिया तो ठीक. लेकिन बाकी मैं हगास क्योंकि मैं गन था भाई मैं नहीं मार पाया. वाह वही ना जो अब गेम खेलते नहीं है वो उनको कैसे ही पता रहेगा कि भाई कैसे क्या होता है. छोड़ो. Give them nothing. मारना ही पड़ेगा. यूट्यूबर होने के क्या फायदा? अर्नव भाई ऐसा कहाँ लिखा है? कौन से रूल बुक में लिखा है कि यूट्यूबर है तो अच्छा खेलना पड़ेगा? मेरे को आप दिखा दो कोई एक रूल बुक दिखा दो अर्नव भाई. नीचे ब्रांड नीचे मारो ताकि ऊपर जाता वो लोग ब्लाइंड हो तो डायरेक्ट. ये मरेगा ना इसका गन लूंगा. अरे मरा नहीं साला. जेट मेन पर ऑपरेटर लेके बैठी है.
रोटेट करेंगे वो लोग रुको शायद। फिर रुको ना, मैं बी जाता तो सी जा। मैं देख लेता हूँ, रुको। तो इधर अभी भी ऑफ गिरा है, आई मीन स्पाइक गिरा हुआ है। इधर 2 बंदे हैं, तीनों इधर है। दोनों ट्री। अरे यहाँ पे मत जा, यहाँ पे जा, लोग मत जाइए। I know exactly where Planting, you planting. are. सिंगल उसको बहुत पता है। Get out of my way! Spike planted. One enemy remaining. Nice one. Nice shot. ओए खेलता हूँ मैं, स्टीरियोटाइप बोल रहा हूँ, यूट्यूबर होने का फायदा है। चिल भाई, अर्नब भाई आज थोड़ा सा मैं माफ करे यार, मेरा दिन खराब जा रहा है इसीलिए रिएक्ट कर रहा हूँ, बाकी ऐसे मैं रिएक्ट करता नहीं हूँ, माफ करे, आज दिन खराब जा रहा है। If I may, I'll go in first. खेलता हूँ मैं। अच्छा खेलते हो तब ठीक है, तब अच्छी बात है। माफ करे यार, आज थोड़ा दिन खराब जा रहा है, आज बंदी से बात नहीं करेंगे, उल्टा सीधा सुना दिया मैं उसको, फिर रोने लग जाएगी। सी लोग सी जा। Time to jump. Spike down, C. Spike planted. एक मेन है रेज। Player standing. Teleport's ready. I don't think so. स्प्रे क्यों रोका? These new friends of ours are not too friendly. मैं टीपी करने का सोच रहा था। क्यों आज क्या हो गया? अरे दिन खराब है तो और क्या। कौन बोला? क्रेटोस बोला। Jump them. 3-5 में। हर बात पे रंडी, मतलब हर बात पे भाई माँ बाप को खींचना, इतना आजकल ये मतलब इतना इजी हो गया ना लोगों के लिए कि भाई कुछ भी हो माँ बाप पे गाली दे दो, मतलब मतलब कोई और लाइफ है ही नहीं भाई इनका। मम्मी पापा को गाली देने के अलावा कुछ लाइफ है ही नहीं। One enemy remaining. कुछ और लाइफ है ही नहीं भाई। देखो ये क्या है? Listen up, you muckers. If I don't get back up, just give me a nudge. I might not be dead, just taking a wee tip. बाहर ये नहीं होता है भाई, होता होगा लेकिन इतना तो नहीं होता होगा। हर बंदे के मुंह पे माँ बाप की गाली। क्या हो गया है भाई अपने गेमिंग कम्युनिटी को? कहाँ जाएगी ऊपर बे? एक फॉरेन का प्लेयर आके इंडियन लॉबी में खेलेगा, देखने के लिए कितना इम्प्रूव किया है। ऐसे बिहेव करेंगे तो क्या लैंड का कुछ होगा भाई? दिन खराब देखो कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं हुआ यार, सब कुछ ना एम लग रहा है ना गेम अच्छा जा रहा है, ऊपर से रेड कारपेट। अरे भाई One enemy remaining.
Spike down B. Cutting through. I guess that's it. Reloading. Alright, lucky socks. Don't fail me now. पीरियड्स, हाँ भाई पीरियड्स। देखो ऐसी बातें करोगे तो क्या आजकल के युवा, वही ना तन्मय भाई, मतलब अगर जोक्स अपार्ट, आजकल के युवा मतलब क्या हो गया है भाई, क्या मतलब इतना इजी हो गया है ना भाई, इतना इजी कि भाई किसी को भी माँ के बारे में गाली बोल दो, बाप के बारे में गाली बोल दो, कुछ तो होगा नहीं। हाँ इतना इजी हो गया ना। Drop in a smoke. Fire in the hole! I know exactly where you are. भाई तू मेरे पोजीशन में क्यों खेल रहा है भाई? Spike planted. रेड कारपेट के लिए भी नहीं भाई, एम नहीं लग रहा ना, दिक्कत हुआ है। आटू झाटू आके कुछ भी बोल के जा रहे हैं भाई। Breathe. Then commit. मैं कहाँ से आया भाई बीच में? मेरा क्या रहता मतलब है? तू कहाँ से आया? मुझे फूल बनने के चक्कर में पूरी गेंद छूट चुकी है। जैन, हाँ जैन छूट चुके। अरे सही भाई, पूरा मतलब क्या बोले। अरे बाय मांग ले, अच्छा नहीं हो रहा है। बाय मांग ले देखो जल्दी। अरे वेट हीरो भाई बाय दे देता हूं। उस पे तो अल्ट है। अल्ट के बाद भी भाई ये फ्लैट लॉबी के प्लेयर्स। नाइस वन। Spike down A. One enemy remaining. अरे अमन डेलीलू में रहता, उसको लगता कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ना तन्मय भाई, एकदम सच बोले, एकदम लंचट है साला ये। कुछ भी होगा 5 लोग मैं 5 मैन खेल रहे होंगे, किसी और को बोल रहा होगा हैं? मैंने क्या मेरे को क्यों बोल रहा है? अरे भाई इस साला एडवांटेज आया आज एट लास्ट। क्या एडीवी आया एट लास्ट? हम लोग क्या हेडशॉट मारा देखे? No peeking. It's all you, little homie. Man, they stopped her. Dizzy's up top. तो भाई पीछे से भी आ। Last player standing. Spike planted. भाई प्लांट हो गया, जाना उधर। एडवर्टाइजमेंट, अच्छा इस साला एडवर्टाइजमेंट आया आज एट लास्ट। अभी आ रहा है तेरे को? रुक तेरे को हटाना पड़ेगा मॉड से, तब शायद आएगा तेरे को। अमन भाई, बाहर देश के लोग अपने भगवान को अमन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, तो आप उसको भी बोलोगे क्या कि मेरी पूजा क्यों कर रहे हो? अरे भगवान को आमीन नहीं बोलते हैं। Last round before the switch. अरे भाई This is it. Get those guns. कौन से देश में कौन से सोच से जी रहे हो भाई? तो भगवान को आमीन थोड़ी बोलते हैं। बाय दो भाई, भाई बाय दे। हेलो भड़कता क्यों है भाई? ले रहा हूँ। I'll handle this. इधर रेज है। Out of my way. Cutting साइफर इधर है, साइफर बी है। I'm back.
Last player standing. इसकी माँ का कॉन्फिडेंस देख रहे हो कैसे चढ़ के बोल रहा है। सबको एक अच्छा सा टाइम आउट दे दूंगा ना, अरे एक मारूंगा ना। अच्छा तो वो टाइम आउट का थोड़ा टाइम आउट दे दूं क्या? अच्छा ऐसा वाला वो टाइम आउट, ओके चैट वाला टाइम आउट। देख रहे हो तन्ने भाई, मॉड होने का फायदे उठा रहे, देख रहे हो ना, मारूंगा ना। इग्नोर करना भाई, छोड़ना, बोलने दे, जितना तू बोलेगा उतना वो बोलेगा। बस भाई क्या देखो, रुक जा मैं क्लोन भेजता हूँ। लेफ्ट को गया है। One enemy remaining. Flawless. Thanks, Wings. Well, they suck. Reloading. You know, I could just outlive them. काहे का मॉड भाई ये, तू नहाने मेरे रूम में आ रहा? नको प्लीज मेरे को। बट इनको ग्रीन हाइलाइट्स क्यों है? सबको एक अच्छा सा टाइम आउट दे दूंगा ना। कल वैसे भी मेरे रूम ही आ रहा है, तो मेरे रूम के बाहर टाइम आउट दे दूंगा। बट इनको ग्रीन हाइलाइट्स क्यों है? ग्रीन हाइलाइट्स मतलब किसको ग्रीन हाइलाइट्स की? किसको ग्रीन हाइलाइट्स है? Wingman's planting. They found the trap. Mike's ticking. Thanks to the man. Enemy spotted C. Stand aside. Look it. Time to jump. You're finished. Fake teleport. Reloading. ऊपर देखो। One enemy remaining. Over there. Last player standing. भाई मैं तो ऊपर ही देख रहा हूँ ना भाई। शोर क्यों मचा रहा है फालतू में? क्या? अरे वो यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पे मारा ना उसको मेन पे, तो वो क्लोज बैठ गया आगे मेरे। मेंबर्स को ग्रीन हाइलाइट्स बोल रहा, वो ग्रेटेस्ट मॉड। अच्छा नाम का गिले गए। अबे वो लोग मेंबर हैं इसीलिए, अमन भाई मेंबरशिप लिए हैं इसलिए उनका ग्रीन में नाम है, इसलिए उनको लॉयल्टी बैच भी है। देख नाम के बाजू में एक लॉयल्टी बैच दिख रहा होगा। जितने महीने आप मेंबर बनोगे उतना आपको लॉयल्टी बैच एक साइड में चेंज होता रहेगा। Try not to die. महा मॉड साला। Dizzy's up. Somebody's there. Enemy down. Reloading. I will. Last player standing. हाँ आपका बाथरूम का पानी अच्छा है, वाह। राइन्स में सब समझ रहा हूँ, ये सब करने लग गया है तू। ऐसा गेमप्ले देखने के लिए मेंबरशिप आई थिंक यू शुड रिफंड। अरे मैं कौन सा ये सब फॉलो करता हूँ जो मालूम रहेगा? तू फॉलो मत कर भाई।
तू कर भी नहीं पाएगा फॉलो, तू मत कर भाई, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू वो देख, तू एनीमे ही देख। Here. कमिट मत करना, रुको। Reloading. Breaking them. Reloading. Time to jump. Decoy. Reloading. भाई तुम लोग ट्रिप वेब तोड़े नहीं हो, हाउ कैन यू गाइस प्लांट मैन? Last player standing. Away with you. क्यों इतनी जल्दी भेज रहा है प्लांट? साइट वही साइट कंट्रोल है नहीं प्लांट का। Why can't we just hug it out? Pinche radiant. तुझे मत दो भाई प्लान। हाँ भाई मत ले तू। बट इंस्टा का भी मेंबरशिप है पर कुछ अपलोड तो नहीं है अमन भाई। मेंबरशिप उसमें अपलोड करने के लिए थोड़ा सा एक बार 20 के हो जाए फिर अपलोड करता हूँ ना मैं चीजें, आप देखना। No distraction. ग्लोबल है। रोटेट करो रोटेट करो रोटेट करो। Reloading. Reloading. अरे सी जाओ सी चलो 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 चलो। नाइस वन, गन ले ले। जा 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 जा। उधर ऑपर भी है, जेट भी है, ऑफ कर रहा है उधर। देखो बंदूक ले बहन के रोड़े आ जाना। भाई फंसा हुआ था, कैसे जाऊं? तेरे पे वो नेड है ना तो मॉली वाली कर। फ्लैश भी था। Try again. On my mark. आवाज नहीं आ रही तेरी भाई चैम्बर। Last player standing. दोनों यही का? हाँ दोनों उधर है। दोनों उधर है। 140 है साइफर। One enemy remaining. Nice. Clutch. My ult is ready. That's true. Good advice. ए पे आओ। सुनो मैं पहले अल्ट करके यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई है कि नहीं ऑपर, ठीक है? एंड फिर तुम लोग ट्री से एंट्री मारना। कोई पिक मत लेना। रेज है, क्लोव है। छोड़ो छोड़ो, क्यों जाना छोड़ दे आजा क्लोव यार, पीछे आ जाओ। Spike down A. स्पाइक लेके आओ। Dropping smokes. Wow. Fake teleport. Pardon? बंदा है। सामने देख, मैं राइट में देखूंगा। एक ट्रिप और है इसकी साइड। 30 seconds left. ब्रिज ऊपर होगा, ब्रिज ऊपर होगा। Cutting through. हो जाएगा।
अबे भाई रुक जा Decoy. Last player standing. One enemy remaining. One enemy remaining. ओके 800 का भी है। यस मैं ले लूंगा। हाय अरे अमन भाई लव यू यार। बाय द अमन भाई थैंक यू फॉर द RyuK के दोस्त मेंबरशिप। गाइस अमन भाई ओफी हो जाए चैट में। मस्त गन है यार। छी टट्टी है साला। मेरे को भेजो पैसा अमन, थोड़ा बिरयानी खा लूं। वाह थैंक यू अमन भाई फॉर द मेंबरशिप। Can someone buy me, please? Can someone buy me, please? अभी पहले मत जाना, वो अपने कॉम्बोस करेंगे। Get out of my way! No distraction. Jet. ऑपर है वो। Drop in a smoke. Dizzy's up top. Behind. No peeking. तीन पीछे जल्दी चेंबर हेल्प करो चेंबर जल्दी। अरे अल्ट मारने की जरूरत चेंबर टॉप। One enemy remaining. You did your best. अमन भाई टोपी भाई का पूरा मूड ठीक करने के लिए 60 रुपए में क्या रखा। अरे साला अरे अमन भाई आप वो इंस्टा वाला अभी के लिए मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हो। मैं एक बार कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा, बता दूंगा, फिर ले लेना। ये वाला लोग है तो इसमें तो कंटेंट डालूंगा एंड प्लस मेंबर्स ओनली स्ट्रीम। तो Try not to die. इधर आपको वैल्यू मिलेगा, उधर अभी के लिए थोड़ा सा बंद है मेंबरशिप का इंस्टा पे। Someone's there. गया लेफ्ट से गया। ब्रीच है, अल्ट मारेगा तो वी कैन रोटेट। वॉकआउट कर। Go. Rotate. चार्ज गेगो रोटेट। अरे दो में आते हैं। और एक है। Last player standing. Let's किया भैंस का लंड। Outside of this gig, ना चलता कट्टे दे। अरे doesn't have as many day-to-day benefits as you think. आज रोनी वापस आया 2 साल बाद। मैं एज अ गेमर नॉट एज अ टॉय अनबॉक्सर। स्ट्रीम किया बीजीएम का। सही है यार। नियर बाय द वे वेलकम टू द स्ट्रीम। अब बोलना सच, आज ये वैलो आके मस्त हगेगा एंड देन 60 रुपीज देगा। वॉक कॉम्बो करेगा पीछे। Off your feet! Fire in the hole! Enemy A. Show me a decoy. Nice. Reloading. आजा चेंबर। One enemy ये remaining. बी पे बैक स्टैब है। गेगो साइड। देखना बकचोदी इधर से आ रहा है चेंबर। वो नहीं आएगा, वो चेंबर की साइड से आएगा। वॉक Last player standing. भेज कुत्ता भेज। If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances.
are so dead. फ्लैश करूँ क्या? Somebody's there. अबे यार I know exactly where you are. पीछे है, पीछे तेरा जेट। साइफर भी बी पे था। Wingman's gonna plant spike. तुम दोनों बहुत लो, ध्यान से खेलो। नाइस राउंड। It hurts, but I'm good. थोड़ा मेरे साथ जरूर आओ यार। एक राउंड और है, साथ में आना। Match point. मैं इन्फो निकाल रहा हूँ ना। चलो। तू बाकी आ जा। I need a drop. गेको बाय दे। Thanks. I need a gun. बाय देना भाई। देखो बाय दियो। ए आ जाते ना, ए पे इजी होगा। गेको अपना अल्ट पोस्ट प्लांट कोई ना कोई। हाँ पोस्ट प्लांट रखना अल्ट, मैं अल्ट अभी मार रहा हूँ। इन्फो। I'll handle this. I win again. ऐसा इधर कोई नहीं है। Time to jump. साइड पे। I'm back. साइड पे ब्रीच है। What now? ब्रीच साइड पे। Wingman's planting. Enemy spotted. 98. Last player standing. अरे भाई ब्रिज साइड पे नहीं था यार। मैं साइड पे था ब्रो, इधर मेरे को इसको तो मैंने लॉक कर दिया था। These guns we use are okay, ऊपर था। but I ऊपर will चला also गया। bring my ऊपर चले जाएगा। अब मैं जब मरा तब मैं बोल दिया साइड पे था, तब उसके बाद वो रिपोजिशन करेगा तो मेरा अल्टा में उठाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा स्प्लिट वगैरह करने की ट्राई करें। हाँ स्प्लिट करते। भाई मैं हट दिया ना। ओके अल्ट पे। शिट। Jump them. Get out of my way! Show me a target. No distractions. हाँ। Our spike carrier is dead. Spike down. Attacker spawn. Last player standing. Off your feet! Switching sides. Overtime. It seems these strangers want me dead. क्लोव इधर आ, गेको इधर आ। They're not so first. चेंबर भाई आप चले जाओ सी पे। क्लोव अपना वल्नरेबल फेंकना इधर। बी देख ले, चेंबर बी देख ले, सी में बता दूं। और गेको अपना मॉली फेंकियो। Here. आगे जाना है या पीछे रहना? तुम लोग आगे आओ ना। आगे आगे जाए। फ्लैश भी डाल। Cutting through. फेंको। Y'all, you mosh. सी। जाओ 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 पीछे जाओ। छोड़ दे गेको, आजा। Get back. Fake teleport. Spike planted. Focusing. Making cover. Down. Dizzy's up top. चेंबर में आपको कवर नहीं। सिटी कोई नहीं है, लेफ्ट में है जो है। Go get him, buddy. ब्रीच मेन।
एक लेफ्ट एक राइट. Last player standing. Switching sides. Match point. Let's reset. Deep breaths and all that. थोड़ा होल्ड करते हैं, रुको. एक बी पे पुश देखते हैं. आओ, दो बंदे. एक बंदा ये देखो, दो बंदे सी देखो. पुश उनका आएगा. ट्रेड लेने का ट्राई करना. दो बंदा सी देखो जो. Here. साइफर का कैम भी. Nice. Spike dropped. Nice, he's gone. अबे एंगल होल्ड करके रखा है पूरा. भाई आज नहीं होगा भाई, मैं जा रहा हूँ इसके बाद. नहीं होगा आज मेरे से. ब्रीच एंड साइफर भी. नाइट रोटेट. आराम से. और भी उठा लेना. चेंबर अगर उठा सकता है तो तेरा अल्ट आ जाएगा. और इसके Enemy spotted. C. वाटरफॉल ब्रीच. 30 seconds left. आजा इधर आजा. आइसो. हेलो. कभी 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 Plant the spike. प्लांट कर देखो. Plant the spike, Wings. Dizzy's up. 10 seconds left. Dizzy has mosh pit. Shot my wingman. प्लान प्लांट कर. वाह रे भाई देखो. अबे उसने किया नहीं प्लान. Defenders अरे win. बहन छोड़ यार. ओपी बेबी. दूसरा गेम खेलना है तो खेलूंगा, नहीं तो नहीं होगा आज. अरे आएंगे, रुक. नहीं भाई मैं जा रहा हूँ अभी. अब वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है. मैं बीजे मैं जा रहा हूँ. एक नया वैंडल. तुमको क्या जरूरत है पता है? एक नया वैंडल सर. नहीं भाई मेरे को तो बहुत टट्टी लगा ये वाला. ब्रूट को पूछता हूँ खेलेगा क्या.
अरे मेरे एक बंद फ्रेंड है अभी कनाडा में, एक काम करता है, उसके गर्लफ्रेंड इंडियन ही है एंड उसने उसको PS5 खरीद के दिया। शाबाश। अरे ऐसे बंदी पटाओ जो स्किन्स खरीद के दे। फ्लेक्स क्यों मार रहे हो तन में भाई? हैं? मानता हूँ आपके पास वैसी बंदी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे पास भी वही बंदी ऐसी बंदी होगी। देख रहा है कि राइंस कितना फ्लेक्स कर रहा है ये बंदी पटाओ ऐसी जो बातें सुन रहा है, बातें सुन तू। ओह, क्या करूँ गाइस? भाई मेरे को एक अभी ऐड आया भाई KFC रोल्स का, अब मुझे KFC का मन कर गया भाई खाने का। छी भाई इतना टट्टी है ना। भाई क्या करूं भाई, एक भी गेम सही से नहीं जा रहा है भाई। गुरुड को कॉल करते हैं। गुरुड चल करते ऑर्डर, मैं भी करता तो कर देना। 10 बजे तक आता मैं जा रहा हूँ यार, BGM में जा रहा हूँ, नहीं लग रहा है भाई आज जा रहा हूँ BGM में। मेरे को लगा तू साला 7 बजे तक आएगा इसीलिए। हेलो कहाँ पे हो सर जी? अरे मतलब BGM में आएगा, आओगे तो अभी 10 बजे देखता हूँ। क्यों? शायद नहीं भी हो पता है, क्यों ऐसा क्या हो गया कुछ? अरे साला कल कौन सा पूजा है भाई? ईद वीद मना रहा है क्या तुम भी? अच्छा ठीक है, ओके ओके। नो BGM में टुडे वेलो। अबे साले तू शाम से आता ना बे, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरा वैसे भी एम नहीं लग रहा, तो मेरे को वैसे भी रहने का मन नहीं है। वेनम को पूछते खेलोगे?
हेलो अबे स्पीकर पे नहीं डाल के मैं फोन ऐसे रखा हूँ। हेलो आवाज आ रही है? हाँ मैं अभी खेलने आएगा क्या? 10 बजे रेवेंजर में हम लोग हैं। 12 बजे? अच्छा ठीक है। अबे वेनम भाई तो है, फोर्थ मैन तू है ना अपना। वो टट्टी नहीं आएगा बोल रहा है। अरे मैं एक जन को बोल दिया ना, तो मैं थोड़ा उनके साथ वैल्यू कर दूंगा, तो उसके बाद अच्छा देखता मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है। 7 बजे तो मेरा मीटिंग शुरू हुआ। अबे मेरे को लगा 7:30 तक होगा, 7:45 तक। अमन एक चॉकलेट केक का रेसिपी भेजा हूँ, देख जरा इंस्टा पे। ये साला क्या बातचीत चल रही है भाई। 7 बजे तो मैंने अभी भी चल रहा है मीटिंग। अबे तो तू कर ले मीटिंग, कीजिए मीटिंग, मीटिंग कर लो, मीटिंग मीटिंग कर कर। अबे नहीं, वो सीखने का चीज़ है, मैं जानता हूँ। करो करो, अब बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हो, माना मजाक से हटके, तो करो करो। एंड वो आपको आती है बोलकर ये वाला चीज़ किसी को बताना मत, बस मैं इतना एज अ वेल विशर सजेस्ट करना चाहूँगा, समझ रहे? या अगर तू कर भी रहा होगा तो किसी को बताना मत। अरे नेमेसिस क्या हाल है गांडू? कभी कभार तन्मय की बातें नहीं सुनना चाहिए। हाँ आई नो, यस यस, गुड गुड। हाँ एक काम कर राइंस, मैं बता, वो वैंडल ले ले फिर ग्रीन कारपेट। अबे मैं चैंपियंस वैंडल का वेट कर रहा हूँ गांडू, पूरा बंडल लूंगा इस बार का चैंपियंस का, इसलिए वैंडल पे तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा मैं इस बार। में चैंपियंस वैंडल आएगा ना, तो तुम्हारा भाई चैंपियन है, तो अब चैंपियन वाला एक स्किन तो होना मांगता है। मैं बोल रहा हूँ राइंस, इट टेक्स टू डाउनलोड कर, इट टेक्स टू खेलते साथ में। अच्छा डेड बाय डेलाइट भी तो खेल सकते हैं, क्या बोलता है? प्रॉप नाइट देखा है गेम? प्रॉप नाइट जैसा ही है डेड बाय डेलाइट। तेरे मेरे पे तो फ्री पे पड़ा हुआ है, तन्मय भाई को बोल देंगे खरीदने के लिए, ज़्यादा महंगा है नहीं। और एक बंदा, और 2 बंदे चाहिए ना, 5 बंदे खेल सकते। डेड बाय डेलाइट है मेरे पास, शायद से दिखूंगा। अबे वो एक्सबॉक्स पे है ना, एक्सबॉक्स पे भी है, उसका टेंशन नहीं, अगर नहीं भी होगा तो एक्सबॉक्स पे है वो। तो तन्मय भाई को खरीदना पड़ेगा। अभी मेरा अकाउंट में है 20। साला अकाउंट में 20 रुपए है, वहाँ क्या चॉकलेट केक का रेसिपी बनाना देख रहे हैं? अकाउंट में 20 रुपए है, सुन रहा है राइंस, और यहाँ पे चॉकलेट केक का रेसिपी देखा जा रहा है। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, पूरा नागपुर दौड़ाऊंगा तुम्हें, समझ रहे हो? एलईडी चौक से लेके पूरा बुधवार पेट तक, नहीं कौन सा पेट है वो, जो भी पेट है वहां तक दौड़ाऊंगा, पूरा नंगा दौड़ाऊंगा।
20 रुपए है मतलब। और ये बाबू चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी देख रहे हैं। 20 रुपए का बजट है मेरा, उसमें कोई गेम हो तो बताओ। देख रहा है, सुन रहा है। मैं एक्सबॉक्स कैंसिल कर दिया क्या? इतने लोग टट्टी कैसे हो सकते हैं? इतना मस्त मस्त उधर गेम्स है, कहाँ खेलेगा डायब्लो वो सब गेम्स, कहाँ खेल सकता है? नहीं हम तो भाई, अभी वो लीजियन भी आया उसमें, फार क्राई 6 भी है उसमें, अब थोड़े दिनों बाद वो शैडोज भी आ जाएगा। अरे ड्रीम करना चाहिए, भले ही सपना चॉकलेट केक का ही क्यों ना हो। भाई कैसे कैसे ड्रीमर लोग हैं भाई मेरे चैट में भाई। चैट से याद आया, भूख सी लग रही है, कुछ ऑर्डर करे क्या? कल लेकिन गैस हेवी मैच है वॉच पार्टी का, जेनजी वर्सेस पेपर एक्स है, बहुत हेवी मैचअप होने वाली है। हम्म कुछ कुछ शर्म है, कुछ शर्म है राइंस, कुछ शर्म है। वो 20 रुपीज भी खर्चा कर दिया लेज में, अबे भाई। एक साला दोनों मतलब एकदम निर्लज रूममेट्स हो, फ्लैटमेट्स। एक एक पे थोड़ा सा था वो भी मतलब लेज, और एक भाई मेरे को एड्रेस का फोटो भेजता है एकदम स्क्रीनशॉट कि भाई यहाँ पे ऑर्डर। ना मारूंगा भाई दोनों को भाई, मैं अगर हैदराबाद में होता ना भाई, पूरा ट्राइपॉड तोड़ देता। 3-4 ट्राइपॉड है मेरे पे, हर एक ट्राइपॉड एक गांड के लिए ऐसा मारता कि कर ले जितना ऑर्डर करना है। कहाँ ये खुद मेरे को देगा, कहाँ इंटर्नशिप कर रहा है कमा रहा है, कहाँ थोड़ा RyuK को ऑर्डर करके देगा यहाँ पे, नहीं। छे क्या बोलेगा इंसान भाई, एकदम जिंदगी के साथ साथ लोग भी इतना चटलंड हो गए हैं ना। क्या ऑर्डर करूं, मैं वही सोच रहा हूँ। कहाँ इंटर्नशिप भाई, सबको चूतिया बना कॉलेज वाला कि एक कंपटीशन में पार्ट लेगा तो 5K दूंगा, अब जब सबने पार्ट लिया तो बोलता है ओनली विनर को 10K दे रहा। अबे पहली बात तो तुम लोग ऐसा कॉलेज गए ही क्यों? मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कॉलेज क्यों गए तुम लोग? उसके पास्ट या उसका ऐसा कोई रेपुटेशन, ये कॉलेज कैसा है वो देखकर जाना चाहिए था ना भाई।
ऐसा लंचट कॉलेज जाकर कोई पॉइंट ही नहीं है। उससे अच्छा तो भाई मैं तो बोलता कि भाई इंजीनियरिंग का कुछ कर लेते कोई आटू झाटू कॉलेज से, और इस पे इसका क्रैश कोर्स करते रहते, उसमें ज़्यादा नॉलेज मिल जाता। मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट कॉलेज वाले ये सब बकचोदी तो नहीं करनी पड़ती। फ्लाइट्स पे खर्चा किया तो पार्टिसिपेंट्स को क्यों देगा अब? मैं तो बेट हो गया था यार, भूख लग रही है बे। क्या ऑर्डर करूँ बताना भी। घर पे कुछ खाना रखा है क्या? नहीं, एनजीपी से हैदराबाद का टिकट सस्ता है इसलिए। मैं तो गूगल का फर्स्ट सर्च देख के आया, ये भी पता नहीं था कि डिग्री है या नहीं। अरे ये सब साले अपने लाइफ के साथ इतना चमत्कार करते हो ना तुम, दिक्कत उसी चीज में है। इतना चमत्कारी चीज कैसे कर लेते हो बे? इससे अच्छा कुछ और, इससे अच्छा मतलब कहीं और वो कर लेते भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ लेते, या भाई वो एमईटी चले जाते भाई। एमईटी में तो साला तुम कॉलेज में बैठो ना बैठो कुछ फ़र्क नहीं, तुम वैसे ही पास हो। वैसे ही कॉलेजेस चले जाते, साइड में अपना हसल करते रहते। एमईटी के बच्चे पढ़ने लिखने के अलावा बाकी सब में अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वैसे ही बच्चे जाते जिनको पता है कि मेरे को पढ़ाई में नहीं, मेरे को इस फील्ड में जाना है, वहाँ चले जाते भाई। चाइनीज़ कुछ खाएं? आ जाना, आ रहे आ रहे, अभी आ रहे, इसलिए तो गेम बंद करके बैठे हुए तेरा ही वेट कर रहे हैं। बस दुआ कर भाई मेरा ये चल जाए, एलिगाटो चल जाए। चाइनीज में फ्राइड बी पुपे खा के देख। फ्राइड बी पुपे ये क्या है? भाई ये कभी कभार एलगाटो का क्या कुछ सीन हो जाता है क्या? HDMI पोर्ट बदल के देखता हूँ तेरे को।
नहीं हो रहा है। फिर से एडवर्टाइजमेंट आया, आई ये एलगाटो का माँ का भरोसा, वही ना अभी। रुको डोवन से आते हैं यार। कभी कभार लगता है ना एलगाटो तोड़ दूं, फिर याद आता है कि PS5 लेना है, GTA 6 स्ट्रीम करनी है, वरना अभी तक ना एलगाटो फेंक दिया रहता है भाई। क्योंकि जितना बार ये चलता है उससे ज्यादा तो खराब होता है भाई ये ना। कसम, अगर मेरे पास अभी 16-18 हजार रुपए होता ना, इसको तो ऐसे ऐसे तोड़ता और एलगाटो को टैग करके इंस्टाग्राम पे लिखता कि भाई माँ चुदा है तुम्हारा डिवाइस, मैं ले रहा हूँ दूसरा कैप्चर डिवाइस। इतना झट रही है ना भाई, नया ले लो भाई। अरे ये है ठीक चलता, ठीक है, फोन के साथ इसका दिक्कत हो जाता है, पता नहीं क्यों। रेस्पॉन्ड वगैरह सब बढ़िया करता है। रुको एक सेकंड, पहले एक पेमेंट आया कि नहीं देखते। अरे चलो, सही है। गोटी गोटी गोटी, अरे गोटी BGMI में आओ। एलगाटो का माँ का भरोसा भाई। इतना एड स्पेंच, अरे भाई सबसे कम एड चलवा रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए। मैं एड्स भी कम रन करवा रहा हूँ, मतलब जिससे बहुत मिनिमम मेरे को अर्निंग हो रही है। 3 ऑप्शन होते हैं, एक ज़्यादा एड्स जिसमें बहुत हैवी अर्निंग, एक मीडियम एड्स, और एक सबसे कंजर्वेटिव एड्स, मतलब बहुत कम अर्निंग होगा और लोगों को व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो लगा के रखा हूँ मैं। अब तुम इसमें भी बोलोगे कि एड्स, तब भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं दुकान बंद ही कर देता हूँ ना। है, बंद ही कर दूँ क्या दुकान? बंद कर दूँ अपना दुकान? बोलो। अब तो एड्स पे एड्स आ रहे हैं BC। अरे साला, एकदम चटलैंड हो गए तुम लोग। थोड़ा ऐड क्या आ जा रहा है, थोड़ा ऐड देख लो भाई, भाई को पैसा वैसा ही मिल रहा है। देखो देखो ऐड देखो भाई, ऐड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी यू कैन गिव मी। शिट, भीख मांगने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल, आई मीन कैजुअल है। एक सेकेंड देखता हूँ तो भाई, ऐड का कंजर्वेटिव में ही है, हाँ कंजर्वेटिव में ही है भाई। अब ये डोवन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा?
आओ तो गोटी आ रहे इससे अच्छा अपने व्यूअर्स को बोलो कि प्रीमियम ले लो, इससे स्ट्रीमर को भी प्रॉफिट एंड वाईटी को भी प्रॉफिट एंड व्यूअर को नो एड्स। अब वो तो भाई इनको ही पता ना, तब उसमें मैं क्या बोलूँ अब। ये लोग लेंगे अब सब्सक्रिप्शन, मतलब प्रीमियम का ये लोग लेंगे कि नहीं, ऐसा मैं बोल नहीं सकता ना, क्योंकि वो खुद से पॉकेट से पैसा जा रहा है। एड्स में क्या है, पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है ना एड्स के लिए। अबे अब डॉन को क्या, खेल सकते डेड बाय डेलाइट है, खेल सकते है तेरे पे डेड बाय डेलाइट। अच्छा क्यों नहीं आ रहा, समझा समझा, मेरा वाईफाई से कनेक्टेड नहीं था तभी नहीं आ रहा है। साला मैं इतना बड़ा चोमटिया हूँ, वाईफाई से कनेक्टेड है नहीं गेम, आई मीन फोन, और भाई मैं उधर हीरो बन रहा हूँ, बताओ। दिख रहा होगा, चलो तो कब खेलना है बता राइंस फिर। तन्मय को कोई दिला दो भाई। आज भाई हमारे चैट में एक नए मेंबर जुड़े हैं भाई, मतलब वो है तो सब्सक्राइबर हमारे जब से चैनल स्टार्ट हुई है, बट मेंबरशिप आज लिए हैं वो है गोटी गोटी राइट्स। क्या हाल है शेर? एकदम टट्टी। कैसा प्रसादी कैसा है? प्रसादी अरे मैच दी पड़ी है। और रेवेंजर भैया क्या हाल है? हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रेवेंजर भैया जी। यार तुमको मैं उस दिन इसलिए बुला रहा था गेम में, कहाँ तुम आएगा, थोड़ा सा विश करेंगे, तुम तो साला एकदम प्लान ही चौपट कर दिया मेरा। चौथा बंदा किधर, चौथा बंदा किधर है? अरे मैं तो ट्रैवल ही कर रहा था भाई, मैं तो ट्रेन पे था, इससे तो कोई फायदा नहीं था गेम में। अच्छा मेरे को लगा तो वो मतलब मॉल वॉल घूमने गया था तो स्टोरी में डाला था तो मेरे को लगा। हाँ अबे रात को गया मॉल, फिर रात को ही ट्रेन था, रात हाँ को ही वही था, अगला रात को पहुंचा, पूरा 28 तारीख मेरा ट्रैवल पे ही थी। और ये ग्रोड 10:30 को आ रहा है तो एक मैच खेल लेते तब तक। हाँ चल या और वेनम भाई तो बड़े लोग हो गए आजकल, हमें हमारे साथ खेलते ही नहीं है। क्या ही बोले भाई, एंड्रॉइड वाला खेलता तो उसका जैसे ये है, ये क्रशर भाई है, कभी कभार आ सकते हैं, वैसे ये लोग अभी कभी कभार आ रहे हैं बस। अच्छा देखो आज नहीं है, अच्छा फिर कुछ महीने गायब। अच्छा ये सब बहाने गए, बहाने नहीं अरे ये वैसे ही है, आएंगे तो रोज खेलेंगे, नहीं आएंगे तो फिर 3-4 महीना खत्म। चौंचलाबाजी कर रहे हो हैं भाई? क्या ऑर्डर करूँ गाइस बताओ? 4 नंबर का नाम क्या है? Good luck, mates. अच्छा वेनम भाई कोई बढ़िया सा डिश बताओ जो ऑर्डर कर सकते हैं हम। बढ़िया सा डिश
खाना क्या है लेकिन? साउथ इंडियन, इटालियन, डिपेंड्स। साउथ इंडियन नहीं खाना है, इटालियन, नॉर्थ इंडियन। आदमी है। अभी रात को मैं डोसा बैठ के खाऊं, इडली खाऊं हैं? यस ये ऑब्वियसली। इतना मारूंगा ना, या चड्डी खोल के गाफ पे। वो डोसा कौन सा था यार? मैंने धो करके व्लॉग में देखा था यार, नाम भूल गया। वो स्नैक्स खाता है, नाम भूल गया। शिट। क्या 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 खाता है? स्नैक्स खाता है, स्नैक्स। वो और जोकर खा रहे थे, डोसे का नाम भूल गया मैं। अरे वो जीनी डोसा। जीनी डोसा, हाँ जीनी डोसा तो अच्छा लगता है। उसको रगड़ो, जीनी बाहर आएगा। फिर अरे उसमें इतना आप किसी को मांग लेना अपने लिए। इतना टट्टी होना यार। हो जाए। अरे पता चला कुछ और बाहर आ रहा भाई। वही भाई, घिस रहा हूँ तो कुछ और बाहर आ रहा है, खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? तुम तो वहीं जा रहे हो एकदम। समझी नहीं है कोई यहाँ पे? खौफ दिख रही है। आई लाइक इट। हो गया बस चोली खत्म। गेम पे ध्यान दे ले थोड़ा। क्यों नहीं हो रही गेमिंग? बकचोदी में ध्यान है तो कहाँ से गेम? चलो चलो मेन चलो। रुको मैं एक तकिया लेकर आया, अभी बिना जा। तकिया का गेम नहीं हो रहा है। बस रुको, ये हो गया काम खत्म। पेनल्टी लगा तो दी। गेम प्ले रुक गया। यही रुक गया, वही तो बात। इतना एग्रेसिव पुश कर रहे थे हम लोग, एकदम मुक दिया। अब ये कौन लाइव आ गया भाई? टाइगर इज लाइव, शेर भी आओ लाइव आने रेंजर भाई, लगा। आप तो आओ। आजा आजा। मैं तो आ गया। आ गया आओ मैं, आ गया मैं। किधर है तू? तू साले मेरे पीछे है। मेन। अच्छा तू आगे चला गया। देखो ये देखो। पीछे तो पापा इज लाइव। किसके पापा लाइव है? हो गया। अरे बैठ करो। अबे इतना अंदर क्यों घुस गया? ये लो लो मारो इसे। अरे भड़वे लेफ्ट से कौन मार रहा है मुझे? ये एक सेंटर में वो सीढ़ियां नहीं है जो गोल, वहां बैठा है, उसको लो किया। ये लेफ्ट से सारा सब लाइव वाले एक साथ इधर जमा हो गए सब। Awesome. अब मैं वो स्टोरी वाली चीज रियल में करूंगा। इवेंट से मर के अपार्ट से जा रहा हूँ। इतना इतना गांडू है ना ये। अरे और पे कोई गाली दे रहा है। ए पिछड़ी वाले। क्यों? तुम्हारी माँ के पास नहीं है? हाय राम, सॉरी, माफ कर यार, आई फील सॉरी। है तो बंदा आगे में। इवेंट पे, इधर इवेंट पे अकेली तेरे पे चढ़ रहा है, नंबर 4 पे चढ़ रहा है ये। Awesome. इवेंट बुला के अपार्ट से गया। हे चूतिया बनाया तुमको। क्या हो गया आज वेनम भाई को? नशे में है वेनम भाई लगता है। अरे और पे बकचोदी कर रहे हैं प्लेन में बैठे बैठे। जो आएगा उसके बाद बस। मैं क्या बोलता हूँ फिर आज राइट में फाइट हो रहा, घुसना है क्या? क्या बोल रहा वेनम भाई? घुस तो सकते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ मर जाओ RyuK भाई। क्या बन जाओ? मर जाओ जनरी, मर जाओ। Marked a location. Marked a location. इधर ही और एक अबे नहीं यार। अच्छा मैं गलत जगह नेड कर रहा था पीछे। गोबे लाइव, पतलू लाइव। रुको पहले मैं थोड़ा सा लाइव समाज।
पूरा भाई लाइव क्या समाज एक कैंप साथ बैठा इकट्ठा है हुआ है। भाई दोनों साथ में बैठा हुआ। अबे आजा हमको लगा वापस ना आ कि जाओ। एक नॉक पड़ा यस हुआ ने तो मीट को नॉक करके पीछे आने लग गया। ए हंसना है ए आजा, यस ने आजा। इधर आओ इधर। चुप साला, हम जाने बोले अरे थे। मेरे पास ना, तो मुझे थोड़ी पता तुम मर जाओगे यार, मुझे लगा तुम क्लियर करोगे ऊपर बुला लोगे अच्छा मुझे। अच्छा अच्छा, बात सुन रहे, इधर उधर। कांग्रेट्स ऑन बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, ए 4 नंबर रिकॉल ने योर कर लिया। टीममेट्स। बुला ले भाई करो करो बुला 4 ले। नंबर रिकॉर्ड। आप नीचे तो उतरो पहले। बुला भाई 4 नंबर बुलाओ 4 नंबर। बुला भाई जल्दी बुलाओ, गांड फट रहा है इधर। बुला ले भाई। गाल रशा आ फटा। रहा है। अरे बंदे धीरे धीरे बंदे गिरते जा रहे हैं जल्दी। अरे ये मरने वाला है। बे जल्दी बुला नंबर 4, मैं मरने वाला हूँ। बुला बुला चल। अरे चुप गया। अरे मत आओ बे मत आओ। अरे यार चूतिया कट गया ये तो उधर आके। Don't give up. Your मैं तो teammates रिवर can का still सामान होते ही recall मौली you. में मर गया सोचो। मोए मोए वाला जैसा तुम्हें अपार्ट्स में कैंप कर लेते हैं यार। इतना झंटरी है ना भाई के नंबर साथ 4, बुरा हुआ। इतना बड़ा झंटरी है। नंबर 4 एक नंबर के गांडू हो तुम। ए चुप 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 बंदा मेरा। तो मरेगा साले। नंबर 4 ऊपर जा रहा है रिकॉल पे जा रहा है। आ गया नहीं अंदर आ नहीं गया। रिकॉल। अरे नंबर 4 खत्म रुक भाई। इसने टट्टी कर दी, अब रिकॉल नहीं कर पाएगा। पूरा आगाज कर दिया I'm इसने। recalling a teammate. टट्टी कर दी है। हो गया मेरे नीचे एक Thanks. बंदा है रुक भाई। रिक भाई क्या करेंगे। इस पे बंदा है क्या? रिक भाई आपसे बहुत दूर है। हाँ इधर है, बंदे हैं इधर। गाड़ी है, देखो मॉन्स्टर आई। और कहाँ? ये ओ भाई रिलोड एक था क्या बचा। खत्म कुटी। Awesome. क्योंकि आपको नहीं लगता हमारा रिकॉल ऐसे वेस्ट हो गया यहाँ पे। वेस्ट हो गया, क्या करें ये मैच वहां जाके हम सोचे थे क्या क्या करेंगे, एकदम टट्टी हो गया जाते ही। देखो रात भर गेम प्ले रखो रात भर। चलो अरे इसमें तो गेम प्ले दिखाने की बारी नहीं आई ना, उधर जाते ही मर गया मैं तो। उसने मॉली रख दी थी वहां। अबे कहाँ से कौन मेरे को टैप फायर मार रहा भाई। चलो इन पे चलते हैं रेंजर भाई को। चलो मरना है क्या? वो देखो। अरे छी यार हद। जिसके पास जाने का बोलता हूँ हाँ वो मार मर ले जाता भाई है। मार ले। I'm recalling a teammate. Thanks. भाई इतना बढ़िया मारा उसको धप धप, एक भी शॉट नहीं लगा। यहाँ पे रेंजर भाई यूएमपी पड़ी है, अगर आपके पास जी वगैरह आ रही हो तो। आ गया कहाँ है ये शैक पे। यहाँ दिखा दे। अरे हार्दिक शेर का को तो M2 मैच पर मिल चल रहा रही है। भाई, उसको क्यों बुलाया। क्या हारसी भी? अरे हार्दिक बोल रहे हैं। अच्छा ये मार अभी की मैच नहीं है चंद्री। अच्छा, जिसका भी वो तो मतलब हम अपनी मैच आएगी 3 तारीख 2 तारीख को। 2 तारीख है बस, गया ले गया हारा वो वाला। मैं सोचा 3 तारीख होगा तो जीतेगी। वो खोलते हफ्ते हारेगी वो वाला तो हारेगी। 2 मैच जीत गई ना, अभी 5 लगातार हारेगी, फिर गांड में उंगली होगी, फिर खेलेगी। अब 5 लगातार हारेगी, देख लेना। ये देखो देख ले भाई। देख अभी टेबल टॉपर है ना, फिर पहले बॉटम ऑफ द टेबल जाएगी 4 पॉइंट में। देख कैसे अश्लील बातें कर रहे हैं। लोग मुझे गाली देते हैं, उनको लौड़ा देना चाहिए। गाली तो दूर की बात है।
आजा देखता हूँ गाड़ी यहाँ से उड़ पाएगी कि नहीं। अरे बिल्कुल उड़ेगी। अबे पीछे गाड़ी, है पीछे ना, गाड़ी। पीछे। हाँ तो लो ना, एक कॉल पे जाएगा वो, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। रुका है, रुका है। नहीं रुका। अरे रुका कि नहीं रुका? अरे भाग रहे तो पीछे। नहीं मेरे पे बंदा। अरे गोल गोल घुमा रहे हैं भाई। पकड़ो। दो गाड़ी। वाओ जोक। ये रे बग्गी, मसला ये हो रे गया जी। बग्गी वाला मुझे लग रहा है टावर पे चल रहा है। तो मारो ना। टावर पे चलती गाड़ी से कैसे मारूं? ये मेरा आडो वाली गाने में मिली देखो, रिकॉल यहीं पे करना है। यहीं पे करूंगा तो यहीं पे करूंगा, अभी नहीं करूंगा। Their vehicle is smoking. गाड़ी की तो मैं ऐसे रुक गया क्या? इसकी कहाँ गया? होता है शायद। अरे रे ऊपर जा मसला रही हो है गया जी। थोड़ा। चलो ये एमओ वेस्ट करवा रहा है। यहीं पर रिकॉल करना है झटरी, और कहीं नहीं हाँ जाना। वही तो बोल रहा हूँ, करूंगा तो यहीं पे करूंगा वरना नहीं करूंगा, बस बात ही खत्म। ईगो पे बात आ गई उसकी। लैग तो जबरदस्त और हुआ। आपकी टीममेट कैसी है वेनम भाई? अबे कोई तो रिक्वेस्ट भेजा, कौन है? क्या? मेरी टीममेट बढ़िया है एकदम, बस मैं खेला नहीं फिर भी बढ़िया है। अच्छा मेरे को लगा पहले वो पता होगा। नहीं मैं खुद ही नहीं। ठीक है। पूरे सब्जी ये देखो। पूरे माँ मसला हो अरे गया जी। अरे यहाँ से मारा नहीं यार मारा देख के आना थोड़ा। टावर से भी पड़ेगी, ठीक है? टावर से भी, ऊपर से। कौन सा टावर? ऊपर वाला आ रहा है ये फिनिश वाला, करने। ये वाला। Marked a नंबर location. 4 कवर दी, नंबर 4। वाह बहुत बढ़िया। Watch अरे out. टावर वाला परेशान कर रहा है। वही तो दिक्कत है मेरी यार। जा जा जा, उनके पास जब गाड़ी लेके ये चला घर हुआ में है। देखो RyuK भाई, एक घर में बैठा है, ठीक है? इसको अगर मार दोगे तो इजी बच रहे हैं हम लोग। कौन से घर पे? वरना Watch नहीं। out. ये रहा वॉल पे आया। लो हुआ बहुत लो हुआ। गया अंदर गया। लो है पे बोल है वो फिनिश बहुत नहीं लो डालेगा। बहुत लो है वो। Watch out. पहले उसको मार लो, उसको मार लो। ये रैप दे ना, रैप दे। टावर पे, अबे टावर पे रुको, मैं आ रहा हूँ। अब इजी रैप दे चले। हाँ अबे गिर गया क्या? कौन है? नहीं बग्गी से भाग रहा। यहीं पे आ रहा है, भाग नहीं रहा है वो। साला वाह कॉन्फिडेंस, आसमान चीरता वो। चक्कू मार साले को। रुको मारो मत, साले को मारो मत, रुको तुम भोसड़ी वाले। Awesome. मार दिया, ठीक है M4 ले लेता हूँ फिर। तुम बस पहले टावर वाले को मैंने बॉडी दिया था, मैं वही सोचू इतना कवर में कैसे मरा, फिर पता चला अरे आउट ऑफ सिलेबस। ये तो गेम हो गया अपनी से। गेम तो वो करके गई खैर। वो बोला होगा अरे भाई 2 नॉक है यार, क्या हिला रहा है टावर पे आना। टाइगर इज लाइव यहाँ पे। सुनो मैं स्कारल ले रहा हूँ, किसी को M4 लेना तो ले लो। दे स्कारल तो मेरे पास भी है। I got supplies. I तो got लेना, M4 supplies. गिरा दिया तो यहाँ पे। कहाँ गिरा? चलें यहाँ से चलें। हाँ
ठीक है तो मुहूर्त दे ये रहा गाड़ी है में तो हाँ चलो इसमें जा सकते हैं। ये टाइगर इस लाइव है अपार्ट्स में, हम वहीं पे जाएंगे चलो। यार जब देखो गरीब वाला हरकत। वही भाई गरीब क्या बंदे, वहां जहाँ बंदे होंगे वहीं पे मारेंगे ना। अबे मार धाड़ में कुछ नहीं रखा ब्रो प्लीज। मार धाड़ में ही तो सब रखा है, मार धाड़ के बिना क्या ही हो, कुछ नहीं हो। मार बैठो। धाड़ इज अ की टू सक्सेस। मेरे पे कोई ड्रिंक नहीं है, ठीक है। चलो डाल रहा हूँ गाड़ी की डिक्की में डाला, देखो नो बेस लाइफ। अल्लाह सब लाइव है, पागल हो गए एक लोग। आजकल तो हर गेम में एक तो झंटरी जरूर आता है भाई, हर गेम में। ये मैंने जिसको फिनिश किया ऊपर इवेंट पे वो भी ना पापा इस लाइव, लोग मरे पतलू इस लाइव, इस लाइव सब ऑफलाइन लाइव। खेलेंगे लेकिन लाइव लिख लिख के जीतेंगे भाई। लाइव समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। ये चलिए यासना है वाओ। अबे इवेंट पे चला है क्या कि कहाँ पे चला है? नहीं यासना पे। और जो लाइव है एक्चुअल में वो अपने नाम में लाइव नहीं लगाया है। ये जैसे कि एक वही नंबर भाई पूरा झटरी है। दुबई इज लाइव है, देखे देखे देख और एक लाइव किल कर दी। ओ दुबई थोड़ी मां की आ रहा हूं, देखो अपना चक्का एक फूटा हुआ है तभी इतना स्लो चल रहा है। ऊपर से रेवेंजर भाई का वजन ज्यादा है। अबे लैग वहीं पे पुलिस बिल्डिंग पे बंदे हैं कंफर्म है। हां बस यहाँ अबे पे यहीं पे पीछे। अबे मारो इसे पकड़ो इसे पकड़ो। ए खत्म। देखो खत्म। ड्राइविंग ही झट रही है। अरे भाई चक्का फटा हुआ है। कौन मारा भाई इसको? नहीं उसको कौन मारा इतना बेरहमी से भाई? जॉर्ज चलो चलो नीचे नीचे में मारा था ना? नहीं ये सेकंड फ्लोर। और एक भीड़ मिल जाता तो। अरे लफड़ा हो रहा है। तेरा किल चोरी हो गया, तेरा किल चोरी हो गया। मेरा किल चोरी हो गया। अच्छा मैंने अच्छा अबे यार सेकंड फ्लोर पे नेट फेंकना चाहिए था, तेरा किल कंफर्म हो गया। ये भाई मुझे मार रहा। ओए अरे रे इधर ही रेंजर में नीचे ही है। नाइस। अरे नहीं यार वो लो है, वो लो है। हां नाइस बहुत बढ़िया। नीचे कूदा है सारे लाइट। आजा बाहर बाहर आना इधर। घर मरवा रहा है। अबे 4 नंबर कहां है भाई? ठीक घर में खड़ा है पागल ने। अरे जल्दी आ। बहुत बढ़िया। अरे 4 नंबर जल्दी आ छू। अरे छू ले भाई स्मोक मुझे छू ले जल्दी छू जरूर भाई। पकड़ लेना। और एक ऊपर है। सारे लाइव वाले झट रही थे भाई, सारे लाइव वाले फिर भी नीचे नहीं कूदा। ये 4 नंबर गांडू 1 नंबर का बैठा है कब से। नहीं आ रहा है। मैं वही सोचूं 4 नंबर दिख नहीं रहा है मुझे। और एक ऊपर छत पे साउंड नहीं दे रहा। 1 फुट आया था जब तुम नॉक हुआ था। मेरे हाथ में साले M24 पड़ी थी। नेट इशू भाई लिख रहा है। कौन बोल रहा है? नेट इशू। नंबर 4 मैं तो नेट इशू में आगे तो आ सकते हो थोड़ा थोड़ा। लूटने में तुम्हारा एकदम नेट बढ़िया चल रहा है। दब लूट रहे हो। नहीं आएंगे इनको तो गांव मरा तुम लोग। क्या बोला? लूटने के टाइम में अबे रेवेंजर वो तुड़तुड़ी है, ले ले रेवेंजर। ये पेटी में तुड़तुड़ी है। अबे टीडीएस चल रहा भाई उतना दिन से एकदम जॉर्ड वाला भाई। तुम क्या चलो ऊपर चलो छत पे। सस्ता माल मत दे भाई। अरे कहां से नॉकआउट पता नहीं कहां है। सीढ़ी पे बैठा है, सीढ़ी पे बैठा है ये रेलिंग्स पे। रिलोड मार रहा है। अबे कुछ तो है। नेड़े चलो
इसी के पास स्किन है साला झुंपड़ी। अबे हट जा, वैसे सट के मत रहे। अरे ऊपर गया वो। नॉक फिनिश है, करो। नॉक है। और भी बंदे हैं क्या? गॉडजिला पहनेंगे, गॉडजिला हीरो बनेंगे। जल्दी पकड़ो। अरे वेनम भाई, कहाँ हो वेनम भाई? इधर एवेंजर हो भाई क्या? नशे में। अरे ये मेरी तीसरा बातों नॉक में है। भी आके जा रहे, बोले कहाँ पे हो। अरे मस्ती ले रहा था मैं तेरे को तीसरा देखा। नॉक है वेनम का तो। हे प्रभु, ये कितनी किल चोरी हो भाई। उधर पत्थर पे नॉक दिया, वो भी किल कितना नहीं आया माल जमा मुझे। करके रखा था भाई, हम लोग साल भर का माल यहीं पे जमा कर दिया तुम लोग। कितना माल जमा आज करके भी रखे माल थे। है, पूरा ठेला लाल। पूरा ठेला लाल है भाई। तुम लोग भी बोला होगा भाई, गलत स्क्वाड के साथ भिड़ लिए। चारों लाइव आए हुए थे, बताओ। ये जो उतर के M24 मारी, उससे मजा आया, मुझे तो मजा आया। भाई वो गलत खाया, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत गलत खाया। मेरे को मार रहा था पता है। उसको पता ही नहीं हम वेनम को पीछे सेट करके रखे हैं। बोड़वा साला कितना नॉक होगा वेनम भाई, 3 बार तो यही हो गए। अरे यही तो खत्म नहीं बंदे हैं किया। इधर, और बंदे नॉक जोन हुआ नहीं है तो बे। Watch out! बंदे बंदे बंदे। अच्छा अरे ओके यहाँ ओके, जोन फिर नहीं है इनको वैसे। निपटा चलो के चलो, जाते हैं, अपने पे तो गाड़ी है। के अंदर फाइट लेंगे ना हम सारा। चलो 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 निकलते वो तो निकलते आएंगी। पीछे आओ वही पीछे। तो जोन आ रहा है। अबे किसी का फुट है। लेट 7 एलिमिनेशन भाई, खून हो गया भाई ये तो। ये कौन सुपरमैन बना हुआ है मेरे आंख के सामने? 4 नंबर भाई। गाड़ी कहाँ पे है? अच्छा इधर ही है। हाँ अब इसका नेट इशू नहीं है। बचाने पर नेट ना ना, इशू था अभी तुम्हारा। अभी अभी सब बढ़िया चल रहा है। अबे डासिया है हाँ ना, इधर। पीटी रोक रहा है एक एकदम। घंटे को दे। दब 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 रोक अब रहा है इसमें पीटी। फ्यूल नहीं उतना लाल डासी वाला। दूसरा डासिया है ना, 2 डासिया है गांडू लो। हो बेटो हाँ चल चल चल, 2-3 मत कर। चल अरे 4 नंबर फ्री हो आया था आगे भाई। वो वाला डासी से आगे। फ्री हो गया था, हाँ वही तो। पीटी लूटने में नेट सही हो रहा है, क्या बात है। अरे देखो भाई कॉल आ गया था भाई, यार तुम क्या देखो। परेशान कर रहे हो भाई? कॉल आ गया था अच्छा मेरे को कॉल आ भाई, गया था, डिलीट नहीं ले। कर रहा था यार। हाँ, अबे कॉल आने से नेट चला जाता है, ये बात तो सही बोल सही रहे बात है, सही बात है, हो। एकदम सही बात। एयरटेल ये वाला, जोन से मर एयरटेल गए। वाला ऐसे करता है। कहाँ से हो, कहाँ से हो? 4 नंबर कहाँ से हो? बस एक और ज्यादा महाराष्ट्र। नहीं है, 6 ही बंदे बच रहे हैं। इसी घर में होगा पक्का, इसी घर में लिख के ले, अभी फायर आएगा। अबे वो तो यासना में भी है स्क्वाड, फाइट हो रही थी मेरे सामने ओए, पड़ी। गाड़ी गाड़ी। पकड़ पकड़। मेरे पास ही पड़ी। अबे क्या गंदा मार हेड रहा पड़ा है, हेड पड़ा है उससे। रेवंजर भाई गिर गए। क्या ग्लिच है भाई, भगवान जाने क्या। दूसरा 4 नंबर डायरेक्ट घुस जाओ, लो है वो। भाई जब गाड़ी पेट्रोल खत्म रुका हो गया इधर। तब मैं एग्जिट दबाया, उसमें मैं गिर के मरूंगा। मुंह पे आता हुआ चिकन दूर चला गया। अबे RyuK कैसे नॉक खाया? अच्छा उसी को पहले मारा क्या वो? हाँ उसी को पहले मारे। भाई क्या ग्लिच है भाई, जब गाड़ी टकराया फिर मैं रुका। भाई गलत मार के चला गया भाई, मैं तो फ्री का मरा हूँ। सारा मेहनत तो मुझ पे चला गया। तू कौन है बे? अब इसको किक करोगे? कौन है ये? कोई रैंडम रैंडम आ जाता है। कौन है ये? रैंडम RyuK बंदा आ किक गया कर, भाई। पता नहीं वे कौन है भाई, पता नहीं यार। कौन है ये?
पता नहीं भाई, किसका कौन बुलाया कौन? पता नहीं भाई। भाई कहाँ से हो भाई? भाई हेलो, ये कौन हो स्टार भाई? भाई। ये कौन, क्या गाली वाली क्या दे रहे हो भाई? वो मैं कौन है? पहचाना नहीं क्या बे? अबे कौन है भाई ये? कौन जबरदस्ती है? बोलता पहचाना नहीं, तो पहचाना अरे है नहीं क्या भाई? कौन? मेरा बाप थोड़ी है पहचानूंगा तुझे, है? वही पहचानूंगा बाद में, पहले वो भाई तुम हो तू कौन हो यार? कौन बे भाई? मैं ग्रुप आया वायन हुआ है। हूँ, है कौन? वायन हूँ मैं। तो मैं अरे भाई कब ये बोला? नशा तू वसा में भाई है भाई, प्रेस है, इसका आयरन आवाज ही से ही होगा। पता चल रहा है भाई नशा वसा में आयरन है हूँ भाई। मैं बोल रहा है, मैंने कब बोला प्रेस है तू? अरे आयरन नहीं, झंडरी वायन बोला, मैं वायन। आयरन नहीं। साला एकदम गोटी। एकदम गोटी है अरे भाई। ग्रूट आया था, निकल गया, कहाँ चला गया ये? कहाँ गया? पता नहीं, अभी जस्ट आया था, निकल बुला गया। बुला बुला। और ये कौन है? रैंडम रैंडम क्यों अरे ले मैं ले रहे क्या? हो? किक करो साला। अरे भाई मेरे को नहीं पता भाई, कहाँ से आया, क्या हुआ, गलती से क्लिक हो गया होगा, हमको नहीं पता, बहुत सारा रैंडम लोग घुसते रहते हैं इधर। चिराग भाई पॉपुलर हो वेलकम गया टू थोड़ा। स्ट्रीम। हैकर था क्या? नहीं नहीं हैकर नहीं था। वेनम तुम्हारे चैट में है। हाँ, मेरे लॉबी पे है वेनम। अरे कौन अरे है? ग्रूट हाँ आया, निकल गया। ये साले, ये पक्का आरसीबी फैन होगा तभी चूंटिया ऐसे बातें कर रहा है। वही भाई हमको लग रहा भाई, बात बाकी इसका नाम हमको देखा देखा लग रहा है, कहीं भी खेले हैं क्या इसके हाँ साथ, अभी लग तो रहा देखना है। एक बार अबे सालो, अबे गाली गाली कैसे दे रहा है भाई गाली लॉबी कैसा में? दे रहा है बे तुम? कोई गाली दे कैसे रहा है? ठीक है, अबे मैं रैंडम में कब प्यार बात से किया? बात कर। इतना मारूंगा अबे ना। सालो क्या है भाई? अबे अबे सालो सालो क्या है क्या भाई? होता है हम बे? देख मैं बड़े अपने बैठे बाप हैं, से, तुम गाली कैसे दे? बाप से अबे नहीं सुनता तुम साला, अभी से है? कौन है कौन तुम? भाई भाई ये इसके साथ कभी खेलेंगे जरा देखने के लिए। खेल रहा है क्या तू अभी? 0-0 मैच। हाँ हैं? खेलूंगा ना। कितने मैच के लिए? एक आध मैच, एक आध दो मैच खेलूंगा मैं। आधा मैच हम लोग नहीं खेलते भाई, पूरा खेलते। ठीक है तो फिर मैं ग्रुप को बोल देता हूँ लगा दे कि तो एक ग्रुप चला मैच ही के है, बाद आ जाने। रैंडम के वो साथ नहीं ही नहीं, खेल वो लेते लिखा हैं। मेरे को चैट में, खेल लो आप लोग, मैं बाद में आता। बाद तो में तो ग्रोथ हम लोग ही आएगा तब चले। चले जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, एक मैच के बाद उसको ले लेंगे, कोई बात नहीं। अरे चलो यार। क्या आप मेरे को रैंडम भाई, रिप्लाई कवर दिए टू थे कवर क्या? खेलना भाई। अरे बोलो भाई। कहाँ से हो भाई? 4 नंबर कहाँ से हो? अबे साला तुम ऐसा मत करोगे, इतने दिनों बाद आया हूँ मैं। I got 5 eliminations just now. अरे ठीक है भाई, तुम इतने दिनों बाद आए हो, ठीक है, बट भाई ठीक है यार। Good luck, mates. मतलब क्या इतने दिनों बाद, हाँ बोल के इतने क्या दिनों बाद साबित आप करना आए चाहते हो हो? ना, तो वो कौन, वो तो बताओ। वही भाई, इंट्रो दो भाई इंट्रो भाई। तो भाई। कहाँ से हो पहले भाई वो आप तो बताओ, कैसे, पहले महाराष्ट्र आप से, कैसे हो? दिल्ली से? हाँ कैसे हो आप, वो बताओ। वही भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आपने वो रिप्लाई दिया था क्या 20 मिनट के बाद? वो छोड़ो, गुजराती भाव अपने 2 नंबर भी गुजराती भाव छे, एकदम थोड़ा सा गुजराती में बात कर लो। सब गुजराती भाव 90 कौन एक्सपेक्टेड है के ये? लिए भाई। कौन है ये? मतलब क्या मेरा दोस्त है और कौन है? अरे कौन है मतलब, है कौन भाई? मैं थोड़ी पहचानूंगा। वही तेरे तो को, हम लोग भी तुमसे तभी तेरे तो को पूछ तब रहे से हैं, तो है वही कौन पूछ भाई? रहे हैं, तू है कौन? अबे अच्छा अबे तो साले वेनम भाई है हमारे ठीक है भाई। दोस्त मित्र। तुम पहले ये बताओ। अरे इसलिए तो पूछ रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है ये। तो तेरे को तो हम भी तेरे को अलग नहीं, दुविधा है भाई। हम भी तेरे को नहीं जानते, वही तो बोल रहे कौन है तू? बंदे बंदे बंदे।
नाम तो खुलेगा? बंदे मारो, बंदे मारो। अता क्या हो रहा है? क्या मारे हो गई? आपने तो पूरा खून ही कर दिया। बिना छुपे के चल गए रे भैया। अरे मेरा इतना लैग क्यों हो रहा है भाई, बहुत पता नहीं FPS। ये देखो हेनरी कभी जिंदा नहीं रह सकती है। छी छी। अरे पता नहीं आज मेरा बहुत नाइस स्मूथ वन। नहीं चल रहा है गेम प्ले। क्या मतलब क्या हो रहा है? लैगी लैगी हो रहा है। मतलब FPS ड्रॉप होने से ऐसा होता है ना, वैसा। कटक ओके कटक के समझ चल गया रहे हो, समझ गया। फोन गर्म हो गया कैसे होगा। लैग हो रहा है अभी? तो ये क्या हो गया? फोन तो एलगाटा सबका में भी लैग होता होता है है। भाई एकदम। मेरा तो नहीं होता है। मेरा तो आज हमारा से भी इंटरनेट लैग हो इतना रहा है। मारूंगा ना लोग। तुम क्या फोन है? रैंडम लोग ना आजकल बहुत बोलने लगे। हाँ भी अच्छा, भाई भाई पहले तो है आप ये किधर? बताओ, मैं रैंडम के साथ खेलता नहीं, आप हो कौन वो बताओ। आगे ये बंदे थोड़ा आगे ये इंट्रो विंट्रो हाँ आ दो गई भाई आ अपना। गई देख। ये अपने ऊपर है। आओ आओ। अबे इसका भाई आवाज ही इसका नहीं आ रहा, कट इंटरनेट कट जा के रहा आ है, रहा इनका इंटरनेट जा है। रहा है उर्दू में भाई। बोल रहा था। हो ही नहीं रहा है भाई, डोवन से इशू हो रहा है भाई। फिर भी इशू हो रहा है। रुको तो। क्वेश्चन पूछते हो। कहाँ से हो गुजरात में? भुज भुज है? भुज भुज। भूज? सर बहुत दूर है भाई। अब हमको लगा आकाश। आधा नाम बोल रहा है गुजरात का भाई। हम सूरत से हैं। अरे बाप रे बहुत दूर है, बहुत दूर है। कहाँ से भाई तुम कहाँ से? बहुत दूर है। क्या बोले कहाँ से? सूरत सूरत। मैं भुज से, और मैं वो सूरत से। अबे आज उधर ही मैच हो रहा ना भाई, तुम लोग देखने नहीं जाता क्या? कैसा कौन सा मैच? नहीं, हम नहीं जाते। मैच तो हो रहा है। अरे एमआई और जीटी का तो आरसीबी आज ही है ना। हारने के लिए अबे देखने जाएंगे। वो अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट ये देखो। अरे वो गुजरात वर्सेस आरसीबी वाले मैच में जाएंगे, आरसीबी को हारता हुआ देखने। अच्छा अच्छा नहीं ऐसा है नहीं, क्या? गुजरात वर्सेस आरसीबी का मैच ये गुजरात में है ही नहीं। ये गुजरात वाले वहां जाएंगे, बेंगलोर। अबे तो गांडू, मैं एक मैं दूसरा गुजरात को सपोर्ट ही नहीं कर दूसरा रहा। दूसरा ठीक लेग है, में तो नहीं पहले होगा। दूसरा नहीं है, दूसरा मैच नहीं है, नहीं है। गुजरात के सामने आरसीबी का एक ही मैच है बस। रॉकेट पिलो क्या होता है? क्या क्या रॉकेट वाटर। पिलो क्या पिलो बोल फाइट है। क्या है? RyuK भाई को मारोगे तो RyuK भाई उड़ के गिर जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। एकदम टट्टी चीज है वो, मत करो कुछ नहीं है। ऐसे ही टाइम पास तू पहले ये दिए बता खेलने का। वायन, अच्छा आज इधर इतने आओ। दिनों बाद कैसे हो, हाँ। क्या हाल कैसा है सब। ए, मैं आया ले हूँ अबे अपने भाई। फार्म पे भाई। छुप के खेल रहा हूँ थिएटर रूम में। अभी बाप देख लेगा ना तो इतना चप्पल पड़ेगा ना। अबे उन्हीं के फोन से खेल रहा हूँ। और फिर तो भाई अब चप्पल नहीं इधर पड़ेगा आओ ना, भाई, अब इधर तो आओ, पूरा इधर आओ, इधर आओ, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी और इधर आओ। कुछ कुछ जो रहता है ना फार्म वो चलेगा। अब नंगा क्यों है पहले तो? डाउनलोड किया वो नहीं तो है, पहले से नंगा है। क्यों सब ना मारूंगा ना। झुक झुक पहले झुक। हाँ। ये सवाल का जवाब तेरे झुकने से मिलेगा। अबे ये है क्या भाई? कैसे काम करता है ये?
वो एनिमी के मुंह पे ऐसे मारना, तुम्हारे नजदीक बॉट है ना तो उसको मारना, बॉट उड़ के गिर जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। as simple as that, बस उनकी ईट में मर जाएगा। मरेगा बस नहीं, सही सिर्फ उड़ पकड़ा। के गिर जाएगा बस, मरेगा कुछ नहीं, मारना तो गोली से ही पड़ेगा। वो गिर के खड़ा होगा तब तक आप मार देना बस, अब एक टाइम सेकंड मैं वेस्ट ना होगा। ऑर्डर कर लेता हूँ थोड़ा खाना, कुछ से ऑर्डर। ये आदमी ये आधे घंटे से ऑर्डर ही कर रहा है। शेर भूखा है लगता भूखा है शेर एकदम भूखा है। शेर भूखा नहीं, शेर टट्टी है एकदम। ये देखो ना एकदम झंटरी झंटरी बातें करने के लिए पहले खड़ा रहता है सारा, एकदम झंटरी। है। टट्टी तो है वो, मेरे को भी पता है, लेकिन भाई क्या कोई तो करें? खिसक रहा है बे इधर मेरे पास में। तो मार ना उसको। भ्रम होगा भाई आपका, भ्रम। एक अब तो मारना नीचे भी हम इतना लोग गाना सिखा। बजा रहे भाई नहाते नहाते। बंदे हैं इधर, बंदे हैं बे। ओ, ये वैनम इधर ही है बॉट वैनम। अच्छा मारा ये तो है, अपना ही है। माल फूंक लिया है, बोला नहीं माल फूंक। अपना बंदा। हाई हाई डोज में। वेज खा लो, आज वेज ही खाने का सोच रहा हूँ, नवरत्ना कोरमा विद बटर नान। अरे ओ भाई खत्म ए खत्म, तेरी। चुदे चुदे चुदे। बंदा है, बंदा है क्या? बंदा है, हाँ हाँ बंदा है। एक तो उसका आवाज नहीं आ है। अरे इनका इंटरनेट आ ओ आ ओ। आओ आओ हो रहा है, वही तो। रुक जा, आहू आहू रुक जा। अबे बॉट था भाई। नहीं नहीं, बंदा भी है, उनकी एचपी देखो ना, दिख भी नहीं, बहुत थोड़ी मारेगा इतना। अल्ले अबे ये क्या हो रहा है भाई। दिया नॉक उसको। मारो वैनम भाई, स्किन चमकाओ। उसका टीममेट भी तो है इधर कहीं पे, कहाँ है पता नहीं। बंदे के आने पे ये सब क्यों होता है भाई, पिंग आ जाता है। वो नीचे तो उतरा है। हाई जो। रिकॉल साइड पे भी बंदे थे। ठीक है, ये नेट कौन किया? क्या है बंदे बोलो। ओए फुटा है, यहीं पे तो नॉक दिया था। चर्च के पास फुटा है। हाँ वो तो नॉक हाँ तो दिया वहीं पे तो नीचे नॉक का है। डाला हुआ है। दिख नहीं रहा लेकिन कहाँ नॉक पड़ा है। दिख गया मेरे को। अच्छा दिख गया। गया। ओ ले इधर। बट पीछे से कोई नेट्स तो कर रहा है। हाँ अरे है ना उसका टीममेट एक। आया पता बंदा, नहीं। बंदा आया। हाँ हाँ दिख। Watch आया out! इधर था। हाँ दिख गया दिख गया। इधर Watch भी है। out! अबे बाप से और एक दो और एक कहाँ है? दो दोनों गए गए दोनों गए। दोनों गए। ओके ओके। अब नहीं कुछ नहीं आ रहा, अब तो नहीं आ रहा है। अबे कुछ तो छोड़ दे लौड़े। नीचे ही जा रहा बनता है। मैं वहीं को रिकॉर्ड देके आते हैं, जाओ। माना तेरा 120 एफपीएस है, गरीब के पास लूटता है। पैसा दे, जितना लूटा तुम पैसा दे। हाँ अबे रिकॉल दे दिया ये। जल्दी छू जल्दी, मैं मर जाऊंगा। अबे वो बाद में करना मर जाएगा जल्दी तो। अबे गया। वो एचपी दिख वो नहीं एक रहा, भी नहीं दिख रहा है। एचपी दिख नहीं रहा है। अबे वेनम बचा, वेनम। अरे रुको, मैं खुद मरने वाला था, पीछे से मार रहा है कोई, ये रिकॉल दे दिया सब कुछ। बड़ी मुश्किल से तो पीछे आ रहा हूँ, रुको। कौन किया? नाइस है। इसी को नेट पड़ा था। पार्ट्स की साइड था। ओए
ऊपर गया आओ। लेफ्ट साइड। तो साला अपना हाइजीन क्या कर रहे हैं? आइगन हिला रहा है मुट्ठी। कौन है जेल? क्या कोई आया? मेरा आवाज आ रही है तुम लोगों को? आ रही है ना? हाँ आ रही है ना। तो साले मैं कॉल आउट तो दे रहा हूँ गांडी। कहाँ कोई आ रही पीछे? आगे से फुट हल्का सा आया, मुझे आवाज आया बस। आना क्या? प्लेयर गिरा प्लेयर तो भी हुआ। आई है। प्लेयर तो यही मार रहा था झंटरी ओपन में, सीना टान के बच गया। कहाँ है फ्लेयर कहाँ है? प्लेयर देखो तो लंड ओपन को में है कुछ भाई। दिख ही नहीं रहा, अंधा हो गया। देख के छज्जा पे हो सकता फिर खाएगा नहीं। क्या है? छी क्या था? फार्मस और ये एमके, छी दोनों टट्टी। हाँ तो चलो मारने वाला भी तो टट्टी इनको था। अबे मेरे को कॉइन दे भाई, मेरे को स्कोप लेना है भाई। इसको रिकॉल मारो जाओ। रिकॉल मारने जा तो रहे थे, ये फिर आगे ना। मेरे तो बंदे हैं जो रिकॉल पे, तभी ना रिकॉल देके इधर आए थे। मैं ईयरफोन लेके आता हूँ गाड़ी। ओके। अबे पैसा देना भाई कोई तो रईस लड़का होगा मेरे ग्रुप में। नहीं कोई रईस नहीं। अरे रे मारा ठीक है। कहाँ से मारा? आगे हो गया इधर है। पैसा देना भाई ना, मेरे को पैसा देना भाई। ये लो इधर आओ, 14 रुपए ये लो। हाँ देना, बहुत है भाई। मैं ये मामला है मेरे पे, आ जाओ। ये वॉल पे बैठा, ठीक है। मार फिर से मार। ये वॉल मसला हो गया जी। एक नॉक। ये क्या उसको? उसी का बंदा है। फाइनली ऑल इज डेड। प्लेयर लेके आया भाई, एकदम अच्छा बंदा है। देखो ऐसे बंदे होने चाहिए। बहुत आगे जाएंगे ये लोग। यस, बहुत आगे जा जिंदगी अभी में जाके रिकॉल तरक्की देता। करेंगे। मैं तब तक ऑर्डर कर जी लेता हूँ। उस्ताद। जी उस्ताद। चलो फाइनली मेरा 4 दिन बाद, नहीं 5 दिन बाद आज पर्स टूट गया 5 किल का। ये कम से कम 20 मैच खेला हूँ, 5 किल। मरोगे फिर मर जाता हूँ। देखो ये जनरी बस यहीं पे तो कमबैक नहीं हो पा रहा। वही तो, ये टीममेट ऐसे सपोर्टिव है ही नहीं, एकदम टट्टी टीममेट। क्यों नहीं हो रहा कमबैक? बुर पगलू I'm नाम recalling सुन a लो। teammate. Thanks. अबे मतलब कैसा छतरी लोग हैं भाई ये लोग। अबे गाड़ी तो है नहीं यहाँ पे, एक ही बाइक है, गाड़ी ढूंढ के लाना पड़ेगा। गाड़ी लेके आते इधर। चलो जल्दी चलो। बग्गी है एक तो यहाँ पे। गैरेज में होगी Watch out. गाड़ी शायद। आगे गैरेज है ना। चलो अब सुनाई देगा ढंग से। सुनाई तभी भी दे रहा था। कुछ नया बताओ। बिल्कुल। क्या आ गया जल्दी से ओटीपी बताओ फट से तुम लोग। ओटीपी ए झटरी। रुको ओटीपी से गाड़ी में तो बैठ जाता। अच्छा रुको आया। गाड़ी सेफ में जगह बैठ, लेके चल। मैं तब तक डिस्कनेक्ट करके वो ये देख रहा हूँ। हाँ। ओटीपी मेरे फोन में ओटीपी आया होगा पेमेंट का। ओटीपी बता फट से। अरे S12 की
अरे यार ये कर लो बच्चों। सेफ करना है साला 5G भी इतना बेकार आ रहा है ना इधर। चलो डन। मिलता चलो मिलता। आ जाओ भाई, खाना फटाक से लेकर आ जाओ भाई। लेकिन मैंने सही वाला ऑर्डर दिया ना, देख लेता हूँ भाई। चेक कर चेक। अरे बहनच कैंसिल भी होगा ना फटाक से। अबे कोई गाड़ी आया है क्या इधर? लो ना जरा, कौन सा गाड़ी है? बुगाटी अरे गलत वाला दे दिया रे, गलत वाला दे दिया। मेरे को लग ही रहा था, डर था ही। अबे गाड़ी बंदा गाड़ी लेफ्ट में पकड़ डालती है, लेफ्ट में डालती है। ये क्या जा रहा है? ऊंट है वो। जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी कहाँ गई? बैठो एक सेकंड। देखो बस खत्म। अरे गाड़ी भी रुकी होगी ऊपर कहीं पे, ऐसे खड़े मत रहो, थोड़े लग जाएंगे। अबे कोई उठा कुछ ले मेरे भाई। चलो आजा हाँ, बैठ। मैं बोला ना मेरा गलत ऑर्डर हो गया। अभी पता है रेस्टोरेंट ना बंद होने वाला है, तो साला वो फिर से कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर देगा भी नहीं। इस रुक तो रेस्टोरेंट वाले को कॉल करता हूँ। सिर्फ एक ही चीज देगा RyuK भाई, तुमको पता है क्या? रुक एक सेकंड मैं पूछ गाली लेता हूँ। चाट वो भी फ्री। उसकी माँ की चीज चलते। अबे भाई क्या लग हुआ भाई, ये क्या लग हुआ? डायरेक्ट नहीं चुप जाएंगे। उसकी माँ अरे भाई बंदा चल रहा है इधर। एक बंदा चल रहा है नीचे, देखो। हाँ इधर बंदा लेटा है। नहीं ना गाड़ी है ये तो। अरे भगवान पूरा भगवान। तेरा बंदा क्या बंदा? किधर है? किधर? अच्छा उधर। हाँ ठीक है फिर। दो तीन भाई पूरा स्क्वाड है ना उधर। तो अभी तो हम डायरेक्ट नहीं गए, तुम समझे नहीं समझे? क्या पूछ कोई तो मुंडी दिखाओ। उनको मार दिया क्या? नहीं मारा। नहीं फाइट हो रहा है। नहीं फाइट हो रहा है उनका। हेवी नीड्स हो रहे हैं, बस कोई फट नहीं रहा है। हो मजा आ गया। कोई तो वॉल के पीछे हो भाई, बचा लो। इधर रश हुआ। वो फटा बाइक। इसको मार बहुत खाया। मार दो एक गोली, एक गोली मार दो। आ गया वो, रुका गया। पता नहीं ऊपर साइड तो नहीं दिखा मेरे को। बच गया। हां भाग। इधर रश हुआ है ठीक है। अबे एक को नेट से फोड़ा इसी रेड हाउस में हम लोग। एक वॉल पे गाड़ी मार करा देख। खाया हेड फिर खाया। स्नाइपर कौन है? 3 नंबर रेवेंजर। हाँ मैं दे रहा हूँ। आप 4x ले लो, ये लो 4x ले लो। गिरा दिए लोग। आ रहे ऊँट लेके आ रहे हैं। नहीं उठा क्या आ रहे? यहाँ से आ गया मैं, आ गया। देखो एक गया ऊँट से। अभी भाई
थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज सुपर चैट। हेलो RyuK भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है यार। अभी भाई माफ करे, थोड़ा सा वो एक ऑर्डर पे बिजी था, इसलिए रिप्लाई नहीं दे यहाँ पाया। पे कहाँ नॉक डाला है? थैंक यू सो वेरी मच यहाँ यार। पे अभी भाई आपको शॉप मिस पे कर रहे थे, बचपन में कहाँ लोगों थे को इतने दिया। दिनों से? अभी भाई तबीयत वगैरह सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब बढ़िया अभी भाई? कैसे हो यार अभी भाई? थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज। हाँ अरे अभी मैं 3x ही चला रहा हूँ, तो 4x चला, तो 4x चला। इनकी टैंक फोड़ दो। चलो अपना गाड़ी अबे दो नारा चलो। हीलिंग नहीं है। हाँ तो जोन चलो, कुछ तो करो, चलना तो पड़ेगा ही कहीं पे। तो चलो। मेरे पास तो एमो भी नहीं है। जोन चलो छोड़ो। मेरे पास 40 बुलेट बची है। हीलिंग नहीं है मेरे पास, ठीक है। उस बड़वे को देखो। बड़वे बैठ। मुझे भी चाहिए एमो तो। भाई 5 का एमो लेने आया था मैं। मेरे पास नहीं है। 40 बस भाई मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ले ड्रॉप कर रहा हूँ, एमो ड्रॉप कर रहा हूँ, ले। किधर हीलिंग ड्रॉप किया, एमो ड्रॉप किया। मेरे को हीलिंग चाहिए बे। जल्दी भागो। बैठ वायन। आज वायन मरवा के मान दिया, पूरा ग्रूट वाला हरकत। एक काम करो, बोट से चलते हैं। बोट से यहाँ से हो गया जी। ब्रिज से जाना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ बोट अगर खड़ी है तो हम लोग बोट से निकल गया होगा। वो देखो बोट लेके भाग बोट जाना। Marked a location. अरे यार छोड़ो फिर, चलो और उससे और ब्रिज से। बोट कहाँ है? बोट थोड़ी है। हाँ और एक बैठो जा रहा है उधर। तू बैठ बेंच, तू बैठ यहीं बैठ। बैठना है कुछ छूती है, तू यहीं पे रह। इधर नहीं है बे, एक भी नाव नहीं अरे है। अबे लास्ट बैंडेज था भाई। अरे है भाई। ऑन मेरा टॉप में नेट से। क्यों जा रहा है यार? चलो जल्दी चलो। अबे कोई तो हीलिंग दे दो। ए छोटू गाड़ी स्टार्ट कर। जोन तो आ गए, अभी क्या है? चलो अभी मारेगा वो लोग यहाँ पे रुके। अपना बता भाई, क्या हाल चाल भाई? काम का प्रेशर ज्यादा है भाई। अच्छा ये लोग रुके, ठीक है। बाकी सब तबीयत वगैरह सब सही है ना? मेरा तो भाई ठीक ही चल रहा है फिलहाल। Marked a location. अरे लौड़े तू मत बोल भाई। पूरा ऐसे बोल रहा है। दिखा दे। टैंक जा रही है। वही वाली होगी, वही वाली टैंक। हाँ वही वाली हीलिंग दो, हीलिंग। हेलो हीलिंग ऐसे आ रहा है, हीलिंग ऐसे हो रहा है। जा रही मारना है क्या टैंक वालों को? नहीं छोड़ो, जोन नहीं जाने देंगे। रुकी है। हाँ टैंक रुकी है। यहीं पे रुकी शायद। अरे हाँ इधर ही है। यहाँ पे बैंडेज है। अबे नहीं, हम लोग टैंक छोड़ के वो ले लिया, सूप ले लिया। हाँ जाने दो, छोड़ो जाने दो। बैंडेज मार के ओए बढ़ुआ। हम लोग को टैंक ले लेते हैं। आओ जाके देख टैंक में फ्यूल है तो टैंक से थोड़ा सा जा। नहीं टैंक में फ्यूल नहीं होगा, तभी ये छोड़ेंगे। अबे थोड़ा तो होगा, देखते हैं। ओ इधर सामान है बहुत। ये ले हीलिंग्स ले, इधर बहुत हीलिंग्स। इधर आओ, पूरा माल है। माल तो वो पूरा ठेला लाल है। क्या है इसमें? ओ अरे हट साला, लड़की के साथ जीप जा रहा है। This way to the play zone. बोला इधर बोला। ट्रक भी जा रहा भाई। लैंड ऑफ नहीं है भाई, तभी छोड़े ये लोग। मर गया। आओ बैठो, जोन तक जा ही सकते। बैठ अबे मत करना, हम लोग ऐसे करते हैं ना। ऐसे ही चलो, छोड़ो, इसका साउंड भी आ जाएगा फिर। अब इसने तो साउंड भी दे दिया है। देखो एक स्क्वाड या दो इधर होगा सी बिल्डिंग के अंदर 100%। किसको मार रहा है? हमको मार रहा है क्या? गाड़ी है ऊपर, गाड़ी है। हो गया जी। वो गाड़ी को मार रहा है। गई।
वो तो उधर ही नॉक दे रहा हूँ। अबे उसके आगे बंदे हैं, बोलोगे तो तीन नॉक बंदे कर हैं। देता हूँ। लेफ्ट में भी है, लेफ्ट में भी है, रुको देखो रुको रुको, ऊपर ऊपर नॉक जा रहा फिनिश है। होगा तो ही नॉक देंगे अब। फाइट हो रहा है अभी तो उनका हैवी। किल चोरी। एकदम चोट। अबे किसका माइक है बे? माइक ऑफ चलो ऑन चलो अभी करो जा बे। सकते हैं। माइक ऑफ ऑन करो रिवेंजर बे। में इसका माइक है। ये इसके पीछे ही है। हो गया। 3v3 है, रुको। वेनम तो नॉक खाएगा। अच्छा पीछे क्या वो? मेरे आगे तो कोई नहीं है ना, एक बार देखो देख भी। देख ही रहा हूँ तेरे को, अगर कोई मारेगा भी तो मैं कवर दे सकता हूँ, लेकिन एक पेड़ है बस, वो पेड़ के कांटेक्ट में तेरा उधर ही है। हाँ हाँ आगे ही है। आगे ही है, उसी को मैं है मार रहा आगे ही था। है, फुट दे दिया उसने। हाँ उधर ही एक है, एक ही दिखा है। ओ आया आया आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, देखो ऐसा कुत्ते का बच्चा, ये देखो। मतलब फिनिश दे के छोड़ूंगा मैं, दुनियादारी पेड़ है है, मार चुता है। पेड़ है, देखना मेरे पे ये पेड़। हाँ उसके पीछे ही है। Marked a vehicle. अरे नहीं, उसका इंटेंशन नहीं था भाई फिनिश करना, कोई बचा ही नहीं सकता। जमीन आसमान एक करके उसने फिनिश किया है। अबे वो तो लेटा है पेड़ के पीछे। ले अलग अलग स्क्वाड है, 2v1v1 है। Watch out. इधर से Watch आएगा out. वो बिल्डिंग से आएगा, स्कूल बिल्डिंग से। स्कूल बिल्डिंग से आएगा तो मैं उसको देता हूँ। मेरे को स्प्रे थोड़ा दिक्कत दे रहा है आज। हाँ आया। कहाँ पे मार्क दे। दे। Watch out. अच्छा आगे से आ रहा है क्या? पेड़ पे ही रुक जाओ। दोनों हमको सोलो सोलो क्यों लग रहा है? दोनों 2v1v1 तो बोला मैं। नहीं 2v2 है। अब 2v1 अभी तो एक ही बच रहा है। यहीं पे कहीं पे लेटा होगा आगे में। मेरे को भी लग रहा है। जोन में नहीं हो रही भाई अब। S12 के वाला मार दिया आपने? ऊपर ही है ये, वो जो वैनम भाई को मारा था ना वही हाँ है। वहीं पे S12 के वाला ही है। जाओ रेंजर पे DBS। हाँ दिखा। अबे दूर है, इधर दिखा। दूर से मारो। Watch out. उस साइड है क्या? तू जोन पे, तू रुकना, तू रुकना, तेरे पे आएगा, मैं कवर दे दूंगा। वो भी जोन में है। नहीं वो जोन पे नहीं है। देखने ही नहीं दिया। तू बस नॉक मत होना रविंद्र। देख राइट से तो तू देख लेगा, मैं लेफ्ट देख रहा हूँ। अगर राइट से पड़ता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। ये पत्थर पे रेंजर में आपके आगे देख। मेरे आगे कौन सा पत्थर है? ऊपर दिख रहा है वो पत्थर। वो पेड़ से नहीं दिख रहा मेरे को। वो रहा वहां पे दिखा, पत्थर के अबे पास। पेटी होगा भाई। ठीक भाई। नहीं है वहीं से गया वो अभी जस्ट। वहीं पे जोन है, समझा? यही दिक्कत है। क्या ये चिकन थ्रो होने वाला है? लंट के ऐसा बैक फेंक के मारूंगा ना लोगे।
हाँ तो बहुत ही बढ़िया इंटेंस माहौल। मुझे लग रहा हाँ है ठीक है चिकन ठीक है तो ठीक होने है वाला है। ठीक है ठीक है। लेफ्ट से शायद आ रहा है शायद। देख के तो आगे चला गया। भाई शिफ्ट वॉक करके जाओ ना। बे 1 HP यार, हो गया 1 HP था वो। Awesome. देखो RyuK भाई चिकन आने के बाद ये करते हैं, जल्दी जल्दी ना We are रंजन भाई number इधर आ, 1. मेरे पास आ। ऐसे ऐसे करते हैं, देखो ये साला चिकन आने खुद के बाद कर रहा है, खुद कर रहा है, गांडू खुद कर रहा है। Victory देख belongs लो to गाइस, us. खुद कर रहा है। बस हाँ, यही करते हैं, मूर्ति यही मैं करते मूर्ति बनाता हूँ क्योंकि मैं हर मैच MVP होता हूँ ना, मूर्ति बनाता हूँ। हैं। लौड़ा MVP होते हैं। लावड़ा MVP साला मर तो गए हैं, मर तो गए, चिकन तो हम लाए। किल किल देखो एक बार किल किल विल का क्या, मेरे किल विल का अचार डालोगे हैं बॉट मार के? ये किल तो मैं ही बना लूं। बॉट का है, कहाँ बॉट मारे? कहाँ बॉट मारे? ठीक। बड़े लोगों को कॉल लगाया गया है खास बुलाने के लिए। बेवफा तेरा मासूम चेहरा। ओहो हो। रैंडम आया था कोई बेवफा नाम से। शाटा वान भाई, अगले बार तो बिरला का ही लेना। अब ये पानी वाली M4 हटा दें, दूसरी कोई लगा। साला ये रैंगल लगा हुआ लगता, मिरामार लगा हुआ, नीचे पड़ते नहीं रैंगल ही। वही भाई। अबे रुको, मैं स्कोर देख के आया, क्या स्कोर चल रहा है इनका, रुको रुको। बोलो पैसा ले लेना भाई, पैसा ले लो। अच्छा अच्छा। खत्म, मुंबई वाले हार गए ये मैच। कौन हार गए? मुंबई वाले हार गए। अरे उनका तो रोज का है, कुछ नया बताओ। 25 बॉल में 77 रन चाहिए, मतलब हो सकते हैं हो बट सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। विकेट गई तो खत्म। अभी तो सूर्य कुमार और ये बैठे हैं, हार्दिक पांड्या दोनों हैं हिटर्स। सूर्य कुमार तो तो मार भी रहा बाकी है। खेल कौन रहा भाई? ये यहाँ पे टाइम पास कौन कर रहा है पूरे ग्राउंड में? क्या पता, एक सबके जो इम्पैक्ट प्लेयर में किसी को लिया था, 6 गेम खेल के चला गया आउट। लो क्या इम्पैक्ट दिया है। रोहित शर्मा पता नहीं कितना किया लेकिन। तो तारा आ गई भाई, वो नहीं आया। चलो। ग्रुप हाँ हाँ, बोल बोल मेरी पूरा आईडी बोल। को भी तो चल विजिट ठीक। किया। हाँ भाई। सारा तो है फिलहाल। अबे सारा को लो या ग्रूट को लो, बात तो एक ही है।
डिफरेंस तो नहीं है। हाँ भाई वो मेरी थोड़ा टीम अच्छा में खेल रहे थे। अगर अगर ये दोनों 20% है तो वो कम से कम 25 से 30 है भाई, उससे हो जाता था। पलट गया साला। पलट गया भाई, मैं भी किसी को कुछ नहीं बोल रहा भाई, सब बढ़िया खेलते हैं मेरे से, सब अच्छा खेलते हैं भाई, मेरे से सब अच्छा खेलते हैं। हम टट्टी सबसे झांटू प्लेयर हम नहीं। हम टेक्स्ट तो किए हैं, देख नहीं है वो। वो भी तो गुजराती से है ना, आई गेस। वो कहाँ गुजरात से? में इतने ऐसे लोग नहीं होते, मतलब ओके 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 ब्रो, ओके ब्रो। आ रहे चलो। अब खत्म, अब चिकन आ सकता है, अब लड़ी लगेगी चिकन की। आया तो बे चिकन। चिकन के लिए अरे मेरे को रिप को अब बस अलीशा लास्ट जी तक आ जिंदा रहे हैं। रहना पड़ता है वेनम भाई। तुम रहोगे तो डर लगता है। चिकन 50-50 रहता अरे उसको नीड तो है। किया था, लेकिन हल्का मेरे में सा लेफ्ट राइट कंफर्मेशन विन रहता है रेट। भाई र्यूक बचे रहने से। देख ग्रूट आ गया, वही तो कितना बोला मैंने, हरामी लड़का है हल्का। भाई। ले देखो, ये देखो, ये देखो। अब बताओ किसको किस खिलाना किसको किस नहीं। हद का गिरा हुआ लड़का है भाई, किस सुनो हद सुनो, का। एक काम करो, ग्रुप को बोलो एक मैच के लिए और रुक जाए, मैं एक मैच खेल के वैसे भी जाऊंगा। देख रहा है नहीं, तू कहाँ जा रहा है बे, रुक साले। बोल दे अलीशा जी को बोल दे। एक मिनट। अरे नहीं नहीं, वेनम निकलेगा बोल रहा ना। अबे यार, उसको माइक खोलने दे, माइक खोलने दे सामने। चार्ज में बैठा है। सो वही तो वही। जाता, सोच रहा था सो जाऊंगा भाई, सोया नहीं बस। फिर याद है कल तो संडे भी है। नहीं संडे का कुछ नहीं, मैं सोचा भाई खेल ही लेता हूँ थोड़ा, क्या ही करूंगा बैठ बैठ के। झेलने आएंगे तो देख रहा, झेल लेता हूँ। नहीं वैसा वाला नहीं था। मैं तो मतलब सोच रहा इतना था भाई दो टाइम तीन है, मैच इतना चलेगा तो वेला खेलने लड़का है देता भाई, भाई। वायन बहुत दिन बाद आया था। हम लोग तो पहचान ही नहीं पाए भाई कौन था वो, तो तुम बोल रहा वायन था क्या? हाँ स्टार्ट करो हमको भाई, लगा रैंडम। ये भारत मिलाप हो गया हो तो स्टार्ट करो। नहीं नहीं, गले वले लगना बाकी है लग रहा थोड़ा सा। खाना ऑर्डर कर लिया क्या? तो फोन नहीं खा रहा भाई, लगा रहा है चश्मा, पहले चश्मा सूरत लगाएंगे फिर बहुत ईयरफोन। है तो लेकिन दिल खान, हाँ, ऐसा गाना कितना है। ठंडा है भाई, मजा आ गया। हाँ हाँ, ठंडी ठंडी। अरे लग गया था यार, गलती से लग गया था, छुट्टियां बन गए थे हम। अरे दुख। मैं तो सोचा था वेनम भाई समझदार है, कोई ना, आप भी मेरे जैसे। I won my last match. ऑल चैलेंज एक्सेप्टेड। रुको रुको, ये लाइव वाला निकला ना, ये तो डब्बा खोलो लैम्बोर्गिनी भाई, का डब्बा है, मतलब इसके अंदर लैम्बोर्गिनी हो। डब्बा खोलो भाई। माइक 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 से हवा आ रहा किसी का तो है माइक। रुक सर, ये डब्बा नहीं अबे खुल रहा कैसा कैसा गाड़ी है भाई, शर्मा रहा है तो खुल ही नहीं रहा है लोग, क्या फायदा। है। उस अबे नहीं, उसका हमको लग रहा इंटरनेट लीव खराब कर है भाई। दिया। लौंडा लीव कर दिया हमको लगता हाँ हो भी सकता, लीव कर दिया उसको, लॉबी नूब लगा होगा पूरा, मैं आ गया ना इसलिए। है।
अबे ठीक है, बोलने बोले तो, लेकिन पूरा सच बोलने यहाँ कोई नहीं बोला था। सेल्फ अवेयरनेस ऑन कपड़ा टॉप है मिल जाएगा इसकी तो। वैसे तो। मोनू इज लाइव, ये देखो और एक झटरी लाइव। लो भाई कर लो। वही भाई, एक जन तो है उसके ऊपर और एक जन भाई। भारी सीन भारी सीन। नहीं एक जन मतलब भाई दूसरा प्लेयर का बात कर रहा हूँ भाई मैं। वाह कसम भाई, रूप को मुंह पे झटरी भाई बोल दिया भाई। इतना गट्स मैं होना बोला ही चाहिए नहीं भाई। हे भगवान, फंसा रहे भाई ये तो। मैं तो मरा भाई। काली जुबान क्या भाई, मारा, काली कोई जुबान। उतरा ही नहीं साथ में, काय का मारा। अबे नहीं, मैं पता नहीं कौन बैक मार हो रहा गया था फोन। क्या ऐसे 40 मैंने तो FPS देख में रहे क्या क्या हो चिकन का जाता नहीं खौफ देख पता रहे हो, कोई आया ही नहीं अपने पास। वही वही। इसकी माँ का। खौफ अच्छा लगा हमको वैसे देखने जाए। बहुत ज्यादा साउंड यहाँ है। पे नहीं जाना है। ऊपर में ऊपर में। क्या हो? वो अच्छा धप धुप दे रहा है। ले ले एमो ले ले। धाप धूप। हाँ हाँ। मेन चले मेन। भारी लैग हो रहा है इसको। आजा। रुको मैं आ रहा। सामने बंदा। मार मार। वो कैसे नहीं मरा? खाया खाया दिया क्या उसको? ऊपर है बंदा। चलो चलो ऊपर वाले को पकड़ो। मेरे पे एमो नहीं है, ठीक है 5 का। क्या किसका है मुझे, किसका है मुझे? अच्छा नहीं का है तो भाई। नाइस मैन। मैं पीछे से मार रहा हूँ। हाँ संभल। पीछे से तो पूरी अबे! स्क्वाड आ रही है भाई। कहाँ से मारा मुझे? ऊपर है। अरे लाउड़ा लो। भाई सो भी मरा कहाँ से? पूरी गेम पे टट्टी हो गई। एक नॉक। अरे फक भाई, दोनों ही मुंह पे फटे भाई। अरे यार फ्री फायर मैं माँ तो का घुस भरोसा रहा भाई, था जल जल वेट के आ गया बनूंगा भाई ये बोल बंदा के भाई, बहुत। आप तो खुद ही घुस गए। क्या ही बोल रहे, दोनों वेट बन गए भाई। स्कूल आ जाओ स्कूल। भाई वो मौली से जल के अंदर घुस के मारा भाई। सही है। बहुत क्या मंगवाया क्या RyuK को, ये बताओ। अरे तो स्कूल में तो कोई नहीं है, इधर आराम से लूट के चलेंगे फिर। आदर ये कुछ नहीं मिलता भाई। अच्छा वो कॉम्बो वाला, उसमें क्या होता है? बर्न राइस, जला हुआ अरे तुम चावल। तीनों सच में नहीं आ रहे स्कूल? जला टट्टी हुआ भाई, आता तीनों है। टट्टी। अब भी सैटरडे खाते हो क्या वेज? आज आज स्पेशली बोलिए या हर दिन का है? क्या? हर सैटरडे मतलब? अरे इसका कोई ठिकाना नहीं भाई, कभी भी खा लेते हैं। नहीं आज कुछ तो है एक, तो इसलिए आज ज्यादा मान रहे हैं। नहीं आज का नहीं, सैटरडे मम्मी हर सैटरडे बोली है कि नहीं खाना है बंदे सैटरडे देख लेना, बंदे देख लेना। और ट्यूसडे नहीं खाना है। तो भाई मम्मी का बात मतलब पत्थर की लकीर भाई, सब बात नहीं टाल सकता। वही सेम। मैं तो सैटरडे ही मानता हूँ भाई, ट्यूसडे खा लेता हूँ। मेरे को क्यों लग रहा है चर्च पे बंदे हैं शायद। ट्यूसडे क्या होता है, मेरे को टाइम रहता है ना, वॉच पार्टी नहीं रहता तो मैं खुद बना लेता हूँ सोयाबीन या पनीर। ये सैटरडे को वॉच पार्टी रहता तो टाइम नहीं मिलता।
आपको बनाने आता है खाना? किसका माइक है बे? मेरा तो नहीं चल। है। आगे बंदे थोड़ा बहुत डिशेस आते हैं जो कुछ आइटम के मेजर ऐसे तो। अबे मेरे को आगे साइड से फुट आ रहा है। बढ़िया बढ़िया, मार कर। Watch इधर से out! इधर से कहीं से फुट आ रहा जाता हूँ नौको ने। बे ये क्या है बे? है। आजा आजा रॉकेट हट जा। पाउच हाँ कुछ है नया बंदा। आया है। हाँ फुट आया मेरे को भी। पिछले 10 बंदा है, मिनट से बंदा। माइक ऑफ है। अरे अलीशा जी माफ मैं भी थोड़ा सा देखा नहीं बंदा था। मार दिया, बंदा मार दिया। वो फोन कॉल पे था तो इसलिए तब ऑफ किया था। माफ करे। अलीशा जी एक Damn मैच bro, के बाद बंदे आपको मार लेते हैं। दिए माफ भाई। करिएगा थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया तो। भाई ये अलिसिया जी कौन है फिर? अबे यार इसको तो हर कुछ जानना है, सब जानना है बड़े। सब कुछ जानना है इस बड़े को। ठीक है भाई, जिसका बर्थडे आ रहा है उसको मैं भी विश कर दूंगा, कभी कुछ बोल भी दूंगा। हेलो हेलो क्या बर्थडे आवाज आ आ रहा रहा है है? मेरा? हेलो किसका बर्थडे आ रहा है? बर्थडे चले गया। तू कट सपना गया, देखता आवाज कट गया तू भाई। सपना देखते रहे। ऐसा है क्या? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अबे झूठ क्या भाई बोल रहा हूँ? मेरा तेरे को उस दिन मैं क्या बोला जो जो गया था बाहर। बाहर। अरे तो बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन यार करोगे तो अब मैं क्या बोलूं भाई? ला- बर्थडे तो था नहीं ना भाई। बर्थडे तो भाई मंथ में है ना दूसरा। नहीं नहीं भाई कैसे नहीं, रुको भाई मैं जाता हूँ। अबे तू जो डेट देखेगा मैं अभी डेट अभी यहाँ पे बोल सकता हूँ, लेकिन वो डेट हम लोग उधर सेलिब्रेट किए थे। इसका मतलब ये तो कोई बर्थडे है। अच्छा गांडू है क्या? अच्छा, कोई मतलब तो मेरे यही को महीना। फोटो भेजते रह गया भाई। अरे यार रुको, आज भेज देंगे। आज चिल्लाए ना मेरे पे, आज रहने दे भाई, ए साला रहने दे भाई। ए साला रविंदर भैया पे लाइक भाई कितना दिन से दौड़ाएगा एक चीज का पीछे भाई। हम तो इसलिए अब बस मजाक से बोलते होप ही हैं। छोड़ दिया भाई, वही भाई होप ही छोड़ दिया रविंदर होप भैया। छोड़ दिया, नहीं भैया होपलेस हो गए। IRL दिखाएंगे पूरा पूरा अबे तू स्क्रीनशॉट क्या IRL चौंटिया है क्या? दिखाएंगे, IRL क्या दिखाएंगे? हेलो साला भाई साहब। अरे मैं तो बोल रहा हूँ भाई, अभी दिखाऊंगा तो भी आपको नहीं पता चलेगा, नहीं दिखाऊंगा तो भी नहीं पता चलेगा। अबे नहीं यार मत दिखा यार, ये सब नहीं दिखा यार ग्रूट। मैं क्या दिखा रहा हूँ? कुछ ही नहीं दिखाया हो भाई, इतना भरोसा तो है ना। supplies on me. भरोसा ही नहीं करते भाई। देखो कर तोड़ ही देना चाहिए किस दिन। अरे साला वो भी वेनम भाई को ऐसे ही बोली थी। ये तो करता ही नहीं भरोसा, तोड़ते हैं इसको। अरे भाई बड़े हैं यार। दुख दे दिया वो भाई भी इसको बड़े भाई, हैं। वो गेम छोड़ के चल जाएगा भाई अभी। वेनम भाई बात सही बोला कि नहीं? सर नहीं यार, गुस्सा और अभी गुजराती में गाली देगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। नहीं हिंदी में गाली दे दूंगा मैं, डरता थोड़ी हूँ। अबे नहीं, गुजराती में देने से अलग फील आता है भाई, समझ रहे हो? तुम बड़ा गुजराती जानते हो, तुमको पता है फील क्या होता है गाली अरे देने का? मतलब अरे अपना लैंग्वेज में, मतलब मैं अभी बंगाली में दूंगा तो मजा आएगा, फील आता है भाई इसमें। नहीं समझते आप? देख रहा है इसको पूरा अच्छी लड़की हो ना। बे बंदा कूदा, अब तेरे को वो फील देगा। मेरे सामने बंदा कूदा अब भाई। तेरे को वो फील देगा। बोलता ये है कहाँ? प्रोनेक्स अरे अरे यार अबे यहाँ पे मारा, यहाँ से ये इसके ऊपर में। ऊपर है वो, गलत नेड मारा। हाँ ऊपर में बैठा। आजा मेरे पे कोई एक जन आ सकता है, अभी मैं सेफ हूँ। आजा ग्रूट नॉक मत लैंड सेफ है, पीछे से भी और एक बंदा कूद गया यहाँ पे। यहाँ पे और एक है। अरे छी भाई हक दिया। क्यों नहीं कर पाएगा भाई रिकॉल? बंदे मेरे न्यूक पे मेरे पे आ रहा है एक। यार लौड़े लग गए लो। अबे यार न्यूक भाई आप रिकॉल निकलो यार। वही निकल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पे भी एक चढ़ा था तो उसको फिनिश। अबे दोनों साइड से बंदे आ रहे, इधर भी बंदा है, इधर भी बंदा। पीछे भागो पूरा पीछे भागो। पीछे भाग जा। तो घेर गए तो थोड़ा होल्ड कर लियो कहीं। नहीं होल्ड करने का है ही नहीं इधर। तुम लोग देख नहीं पाएंगे। और एक लैंड किया। जाओ ना राइट से। अरे घर से घर जाओ ना भाई, क्यों आप बाहर? एक को क्या तो अभी पता? मारा। ऊपर से आया है, एक स्क्वाड रहेगा एक सोलो रहेगा कैंपर साला। देखो भाई वेनम भाई पे टाइम ही नहीं है भाई। चल गए भाई ये भी इंस्टा देखने।
अच्छा नहीं बंद बहुत बिजी बिजी लोग। क्या यहाँ पे रिकॉल कर हाँ। पाएंगे? नहीं। फट से आ गया साला हरामी। बाइक है उधर, बाइक में चले जाओ भाई। पूरा भाई आज तो RyuK भाई का कावासाकी चलेगा भाई। ये साला सब रिवील कर दे। नागासाकी है भाई, ये नागासाकी है और कावासाकी। अरे ये तो गेस था भाई, गलती से रिवील हो जाता तो मैं क्या करूं भाई। उनको तो BMW S1000 RR लग रही है। नहीं M1000 या जितना जितना रंडी रोना करता ना भाई, इसके लिए S1000 RR ही ठीक है। RR रंडी रोना। चलो तो अबे तो मैं जो लेंगे उसमें भी आ रही है, डोंट वरी। मेरे हिसाब से उसके नाम पे भी आ रहा है। M1000 नहीं उसमें एक अरे तो डबल आर वाला ले रहे भाई, TVS रोनिन। डबल आर वाला TVS रोनिन। अबे डबल आर वाला 2 लाख ज्यादा लेगा, सिंगल आर थोड़ा 2 लाख कम लेगा। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब रोना वाला हट जाएगा, पार्ट है ना, रंडी रहेगा। रंडी तो रहूंगा। अबे डासिया ले ले, डासिया ले ले। वही लेने वाला हूँ। ये सखाराम चल नहीं रहा है अच्छे से। मोनू इज लाइक, बहुत मेहनत कर रहा लड़का। एक गाड़ पे लाती इसकी। ददक तनाल। उसका गाड़ पे नहीं, उसका पेट पे लात मारेगा भाई, मत मार उसको। अरे बॉट बॉट बंदा है, बंदा नहीं भाई, बॉट नहीं है बंदा। पूरा फिनिश ही डालेगा क्या? भाई इधर तो बंदा है भाई। हाँ भाई कौन बोल रहा था रिकॉल नहीं दे पाऊंगा है? कौन बोल रहा था? नॉक होते हुए भाई। कौन बोल रहा था भाई? कौन बोल रहा था? ये जिसका नाम आ रहा है ना प्लेन में, अबे वही बोल प्लेयर रहा चला था है बे। शायद। वाटर सिटी जा रहा हूँ मैं लूटने भाई। इधर आओ भाग आएगा तो। अरे यार जल्दी बोलना था ना, हक दिया। तेरे को तो पता है हम लोग कभी वाटर सिटी जाते ही नहीं है। हक दिया। वाटर सिटी में वाटर सिटी में हगा धो के आना। हाँ उधर पानी है, पहले से पानी दिया हुआ है तो धो। बहुत लेट रियलाइज हुआ उनको भाई, जो को मारना है भाई, बहुत लेट रियलाइज हुआ रे मेरे को। लेट हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, रियलाइज हुआ ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा है क्या भाई? आपको रियलाइज हुआ है कि नहीं, या अभी भी उसके पीछे पड़े हो? अरे किसके? भाई आज तो मजा आ रहा है भाई, फ्लो में निकल रहा माँ के सब मजे भाई। फ्लो में बाकी और कुछ मत निकाल देना इतना तक। मेरा ऑर्डर का है भाई, जल्दी आ भाई, भूख लग रही है भाई। भाई मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो भाई। नहीं आज तो नॉनवेज नहीं है, छाला छोड़ो, क्या वेज ऑर्डर करोगे भाई? स्कारल दो M4 लो, स्कारल दो M4 लो। ले स्कारल है मेरे पास, स्कारल है। ले लो स्कारल। तू साले M4 तो चलाता है नहीं। साला सब दिखा। तू M4 तो चलाता है नहीं। देखो जो किसको सबसे बोल रहा पहले है? मैं तो दे ही रहा हूँ। गाड़ी आया गाड़ी अपना गाड़ी। हे स्कारल लो ना साले। दे रेवेंजर, तेरे को ही पता रेवेंजर। भैया और एक डील है रेवेंजर भैया, सोच लो और एक डील है। रेवेंजर भाई स्कारलेट 3x दे रहा हूँ, स्कारलेट 3x नहीं देना रेवेंजर बदले में M4 दे दो बस। भाई साहब भारी मार्केटिंग चल रहा था। बोलता है वहाँ पे वो डीलर, वो डील चोद रहा है, देखना वहाँ पे M4 with 3x डील चोद रहा है। स्कारलेट 3x कंट्री M4 थोड़ी देना। स्कारलेट 3x डीलिंग चोद रहा है साला। स्कारलेट 3x है यहाँ क्या वो चल रहा है क्या? बिजनेस डील था भाई, लिटरली भाई। भाई भाई के पैसे बचते भाई, उधर स्कोप मिल जाता उनको। सोचो तेरे पास कौन सा स्कोप है? जल्दी बोल, डील हो जाएगा फट से। तो था भाई 3x है। हाँ आजा डील कर लेंगे। ले लो ना भाई। आजा। अब क्या M4 तो मैं ले लिया। स्कारलेट ले लो भाई। धंधा जोरों शोरों से चल रहा, जल्दी आ। तू ये एक ले, 6x दूंगा आज। एक मैं लेता हूँ। गावड़ा इजी लो। कौन सा जो लेना है आपको लो ना भाई। लेती तो वो थी, I mean सॉरी टॉमी चलाएगा। सॉरी ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं क्या पूछेगा तू? क्या पूछेगा कि दीदी वो ना ऐसे बोल रहे थे तो आप ले रहे हो क्या? क्या ऐसे पूछेगा?
ये लेते हो क्या ऐसे कैसे? हाँ बोले तो सोचो भाई। हाँ हाँ बोले देख तो वो सोचो। है तो कूल बोल तो देगी, लेकिन फिर बाद में मेरा गांड मारेगी। इसको वही कैसे वही पता चल रहा है कि एक्स एक्स एक्स? एक्स क्यों भाई अश्लीलता पे उतर आया है ये लोग। वही भाई। ये तो वेबसाइट का नाम एकदम ओपनली साला बोल फॉलो रिक्वेस्ट जाता तो भी मैसेज आ जाता है, क्या वही भाई। फालतू आदमी लोग अबे हैं भाई। लैग हो रहा, अबे लैग हुआ, भाई लैग हुआ, भाई लैग अरे जोन आओ ना भी, जोन आओ। फालतू आदमी भाई। गाड़ी ऐसा ला, आईडी गाड़ी से ला। फॉलो करूंगा साला, पता पूरा भी नहीं चलेगा पूरा कि कौन इन्फो जाएगा भाई, और एक्सेप्ट नहीं होगा ना, प्राइवेट है। अरे आजकल आपको नहीं चल बे, पता जोन चल रहा बहुत है, सी रियो गाड़ी ला। यहाँ बंदे हैं, इसमें देखो ये आजकल गाड़ी तो गाड़ी प्राइवेट तुमका आईडी उसका मिल जाता है भाई। तुमको उसका सीन नहीं पता चल रहा है ना, दिक्कत वही है। तुम उसको जानोगे फिर बोलोगे यार इससे। अरे नहीं, अरे भाई बाप डाउन है पक्का तब तो। अरे नहीं 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 नहीं, होता तो मैं थोड़ी उसके पीछे रहता। चला चला चला। अबे नहीं। दो ना, मैं चला रहा हूँ पूरा पेटी। बाप डाउन होता तो मैं बाप के साथ अरे रहता ना, पेटी तो क्योंकि मैं भी मेरे को बना सोर्स बनाने से मतलब है। जितने ज्यादा सोर्स उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ये भी ठीक है। अबे ये देखो घूम देखो फिर के, तीनों जा रहे हैं। ये घूम फिर के अपार्ट से जाता है क्या लंचट? अबे इसको ले अपार्ट बे से रेवेंजर, नहीं। वेनम को ले। अबे नहीं, उस वही पे भाई मारो। गाड़ी है कि नहीं है बे? किधर है? वाह ए झटरे। अबे इधर बंदा था शायद, Danger ahead. अरे लैंड बंद हो गया। बंदा था भाई। फूट वूट कुछ आया पीछे आ, नहीं। पीछे आ, लौड़ू पीछे आ। सोलो जल्दी था आओ। भाई। डायरेक्ट भी आ सकता था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। अबे गोली गिरा दिया। कहाँ गिरा भाई? जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। एक अबे सेकंड एक इधर सेकंड एक गिरा, सेकंड। गोली गिरा वो भी नहीं दिख रहा है साला अंधा अंधा लव। हो गया हूँ मैं अभी। एक सेकंड रुक मेरे। अंधा तो हूँ वैसे। हमारे ग्रुप में सिर्फ गरीब गरीब लोग खेल रहे हैं। गोली गिर ओए जा रहा, भाई रो रहे हैं भाई। तो गोली गिर गया, फिर से गोली गिर बोलेगा हाँ हेलो सर बोल देगा भाई फिर से। गया। ले हाँ हंटर, हाँ भैया, हंटर को आप कुचल वो दिया, ये वॉचमैन क्या के देख पास रहे रख दो, मैं ले लूंगा 2 मिनट में आके। ठीक है। अरे भाई वॉचमैन भी है भाई घर के बाहर, देख रहे हो पैसा, देख रहे हो भाई हो? सोसाइटी में पैसा रहता भाई, है। पैसा वॉचमैन छोड़ो सब बुला सकता है। वही भाई तो रसियन। पैसा वो तो रिक भाई जैसा, जिंदा तो वेनम भी। वही भाई, वही भाई जिंदा तो लौड़ा भी वनम है। भाई के जैसा भी एक दिन सबको बनना है। बे रीच को जोन बनना के ही अंदर है। लेके चल मेरे भाड़ू। जैसा क्यों बनना? ए ड्राइवर भाड़े। अच्छा कट गया क्या अभी? अरे नहीं नहीं, तभी इधर जोन था तो कट गया। आजा, हाँ गाड़ी में कट चलो, तो गाड़ी था में चलो। वेनम भाई। आजा, अरे खुला नहीं गाड़ी में नहीं चलेंगे, आजा। ए गलत। लौड़े हैं आप। अरे इधर आ, अरे इधर आ, इधर आ, इसमें चला बे, खुला गाड़ी में क्या जा रहा है? लो फ्लो में निकल गया भाई। अरे आओ ना, फ्यूल मिल जाएगा। अरे इसमें फील ज्यादा है। अच्छा चला चला, चला, तुम लोग दो सुनो इसमें तो रहे, दो चलाओ तुम लोग, मैं मैं खाना हूं लेकर ना आता हूँ, भाई, रुक मैं लेकर आता हूँ तब पेटी तक। बनवा दूंगा पक्का है भाई। अबे तो एक घर में रोक हाँ देना चलाना तो इधर, बनाना ये पेटी। कंपाउंड में लेके चल, लेके चल साला, लेके चल। अरे आगे जोन वाले लेके बानोस जाता पे ना, रोक लो, आपको क्यों डबल टेंशन बानोस ले रहे पे हो? जहाँ वही मारती है। ओके ओके। मैं अंदर बैठ के, मैं मेरे को अरे 2 मिनट जाओ बंदे जाओ लगेंगे। निकले। जाओ 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 लेके आओ। ठीक है, जाना आराम से। हाँ मैं वो घर के ऊपर बानोस में पूरा बैठ के पेटी जाऊंगा। बनवा के रखूंगा। ये बानोस में रुक। रेवेंजर नहीं भाई नहीं मैं पेटी पानी बना में के ड्रॉप। रखूँ। भरोसा ही नहीं है क्या भाई, ड्रॉप देख रहे ड्रॉप हो। करते रहता है भाई, गेम खेलता बिल्कुल है ड्रॉप भरोसा यहाँ ड्रॉप तो हम करता ड्रॉप पे ही जा रहे थे, वो तो दिखा है। उधर पानी उधर में उधर तभी। उधर उधर बग्गी ले, बग्गी ले। रुको मैं आ रहा। मैं बग्गी ढूंढ रहा था भाई। लग रहा है उस तरह पानी में कौन सी बग्गी होती है? अबे पानी में कहाँ, कोने में जा रहा है पानी। हाँ, अबे कोने साला में फाइव कौन सी एमओ कैसे? चाहिए बग्गी किसी स्पॉन को? होती है बताओ भाई। क्या गुंडा बनेगा वो? सिर्फ लूट के I'm तरफ ही out. ध्यान है। Need ammo. अबे यार एक भी नीड नहीं है भाई, ना मौली है। क्या ही गरीबी में दिन कट रहे हैं। यार मेरे से 6x चलता नहीं है भाई, किसी के पास 3x तो दो नहीं। हाँ ये लो इधर आओ। फिर से झटरी 12 ही बंदा बचा है। बंदे तो ऐसे मार जा रहे जैसे कोई ये लो पास ये लो दे रहा मर जा 3x। रहा उड़ जा रहा। 6x चाहिए क्या? तो अरे अरे वही तो पूछ रहे हैं ना। लैग हुआ, लैग हुआ। वाह वाह लैग दूंगा। ये आ रहा है तो जल्दी आ जाओ।
यहाँ सो जाता। अबे गाड़ी का साउंड कैसे आ रहा है? अच्छा ग्रूट बैठा हुआ है क्या? फ्यूल भर रहा था। मौली है, मौली नीड कुछ है? स्मोक क्या खुशी में? नहीं कुछ नहीं है पता नहीं मेरे पे, कौन जीरो। स्मोक किया। मेरे पास स्मोक तो बर्बाद स्मोक कर भी रहा नहीं है है कि भाई। स्मोक करो भाई। सब वेनम भाई की लीला है। मैं क्या किया लो? या तो ग्रूट ही किया होगा इसमें। मेरे पास एक नेट है, बता वो कर सकता हूँ मैं अगर चाहिए तो। मैं कर किए कर कर रहता कर तो कर। भाई कर लेता। पूरा आप पे? 3 नॉक होगा, 3 नॉक होगा, तीनों एक ही जगह, 3 नॉक। नहीं नहीं, नेट पे नॉक नहीं होते ना, वही तो दिक्कत है साली, रिपोर्ट हो जाते हैं। अबे कोई गाड़ी नहीं आ रही। वो नींद आ जाएगी। आठ ही अबे बंदे रियूक की बचे वजह से, हैं। नहीं तो बंदे ढूंढते रहते हैं हम लोग। अबे रियूक ही नहीं है। ऊपर बंदा ये अबे रहा। बंदा बंदा, हाँ हिल पे आया। खुशखबरी खुशखबरी। स्नाइपर है भाई, मैं नहीं ले रहा पी, शायद स्नाइपर है। वाह वाह रे माँ देवता, खोपड़ी जल्दी आ फोड़ जल्दी दिया। आ अरे उसका खोपड़ी फोड़ दिया हूँ। जल्दी आ। हाँ तो तू जल्दी आ। उठा उठा उठा, मैं पुश नहीं करने दूंगा। मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, गाड़ी आने दो एकदम। तो गया हेलमेट गया, वो नहीं चैलेंज आएगा। हील करेगा वो लौड़ा पहले। नहीं क्या? आएगा। उसको क्या मारा तुमने? ऐसा कौन सा गन मारा तुमने? पूरा एम्पोज चिपकाया, उसका खोपड़ी तोड़ दी। लेकिन टूटा तो तेरा। दोनों का टूटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? उस पे लेवल 3 का होगा। नॉक कर ले, खाया। उनका लफड़ा हो गया। रेड डॉट है ना मेरे पे, स्कोप ही नहीं है तो। उनका लफड़ा हो रहा है, हेवी लफड़ा। बेचारे इधर भी नहीं आ पा रहे। गया। ले, मर गए, चुप गए। ले। अब ये हाँ राहु मार। साई को ये लोग आएंगे इधर, आओ तुम, तुम्हारे माइक है। अरे झटरी जल्दी आ, 2 मिनट वाला, 2 मिनट से ज्यादा हो गया झटरी का बता। तुम लोग बोले मैं मारे क्यों, तो हिल पे आया। स्कोप ही नहीं है भाई, स्कोप खरीदना शॉप जाके अभी पूरा लास्ट जोन में अरे मजे आ रुक जाएंगे। को नॉक करके ले लो ना। मॉली वॉली कर दो। मॉली मार है दो, कि पूरा नहीं ना, जला नहीं ही तो दो। करने का सोचा भी रहा था। अरे है, बंदा है ऊपर के, खोपड़ी तोड़ देगा। मेरे पास स्कोप नहीं है, एक स्कोप दो ना, स्नाइपर अबे चलाएंगे हेड पूरा। खाया, अबे हेड खाया। 2 हेड। स्कोप दो दो ना हेड एक खाया। बार। अबे एक ही स्कोप है एक चल। अभी तो 3x है। दो बार हो गया यार। ओ भाई जल्दी छू जल्दी छू। जल्दी छू। तुम लोग अभी पुश कर देगा, अभी रियूक भी नहीं है। रिस्की है नहीं बहुत। करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतने तो झाड़ में इसीलिए साला जमेंगे चुपचाप उनके। बैठा हुआ था, नहीं तो बैठा का है। वेस्ट आपका हरी में खोपड़ी खेलता टूट है। गया ना, मेरे को दो ना अभी 3x। कहाँ मेरा लेवल 1 खोपड़ी का थोड़ी तक था। टूटा है, सलामत है, वेस्ट बॉडी शॉट डैमेज। मारा है उसने। भाई अच्छा ऐसा है ये क्या? झटरी से हेडशॉट लगेगा क्या? अरे गाड़ी यहाँ निकाली ये घाट है लोग, क्या? गाड़ी निकाले, गाड़ी निकाले। नीचे वाले कंपाउंड पे रुकेंगे शायद। हमको भी लग रहा है जोन उधर ही कट जाएगा बता। वही भाई ये सीन है। आए कि नहीं, 2 मिनट इनका हुआ, इतने ये में मिठ पेटी मार बन रहा है जाएगा। पहले। मिठा लो। Danger ahead. ये Location गाड़ी से marked. आ रहा है बाप कि रे, ऐसे ही आ रहा है? नहीं आया भाई। मारे आ रहे। लो क्यों? अरे अबे नहीं नहीं, यार। सारे क्यों गए? नेट कर ऊपर, ऊपर वाला लो है भाई, है ना ऊपर वाला लो है। गया एक। उसको मैं एक एक डीबीएस का फटका मारा था। क्या है बंदे? बोलो बोलो बोलो, बंदे क्या है?
अरे ये घर में, यार ये अबे घर में। बगल वाले घर पे एक नॉक है, दो बस ये नॉक हुआ। लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। नाइस है, नाइस। बहुत ही शॉट, बहुत ही शॉट। गन फाड़ बहुत देंगे, अच्छा गन फाड़ टाइम पे है, देंगे। पता हो, बहुत वही अच्छा वही। टाइम अरे पे इससे पूरा जल्दी आ गेम जाता, अंदर में मेरा ले रहा है। मेरा घर का डोर नहीं खुल रहा था चाबी से, तो ये नहीं तो और जल्दी आ जाता वाह, वाओ, भाई। क्रेजी। वो थोड़ा क्रेजी सीन्स गाइस, क्रेजी सीन्स। फिर मैं वो बेल मारा, पता नहीं ओम वो का है, ओम चाइल्ड लॉक उठाइए वाला कोई ऑन कर नहीं। दिया था डोर में, तो उसको साला वो पता खुल है, नहीं जो रहा था बाहर से। जो छत गया ना उसको मैं एक शॉट मारा, उसका पीछे और एक बंदा है क्या भाई, उसको क्यों मारा? ये ले ग्रोजा था। इधर आओ मैं, वे वेनम स्नाइपर सेंट्री। यस यस, वही वही उठा रहा हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो फट से चिकन लो, मैं आता हूँ थोड़ा फ्रेश। कहाँ से जा रहा है? अरे फ्रेश होने भी कहाँ? हाँ भाई थोड़ा घूम फिर के आएंगे भाई अभी। चलो, अबे दो ही बंदा है बे। तो वहाँ पे इतनी देर से भजिए तल रहे थे, तो दो ही हो गया। बेटा बेटा, चलती गाड़ी में मारेंगे हम की भेड़ की। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, चिकन थ्रो होगा, होने दो। क्या तो फर्क पड़ता आप कौन सा कभी चिकन के लिए खेलते हो? पिछला गेम में भी हमने निकाला था, मैं और रेवेंजर ने। है? ए लवड़ा, लास्ट बंदा बच गया था, वो भी पता ही नहीं था कहाँ है। लवड़ा राज एन में बंदा, तीन फुकाया। बंदे थे, ठीक है ना? लवड़ा राज बंदा। तीन तारे, ये देख, मेरे तो आगे एक ही था ना, लेकिन ये घरों पे होंगे। ये घर वो अंडरग्राउंड घर कौन सा है, उधर हो सकता है, यहीं पे है ना कहीं पे, तो गुफा वाला घर। गुफा वाला तो ये है। Watch out! यहाँ पे भी तो है। ये किसका यहाँ पे माइक नहीं है? आगे है, ये है, ये रेवेंजर भाई का। बे जोना बे, ए ग्रूट। अबे जल्दी चिकन करो बे, सिर्फ टाइम पास कर। सारा पूरा गेम 3 किलो, सिर्फ 3 आज। बताओ इंटेक खोल के भी बॉडी मारा वहां से भाई, इतना टट्टी प्लेयर है। तेरे जोन से मर गया ले लो, बड़ा ले ले। चिकन ऐसे ही आ जाएगा। ये ले, मुझे भी लग ले, ले चिकन आ जाएगा। एकदम टट्टी। आऊं अब की लग रहा वेस्टेज हो है गई। एस लॉबी पहुंच के ही कुछ बंदे आएंगे भाई, नहीं तो अभी घंटी घंटी ऐसे ही आते। और यहाँ पे दूसरा मुफट फुकट का चिकन, एकदम फुकट। कौन है क्या? एमवीपी मैं हूँ क्या? अरे यार एमवीपी मैं बन गया क्या? जनरली 6 किल करके बैठ गए एक जगह पे, हमको एफ के दिखा दिया। एफ बोलते के एमवीपी में हूं क्या। एफ के हमने ना रहने गेम के प्ले बाद खराब भी कर दिया। एमवीपी हो गया क्या मैं? अरे शिट, ऐसा ऐसा ओवर पावर्ड गेम प्ले क्या कर लेता हूँ मैं गलती गलती। हैं? एकदम हाँ। भाई भाई अब पछतावे से क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई भाई अगले बार जा पहले मूतने के लिए बाहर नहीं छोड़ के आ गया ना बंदे को। कौन कौन? ए क्या बोल रहे हैं बे? स्टार्ट कर बे, बढ़िया गेम प्ले है, स्टार्ट बुला लो करो। बुला लो, अलीशा जी को बुला लो, मैं जाता हूँ। ये ग्रुप कहाँ चले गया? अब चिकन नहीं आएगा। सब है यहीं पे। क्या बोला ग्रुप? तुम लोग, मैंने सुना वेनम भाई ने क्या बोला, अब चिकन नहीं आएगा बोला। इतना शर्म है वेनम भाई को, इसको सभी शर्म। तो शुक्र मनाओ मैं आजकल दिल पे नहीं ले रहा उनको बोली हुई बातें। अगर दिल पे लेता ना ऐसे, अरे निकल लिया इस साल, निकल गया मैं तो अरे इधर। बुलाओ रे। अलीशा जी चैट में हो ना, आप आ जाओ। तब तक मैं अपना ये फूड खोलता हूँ, फूड का डब्बा। आजा
किसका माइक से पंखा आ रहा है भाई? साउंड मतलब पंखा का जो मेरा तो नहीं है। देखियो अभी आ रहा है क्या? भैया का होगा। अभी भी नहीं आ अभी रहा है नहीं आ क्या? रहा। नहीं 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 अभी तब ठीक है। मेरा तब मेरा था फिर। खाना अनबॉक्सिंग कर रहे हो क्या? लाइव में दिखाओ, मैं आता हूँ देखने। अरे लाइव में नहीं दिखा रहा हूँ, बस साइड में। फिर आया फिर आया। ये वाला तो मेरा नहीं, ये रेवेंजर है। ये मेरा हो गया। क्या का साउंड है? पंखा? इसको मैं बोला फेरो फेरो फोर्जा का खरीद ले, अभी तक इसका आ ही रहा है फेरो फोर्जा का। मैंने तो फिर से ऑन ऑफ किया, पता नहीं मेरी शायद भी। तू मेरे को ये बता, कब कर लो कब और आ एक रहा बार है जब तेरा? तक ये नहीं आ रहा है। क्या? तेरा कूलर कब आ रहा है? ए लौड़े मत बोल, तो उधर थे फिर इधर फेंक दिया नागपुर तरफ भाई। अब और मैं ऑर्डर नहीं करता भाई, जिल्लत हो गया जिंदगी में। तो अभी तो 1 हफ्ता है नागपुर में। ऑर्डर करता हूँ मेरा ही लोकेशन चेंज हो जाता है। अबे फिर से ऑर्डर कर, अभी नागपुर में जल्दी आएगा। नहीं, अब मैं लर्न नहीं करूंगा, अब हो गया भाई। अब मेरा हो गया, मैं टूट गया मैं टूट गया। कहाँ उससे फोन ठीक रहेगा? नहीं अभी मैं एसी के नीचे ही खेल रहा हूँ, कोई दिक्कत। हाँ ये तभी वो बोलना सही। I won my last match. नागपुर में मेरा रहने का बंदोबस्त बड़े मस्त किया भाई। I कोई won my दिक्कत नहीं। last match. अबे यार तुम नागपुर में था बोलता यार, मैं भी उधर में आता यार, उधर एक दोस्त भी ऐसे तो रहती है। फ्लेक्स मारते, मैं भी उधर नहीं था साला। मैं भी उधर नहीं था मतलब। ऐसे तू कितना करते दूर है, ना। कहाँ पे रहता बता तो, देखना पड़ेगा नहीं तुझे। बताएंगे स्ट्रीम पे, नहीं बताएंगे अभी, मैं बोल दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, चैट पे कुछ बताएगा अभी। कौन किसको बोल रहा है, मेरे को कि ग्रुप को? तेरे को। आपको ही पूछ रहे हैं, मेरे को क्यों पूछेगा भाई? अबे मैं मैं तो बोल रहा कि मैं रहता था वो अंबाजरी तरफ रहता था मैं नागपुर में। मतलब नागपुर में एक दोस्त भी है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है, तो उससे मिलने जाता ही हूँ मैं। तो मैं तेरे से भी फिर अभी मिल ही अच्छा लेता। अच्छा ब्लैक मार अच्छा रहा अच्छा, मैं होगा भाई समझ स्ट्रीम गया। पे अच्छा अच्छा बंदा। अच्छा, मतलब बहुत जल्द मिलने वाला लग रहा आपको। अरे कोई ना कोई ना, ठीक है यार। वो अच्छा दोस्त, मेरा भी अच्छा दोस्त बनेंगे क्या? अरे अरे साला आईडी भेज अरे दूं क्या? दोस्ती देखो का ही ट्राई बात किया करके। भाई। वही भाई, तो मैं तो दोस्ती को दोस्ती करा का ही अभी। बात किया भाई। एक रोट साले, तुझे हेलो गैलेक्सी हेलो, में भेज आवाज नहीं दूंगा। आ रहा, मेरा नेट ग्लिच हो गया भाई, नेट। अबे तो तू अभी कहाँ है? मैं तो अभी पुणे में हूँ। अच्छा अच्छा, रुक जा भाई, अगर मेरा कंपनी वाला पुणे भी भेज देता तो देख। हाँ भाई पुणे कोई होगा तो भरोसा तू नहीं है मेरे मेरा। घर रह लियो भाई, 1 दिन 2 दिन जितने दिन रहता है। गन चाहिए क्या RyuK पे? नहीं गन। Watch out. ओके। अबे मेरा आगे बंदा। जा फिनिश करो उसको। सामने स्मोक तो हुआ है, उस पार जाना है क्या? ऊपर बंदा देख। हाँ ऊपर बंदा है। कौन सा ऊपर?
आ जाओ, इस साइड क्लियर है अभी। मतलब अबे जहाँ पे मेन आओगे तो चला आ गया सकते हो रुक अभी। जा आ रहा हूँ। अभी क्लियर तो है, इस पर आप आओगे। जल्दी आओ, बंदे आ जाएंगे फिर फट से। बंदा आया, आप लोग आओ यार, मिल जाएंगे। हम लोग पीछे आ गए। मैं आ रहा हूँ, तो मैं नहीं रह रहा भाई, अकेले सीन हो जाएगा। क्या मेरा ना नेट का इशू हो रहा है 150। मेरा नेट का इशू हो रहा है 150 जा रहा है। मैं हूँ कवर के लिए तो मैं हूँ। जियो वाला का आजकल सीन हो रहा है थोड़ा, मेरा फाइबर का खुद साला हगा जाता है पूरा नेट। चल नॉक दिया सामने। नाइस बढ़िया, चलो रुक जा। रुको, नेट मारता हूँ एक पूरा गॉड लाइक वाला। और एक है, अरे हट गया। गुड लेफ्ट साइड में रेवेंजर। मैं नॉक डाला, उसके बाद मेरे को बंदा फिनिश कर देगा यार। अबे रेवेंजर, यार अबे मैं अबे तो तू घुसा क्यों भाई, जब पीछे से हम लोग नीड मॉली कर वही रहे हैं। भाई, अरे ये तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप को बोल रहा हाँ हूँ। मैं भी अरे तो उसी। मैं तो नॉक करके घुसा ना। अरे कैसा किल कांड फीड तो है, देखो, गॉड लाइक। नॉक हुआ फिर ना घुसा। हाँ तो मैं भी नॉक दिया था, मैं भी नेट मॉली कर रहा था, मैं थोड़ी घुसा नॉक करने के बाद। हम लोग नीड मॉल ही कर रहे थे, इतना रिस्क क्यों लेना अबे, अंदर जाके लोना की। गॉड लाइक नेड कर रहा था वहाँ पे, सोल हो गया वहाँ पे। अरे यार गॉड क्या लाइक गजब लड़का है भाई। बोलता है, गॉड लाइक नेड करके घुसूंगा। अरे भाई पीछे से हम अरे लोग वो दोनों टीम नीड का मॉली नाम ही कर नहीं रहे ले रहा हैं। हूँ मैं तो, अबे ऐसे नॉर्मल वाला भाई। अबे तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि रूम के अंदर कितने देखो लोग कैंप कर रहे खुद का होंगे, तेरे को गलती पता नहीं थोड़ी है। बचाएंगे। ये देख इसका नेट देख। वाह मेरा नाम चमक रहा है, देख वही बहुत भाई पता। मेरे को मारे भाई, देखो किल फीड देखो, शर्म आना चाहिए भाई। नहीं भाई छी हमको तो भाई, गर्व हो रहा है भाई। गर्व हो रहा है भाई। होता है गलत गर्व। बंदा तुम, समझते हैं। गलत गर्व हो रहा है बे, गलत चीज के लिए। रेवेंजर तो गई हो। माँ कसम, मैं तो ठिला, Watch out. मैं ठिला। मैं नॉक हो रहा हूँ, मेरे को मार बोल रहा हूँ। ये भी गए, ये है भाई मुझे अरे चुप ना। मैं अकेले नॉक नहीं होगा। डेंजर है। अरे इसको मारो ना, कितना बोलता नॉक है, कर देगा। कितना बोलता है। मेरे पे बंदा है। Form up on me. पीछे से कोई तो कवर दे रहा है। रुको एक सेकंड। नीचे पट्टी मार रहा है। मैं मार रहा हूँ बे। अबे यार ये तो नीचे कूद गया। अब तो 3 बंदे हैं भाई, अब तो मेरे मारो उसे। मैं मार ग्रुट मार। नाइस वन। क्या कवर है भाई, ऐसा टीम हो तो भाई मैं BMPS जीत जाऊं। उसको फिनिश कर ग्रुट। ऑल डेड। ऑल इज डेड। मरवा दिए अलीशा जी को। कौन मरवाया भाई, मैं खुद नॉक हो रहा हूँ। मरवा बकौती करवा लो बस इनसे। ऑल डेड ब्रो, ऑल डेड।
भाई मेरा तुमसे I got sound है। supplies. issue हो रहा है भाई, तभी issue। साला मैं 2 बार जाके वापस पीछे आया तब तक ये लोग लूट लिया, क्या बोलेगा भाई। एकदम किस्मत, झटरी किस्मत है। मैं किसी को रिकॉल ही कॉल करना है क्या? नहीं नहीं, मैं खाना ही खाता हूँ। ए ग्रूट कुछ बोल भाई। हेलो ग्रूट। ग्रोड भाई ने मार ली है मुट्ठी, ली है मुट्ठी। ये अब बंदे ग्रोड लैंड है कर रहे ना। हैं Enemies ahead. हमारे छत पे, बंदे लैंड किए। हाँ हाँ, और भी एक है। मेरे को हीलिंग है तो दो ना। और एक सुना, चर्च के आगे साइड लैंड किया है। छत को देख साला, पानी का बहुत फेंक रहा है। अबे ऊपर वाले को मारते ना हो ना, ऊपर वाले को मारते हो। ऊपर कोई दिख तो नहीं रहा मेरा भाई। छत पे यहाँ पे फाइट हो Watch रहा है out. भाई। Help. हाँ छत पे ही है। ग्रोथ देख के, अरे जल्दी बैठा रख दो। ऊपर में। रख दो। नीचे आया वो शायद। ग्रोथ को ज्यादा मार आगे के नहीं नीचे। ग्रोड। क्या नेट का इशू हो रहा है अभी। बहुत नेट इशू हो रहा है ना गाइस। क्या अटक रहा है क्या? अरे वो 350 चले जा रहा है बीच बीच में। अब थोड़ा ज्यादा ही फ्लक्चुएशन है मेरे इसमें। सेम मेरा भी अटक रहा। इससे अच्छा मैं खाना ही खा लेता हूँ। जियो का क्या ही सीन है, अटक जियो रहा का भाई। सीन है मेरे को लग रहा है। मेरा मेरा एयरटेल भी है ना। भारी अटक रहा है। अब जाके ठीक है। एयरटेल है क्या? हम्म। इधर तो जियो का बहुत गंदा हो रहा है भाई। फाइबर में जितना भी महंगा पैक डलवा लो साला नेट ही नहीं चल रहा है कांस्टेंट। बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। फालतू है भाई। Watch इधर out. जो उतरा था वो होगा, देख के। यूजी से इधर 1v3 मार दिया भाई, रिलोड करके बता। मजा आ गया। देखो और एक वाईटी आ गई। मतलब भाई वाईटी और लाइव आना बहुत कंपलसरी है हर गेम। क्या हो गया? कोई कुछ उपाय नहीं बोल रहा। लैग हुआ। मैं तो खाना खा रहा हूँ। मेरा भी लैग हुआ, भारी लैग हुआ है। क्या बंदा? अबे गाड़ी। अबे पूरा स्क्वाड भाई, लौड़े लग गए मुझे। कहाँ तेरे पे? मेरे पे पूरा स्क्वाड। अरे नहीं यार, बोल रहा हूँ भाई, और गाड़ी आ इधर गई ना। Got supplies on me. एक के पास स्नाइपर होगा, ठीक है, मेरा MP4 कोई था। कोई एक जन पीछे जाओ ना, पीछे से गाड़ी लेकर रिकॉल कर दो कहीं। जाओ कोई चले जाओ। कॉल कहाँ करना, मार्क करो। अरे पीछे तो पहले गाड़ी पे ले। वाह, भाग पूरा पीछे भाग। अबे ओपन पे वो खाएगा, खाने वाला हरकत कर दिया। हाँ जा, उधर ही जा, उधर ही जा।
लालच बुरी बला है। जा जा रुक जा, तुम किस साइड जा रहा देखो। बताओ कहाँ देना है रेव, मेरे को ठीक से बताओ। मैं गाड़ी खोज रहा हूँ, मिल गया। ये फार्म साइड चल जा, फार्म साइड चल जा। ये कूप से भाग, कूप ले और भाग। अबे भाग भाग, फट से भाग। ये ऑफलाइन चलाई जाए क्या? नहीं हूँ। नो। आगे तो फाइट का बीच में कहाँ जा रहा है, दूर दूर नहीं जा सकता। आगे आगे। कहाँ है बंदे बोलो। वहीं पे पुलिस बिल्डिंग पे। मेरे को 1v4 कर दिया भाई, 4v1 कर दिया। 1v4 कर दिया। हाँ भाई लूट ले भाई, लूट ले। अगर मैं कॉल नहीं हुआ ना लवड़े, इतना मारूंगा ना मैं तेरे। ये कौन चला रहा है धूप 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 धूप? वो MK10 MK14 है जो अलीसा, अलीसा चला रही। आगे पीछे बहुत साइड। अबे क्या क्या अश्लीलता को उतर आए लोग। तू हंस मत लवड़े, बस तू मेरे को रिकॉल मत कर। तेरा सारा हंसी में तो निकालूं मैं। तू तो लूटने में टाइम बर्बाद किया ना वहां पे। ले जा जा जा, फट से जा, फट से जा। स्मोक कर, स्मोक कर। और कर लो तुम बकचोदी लवड़े। क्या हो गया, क्या हो गया? स्मोक भी कहाँ किया देखो। अबे पेटी ड्रॉप ड्रॉप लूटने लग रहा है लौंडा। इधर देख रहा, रिकॉल लेना है। I'm recalling a teammate. हम पे गाड़ी है अलीशा? ओ आगे से रिकॉल दे दिया है जहाँ तक हमको लग रहा है। कोई उतरा क्या? ग्रोड देख तो अगल बगल। तू कहाँ माइक ऑफ रखा है? अरे भाई बात कर रहा ना, बैकग्राउंड में आएगा भाई भारी आवाज, इसीलिए बंद तुमको भी किया। आगे पीछे बहुत साइड चाहिए क्या? आ जाओ कुछ भी। जल्दी आओ, वो जल्दी बंदा आओ। गया है, उस पे जाते हैं। आगे पीछे बहुत साइड। अच्छा, अरे उसको वो चैट में लिखिए। मैं सोचा ये बोली कब? चलो ना शॉप चलो ना, मेरे को गन खरीदना है। इसको देखो खाली। वो ये पे ड्रॉप पे ये था, M249 था। चाहिए तो ले लो, एमो दे दूं। अबे एमो छोड़, पहले तेरे पास पैसा कितना हो बोल। पैसा बहुत है, मतलब गेम में। चलो एक्चुअल में तो है नहीं, गरीब हूँ। 32 है इसमें। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ। पीछे से निकलना। हाँ मतलब क्या क्या चाहिए, क्या था आपको बोल देते भाई, नहीं लेता मैं। ऐसे इतना गंदा तरीका से पार्किंग करके क्या था भाई ये। मेरी बात तो जल्दी से कुछ पैसा दे दो। कितना दे? रुको 1 सेकंड रुको बस। मेरे को एक स्कोप खरीदने लायक है क्या? अच्छा मैं आपको अगर दो तो होगा कुछ। अभी बोल रहा था बहुत पैसा है। 2 दिया हूँ, चला चल लो 2 चल में। उन पे चल, हम लोग फाइट स्टार्ट अगर होगा कर तो दिया। 7 का एमो खरीदो ना खाली, मेरे को स्कोप नहीं चाहिए, 7 का एमो चाहिए बस थोड़ा। ले लिया। चलो 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 रिकॉल इसको चलो। भी रिकॉल देना, इसको भी रिकॉल देना। अरे बढ़िया जल्दी चल, खत्म हो रहा रिकॉल आगे। Don't give up. Your teammates can still recall you. चलो फट से रिकॉल पे अभी वो बंदा आएगा, मतलब आ गया हाँ होगा। ठीक, आने देना इस बार। अभी सब है, बैकअप कैचअप कर फोन देंगे। का क्या हो रहा है नहीं पता भाई। फायर दबाता तो फायर नहीं होता बहनचोद। भागना मत, एला बात बोल के वहाँ। मस्ती नहीं कर रहा हूँ यार सही में। वो वाला उधर एक drop नॉक shot है। अगर नहीं देता ना उधर से मैं गिर जाता। पूरा डालो। अरे पहुंच जाएंगे आगे। चलो 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 मैं रिकॉल दे रहा। अलीशा जी मरना है तो अभी मर जाओ 25 सेकंड में। मैं दे I'm दे रहा हूँ। recalling a teammate. I'm recalling a teammate. मैं बोल रहा हूँ मरना है तो अभी मर जाओ। कौन दे रहा रिकॉल? मर जाओ मर जाओ मर जाओ। RyuK भाई के लिए मर जाओ, मतलब RyuK भाई के बात पे।
आ जाओ निकलते हैं। मैं गाड़ी ढूंढ के ला दो, बैठो। अरे फ्यूल नहीं है, फ्यूल देखो ना इधर है कोई घर में। वही तो ढूंढ रहा हूँ। अभी और रिकॉल नहीं हो सकती और वहाँ था पे अभी शायद मरेगी एक दो। देखने ये। मरे तो मरे, हमें क्या अबे मतलब। मैं मजाक देख कर रहे रहा हूँ हो, भाई, सीरियस मतलब। देख रहे हो भाई मैं नशे में हूँ भाई, आजकल मतलब की युवा नींद पीढ़ी वाले। देख रहे हो। अरे नींद वाले भाई। बस अभी ये रिकॉल गलत टाइम करता पे हूँ भाई, भाग अभी लिए भाई। रिकॉल करता हूँ, रुको। दबा दबा रिकॉल दबा, देख हो रहा अगर है हो क्या। गया भाई, मंतर उन्तर मार के। दबा दबा दबाया ट्राई दबाया। कर, ट्राई कर। दबा दिया, पूरा क्या दबा दिया, पता पूरा दम बीजीएमआई से का दबाया भाई। नया ग्लिच हो जाए रिकॉल बीजीएमआई। बे ऐसा ये इतना क्या था भाई? इतना भी जोर मत दबा। पता नहीं इसका ना आजकल फैंटेसी बढ़ गया, पता है आजकल कुछ वही भी भाई, करता ये रहता क्या है भाई? मतलब जिसके साथ फोटो लियो वो, उसको पता चलेगा ये सब सीन ना भाई, तब है। वो क्या पता, जीतेगी मर क्या जाएगी पता भाई। पता हो भाई, क्या पता पता हो भाई, छोड़ो। अबे क्या ही मेरा बोले। हीलिंग भाई, मेरा हेल्थ जा रहा है भाई। मेरे को कोई बचाओ भाई। तो आ इधर आ। बचाती तो हो जी। चल चल लेके चल भाई, बहुत दिक्कत है भाई। आप आ जाओ RyuK भाई, आप गाड़ी वाड़ी लेके आ जाओ, या नहीं है आप पे, जल्दी बताओ। नहीं है भाई। हाँ तो जा, तू मोटर ट्रक लेके जा, मैं इसमें जा जाओ, रहा इसमें हूँ। जाओ। आप मॉन्स्टर ट्रक लेके जाओ, मैं जा रहा हूँ भाई, आप पे हीलिंग कम है ओके ओके बोले। ओके, जा जा जा। क्या गेम सेंस है भाई। मस्ती कर रहा हूँ, गुस्सा मत होना। ये अबे तो देखो मैं क्या उससे में आ रहे जल्दी हो आप? पहुंचता झटरी, थोड़ा RyuK तो भैया, सीन लगा। चल अब चल। तो गाड़ी मिल गया, देख रहे हो, फालतू का मेरे को बुलाया साला। काम डू। चल चल, जल्दी नहीं बोले। साला हीलिंग एक तो काम है, बैंडेज लगा लगा के साला खत्म तो हो जा भाई रहा है, मेरा मेडिसिन अकेले है क्यों स्टोरेज। मेरा अकेला है कि खत्म हो। सबका खत्म होना चाहिए ना। ऐसा ही चलूं मैं। सबको खानदानी इक्वलिटी जेल है भाई। इक्वलिटी में देखता हूँ भाई। देख ना ये ड्रॉप लूट रहा है, देख इतना देख मारूंगा ना ये लौटे, भाड़ इक्वालिटी का बख्शे नहीं ये करेगा। भाड़काऊ देख। इक्वालिटी का बात करूं मैं तो बहुत गंदा गंदा सीन हो जाता है इक्वालिटी के चक्कर में, पता है। बैंडेज तक नहीं है भाई। एक ही ले सकता हूँ, मेरे पे एक ही है। बारिश सीन भाई। अबे अच्छा, क्या हुआ? पीछे गाड़ी, पीछे गाड़ी। नहीं नहीं, आपके पीछे गाड़ी है भाई। आया एक तो आया। आया आया, देखो देखो, हॉर्न मार रहा है। भाई भाई इसका भाई स्क्रीनशॉट लेना है भाई, तीनों गाड़ी। अभी बढ़िया वाला स्किन आता ना अपने पे, पैसा लगा के मजा आ जाता। भाई सुनो तुम लोग चलाओ, मेरा ना पावर का मैं इवेंट ये पे तभी मेरा वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है इंटरनेट। अब रेवेंजर भी अगर साथ आ बताओ, जा मेरा बैठ। भरोसा नहीं। ड्राइविंग भाई, हैवी ड्राइविंग कर लेता हूँ मैं। इतना क्यों फ्लक्चुएट? मेरा खुद का हो रहा है, मेरा खुद का हो रहा है। आपका भी वॉइस कट हुआ। हाँ अभी मेरा भी हुआ, मेरा भी हुआ। सर्वर इशू है क्या? सबका हो रहा है, मेरा सर्वर इशू। हाँ मेरा भी हुआ, तो सबका साथ में हो रहा है, मतलब लौड़े लगे पड़े हैं सब। घुसते डायरेक्ट बिल्डिंग पे एक, एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे। कौन से बिल्डिंग पे जाना है वहीं पहले पे से तो बताओ। चल सी बिल्डिंग ही ले। लैग हो रहा, वो सब बंदे हैं। बंदा है भाई, बहुत बंदा है, मेरे को मार देगा। आजा आजा आ रहा हूँ। जल्दी आ। अच्छा तेरे भी लौड़े लगे एक को पड़े खा हैं गया क्या? हूँ, वो लोग का एक को खा गया हूँ पूरा। और एक डैमेज नहीं आएगा, हील कर रहा। मार देगा मार देगा। चांस ही नहीं है कोई। गाड़ी से ही उतार दिया अभी। वही। क्या ही कर। एक को नॉक फिनिश किया था क्या, कि बस नॉक किया था? नॉक फिनिश। ये कहाँ गई?
आते हैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। कर दे भाई। बट सही में भाई, नीचे रहने से फोन हीट नहीं होता, बट ठंडा रहने से मजा आ रहा है। अलग बात है, आज नेट का इशू बहुत हो रहा है। हम्म। I got the triple elimination medal. I got 5 बोलो, बोलो। eliminations just now. माइक ऑन ऑफ माइक कर दिया। Awesome. It is बोलो। showtime. अभी अभी अगर तुम 1v4 It करेगा is ना, देख तो नया showtime. इमोट मिला विजय में। It is मैंने उसे यूज किया showtime. था। मैं कर चुका हूँ शायद एक बार। क्या मेरे को 1v4 क्या दिखाया होगा? था। वो अभी क्रेट के साथ 1v4 वो करने वाला से अभी mode। तो नया इमोट आया है। क्रेट के साथ ना जो आता है। क्रेट के साथ नहीं, अभी अभी ना तुम खड़े रहेगा, फिर गोली तेरा आर पार होगा साइड से 3, उसके बाद तू कुछ एक रोला वाला कुछ करता है। अच्छा जैसा हाँ हाँ वो वाला तो देखा। अभी ऐसा है नया क्या? है। वो मैंने तो उस दिन होने में टाइम 1v4 है किया तब था तो। ना भाई, मजा आई थी emote करके। कब होगा भाई 1v4? 1v2 में ही अटके हैं भाई, 1v1 में अटके हैं, 2 क्या भाई? अरे ये तो विरोधी दल का फोटो दिखा रहा है भाई, सेमीफाइनल्स में पहुंच गए साला। कौन कौन पहुंच गया भाई? मैं तो अभी बीजीआईएस देख ही नहीं रहा हूँ। मैं भी नहीं देख रहा, उसका वॉचिंग कम आ रहा है। इंस्टा पे लाइव वाइव कर देता है भाई, वॉचिंग नहीं आता बोल के। आता है वाईटी में आता है मतलब। वो तो अभी सेमीफाइनल है ना, सेमीफाइनल चल रहा है इनका तो। आज पहला डे फाइनल्स था। में होगा अभी। आज तो पहला डे था। आ जाओ आ जाओ। गॉडल निकाला भाई। अबे यार पूरा स्क्वाड अच्छा इधर आ खासा किल गया। निकाला। छी बे छी साला कुत्ता। बहुत डैमेज है ये वाला डीपी वाला बे हग दी। Watch out. अरे यार कैसे भाई? बोल रहा हूँ भाई, ये सब 120 FPS का सीन है साला। मेरा गन उठाते उठाते वो ठोक के चल गया। भाई मेरा नॉक वाला फिनिश भी नहीं मिला, इतना एमओ मारा उसको एकेएम से। बस रजा का जाओ। कोई और फिनिश लगी, सारा मेहनत का मुझ पे चला गया। तुम लोग जा कहाँ रहे वैसे? रोज़ा के तो जाते हैं और कहाँ जाते हैं। यहीं पे एफपीएस का अबे तू वो डिफरेंस हो देखा गया भाई, मैं उसको पहले मारा। पीएमआरसी में ये अपना रोंडो मैप को इंक्लूड किए हैं वो। देख रहा था मैं भी। उसका भी अभी वो निकलेगा। अच्छा भाई, इसमें नहीं अबे आया नहीं, ना अपना देखो इसमें भाई नहीं आया ना। गेम वाला चाहे तो कोई भी मैच इंट्रोड्यूस करा सकता है मैप। मतलब अपना ये सब में आया क्या? अपना गेम में आया क्या? ये सब में कौन मैं सा ये गेम है? मतलब क्या समझूंगा ये? व्हाट इज ये? अरे रोंडो मतलब ये क्लासिक में आया क्या? हाँ कितने है? मैं देखा नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे मैं ध्यान से नहीं देखा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब अलग ही एक मैप है ना पूरा। यस वाह। अरे मेरे को नहीं पता उतना, थोड़ा नाम सुना हो भाई, पढ़ा नहीं उतना ध्यान से बस। ऐसा तो रिएक्शन भाई पूरा बीजीएमआई का टैक्टिस गोल के पी चुके हैं वही। ओ भाई साहब देख रहे रिएक्शन, देख रहे भांग चाट के रिएक्शन जैसे देते ना वैसे दे रहे। भांग चाट के क्या होता है और तुम तो भांग पी के बोल रहे हो, उसका क्या है? जे भाई सरीखे का चोला पहनता रहा साला हराम। मैं ना ये डेजर्ट को ना फ्रिज में रख के आता हूँ, साला गर्म हो गया। डेजर्ट देख रहे हो भाई? डेजर्ट में साला मिठाई बोलो ना भाई। अबे डेजर्ट मूस कब से मिठाई हो गया? साला अंग्रेजी तिरामिसू मूस ये सब कब से मीठा हो गया तेरा? नहीं सब ग्रोट का सब मीठा मीठा है। साला मीठा एकदम मिठाई का बात बोल रहा हूँ मैं। मिठाई ग्रोट उसमें हाँ कर रहा हूँ। अरे यार क्या रहा रविंदर भैया, पार्टी वार्टी कहाँ थी वो बताओ भाई आप। हाँ
कल बर्थडे का पार्टी कितने दिए कितने? ट्रेन में भाई सबको बांटे पैसा। जाओ भाई, मेरे को भी आना था। 4x ड्रॉप किया? थोड़ा सा लेट है, आ रहा हूँ। God supplies मार on की me. नहीं हो रहा साला। God supplies on me. थोड़ा सा तो फुट्स आया आसपास मेरे को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कहाँ फोड़े तुम्हारे पास? ये तो Danger इसमें ahead. हल्का सा लैग भी ले है। लो। मेरे को भी थोड़ा सा साउंड वाउंड आया लगा। ये भी गए भाई डेजर्ट रखने, डेजर्ट मिठाई। ये भड़वा जब भी जाता है ना कुछ खतरा देके जाता वही तभी ना, तभी होता है भाई सीन सब। फिर आके साला एमवीपी बन जाएंगे आके अकेले। है। तो बस शुरू करेगा साला। अरे भाई, कहाँ है इसका फोर तेरा देखी? अरे यार कितना बार मार कर उठा लिया क्या? कोई और एक दे दे रहा हूँ आपको, आओ। नहीं नहीं है। किसी और को चाहिए तो लो ना God भाई, supplies on me. लो जिसको चाहिए लो। 4x का भी पूरा स्टॉक आया भाई, नया नया। लैग में मतलब रिकॉल के पास में होगा बंदा, रिकॉल दे दिया होगा, या तो स्कूल के साइड है, ये दोनों में से एक साइड है। मेरे को भाई थोड़ा पुराना पुराना पबजी का याद आ रहा है भाई, दुख लग रहा है। पहले तो यहाँ आज पे एक खेलने में शॉर्ट्स, फटता था भाई, यहाँ पे वही अभी लूट रहा वही, हूँ ना, तब यहाँ पे तब गन रिकॉल पीछे रख के विकॉल का कुछ दौड़ने में सीन ही फटते नहीं थे था भाई। ना भाई। गन हाथ में रहता था भाई, खाली हाथ दौड़ रहे इधर तो तभी। अभी तो भाई खुला साउंड रिकॉल तो है ही। वही वही, और तभी तो उतना सब ज्यादा सबको तो पता नहीं था उतना कि भाई ऐसे मारो भाई, जिगल दो भाई। तभी आजकल तो सब नूब सब नूब बजे। सब को बन गया सब। अरे भाई सब प्रो बन गया, मैं ही नहीं बन पा रहा हूँ। और झटरी लोग 120 एफपीएस का दम तो पूरा मारता है, गेम प्ले वही झांटी वही बराबर है, तो एफपीएस वही का वही, मार। एफपीएस के चलते भाई क्या ही बोले। इतना भेदभाव कर दिया ना एफपीएस का चक्कर में। वही वही, एफपीएस पूरा केडी झटरी भी मेंटेन कभी करवा कभार अपने देता आप है। को सोचने लगता है, अरे भाई क्या मारा मैंने। अरे भाई मैं तो यूट्यूबर बन गया सोचता है साला, सब क्या बोले। ए ভাই সাউন্ড কমা, ইয়ারফোন কেন ইউজ করিস না তুই? তোকেই বলছি, আসতে থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে, अजीब লাগে। কমা না একটুখানি। तेरा छोटा भाई है क्या? बड़ा भाई है बे, इसका बड़ा भाई तो इससे बात करता है यार। इसका बड़ा भाई पता है स्कूल का हेड बॉय रह चुका है। और ये बताओ मोटू, कोई काम का नहीं। मैंने कब बोला कोई काम का नहीं? अरे भाई नहीं नहीं बोल लो भाई। अबे लेकिन आप मैंने ये क्यों देखा बकी है, रहोगे? जिसका भाई लोग ऐसा कोई अगर बड़ा पोस्ट में रहता है स्कूल वूल में, जैसे हेड बॉय या डेप्यूटी हेड बॉय, तो उनका छोटा भाई लोग या छोटा बहन लोगों का ना बड़ा दबदबा रहता है, सब लोग ऐसा मानते हैं अरे मैं उसको। तभी था ही नहीं ना, मैं तभी था ही नहीं ना। नहीं मतलब मैं तेरे को, लेकिन हेड अभी बॉय तेरे को बनने टाइम शायद आया था। फिर डेप्यूटी के टाइम अगर आता तो रोला अच्छा आता, क्योंकि वो हाँ, दो बार हुआ ना। लेकिन टीचर लोग ऐसा पहचानता होगा ना कि तब शाश्वत तक का भाई बोलकर, योर शाश्वत ब्रदर, यस यस। हाँ उतना उतना मैं उतना नहीं बोलता था जानबूझ के, लेकिन पहचानते तो थे भाई। आपका माइक भाई, किसका माइक भाई? कितना मेरा नहीं, अच्छा मेरा आवाज नहीं। आ रहा है। रेवेंजर भैया माइक में क्या साउंड आता है, पंखा का कि क्या का भाई? अभी तो पंखा बैठा नहीं है, फिर भी साउंड आ रहा है इसका, सीन क्या है? ईयरफोन की दिक्कत है। क्या का सीन है भाई? ईयरफोन खरीदो भाई, पता नहीं रे, नौकरी वोकरी आईफोन मिल गया आईफोन भाई, ग्लिच हो गया ईयरफोन मेरा। खरीदो। आईफोन ग्लिच साले हाँ पीछे बंदा। आपको आईफोन ले ड्यूड लिया, पे पीछे कब से बंदा आईफोन रिकॉल है? पे। अरे आप पे मतलब रेवेंजर भैया पे है, मेरे को थोड़ी बोल रहा। रिकॉल पे नहीं है बे, तो कहाँ पे है? वहाँ मत पे वाटर सिटी में, खुद वाटर रिकॉल। सिटी से। भाई हैकर है क्या भाई? अबे Danger ओपन ahead. ओपन में भाई भाई क्या था भाई कि मेरा नेट गया? भाई, ये तो वन शॉट नॉक हुआ बे। वन शॉट नॉक हो, बट वो भाई यहाँ से
शैक से डायरेक्ट वो लोकेशन पेड़ मार्क। तक फट से गया, पता है कैसे? नहीं पता। अभी तब नेट मेरा हाँ नेट नेट कैसे का मेरे को भी देख दिखा, क्या मेरे क्या को नहीं वैसे पता। दिखा है मेरे को। नेट का सीन होगा। हैकर है भाई, हैकर है भाई, हैकर बट ये मार दिया मार भाई किसको रेवेंजर रहा में। था? समझ क्या रहा, पता। हैकर को हैकर जैसा मारा था, वन टैप। वही भाई, रिकॉल पे तो नहीं दिख रहा कोई, नहीं ये जाते, झटरी क्लोजिंग मार, नहीं करता, खाली ये नहीं झटरी जाता। मार किसको रहा था? क्या पता। गाड़ी है क्या अपने पे? निकलते कितना देर रुकेंगे, नॉक होते हैं भाई। आगे में गाड़ी तो हमको दिख रहा है। मार्क मार्क, अच्छा उतना दूर कौन जाएगा, इधर आसपास नहीं है क्या? वहां पे है Watch ना, out! वहां पे। चाहता हूँ लेके आ रहा हूँ भाई, नींद आ रहा है आज मेरे को भी। देखो मोटो को देखो। सो जा भाई। स्कूल पे फाइट हुआ, देखो फिर मोटू भाई, नींद नहीं आ सकती, इसमें भी गलती भाई। ओरे भाई भाई, इमोट मिल गया बे हमको तो। पैटर्न लॉक ऑन, ओ माय गॉड। आसपास कोई बंदा बंदा है क्या? इतना बुरा मार दिए क्या मुझको भाई? मेरा हो गया इमोट तक खाना। मिल गया। चलो अबे जाओ ना, डासिया निकालो ना भाई। टिश्यू का। टिश्यू देख रहे हो भाई, हाथ धोने का टाइम ही नहीं है भाई। अबे तो चम्मच से खाया हो तो अभी हाथ धोने जाऊंगा फिर उठना पड़ेगा। अभी के लिए टिश्यू से पूछ रहा हूँ वही वही भाई यहाँ अरे पे। मैं तो लेकिन मस्ती कर रहा हूँ, ये chill, जब chill। जब से अकेला रहने लगा हूँ ना, ये टिश्यू विशू का ना, ये सब चोचले ना, सोफिस्टिकेटेड चोचले मेरे को ज्यादा लग गई है। घर पे रहता था तो इतने चोचले नहीं थे मेरे। मैं जब अभी वही घर भाई, उठ मैं के जब हाथ धो अभी के आते साले। मैं भी जब घर गया था ना तो मम्मी बोल आओ रही आओ थी। आओ, आज हैवी ड्राइवर चलाएगा। अबे वो पीछे बंदा है कि बॉट है बे? ठप 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 तो मार रहा है। इसको बंदा है, लिए हो बंदा कि है, नहीं सब बे बंदा नंबर है 4 उधर, को सब साथ में? बंदा है। हाँ नहीं नहीं कहाँ नहीं है, कौन लिया। है? सब है ना? कौन है वही, कौन है भाई? मेरे पे कोई हीलिंग अरे नहीं, वीलिंग कुछ मैं नहीं है। बोल रहा मैं हूँ सब लूटा नहीं बैठे था। हो कि नहीं भाई? एक सेकंड रुको, वाह, एक सेकंड बस। अब लोग आते घूम कब के तक थोड़ा। लूटोगे रियू भाई? किस हद तक लूटोगे यार? लूट के तो वो गई मुझे। अरे नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। गई कहाँ गई है? अभी कहाँ तो है? है। अरे वही साथ ही बैठी है क्या? देख लो। वही है क्या भाई? देखो ये तो भाई डबल रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा नहीं है भाई, बताना पड़ेगा। वही वही। बता ही देता हूँ आज अरे तो। आजा। आ रहा बस एक के लिए मिल गया है, वो लेके आता। एक ही मिल गया भाई। हाँ भाई, 90 FPS भाई, मारो मारो। अरे नहीं भाई मारो भाई आज मेरा ना नेट ठीक नहीं चल रहा है, वरना ना Awesome. हाँ, वरना ना ऐसे देखो किल अभी नेट निकलते, चल गया। वरना ना ऐसे किल निकलते। वो तो मैं देखा नहीं बोल के छोड़ दिया। तू रहने दे बेटा, छोड़ दिया। भाई वो बंदे के मुंह के सामने मेरा Watch 4x out. खुल रहा है, क्या बोलूं? चलो आज ग्रूट चलाएगा, देखते हैं। चलो चलाते। हे भगवान, पेटी बनने के लिए रेडी भाई सबको ही। कहाँ लैग जाना लैग बताओ? लैग, बहुत गंदा लैग। कोचिंग के लिए बताओ कहाँ जाना है? इसी में बंदा है, इसी में बंदा है। तुम हो किसी फिर बॉट आ रहा है भाई, बताओ ग्राउंड पे आ चुके हैं हम पे बॉट्स आ रहे हैं भाई, भर भर के। तुम हो किसी के प्यार में, आगे का लिरिक्स नहीं आता। ये तो दिक्कत है। वो रिकॉल पे चल, राइट वाला रिकॉल पे चल। अरे बाबा, ओ भाई भाई भाई, ओ भाई भाई। रोड से लेफ्ट Okay. राइट लेके निकाल। ये क्या कर रहा है? सपेरा ऐसे क्यों चला रहा है गाड़ी को? देख 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 देख। कुछ तो करना चाह रहा है, छपरी ड्राइवर है भाई।
एकदम छपरी। अबे ये साला मैं बोल रहा हूँ ना, स्कूटी भी ऐसे ही चलाता है। अरे बाबा। वो जब अच्छा ऐसा है क्या? वैसे चला ऐसे है चला के क्या? आदत लग गया है, पूरा ऐसे ही चलाता होगा अच्छा अपने अच्छा। एक्टिवा। ये सब लड़कों को एकदम एकदम केटीएम ना दे भाई, वही केटीएम से वही दूर अभी रखिए। ठिल जाएंगे। वैसे तो चला चुका हूँ शायद। ये हाँ साला छपरी तो झटरी है भाई, गाड़ी, तो कॉमन बात है। छटरी गाड़ी चलाएगा साला, तुम अच्छा नहीं गाड़ी वो चला। गाड़ी छपरी नहीं है भाई, वो गलत टर्म गलत है भाई। जो लोग चलाता है कुछ कुछ जन है मैं वो लोग छपरी नहीं बनता बोला, है मैं भाई। झटरी गाड़ी बोला। मैं तो गाड़ी गाड़ी तो के लिए नहीं है। गाड़ी को बोल रहा हूँ। मैं छपरी उसके लिए थोड़ी। नहीं भाई गाड़ी तो अच्छा है भाई, लैंड अच्छा है, पावरफुल तो है भाई। लैंड पावरफुल। देखो आप अभी कावासाकी के साथ ये सब कंपेयर करोगे तो वो बुद्धि भ्रष्ट वाला चीज हो गया ना। भाई बुद्धि भ्रष्ट नहीं, सो साला 390 इधर चलाओ, 390 चलाओ फिर डायरेक्ट पता चलेगा। डायरेक्ट तनाल भाई। तुम डायरेक्ट तनाल 390 भाई। चलाओ, ठीक है। हाँ तो 390 लैग जुगाड़ हो रहा, करके दो चलाऊंगा फिर 390। आओ आओ लैग हो बैठो, रहा, लैग हो कोई रहा, लैग नहीं। डरते हैं क्या? हो रहा हो रहा पूरा लैंड हो सर्वर रहा है। खाली कर देंगे भाई। हो रहा, पोचिंग ही भारी घुसता लैग, है भाई, स्क्रीन अटक पोचिंग गया। के भी बंदे हैं पूरा भी। रोड के बीच से हॉर्न अभी मार के पीटी लेके है चलो। भाई, पूरे रास्ते से जाऊंगा। वही वही भाई कर रहा पूरा हूँ। फुल स्पीड में रोड का बीच से हॉर्न मारते लेके चल। तेरा ये फर्स्ट लेवल है ड्राइविंग का। अबे इधर गाड़ी स्विच कर लेता Watch है अभी, out! पेट्रोल खत्म है गाड़ी का। ड्रिफ्ट मार, यूटर्न मार। अबे आगे से ले Watch लेंगे ना out! वहां से। अच्छा हाँ, चल चल चल। अरे Watch यार out! कितना कंफ्यूजिंग है भाई ये गाड़ी बूस्ट मत मारना। चलाना। ये तेरा लेवल 2 था, ये तेरा लेवल 2 ऑफ लेवल ड्राइविंग। 2 जब भी हम कहाँ है, लोग ये मूव तो लेवल किएंगे 1 ही चल स्मार्ट रहा है। फोटो तू घूमना चाहिए। सोच फिर हम लोग कैसे अच्छा रिएक्शन में गाड़ी घुमाते हैं। वो ऐसा है क्या? तू क्या कर रहा है तू पहले ये? बहाना मत दो, सीधा गाड़ी घुमा। अबे तो पहले ही खुला लेवल हुआ में है थक गया आई वो। गेस। वाह। नहीं नहीं खुला है, चलो अब गलत है भाई लेवल 2 आईजीएल का। गाड़ी ढूंढो फट से। नहीं खुला है, नहीं खुला है अभी तो बेंगूस। आईजीएल का ही बात सुनना था भाई। रेवेंजर नहीं बोला भाई था। आईजीएल की बात सुनना था भाई। अबे गेट लगा हुआ है, क्या झटरी लोगे मैं वही तुमको। तो बे, मैं तो बोला। मेरे अबे को तू तो क्या पता है सुन रहे इसलिए हो? तो रोल दे रहा हूँ भाई। देखो खुद बोले गेट खुला है साला। मैंने Marked a कहा बोला, location. अभी मैंने गलत बोला है भाई। गेट खुला था, अभी बंद हो गया। चलो चलो चलाओ चलाओ चलाओ। डिक्की लगाओ, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। चलो हाँ। उसका भी की होता है क्या? वो लैंड का की होता है। और चल देखो ऊपर बॉट है, कुछ मारो। नहीं। कुत्ता सब कुत्ता है भाई। कहाँ जाना है बताओ। बिच तो वो बंदों थी। पे कौन? पहली वाली, बिच। दूसरी वाली, तीसरी वाली? अबे क्या ये, क्या मैं यहाँ पे मेला खोल के बैठा हूँ क्या अभी? क्या पता। दुर्गा पूजा का मेला चल रहा है क्या बस? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी अब तो वाली। रिकॉल में खत्म हो लॉलीपॉप गया। का फ्लेवर ले रहा है मेरे से। अरे भाई सॉरी सॉरी, थोड़ा लेफ्ट राइट इंटरनेट इशू। यहीं यहीं पे तो तुम्हारा ड्राइविंग का मानक लग गया थोड़ा सा। अभी तेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो देख। ना मिले भाई। बेटा ऊपर लेके चलो इधर। वो तो वो पीछे चल, पीछे मार चल, मार। उधर नहीं। मार कर दिया हूँ भावरे। भावरे। अबे तू वो कल कौन सा बात है रेवेंजर भाई? पता है, कल ना कल ही था या परसों वो क्वार्टर फाइनल्स का मैच चल रहा था, ठीक है। उस पे जो कास्टर्स नहीं है, कास्टर जो बात करते हैं एक मैच के बाद, उसमें वो 3 कास्टर्स थे। उसमें मेजी कास्टर का नाम है वो, उसके पास ना वो लोग हाथ में कार्ड पकड़ते हैं, तो वो कार्ड ना नहीं था। तो दूसरा कास्टर उसको बोलता है कि ये लीजिए, आप मेरा कार्ड ले लीजिए, हैं आप भड़वे हैं। ऐसे भड़वे बोला लिटरल, मैं तो क्लिप भेजूंगा, नहीं तो तू इंस्टा पे सर्च करना, यूट्यूब पे मिले, आप भड़वे हैं। तो तीसरा कास्टर ना वो बोलता है कि अरे वो एक्चुअली बड़े भाई बोलना चाहते हैं कि हाँ बड़े भाई आप क्या सुने। ऐसा सामने से गाड़ी आ रहा है। बंदा सामने बंदा। दो बंदे बचे। दो बंदे लास्ट। एक लेटा है। मारो मारो, गाड़ी फोड़ दो, गाड़ी फोड़ दो। बढ़िया बढ़िया, सेल्फ रिवाइव हो रही है। ये सेल्फ रिवाइव हो गया। अरे अलीसिया जी मारो भाई। अबे मार। अच्छा मार दिया। मैं हूं ना, मर तो गया। गाड़ी फोड़ो, गाड़ी फोड़ो रेवेंजर, गाड़ी फोड़ो पहले।
और एक गाड़ी आ रहा है क्या? अबे बंदा बंदा सामने बंदा 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 सामने बंदा। अबे छू छू अरे छू मेरे छू पे आ जाओ यार। छू छू वो रैप होने से आई हो मेरे पे एक जन। तू सुन ना, तू पीछे से आ सकता है क्या गाड़ी आया इधर? रेवेंजर पे आप पे। नहीं ब्लीड आउट हो जा रहा हूँ। अलीशा जी आप जाओ ना, इधर जाओ। अलीशा जी आप इधर जाओ। मरा मरा, छोड़ो मत जाओ भाई, लग ही रहा था इसलिए नहीं आ रहा था कुछ। अबे यार पकड़ लिया। डैमेज तो दिया था उनको, देख लो। अरे उधर फिनिश करने के बाद आपको फट से आना था। अरे ओपन आता तो मैं पहले ही नॉक हो जाता। अब कोई चांस नहीं। कोई ना। ये लो है बहुत। तो पूरा फिनिश डाल दो। बढ़िया। Awesome. क्या बढ़िया? एक तो गया, मतलब एक फिनिश हुआ। अबे आज ना ये गेम का थोड़ा अम्मा बहन हो गया है सर्वर का। हो क्या रहा है तेरा लोग? जो सर्वर का नेट का ऊपर नीचे हो रहा है भाई। हाँ नेट तो हो रहा है भाई। वो तो मेरा भी हो रहा है, इसमें क्या ही बोलूं। श्रेया भी है अभी। श्रेया भी खेल रही थी तो वो ये कौन है भाई? दोस्त है। नहीं, आज ऐसा क्या दिन हो गया भाई, सब खेल रहे हैं। क्या? आज ऐसा क्या है भाई, सब खेल रहे हैं। वही भाई। Marked a location. अबे माइक I got Good the luck, mate. sharpshooter medal. ग्रुड कीबोर्ड का क्या सीन? हेलो ब्रो। वो चला गया स्नैपचैट में भाई। कहाँ तुम किससे बात कर रहे हो? इसका स्नैपचैट पे फिर अनइंस्टॉल करवाओ। फिर बोलता है भाई फोन कैसे लैग कर रहा है। रीजन तो इधर ही है। एकदम है ही झट रिसाना। पूरा भाई, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा। कुछ भी बोल दो भाई, नेट का सीन हो रहा है और इधर स्नैप। अरे कीबोर्ड का स्नैप ये में ही तो नेट सीन का ऐसा सीन हो है रहा है भाई। हाँ कि कीबोर्ड का सीन ऐसा है कि मैं कल सेल देखने भूल गया था, मैं सो गया था। अभी देखते हैं क्या होगा। ओहो हो। ये मैंने क्या देख लिया। क्या देख लिया? काश ऐसा ही रहे, मजा आ जाए। क्या रहे? अनफॉलो मारो और एक घर के अंदर आओ। पीछे बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। दो रेप दो। दे दे रेप दे, मैं दे रहा हूँ। वहाँ पे नॉक है। I need consumable. मिला होगा किल तेरे को। फीलिंग्स नहीं है मेरे पे, ठीक है? फीलिंग्स नहीं है मेरे पे। ग्रोथ। Okay. ग्रुड मेरे से ले ले अगर हीलिंग नहीं मिला कर। Watch out.
पूरा स्क्वाड आ रहा है, पूरा स्क्वाड आ रहा रेल विद एमो है। अरे इधर। अरे 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 RyuK का नेट गया, RyuK का नेट गया, RyuK का नेट गया। अरे क्या बोल रहे हो बे? नेट गया मेरा तो 20 का दिखा रहा है। आज बंदे पूरे 4 हैं। बे इधर आओ, इधर आओ, एक बंदा छू। इधर 2 नॉक डाला हूं, सुन रेवेंजर, इधर 2 नॉक डाला हूं। Watch out. Marked a location. तीसरा रेव दे रहा है उसको। नेट दे ग्रूट नेट है तो नहीं है। जाके नहीं तो फिनिश करो। 2 नॉक है पड़े हुए। कहाँ है? बाजू में ही। Awesome. मेरे को घेर दिया। रुक स्मोक कर रहा हूं। कहाँ घेर दिया? डेंजर अहेड। बहुत खाया। कोई ना ऊपर जा रहा है। डेंजर अहेड। मैं पीछे तरफ से आ रहा हूँ, मेरे को पीछे तरफ से। अलीशा आओ भाई, रेव दो। कितने? ये देखो। वाह इतना जल्दी, वाह उठा लिया भाई अभी तो। शुक्र माना गेम में तो कोई लड़की उठाएगी। अरे यार ये तो फिर से सेंटर जाएगा क्या RyuK? ये पीछे वाला को हीलिंग है तो ड्रॉप करियो। हाँ थैंक्स। जाना तो पड़ेगा सेंटर। सेंटर जाना है कि पीछे वाले को? नहीं सेंटर जाते हैं। सेंटर ही जाएंगे। वो बंदे को मारे क्या सामने वाला जो नॉक किया था मेरे को? ना उसको मार लो ना। आओ ना इधर। बट हाइट एडवांटेज पे छोड़ो भाई। 7 की आमो नहीं है। पीछे बंदा है। आओ इधर। वो साला कैंप कर रहा है। पीछे ही बंदा है। दिख गया मेरे को। नेट आया हट। अरे टट्टी। अबे यार मेरे को ही क्यों डालता है भाई? तू ज्यादा हीरो बनने खोजता है ना। जा। मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। पीछे भी आया बंदा। बढ़िया। RyuK भाई आप पे आ रहे एक सीढ़ी से। रेवेंजर मैं हील कर रहा हूँ। सेम। चले तो चले कहाँ? Okay. Easy. देख के रेवेंजर उस तरफ बंदे हो सकते। 2 बंदे बचे। स्मोक करके दे क्या उनको? कहाँ पे? मेरे सामने आ रहा देख। इधर। Watch out. राइट से पहलते इसका। हमेशा थोड़ी पी लूंगा। कितने बंदे हैं लाइव उधर ऊपर? और एक है। कर लो फिर, बुला लियो। क्या अटक रहा है भाई गेम? क्यों भाई? मैं देख रहा हूँ। कर
माल आ गया, माल आ गया। कर दिया तुम लोग को। अच्छा मारो और आ जाओ। यहाँ पे शिक्षक है देखा। एक बंदा है क्या इधर? 5 बंदे दिखा रहे हैं। हाँ एक बंदा है। एक है बे झटरी। 5-4 तेरा 2 होता है क्या? ये साला अरे +2 पास यार किया। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सोचा मार दिए भाई। ये +2 पास कर रहा है देख। पता नहीं कैसे कैसे तो पास कर दिया भाई। करो 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 जितना करना और है अभी करो। एग्जाम चल दिया चल चल है। नीचे चल, बंदे मार बोर्ड एग्जाम अभी आजा। खत्म हुआ है, ऐसा नहीं 5-10 साल पहले। हो आजा गया। रुक। Got supplies on me. चलो चलो नीचे जाना है ना। मैं जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। हाँ मैं भी आया हूँ। बे आओ बे वही जेंट्री लोग आओ। ये मार्केट प्लेस किधर है इधर? देखो अपने को फेरी पेयर या उधर दे सकते हैं, देख लो। मेरे को आज तक RyuK भाई के स्ट्रीम पे एक भी ऐड नहीं आई, पता नहीं क्यों। वाह। मेरे को तो आई है भाई। अरे अर्नब भाई आप ब्रेव एड से ब्लॉकर यूज देखना बंद करते करो हो? भाई। हाँ वही ब्रेव से देखना बंद करो, एड ब्लॉकर यूज करना बंद करो। ओ भाई 2 नंबर। अच्छा रेवेंजर है। कहाँ जाएगा बोल? कोचिंग की चल। निकलते ही हैं हम लोग भी। 4 नंबर तो कौन अरे है? निको भाई, हाय। पागल है क्या? 4 निको नंबर भाई। कौन है? 4 नंबर। 4 नंबर है ना, प्रो प्लेयर। नंबर नाम देख लो भाई, कौन है क्या है पूछ रहे हो? हमको ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे बंदे हैं रे? तो मारेंगे ड्रोनेक्स को उधर। बंदे तो नहीं लग रहे मुझे। पूरा लूटेड है, लूटेड है। देख तो एक लैंड किया है। अपना ही और और एक एक जेंट्री अपना लैंड ही कर किया। रहा है। अच्छा अपना ही। साउंड आ गया फाइट का, चल आजा सामने। मिठाइयाँ बांटो, चर्च की खुशखबरी। तरफ। गाड़ी लिया जाए क्या? यहाँ पे फर्स्ट एड वो वाला है। I got supplies. अपने साथ 2-2 अलीसा खेल रहा है भाई। क्यों? दोनों का माइक ऑफ है ना। अच्छा एक का तो समझ नहीं किया। Hey good. Got supplies on me. जहाँ देखो वहाँ सप्लाई ही करता रहता। अबे हमको लग रहा है रिकॉल पे चर्च पे दिखा दे क्या तेरे को? नहीं नहीं रिकॉल पे ही है शॉट सारे। चल चर्च की ओर चल। बंदा बंदा ये बहुत गंदा लैग हो रहा। बे गाड़ी आया कहीं गाड़ी आया। डासी आया ये कंपाउंड में, शायद से डासी आया है। Watch out. Marked an open door. हाँ हाँ यही चर्च तो में आया बफर है। तो यही तो हो रहा है। चर्च का है। एक एंगल बनता ना भाई, चर्च से बहुत खिलाता। एड ब्लॉकर वगैरह कुछ नहीं लगाता मैं, बाकी की वीडियोस पे तो ऐड आती है। जब तो पता नहीं भाई
क्यों नहीं आ रही है? आपको ऐड क्यों नहीं दे रहा? उसकी माँ का गाड़ी, घोड़ा पीछे लो। कौन है? कहाँ पे नॉक डाला? डेंजर अहेड। अरे लौड़े, बोलता ही तो नहीं है। मार्क तो किया, नेट नहीं चल रहा है ढंग से, इसीलिए नहीं देखो किया। वो उतर रहा है, इसको आने दे, My इसको ऊपर God. उतारूंगा। रुक रुक रुक, आने दूंगा। नहीं, गाड़ी से पीछे भागा। अभी तो रिकॉल निकलेगा। सुन, ये घर पे आया, ये घर पे आया। अबे और एक Watch यहाँ पे, out. यहाँ पे, यहाँ पे। Marked a location. वो मेंटल गया। अबे नेड, मेरे पे नेड आया। कहाँ बंदा कहाँ बचा वो बताओ। ये गांडू। घर वाला मरा क्या? मैं घर वाले पे पुश कर रहा हूँ। तू राइट से जा, उसी साइड है, पीछे एकदम। हाँ पीछे है। अबे गाड़ी से आ रहा है। नाइस कवर गाइस। गाड़ी चर्च में है, गाड़ी चर्च में रोका, उधर एक एकदम नॉक उड़ा दिया के था। लाया था भाई बचाने के। फिर भागा रिकॉल पे बेचारा। लैंड कर रहे होंगे बंदे, देख के। Watch out. अब तो उधर भसड़ हो गया, रिकॉल क्या देगा? चलना चर्च पे लेते हैं। पत्थर के ऊपर है अभी भी। ये वही मेंटल वाला है। मैं नॉक दे रहा हूँ पत्थर वाले को। क्या? आओ आओ तुम लोग आओ गाइस। रविंद्र तू भी घोड़ा लेके आ जा। तू जा ना, तू जा। मैं पूरा लेफ्ट से देख। नहीं आगे और बंदे हैं, रिकॉल करो। तू आएगा तो आगे पुश करूंगा। हाँ रिकॉल पे ही मारूंगा ना यहाँ से। तो भाई यहीं से मारूंगा। भारी लैग हो रहा है, क्यों नहीं पता। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। किधर? बढ़िया। अबे जस्ट बचा हुआ नहीं, नॉक खाया अंदर से। अबे मेरे पे एमो नहीं, कोई आके एमो दे सकता है? क्या चाहिए, कौन सा चाहिए? 5 पे। इधर ये पेटी में पड़ा है बहुत। Watch out. यहाँ पे Watch बंदा, out. वो घर पे बंदा। दो बंदे। Got supplies on me. पेटी पे पड़ा, लेकिन मेरा बैग फुल है। रुको, कुछ तो निकाला कुछ। अबे गाड़ी पीछे। कहाँ गई वो ग्रुप? यही वाली गाड़ी थी, यही वाली गाड़ी। इधर 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 पीछे। पीछे मेरे पीछे पे एमो पीछे। नहीं है बे, अब उनको स्प्रे मार के गिराऊंगा कैसे? कहाँ पे? मार्क फिर से मार्क। मैं आ रहा हूँ। गाड़ी इधर एमो रुकी है, देने आ गाड़ी रहा इधर हूँ। रुकी है। स्क्वाडोस पे। मैं आपको कैसे? हाँ मैं आप वो पे तो कैसे पीछे हूँ? दिख गया तो। इसको मार रहे हैं। हाँ दुकान पे एकदम मेरे को शॉपिंग मार कर रहा लूट था। रहा है, और स्क्वाड हाउस पे आ रहे बंदे। मैं कैसे हूँ कुछ नहीं है। कौन है मेरे पैर के नीचे? कवर दे पाओगे तो बोला आ रहा हूँ। ट्राई कर सकता हूँ, ऐसे तो मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। अबे एक जन यहाँ गया, ये घर पे गया घुसा। हाँ दिखा। इसको नेड से मारने का ट्राई करता हूँ।
देख के गाड़ी आया अपने पीछे से पीछे cover मिले। मेरे डेंजर इधर है। गाड़ी हेलो पीछे गाड़ी आ गई क्या? हाँ बोला ना मैं। अबे स्मोक करो अलीशा, उस पे स्मोक स्मोक तो करो, मैं रेव हो जाऊंगा खुद। अबे Watch out. पूरा गिर दिया भाई। अरे घोड़ा वाला लो है, घोड़ा वाला लो है। अरे यार सैंडविच हो गया भाई। मैं इधर बोला रहना ही पीछे नहीं बंदा है। चाहिए था। अबे तो कुछ स्मोक वोक करके तो कर पीछे। मार्क भी क्या, कैसे क्या करूंगा, घेर दिया, मैं निकला और दे दिया, निकलना ही नहीं था मेरे को तो उधर। वेरी वियर्ड प्रॉब्लम्स। अब तो पहले ही स्मोक कर देता ना पीछे साइड, देख रहा है वही लोग भाई आगे से बंदा खेल है, रहा है। एक साइड तो अरे स्मोक एंगल ही कर। नहीं था उधर, एंगल ही नहीं था, कहाँ से करूंगा मैं अबे स्मोक। स्मोक फेंकने के लिए क्या एंगल स्मोक चाहिए? फेंकने के लिए तेरे को कौन सा एंगल चाहिए बे? अरे बहुत गंदा जगह होता स्मोक, नहीं समझ रहे हो, फिर उसके लिए भी गाली सुनते, नहीं समझ रहे हो भाई। मेरा पीओ भी बहुत गंदा था। एमो देख रहा है 40 ही है बस। मत कर रुक जा। वही वेरी वियर्ड एमओ ही प्रॉब्लम्स। उठाया था अमन भाई भाई मैं तो क्या अपने। वियर्ड है, ऐसा बताओ क्या वियर्ड हो रही है प्रॉब्लम? होल्ड करो भाई आप जोन आने तक, मैं तो बोल रहा हूँ, फिर लूट के भागियो। और कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा, बट उनको पता है मैं इधर हूँ, बस फायर दे रही हूँ। नहीं याद है अभी, भूल गए बेचारे। इतना मस्त मैं निकालता हूँ वहां से, एक दो किल तो बढ़िया। देखना उसको, उतार 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 उतार। अच्छा उस एमओ ही नहीं है। नहीं है एमओ नहीं है, कहाँ से उतारेंगे, रहने दो, मत लेने दो फाइट। ये क्या जंप कर रहा है भाई, इसको मजा आ नॉक रहा है फिनिश भाई ऐसे देना, देख इसको के। दे, इसको इसको दे, तो इसको डाल दे। सकते हो, पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। हाँ, हगा हगा लवड़ा हगा। हक दिए। अ- अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ भाई, ऊपर से पड़ेगा अभी। नहीं 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 नहीं, तो इसको नॉक फिनिश डाल, ये हील कर रहा है फिर निकलेगा। नेट है क्या, नेट है क्या, चल जाएगा उतना देर नेट। उधर नहीं आएगा, उधर मैं नहीं तो बोल मारेगा रहा हूँ तू, अंदर इधर चले देख। जाओ अब। तू राइट वाले को ही देख। अरे तो अभी स्मोक निकलेगा डाला, वो। पीछे ही जाएगा वो। अरे तू राइट वाले को देख ना, देख निकला। अभी कहाँ स्मोक में स्प्रे दे रहा प्लेट है? लिया है, प्लेट लिया वो। नेट वेट है तो डालो ना पूरा पिन करके, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं उतना नहीं पटेगा। तब हमको डर है ना, मैं खड़ा हूँगा तो Marked a इधर से मार देगा, location. बैक से मेरे से ढंग से होता नहीं। नहीं तो नीचे से कर लो भाई। हाँ सुबह यहाँ से नेट क्या नहीं स्नाइपर है आएगा। क्या, वाह भाई वाह, क्या टाइमिंग है, क्या खुशी है भाई। एक तो निकालो भाई एटलीस्ट। चर्च वाला देख के पड़ रहा है। हाँ चर्च से ही पड़ रहा पता उधर ही से मार रहे हैं। अब तो देख हेड दिख रहा है, देखना है, वो डालो वाला। ना उसको, डालो। डाल। अबे अबे घोड़ा है घोड़ा, लवड़ा। घोड़ा ये बहन का घोड़ा लौड़ा। है, मैं भी वही सोचा कि घोड़ा, बंदा है भाई। घोड़ा बहन का। बेचारा इतना अच्छा क्विक स्कोप था भाई। वो ब्रोकन वॉल पे है स्क्वाड हाउस वाले, एक है उधर ही। इनका अलग जोन ही निकाल, बसर जोन चल रहा निकाल, है। ओए बोमड़ू, जोन निकाल। आप गाड़ी नहीं है ना निकलोगे मेरे लेकिन पे। आपको पड़ेगा, तो घोड़ा लेके उसी निकल को जा। मार के ऊँट लेके जाना पड़ेगा। ऊपर वाले को नॉक दो और निकलो भाई, वो घोड़ा पे बैठेगा मेरे को जितना लग रहा है। कैमल है, कैमल। नो कैमल है बेबी, वो, अच्छा। कैमल नहीं है, नहीं है। घंटी अरे भी है, नहीं है, घंटी। आगे क्यों है? घंटी घंटा है, बजाओ, घंटा। घंटी बजाओ ना। ओ भाई कैमल भाई, ठीक ठीक चीज याद दिलाया आ भाई। गया लौड़े, आ गया मेरा लौड़ा, आ जाओ। ओ तबड़क इनविजिबल तबड़क वाला गोल्डन मारो भाई, मिराज भागो बोल दे, तबड़क बस। तबड़क तबड़क चड्डी तबड़क। बोल दे। फिर इसकी माँ का गोल्डन मिराज चला गया। भारी था भाई रिएक्शन। उड़ती फिरे मस्त गगन जंप करो ना। अरे भाड़ू सीधा जाना, को काय टेढ़ा जा रहा, बहुत तेरे पे टाइम है नहीं। भाई बहुत अबे तो हीलिंग है। पीछे वाले तो जोन से ही ठिल जाएंगे, चिकन तो ऐसे ही आ रहा है। आगे बता। अब गाड़ी जाओ में। जाओ, और यू भाई सब बढ़िया? नहीं भाई, जंप लाइफ में मारो बहुत भाई, दिक्कत जंप। है भाई। देख ना, देख 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 सब मरेंगे मैं, देख 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 10 हो गया 20 से। टॉप 10 आ गया ये मेरा। Awesome. Enemies ahead! भाई भाई हिल मेरा पे मत पेट रहना फुल तुम, हो गया बे पहले पूरा बोल। एक।
अबे लैग हो रहा है, मेरे मस्त लॉबी लग गया। खाया भाई, ओहो हो, अभी ऐसा मन कर रहा है कोई मेरा काम कर दे और मैं सो जाऊं, लेकिन करना तो कुछ तो पड़ेगा। मेरे लॉबी लग गए, यहीं पे बंद है, लैग हो रहा है। हाँ वो तो नहीं तेरे पीछे बंदा था, पीछे बंदा बस था, कहीं चल तो है। मार उसको, पीछे वेयरहाउस तरफ लैंड है बंदा। मेरे पीछे बंदा। अरे लैंड नहीं है। देख जाके देख, अगर नहीं होगा तो फिर बोलना। अबे हाथ में स्नाइपर है, रुक भाई, पहले हैंड चेंज कर लो। जोन के अंदर ही रहो ना, अंदर ही फाइट लो। वेयरहाउस है क्या जोन के अंदर, ऐसा है क्या? कैसे देखते हैं भाई? मैप में मार्क कर देखते, वेयरहाउस है कुछ। ओ राइट में बंदा, स्नाइपर मारा उधर। जब जब अरे लैंड इधर से भी नहीं है, इधर एक से तो तू ये सफेद बैटमैन घर वाले बहुत कपड़े गंदा हटा, है भाई। पीछे ही बंदा है। सफेद बैटमैन वाला कपड़े हटा तू। यहीं पे कहीं पे बंदा है। पैदल क्यों जा रहे हो भाई? अरे सही बोला बे, तो माँ चुप गई, इतना जब बंदा का साउंड आया ना, बोला कान फट मैं तेरे को गया। इस तरफ बंदा, तू सुनता ही नहीं है। अब यहीं पे रहो, यहीं पे कोई कंपाउंड होल्ड करो भाई, सामने जाके कहीं भाई पे। मैं शायद से PMIS का IGL पूरा। हूँ, एक रीजन की वजह से था। आई मीन बढ़िया नेट। बक्सोदिन, अबे क्या मेरा नेट जा रहा भाई। इधर बंदे हो सकते देख के, राइट में राइट। अबे मेरा नेट जा रहा, लैंड खेलूंगा। ये ब्लू वाला हाउस पे घुस जाओ, ये सब ब्लू वाला खराब हाउस आदत है, एक बड़ा खराब वाला। आदत है, रखता है लैंड के साथ खेलना मिलने के लिए, तो गेम प्ले नहीं हो रही है, हैं? कौन भगवान कौन? लैंड दिया है जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, तू उससे खेल रहा है। कौन बोल बक्सोदिन रहा है, किसको बोल? बक्सर, एक तो नेट नहीं चल रहा, ऊपर से इसका अलग बक्सोदिन। साला M24 में 3x लगाया है, लैंड अरे मरेगा कि पीछे वाला घर में जाओ ना, इसमें क्यों ही रह रहे हो भाई शैक में? मजे हो जाएंगे पूरा। जोन भी चल गया, वाह। अब आएगा पीछे से पूरा मेहनत गाड़ी कर लेके, पसीना पेटी डाल बहा, देगा। रुकना और थकना ही मना। घर पे मत अभी जाना, झुका देगा, थकोगे अभी क्या अकेले पूरा? रहे, अकेले रहे, बाहर रहे, घर पे मत जाना, पूरा स्क्वाड रश होगा। भाई इतना ओपन, माँ कसम 3 एंगल से खाएगा वही भाई, पूरा मजा आ गया। शोंटिया। वहाँ पे रेज था, वहाँ पे नहीं अबे जाके। पीछे कोई नहीं है, जो है आगे नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? पूरा श्योर हो? मेरे को तो पीछे बंदा हाँ है भाई लग वो रहा देखना, है। वो देख सामने स्मोक देखो, हुआ, देख स्मोक वहाँ। स्मोक। हाँ मारो भाई, देखो मैं तो स्नाइपर है, बोलता हूँ बग्गी से स्नाइपर। जाके वो शैक तक चले जाए, फिर राइट मारना। में गाड़ी का आवाज आया क्या? नहीं नहीं। वो देख, वो देख, वो देख। हाँ राइट तू से ही यहाँ गया। से फायर मत करना, क्योंकि एंगल लेके मार सकते। ले ये लोग तो प्लेयर व्लेयर मंगा के गए। ले ले ले, ये ले खत्म ही कर ग्रूट दिया। को तेरा मधुपुर मरा में भी, 1v4 है भाई। पांडा कोई मारा क्या देख हुआ, क्या ग्रूट। हुआ? 1v4 है। देखा नहीं, किल फीड नहीं देखा। बच्चा नहीं अम्मा बचोगे। के घेरे पीछे बच्चा। यही करो, इसमें ही चिकन निकलेगा। अभी भी लूट रहा है, कितना लूटेगा अभी। एंगल बना रहे थे ब्रो, एंगल एंगल। तेरे को क्यों लग रहा है 1v4 होगा? हाँ इमोट भी मार लियो, कौन सा नया वाला बोल रहे हो? फिर देखते तो हैं, लगता लेट्स है ये सी। 1v4 करेगा सपनों में। वो भी M24 के थोड़ा साथ। वही थोड़ा है। तो है भाई भरोसा मेरे को। साला तोड़ दो भाई। स्कारे लेके ये सब कुछ होगा तो समझ में भी आता। वो दिखा स्मोक के बाजू आ में। रहा है, देखो बंदा, और ये नॉक। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मारना मत।
बस उसको बॉडी पड़ा गया। अब अब मैं तुझे जोन के जो बाहर हूँ जोन, लेने हाँ के पास। वो बग्गी लेके जा, बग्गी लेके जा। अरे काहे बुलेट वेस्ट कर रहे हो, आराम से उसको पीक लेने दो फिर मारो ना। डैम ब्रो। जाओ जाओ अभी गाड़ी लेके जाओ, पूरा चढ़ा दो भाई, 1v4 होगा भाई। गाड़ी किधर है देखो ना, बहुत दूर है। अबे इंटेंस गेम प्ले ब्रो। अरे माँ की चूत, पीछे से गए कौन गए मारा? गए 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 गए, इसीलिए बोला गाड़ी कहाँ रखे। गए गए गए, डेड है भाई, सीन डेड है। पेड़ के पीछे जाओ, हील करो। अरे पेड़ के पीछे है, गाड़ी फोड़ देगा। दे दिया। 1v4 है भाई, 1v4। लेकिन मारा भाई, 3x से मारा भाई। वही भाई, 3x से क्या पट से हेडशॉट था भाई। लैंड से चमत्कार मारा। दबदबा था भाई, पूरा दबदबा। पूरा एक तो रोला तुम भाई। लोग चलो ओपन में जाके वहां पे खेल। वेट रॉयल लगा भी, अब उतना चार्ज रहा नहीं। सेम, और मेरा भी इतना पेशेंस रहा नहीं। अल्टीमेट रॉयल में भोकाली करते हैं। अबे ये मत लगा अल्टीमेट रॉयल में। अल्टीमेट अरीना। तो अब इसको बताना पड़ेगा मेरा अल्टीमेट रॉयल डाउनलोडेड क्या नहीं होता है। होगा शायद। तो करना है, इसे गरीब जैसे करते हैं। स्टोरेज नहीं है, बहुत गरीब है बहुत। 25 MB नहीं है। नहीं भाई पूरा फुल है। कहाँ है वो, किधर है वो बताओ। ये अल्टीमेट अल्टीमेट। अनरैंक्ड में, ये तो अरीना में, लिखा हुआ उठ रहा है। अल्टीमेट अरीना। ये साले ये पॉपुलैरिटी चाहिए इनको। कहाँ अल्टीमेट अरीना कहाँ है वो नहीं पता इनको, इनको पॉपुलैरिटी चाहिए। वही भाई पॉपुलैरिटी के लिए बता पॉपुलैरिटी देगा दो कहाँ भाई। पे कितना मिल सकता है, ठीक पता है भाई, वो उसको पूरा अंदर से घुस पॉपुलैरिटी जाए। दो भाई इसी बात पे। गेम में कहाँ क्या है वो एक्सचेंज पता करो नहीं। भाई, मैं देता हूँ। एक्सचेंज करता हूँ भाई, आओ। मत करवा 20 एक ही 20 जाता ये है। करते भाई ड्रॉप। देखो, पॉपुलैरिटी चाहिए था तुम्हें, मैं दे रहा हूँ, खुश हो जाओ मतलब। हाँ भाई, फिर से भिखारी जैसे एक एक देंगे भाई, इससे अच्छा तो मैं फोटो भेज दूं भाई, वो खुद दे देंगे भाई इससे ज्यादा। वो खेलते ही नहीं है गेम्स। तू रेडी कर भाई। अरे मैं रेवेंजर भैया की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर दिया, मेरा ऐसा तारीफ वारीफ कर दिया क्या? पूरा तारीफ मतलब, कल आप तो पार्टी दियो भाई, तारीफ सुनने में आ रहा था हम अरे लोगों को पूरा तो। ट्रेन खरीद लिए थे कल, पता है ट्रेने से वही घूमे, भाई। पूरा पूरा 24 घंटा ट्रेन से घूमे, बुक था मेरा। दाड़ा भाई माइक ऑन अच्छे चिल्लास ना। वेरी गुड, वेरी ये गुड। लोग साला हरामी लोग भाई, साला क्या गांड में लोग। अबे यहाँ का हगने का ही क्यों बात करते, खाता क्यों है बंदा? हाँ बोलो बोलो। एसिडा बॉन्ड, एसिडा बॉन्ड को तो 25 लगे। Let's go. नहीं नहीं, अरे कमाने बोला। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने बोला। हॉट हूँ ना मैं इसीलिए। नाइस। एक इधर है। Danger ahead. एक लास्ट पीछे है, उधर ही है। जिधर रुक जा रहा उधर ही है। लेटा हुआ था उस साइड। इजी ब्रो, इजी। कौन सा जगह है भाई? आजकल तो भाई ये शील्ड वाला नया ग्लिच है, पता है शील्ड से आर पार गोली लग रहा है, एक दो थोड़ा आर पार गोली लगता है। क्या बात कर रहा है?
हाँ बे, मैं खेलता हूँ ना अलग कभी कभी, भारी ग्लिच है भाई, फील्ड का आर पार लगने लगता है तब इरिटेशन होता है। क्या भागा भाई, मेरे घर के किधर है? पास है भाई। अबे बहुत Danger बहुत ahead. लो है, बहुत लो है। एक जन नॉक है शैक पे। मारो इसको, मारो मारो, बढ़िया। और एक आ रहा है, जीत गए, बढ़िया। करियर डेड। अब मेरा सांप बनने का टाइम आ गया है, कपड़ा खोल। सांप, जहरीला सांप देखा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप वही तो। Let's go. यहाँ कहाँ I'm शील्ड really बना दिया sorry. भाई, कौन है भाई? देखिए। नाइस। अरे झटरी घास पे लेटे। इसको विक्ट्री मैं ही दिला सकता हूँ। एक पेड़ पे है वो, सामने वाले जो, अरे राइट वाले मूर्ख। हाँ अरे सामने नहीं, मतलब उसके पीछे है। लेफ्ट में भी है ना एक। तो इसको बोल रहे हैं निशा को, रेड की है। Enemies ahead. मूवीज की तरह नहीं दिखती। वो देखो, मारो उसको। गंदा है भाई, मैं लेफ्ट स्पीक क्यों देता हूँ भाई? हाँ राइट पे लेफ्ट पिक करके मार रही Location हो। marked. नहीं ये प्रो। Danger इधर है, ahead. रिवाइव दो भाई, नॉक हो गया हूँ क्या मैं। कर रही है ये? Danger इधर ahead. लेटा अब वो मर जाएगा, टेंशन मत लो, इसका भाई, करियर भाई खत्म। रिवाइव दो आप। अभी देखो पूरा मारते भाई। देखा, मैं ये ही मारा जहरीला भाई, सांप मैं ही जब मारा। तक जिंदा है डरो। अबे एक ही बंदा बचा है बे, क्या खेलोगे, निकलो। सब निकल गए क्या? दिखा नहीं रहा है सब। अरे यार, देख अभी देख, मेरे को डीबीएस चलाने का मौका ही नहीं मिला। चलाना भी जा, अंधा जा जा। कौन पहले मार सकता है? चलो जो पहले मारो वो प्रो प्लेयर। चलो ठीक है। वो तो नहीं हो रहा भाई। चलो 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 चलो। Let's go. बस ऑफलाइन ना हो बंदा तो। ये अबे हैं? ए दुख भाई दुख। अबे इतना देखो मारा प्रो भाई, प्लेयर, 2-3 हेड। प्रो प्रो भाई प्लेयर कौन, देख रहे हो भाई? प्रो कौन है? कौन एक गोली मार के मारा भाई? कौन मैं तो छोड़ दिया भाई, कौन है प्रो? प्रो मैं वही तो है जो छोड़ दिया जो भाई। एमवीपी है, एमवीपी वाला ही प्रो प्रो है। कौन है? अपने ठीक है, एमवीपी वाला। झुक के रहने का प्रो के सामने, ठीक है, झुक के रहने का। भाई साला वार्जन से 2 हेड का आवाज है साला हमको, और 4 सेलिब्रेशन बॉडी मारा। सेलिब्रेशन करने लग गया था, लास्ट मोड में एक टच करवाया, टुंग करके ले लिया किल। 120 एफपीएस तो वहां पे मैटर कर गया भाई, तो किल तो वही भाई, दिस इज यही तो द। दिक्कत है। हाँ तू साले मोटू खाली वो ले, यॉन कर तू खाली, ठीक है, यही दिक्कत है।
ये खुद भी कर रहा है साला गांडू। अबे गांडू में नाटक कर रहा तेरा वो कर रहा हूँ। चल 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 जाके स्ट्रीम देख के आजा। अरे जाके यार स्ट्रीम देख के आजा। मजा नहीं आ रहा है भाई। अब टीडीएम लगाओ यार, टीडीएम लगा लो यार, इससे ज्यादा टीडीएम अच्छा में जो मजा सबसे नहीं कम आता किल मेरे किया को। समझ लो क्या वो है। नूब ट्रेनिंग लगा दिया बे। वही भाई, टीडीएम लगाओ भाई। साला आंटिक तो ऐसे करता है TD ग्रूट जैसे अभी मतलब अगर लग गया तो भाई इसका फोन बिक जाएगा पूरा भाई। साला। वही अगर लग भी गया गलती से स्टार्ट तो एग्जिट कर लेना। नहीं नहीं घर ही बिक जाएगा वैसे। चलो सब पास M24 है कि नहीं है? M24 है। हाँ है। Let's go. पे भी है। आगे वाले भी चला रहे, हम लोग भी चला। अभी हम जा रहे हैं M24 चलाने। मैं भी चला रहा हूँ, रुको। नाइस वन शॉट दे रही है भाई। कहाँ दे रही है भाई इतना देर? मुट्ठी मार रहे थे। अरे यार शिट बे, पीछे वाला कवर दे दिया। मारते इतना रहे प्यारा तो सा शॉट मारने वाला। क्यों मारते रहे? डैमेज पड़ा था इसीलिए मरा। हेड मारा हूँ साले। अलीशा तो पागल हो गई भाई। क्यों क्या मार रही है क्या? याद रखना जो सबसे नीचे होगा नूब है। तो पहले से बोल दे रहा हूँ मैं ही आऊंगा। अरे यार भाई मैं भी भाई, मेरे भी ज्यादा किल नहीं है, टेंशन ना। M24 मैं भी नहीं चलाता भाई। मैं कौन सा थोड़ा चलाता बहुत हूँ? कॉम्पी रखने के लिए मैंने रख दिया था। मैं तो चलाता ही नहीं हूँ कभी। मैं भी भाई बस ट्राई हार्ड कर रहा हूँ मारने का। अबे यार AKM चला रहे भाई अब तुम लोग। ओहो अरे यार हवे तो Enemies ahead. अबे ये क्या लग गया उसको? The red team doesn't have a lot of time left. Great. You're about to win. अबे यार हक दिया। अरे कौन बन रहा है नूब? मैं भाई
कौन नूब बन रहा है? अरे बड़ा कड़ी अरे टक्कर अलीसा चल रही है। चीटिंग कर दी यार, अलीसा चीटिंग कर दी, एटीएम पकड़ लिया यार, अलीसा चीटिंग कर दी। फिर भी लास्ट में तो वही है। अरे छी अलीसा यार छी 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 जीतने के छी लिए ऐसा नहीं करो, एटीएम छी, वेटीएम मत फिर भी पकड़ो। जीत नहीं पाई। छी 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 छी। थू। मजा भाई आया बस। भाई ग्रोट सुनना, ग्रोट ऐसे ले रहा होगा राहत की सांस। थैंक गॉड। ऐसे कुछ भी भाई, ऐसे राहत की मेरे को तो सांस। नींद आ रहा है उल्टा। उल्टा क्यों? सीधा नींद बिल्कुल नहीं नहीं आता था तेरे को? भाई। पेट में पूरा गैस वैस हो गया होगा। अरे हाँ, यार तेरे को सीधा नींद नहीं आता, उल्टा नींद आ रहा है जो। कुछ भी भाई। शॉटगन है, शॉटगन आओ, अभी शॉटगन से धप धप होते आगे, लास्ट शॉटगन मारते नहीं, हैं। शॉटगन लगाना पड़ेगा। रुक को लगाना पड़ेगा। देखो भाई कॉपी करते साले। कौन सा लगाना है बोल? अरे किसका माइक है भाई, अरे कौन भाई फेंक रहा है किसका माइक? माइक है भाई, किसका माइक है भाई? दिमाग खराब। कौन सा चाहिए? स्टील के? हाँ जो भी हाँ लगा, वही लगाओ। एसपीएल का लगा, वो लिविक वाला लगा, जो लगा शॉटगन है। डीवीएस रहता तो वो भी लगाने के। इसमें जो लास्ट हुआ वो तो पक्का नूबी है भाई। मेरा फोन स्विच ऑफ ना हो जाए भाई, मेरे को नो मत बोलो। मेरा तो कंफर्म है भाई लास्ट, क्योंकि मेरे को शॉटगन चलाने नहीं आता। अबे चलाना क्या है? सामने किसी को बंदा नहीं देखा आता तो भाई। फायर करना। चलाना क्या होता है इसमें? हाँ? साला मुतना सिखाया था क्या कोई तेरे को? पता नहीं, कुछ अलग चलता है तो पता नहीं भाई। ना हगना सिखाया था तेरे को? हीरो। चलो नहीं, गलती से जंप हो गया, चढ़ गया मैं ऊपर। अबे उसको 4 गोली मारा। कड़ी टक्कर चल रही है अभी भी नीचे के लिए। अरे यार हेवी टक्कर चल रही है। अभी साला चार्ज कम है ना, लैग मार रहा हूँ बहुत। अरे भाई क्या लैग हो रहा है भाई, मेरा तो शूट ही करना बंद कर दे रहा है। तो भाई नीचे आओ। अरे यार क्या हो रहा है भाई, अब पूरा स्क्रीन अटक रहा, पता है? अब लंग नहीं मार पाएंगा मैं। मेरा हो गया, बहुत बुरा अटक रहा भाई। Location marked. अरे भाई मेरा गोली ही नहीं चल रहा अब तो भाई, मारूंगा कैसे अब? मेरे लग गया। फिर भी तू ऊपर ही है, टेंशन ना लेके किल करते रहे। अबे तो अभी अभी नहीं चल रहा ना भाई, अभी ऊपर ज्यादा देर रह नहीं पाऊंगा ना, दिक्कत ये।
नहीं तो इनको तो भाई मैं कुत्ता बना के मारूं भाई, नेट नहीं चल रहा, सॉरी चार्ज कर। कौन? अरे हेवी टक्कर फिर से नीचे। हाँ अब तो नहीं हार सकते भाई, अब तो 10 हो गए अब कुछ भी हो जाए 4। कोई एक नीचे आ रहा है, कौन देखते हैं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, दोनों में हेवी टक्कर हो रही है। नंबर 3 ने तो शायद चीटिंग कर ली। Great. You're about to win. पूरा चीटिंग देखो ना, पूरा चीटिंग। 2 किल मार लिया, देख रहा कैसे उड़ रहा है, देख रहा है 2 किल। कुछ भी भाई, कुछ भी, मेरे को आता नहीं चलाने भाई शॉटगन। नहीं अब तो मेरा नेट भी अब नहीं वो भी 2 किल मार ली वे ले। अरे अरे ले, दोनों का सेम किल। लहर लड़ गई, क्या हो गया? उनको खाली पॉइंट ज्यादा ग्रुड दिया है, वरना दोनों नूब है, दोनों नूब है, दोनों नूब। नहीं है भाई। क्या बोल रहा है? माइक ऑन ऑफ कर, माइक ऑन ऑफ कर, माइक ऑन ऑफ कर। हाँ क्या बोल रहे ग्रुड? भाई मेरा पता है, मैं आगे घुस के मार रहा हूँ, बटन पे दबा रहा हूँ फायर कर, दब ही नहीं रहा है, दब ही नहीं रहा, और जोर जोर से दबा तो दब ही नहीं रहा है। गोली निकले तो बंदा कितना मरेगा परसेंट भाई। चार्ज है तेरा अभी? अभी 8 हुई है। अरे भाई 7 होता तो एक बात है। पूरा ट्राई हार्ड कर रहा हूँ, दब जा दब जा दब जा। चलो फिर चलते हैं। चल ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ अब। कल आते हैं। ठीक, कल कल वही ट्राई करना, थोड़ा जल्दी आना। मैं तो साले 10 मैं बजे ही आ जल्दी गया सो था जाऊंगा। आज ही।